one of the day 2 of this prestigious cricket tournament. PPL 2024 is now going to start between H Alliance Bapaliga versus United Puttur. So news is here from the centre that the captain of United Puttur, after won the toss, he elected to field first, and because of that, their fielders are now spreading out on the field, and we are just waiting for the openers of H Alliance Bapaliga. So this is the first match of the B pool in this prestigious cricket tournament. PPL 2024 is now going to start. And 4 teams are participating in this group. And after this match, the star strikers will take over Friends Kabaka, and that match is now coming up loud exclusively right after this match. So the first match starts. United Puttur of the Wanderers, they elected to field first, and for the next first procedure, I'd like to invite my dearest friend Satish in English. Thank you. So thank you very much, Gopi. Good morning, everyone, and welcome back for the first match of the final day of this cricket tournament, Puttur Premier League 2024, which is proudly organized by Junior Friends Kombettu in this very beautiful Kombettu Junior Cricket Ground. First ball, and after day number 2, first ball driven that one just wide of that shot mid-on fielder before the fielder from wideish long on to pick that one and returns that one. Ample time for the batter to complete the single. Harsha is off the mark. Harsha Padayuru is off the mark with a single and one without loss of any wicket. That brings the icon player, very destructive. Lip correction, yes, Aman in delegation. He will go in to take the strike. One more very good striker of the ball. The good all-rounder for the side will go into face his first delivery. And the United Puttur captain, after winning the toss, they elected to field first, so that all we can see that the first over of the power play is in progress. Right arm over the wicket bounce. This time driven beautifully down to deep square leg region. Protection is there in the deep, and a very good stop by the fielder. And before throw will go into come to the hand of the wicket keeper. Ample time for the batter to complete 2 valuable runs. So with that couple of runs, Kombettu moves on to 3 on the board, and Aman is off the mark with a couple of runs. Right arm over the wicket balls. Again, nicely driven straight to the hands of fielder. Like a placement, the ball went straight to the hands of square leg, and there is no chance at all for any run. Altaf Valpadi, the icon player, is on attack. The loose delivery lofted, but couldn't manage to get the placement right. Couldn't manage to get that one over the infield. Intention of Aman to get over the infield, but not quite getting that one from the middle of the bat. Absolutely is a punishable delivery outside the line of off stump, and Aman slight a bit of early into the stroke, pays the penalty for that. That backup point fielder making no mistake at all. The wicket number first is back into pavilion of H Alliance Bapaliga. Shot outside the line of off stump after a 2-3 bounce, which is ball came into the bat. And Aman is slight excited after seeing that ball. He wanted to go over the top of the infield, but fails to get that over the infield. The new batter in is Haider will go into face his first delivery, and Altaf will go into ball that 5th time in this over. The first breakthrough from the first over from Altaf. He got a wicket of the very dangerous batsman Aman. Beautifully ball, perfect one. Wicket keeper behind the stump, face to collect the ball. Just need to wait for the umpire signal. Deflected from the leg by call by umpire. With the addition of that leg by Kombettu moves on to 4 on the board for the loss of 1 wicket in the over number first is in progress. Altaf final time in this over. So far, a very, very tidy over is in progress in the power play. The morning condition, slight a bit of encouragement for the bowler. But still, it's a very sunny morning and bright sunny morning. Loose delivery lofted that one. Again, opportunity created for the catch. It's going to be 1 more wicket.
This time one more danger batter. Ashapada Euro is back into pavilion for the loose delivery. Again, Altaf Valpadi getting a 2 wickets. Never looks like it's going to be a wicket-taking delivery. Again, the loose delivery outside the line of off time, inviting the batsman to go for the big shot. And Asha just wanted to go over the top of the infield, but didn't got the elevation what he's looking for. And short extra outfielder making no mistake at all. Just going back, completes the catch. The wicket number 2 is back into pavilion. In 2 wickets in the first over for Altaf Valpadi, and he's justifying that he is one of the best all-rounder for the side of United Puttur. 4 on the board for the loss of 2 wickets after completion of over number first. So shackling start here for the team Each Alliance Bappalige. They lost 2 valuable wickets. Opening batters are back into pavilion. The similar dismissal both are. The one catch which is taken at backward point region between backward and cover point when short pitch delivery offered by the bowler outside the line of off stamp. Aman tried to get over the top of the infield, got out. And Arshapadev is also similar dismissal. A short pitch outside the line of off stamp, going for the lofted drive, extra cover into extra cover. Couldn't manage to get the elevation right. First ball of the over number second, balls beautifully outside the line of off stamp. The bowler jersey number 21 is in operation outside the line of off stamp. Batsman wanted to go for the drive, misses it completely. Then wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Iqbal balls once again, the lovely delivery indeed. Very good collection behind the stump, and there is no possibility of any run. With extra pace, Iqbal bowling that one, and 2 dotted deliveries so far. Third time in this over. Right arm over the wicket balls. Again going to be a wide, and it's going to be a big wide in fact. And with that extra score, moves on to 5 on the board for the loss of 2 wickets. And Icha Lions Bappalige searching for the right track, struggling in the middle. Driven across the line, straight to the hands of fielder. He wants a single, but very difficult to get, as either this time couldn't manage to get the placement right. Ball went straight to the hands of short mid wicket. Very hard to combine the runs, and then there's the morning condition. The batter really struggling to get runs on the board. 5 on the board. Right arm over the wicket balls. Again now going for the drive. Deflected from the leg, so that umpire will going to lift the leg to signal the leg by. With that leg by, score moves on to 6 on the board for the loss of 2 wickets in the over number second is in progress. 5th time this over. Last 2 deliveries left in this over, as the bowler Iqbal bowling right arm over the wicket to the new batter Jabbar. Javir, correction. A little bit change in the field then. A long off coming towards the deep long on, and one fielder down at deep mid wicket. The 2 protection is given in the deep in the onside region. No protection in the deep in the offside region. And this is the last over of the power play is in progress, and 5th time in this over. Bowler bounce lofted beautifully just over the infield. One bounce. It's going to be a chance of bound. Yes, he does. Beautifully played. His first confident looking stroke coming from the blade of the batter. Zavir this time got that one right from the middle of the bat. Just seeing the field set. And just before this delivery, the long off fielder coming towards the long on region, so that Zabir quickly realizing that it is the right time for him to go over the top of the infield. Once he got that one into the deep long off region, very difficult for the deep long on fielder to run across to cover that ground from long on to long off. Absolutely fantastic lofted off drive. A beautiful shot. Absolutely glorious. Magnificently played there by Zabir. And just thrusting his front foot to play that slog sweep shot beautifully down to define the boundary for 4 runs. A good way to finish the over number 2 with the 2 boundaries. And Icha Lions Bappalige are back in the game in that 2 boundaries, and scoreboard now moves on to 14 on the board. And after that, the shackling start. The shackling start. The both opening batters are back in the pavilion, but Zabir giving some kind of comeback here for the team Bappalige with the 2 excellent boundaries. 2 different stroke. One it's a lovely lofted drive, which is came from the middle of the bat, and the second one is absolutely the very delightful eye-catching cricketing stroke
That is a slog sweep shot coming from the blade of Zabir down to deep fine leg region. Masood, the bowler, will go into bowl the third over after that power play. We can see that fielding restriction is lifted, so that so many bodies out there in the deep. One fielder at deep mid wicket, one at wideish long on, the fielder down at long off, one at deep cow point, and altogether four fielders outside the ring. Now one fielder going back. Now five fielders are going back, and three fielders outside the ring in the onside region. Two fielders outside the ring in the offside region. Now deep sky like deep mid wicket and deep long off and deep cow point to Zabir. Masood again right arm over the wicket. First time the leg spinner is in action. Divan full toss delivery, low full toss, and batsman either did a right job here to just get into the full toss delivery to pick the single down to deep long off, and with that single scoreboard numbers down to 15 for the loss of 2 wicket. Masood balls short pitch delivered outside the line of off stump, quite nicely plays it down to deep cow point region by the batter Zabir, and with that single scoreboard numbers down to 16 on the board for the loss of 2 wickets. Slowly and steadily these two batters try to adapt to the condition and try to negotiate and that early breakthrough. This time full toss lofted that one down to deep square leg region between deep fire leg and deep skull, and before the fielder from deep square leg region to run across to his right. So 2 runs conceded, no wide, and 18 on the board. Again going for the reverse stroke and miss it completely, deflected from the leg by call by umpire. With that leg by scoreboard moves on to 19 on the board. 19 for the loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. Masood again, right arm over the wicket balls. Beautifully bowled. This time batter wanted to play that sweep shot. Zabir, one of his favorite, but this time line is not that much of easy to play that slog sweep shot. The wicket keeper behind the stump did the rest. Back to bowler. Again, a lovely delivery, beautifully bowled. Absolutely perfect finish for the over number 3 from Masood. Very tidy over indeed. After completion of over number 3, searching for the right track. Icha Lions Bapalige are 19 for the loss of 2 wicket. 6.33 runs per over run rate progressing here for the team, and 4 overs remaining, and wait and see how many runs they will going to score. Icha Bapalige. Iqbal, the bowler, bowling his second over of his quota, and bowled the first over in the power play, and 2 boundaries Zabir got in that over, and they will going to continue from the far end. That's field set is the same. There is short third man and short fine leg very close together. There is a deep square leg and deep mid wicket and deep long on. Long off is the deep cow point and a short extra cover. Short mid wicket. First ball starts with the warm up delivery of the morning, which is gone further away outside the line of leg stump. So no hesitation from umpire to call that wide. With that extra score, moves on to 20 for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. Again, little bit confusion about that run there. Zabir not interested, and either wanted to get a single, but fortunately for either that ball which is just slipped out of the hands of that short fine leg fielder, and he just survived from that run out. Iqbal balls, lovely delivery, beautifully bowled. Again, that ball around the leg stump, outside the line of leg stump, and batsman wanted to get that one in the onside region. Missed it completely by either.
No run scored. Scoreboard remains on 20. 21, and again they're going for the single this time left of that mid-on fielder, and both the batters quickly um, crossed off for a single. 22 on the board for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. That brings Shabir into Zabir into strike now. Drives that one beautifully down to deep cow point for easy single, and with that single scoreboard moves on to 23 on the board. The over number 4 is in progress. Last time in this over. Quite over so far from Iqbal compared to his previous over. A ball very tidy line and length around the midland off stump. Some deliveries slight a bit of on the leg stump. Again driven nicely by either to deep long on region for a walkable single. And the fourth over which is comes to an end after one delivery remaining. Two delivery remaining, correction. Two wide deliveries in this over. Fifth time in this over. Again wanted to get that one in the onside region. Ball misses the bat completely, so that leg by called by umpire. And one more addition. With the addition of that single, scoreboard moves on to 25. Quarter century for team H Alliance Bappalige. Last time in this over. Bowler right arm over the wicket. This time, catch it is a call. Altaf Walpadi will going to take that down at deep squall aggression. The wicket number 3, the partnership is just looks like it's going to be settled down and will going to progress. And last delivery of the over number 4, the batter either wanted to get the big shot on the onside region. Morning, it's not so easy, and ball landed very safely to the hands of Altaf. 4 overs gone after completion of over number 4. Icha Bappalige are 25. And the last 3 overs remaining in the innings, and for that 3 overs I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone and the first time today in the last day of this cricket tournament. And good morning Gopi, welcome for this prestigious cricket tournament. Shackling start for the team H Lions Bappalige, 25 for the loss of 3 wicket. Last 3 overs remaining, and certainly it's going to be very important for team H Lions Bappalige to get at least 20 runs in that 18 balls, so that it's going to be a competitive total. It's over to Gopi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता। तो मैच नंबर 1 इस दूसरे दिन का यहाँ पर प्रगति पर इच्छा अलायंस बप्पालिगे और यूनाइटेड पुत्तूर के बीच में, और इस बीच पहली गेंद को उछाला है लॉन्ग ऑफ पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और इसी के साथ एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। जाबिर बल्लेबाज थे जिन्होंने गेंद को उछाला था इस वक्त, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं कि वो सीमा रेखा को पार कर सके, और लॉन्ग ऑफ फील्डर ने आखिरकार कोई गलती नहीं की। तो एक और विकेट एच अलायंस बप्पालिगे का यहाँ पर गिर चुका है। निस्संदेह इस वक्त संकट की स्थिति में नजर आता हुआ एच अलायंस बप्पालिगे। स्कोर है इस वक्त 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और जाबिर की पारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। तो पहला मैच इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला के अंतर्गत पीपीएल 2024 पुत्तूर प्रीमियर लीग 2024 के अंतर्गत 2024 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ, और मुकाबला इस वक्त जारी है इच्छा अलायंस बप्पालिगे और यूनाइटेड पुत्तूर ने। और यूनाइटेड पुत्तूर के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद जो निर्धार लिया था फील्डिंग का, उस निर्धार का पूरी तरह समर्थन करते हुए इस वक्त उनके गेंदबाजी करते हुए और सियाब का आगमन इस वक्त होता हुआ नए बल्लेबाज के रूप में, और ये गेंद ऑन साइड पर टॉप एज, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फील्डिंग मेड बाय द डीप मिड विकेट फील्डर। Certainly that wasn't a 6, लेकिन अंतिम क्षण में अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को जीतोड़ कोशिश करते हुए इस वक्त ढकेला सीमा रेखा के अंदर, और निश्चित रूप से ये छक्के को उन्होंने बचाया, और सिर्फ 2 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में यहाँ पर जुड़ता हुआ 27 रन बन चुके। इट्स 27 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज की गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया, अंतिम क्षण में फ्रंट फुट पर जाकर गेंद को खेल दिया इस वक्त शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और ये गेंद काफी ऊंची गेंद थी इस वक्त बीमर के तौर पर, वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 28 रनों पर। अल्ताफ वालपाड़ी गेंदबाजी करते हुए स्टंप्सों पर गेंद टकरा चुकी है, और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है।
बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद आए थे, गेंद कौन साइड पर उछालना चाहता, चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे उनके बल्ले को वंचित करती हुई मिडल ऑफ स्टंप पर जा टकराती हुई, गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। तो मुश्किलों के ऊपर मुश्किलें यहाँ पर आन पड़ती हुई यूनाइटेड पुत्तूर के सामने इच्छा लायंस बप्पली के बल्लेबाजों के लिए। और जहां तक एक साझेदारी का सवाल है, अब तक कोई भी बल्लेबाज एक बेहतर साझेदारी यहां पर निभाने में असफल रहा है। कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी इस ओवर के बाद और देखते इन बचे हुए 14 गेंदों में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। नए बल्लेबाज सनत का आगमन यहाँ पर होता हुआ, तो सनत इस वक्त सामना करेंगे अल्ताफ वालपाड़ी की गेंदों का और अल्ताफ वालपाड़ी गेंदबाजी करने के लिए तैयार, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। और इस बीच सनत सामना करते हुए ये गेंद ढीली गेंद उछाला इस वक्त, लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे एक्स्ट्रा कवर पर नॉट मोर देना सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 29 रनों पर 29 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। अल्ताफ अगली गेंद फ्लाइटेड गेंद एक्स्ट्रा क्विकर थी इस वक्त, गेंद कौन साइड पर उछालना चाहता और शॉट फाइन लेग फील्डर द्वारा मिसफील्ड और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज 1 रन दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं लेग बाय के रूप में। सिंगल रन एडेड टू द टोटल एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 30 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स एंड 5 ओवर्स हैड बीन बाउल्ड। 5 ओवर की समाप्ति, 30 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। और जहां तक इस श्रृंखला का सवाल है, तो इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा दिन का पहला मैच बी पूल का खेला जाता हुआ पीपीएल 2024 पुत्तूर प्रीमियर लीग 2024 2024 के अंतर्गत। और इस मैच के बाद अगला मैच खेला जाएगा स्टार स्ट्राइकर्स और फ्रेंड्स कबक्का के बीच। तो एक बार स्टार स्ट्राइकर्स और फ्रेंड्स कबक्का के सर्व सदस्यों से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। तो इस वक्त मैच नंबर 1 का छठा ओवर पहली पारी का शुरू होता हुआ और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और सामना करने के लिए इस वक्त तैयार 88 नंबर के जर्सी पहने हुए बल्लेबाज। और ओवर की पहली गेंद बाएं हाथ ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, बीमर के तौर पर गेंद, वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 31 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर 31 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। फुल टॉस, इस बार गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद को ठीक तरह से उछाल नहीं पाए और गेंद उनकी काफी पहुंच से बाहर निकली थी, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, वाइड का इशारा। 1+1 2 रन्स एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 33 रनों पर। इट्स 33 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, यह गेंद बेहतर गेंद थी, गेंद को ड्राइव करते हैं इस वक्त गेंदबाज की बाईं ओर से लॉन्ग ऑफ की दिशा में और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 34 रनों पर 34 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, मिड विकेट पर थ्रो पहुंचा इस वक्त, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा 1 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 35 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर 35 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। और गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, इस बार फुल टॉस के तौर पर गेंद थी, थोड़े से स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, गेंद उनके पहुंच से बाहर लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 36 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। निस्संदेह एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप की इस वक्त उन्हें सख्त जरूरत है। यह गेंद उछाला लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन फील्डर काफी पीछे, लॉन्ग ऑन के दरमियान सीमा रेखा के अंदर आफ्टर फर्स्ट बाउंस पहले टिप्पे के बाद गेंद को फील्ड करके थ्रो करे फील्डर, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 37 रनों पर। एक साझेदारी निभाने की कोशिश करते हुए क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज और इस बीच तैयार, ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, शॉट फाइन लेग पर रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला हो सकता है लेकिन अंपायर ने कहा कि नहीं, बल्लेबाज अपना बल्ला क्रीज पर यानी बैट क्रीज पर रख चुके हैं और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें इस ओवर में बाकी है और कुल मिलाकर 8 गेंदें उनकी पारी में शेष और गेंदबाज अनजान गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए और जहां तक
बल्लेबाज का सवाल है, तो बल्लेबाज दाहिने हाथ के इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और अपनी ओर की अगली गेंद। अंपायर विकेट को सही करने के बाद अपने स्थान पर लौटते हुए और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा इस वक्त। नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन एक रन उन्हें जरूर मिला और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 39 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। इट्स 39 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट विद जस्ट 1 बॉल टू गो इन दिस ओवर। ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, शॉट फ्रंट लेग फील्डर के हाथों में गेंद निशाना और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। डायरेक्ट हिट शॉट फ्रंट लेग फील्डर का स्टंप्सों को बिखेर कर ले जाता हुआ और बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच नहीं पाए जब निशाना स्टंप्सों पर टकराया, तो इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है और छठे विकेट की साझेदारी यहां पर टूट चुकी है। 6 विकेट डाउन, नाउ दे आर वंस अगेन लुकिंग इन ट्रबल। इट्स 39 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट एंड 6 overs had been bowled in their innings. And just talking about the next match, Star Strikers will take over Friends Kabaka in the next match, and because of that, once again I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. Star Strikers ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಬಕ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಬಕ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So back to this game, still a struggling time continuing here for the batsmen of Ichalai's Bapalige. They are struggling, 39 for the loss of 6 wickets, and now last over is now going to start in the inning. सिद्दीक का गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और अंतिम ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ इचालायंस बप्पलिगे की पारी में और दाहिने हाथ राउंड विकेट। ये गेंदबाज के हाथों से गेंद इस वक्त फिसल चुकी है और काफी ऊंची गेंद उन्होंने फेंकी इस वक्त और वाइड का इशारा। 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 41 रनों पर 41 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। और गेंदबाज सिद्दीक का फिर से एक बार गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए गेंद को उछाला इस वक्त मिड विकेट पर, कैच को लपकने में सफल बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर वहां पर जो प्रेक्षक है वो कहते हुए कि ये छक्का है, तो यहाँ पर अंपायर ने घोषित किया कि जी हाँ ये छक्का है। कैच को लपका था एक हाथ से, लेकिन उनका जो बैकफुट है जो इस वक्त लाइन के ऊपर तैनात था जब उन्होंने कैच को लपका था और छक्का इस वक्त घोषित किया गया है। इस वक्त बेहतरीन स्ट्रोक फारूक के बल्ले से लगता हुआ फुल टॉस गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 48 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर 4 गेंदें अब उनकी पारी में शेष और इस बीच सिद्दीक का अगली गेंद, ये गेंद लॉफ्टेड इस बार लॉन्ग ऑफ के लिए और इस बार आफ्टर फर्स्ट बॉल्स कलेक्टेड बाय हिम और द बॉल फेल शॉर्ट ऑफ हिम एट लॉन्ग ऑफ और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 1 कम 50 यानी 49 रन और सिद्दीक का गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद लॉस्टेड दिस टाइम आई थिंक इट्स गॉट द डिस्टेंस, यस इट डज, इट्स अ ह्यूज वन। छक्का इस वक्त लग चुका है और इस वक्त छक्का लगाने वाले बल्लेबाज फारूक 6 number 2 came from the bat of him और इस छक्के के साथ 50 comes up for Ichalai's Bapalige, 55 for the loss of 6 wickets और कुल मिलाकर 2 गेंदें अब उनकी पारी में शेष है। ये गेंद अगेन लॉस्टेड and this time again he's got the distance, 6 number 3 for Farooq and now he is looking on fire. The scoreboard is now rising up to 61 now with that 6 और अंतिम गेंद अब उनकी पारी का यहां पर बाकी 2 गेंदें इस वक्त बाकी, अंतिम गेंद बाकी, माफ कीजिए, last ball remaining in this over, 3 sixes conceded by the bowler Siddiq in this over और जहां तक सवाल है फारूक इस वक्त काफी आक्रामक रवैया यहां पर अपनाते हुए और अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार। ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, क्लीन पिकअप, इन कम्स अ थ्रो एंड दिस टाइम दे गॉट ओनली अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और इस 1 रन के साथ the innings is up, the stipulated 7 overs completed and they managed to score 62 for the loss of 6 wickets. They started slowly, progressed slowly but finished very well with 62 for the loss of 6 wickets in the stipulated 7 overs. तो अंतिम ओवर में कुल मिलाकर
bison bale 22 runs scored in the last over, and because of that last over they finished very well by the batsmen of Icha Lions Bappalige for 62 for the loss of 6 wickets in the stipulated 7 overs. And now the target for the United Puttur is 63. 63 रनों का लक्ष्य यूनाइटेड पुत्तूर के लिए 7 ओवर में इस वक्त इचा लायंस बप्पलिगे ने रखा है। और देखते ये है कि यूनाइटेड पुत्तूर के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं, और अल्ताफ वालपाड़ी जैसे घटानुघटी बल्लेबाज यूनाइटेड पुत्तूर के पास मौजूद हैं। देखना यह है कि उनकी मदद से यूनाइटेड पुत्तूर इस 63 रनों के स्पर्धात्मक का लक्ष्य तक पहुंच पाता है नहीं। जहां तक रिक्वायर्ड रन रेट का सवाल है, एक्जैक्टली 9 runs per over they have to score for victory. That means they have to score 63 in the stipulated 42 dealers. That means they are stipulated 7 overs with the help of 10 wicket. The present equation shows for them. And now let's see can they reach the target or not. Meantime their inning starts within just short while. तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और छोटे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आज दूसरी बार हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर यूनाइटेड पत्तूर की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಬಕ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. So thank you very much, Gopi, and absolutely you are right that the team Lions Pappalige there started slowly, they progressed very slowly, and they finished very well. That's only because of Farooq hitting 22 runs in that last over. 3 sixes came from the bat of Farooq, and he shows his excellency in this last over to brought his team right in good position. So yes, coming to this match as the opening batters for United Puttur already came into middle. Very destructive Altaf Valpadi is in strikers end, and Avi Kumra is in non-strikers end, and bowler with the first over. It's none other than Aman Osangadi, and wait and see how well Aman will go into start. Fails to contribute from the bat, but certainly can contribute from the ball. And it's going to be a great contest between Altaf Valpadi versus Aman Osangadi. The first over and the first over of the power play. First ball, right arm over the wicket bounce. This time Altaf lofted at one. We're going to be a chance here, and it's gone. Just like Aman Osangadi got out of the bowling of Altaf Valpadi. Now same, the repeats here, identical mirror display here. The Aman bowls, Altaf Valpadi lofted, got out by giving catch to that extra cover. This is absolutely a huge wicket for the team Icha Lions Bappalige. The same strategy which is implemented by Aman, where Altaf Valpadi is implemented the strategy of bowling that outside the line of half time, inviting the batsman to go for the big shot. The same thing is happening there, and history repeats. And first ball duck here for Altaf Valpadi, golden duck, and it's 0 for 1. The new batter in is Sandeep, walking towards the middle. Sandeep, one of the specialists of reverse stroke, reverse sweep.
He came into middle, but in first delivery, they lost the wicket of Altaf Valpadi. So that sensible batting required here from the batters of United Puttur. Aman, second time in this over. Right arm over the wicket. This time, cross-batted stroke, played it down to deep square leg region. Fielder there in the deep mid wicket. He will go into cut it off from running from mid wicket to deep square leg region. And that time is a very ample time for the batter. Before the throw coming from the fielder, they got a valuable couple of runs. So with that couple of runs, they started their journey. And the journey, it's not so easy as they need to get to 63 to win the match. Sandeep, what we are talking about, the specialist of Sachit, and he played it beautifully down to deep gully for 4 runs. Lovely shot. That was exquisite position, and immediately when the ball, Aman balls that delivery, the way that Sandeep taking his position very quickly and played it quite brilliantly down to deep third, between third man and deep gully. And because of that boundary score now moves on to 6 on the board. And not so easy when you are bowling in the power play overs. The limited option to field keep the fielders outside the circle. This kind of unorthodox cricketing trick is always going to be very handy in the power play overs. Now Aman coming round the wicket quite interestingly. Again across the line, he wanted to get that one on the onside region. Good comeback here by Aman. Just learning from the mistake that he balls outside the line of off stump, and Sandeep got that one into the deep gully. Now he balled round the wickets, so targeting midland leg stump of the right-hander batsman Sandeep. Again, nicely plays it down to mid-wicket region. Just allow the ball to coming into his bat. Sensible batting here from Sandeep, and with that single first over, which is in progress, the scoreboard is 7 on the board. Last time in this over, Aman. And batsman Avi Kumbra facing his first delivery of this last delivery of the power play of the first over. Right arm over the wicket, balls, drives that one right in the gap towards the deep mid wicket. The protection is there in the deep mid wicket, so that walkable single for Avi Kumbra. 8 coming from that first over. After completion of first over, chasing a total score of 63 to win this match. Team United Puttur 8 by losing a huge wicket of Altaf Valpadi. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಬಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಬಕ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. Field umpires Anil Gowda at square leg and Ravi Kamai for the first match of the day number 2, the final day of this prestigious Puttur Premier League. As a scorer, as always, Santosh in our commentary box. Lofted highly, and it's going to be a chance created. Oh, he drops the catch. My goodness, we just need to wait for the umpire signal whether the ball is over the boundary line. Yes, signals coming from the umpire now. It's a 6. And a slight bit of misjudgment there by Aman Osangade, I think so. Then at deep mid wicket, is got into the right position, but might be the ball, the rays of sun hitting his eyes, and he couldn't manage to gather that catch. White call by umpire. One more extra. With that extra score, but now moves on to 15 on the board. 15 for the loss of one wicket, the wicket of Altaf Valpadi. Avi Kumbra lofted. This time opportunity is created for the long off fielder, and he takes a catch quite comfortably. Not really getting that much of distance what he's looking for. Of course, he got elevation, but fails to get the distance. Not so easy.
and especially in the morning, trying to get the distance. And quite unfortunately, Avi Kumra, after getting a 6, is back into pavilion by trying to get one more 6 down to long off. So 15 for the loss of 2 wicket. Either strikes with that delivery, which is a flighted delivery outside the line of off stump. So new batter in is Pradeep, and yes, they are the twin brothers in the middle, and very good to see that twin brothers try to get the runs for the team. Then one wearing a jersey number 4, another is wearing a jersey number 8. And now Pradeep will going to take the strike. The next ball. Oh my goodness! And second attempt, he takes the catch. Oh my goodness! Pradeep this time. Pradeep, correction, tried to get that one into that deep square leg region, but he couldn't manage to defeat that square leg fielder. Ball went straight to the answer fielder. First attempt, ball slipped out of the hand, and second attempt, the fielder managed to get the catch. And back-to-back 2 wickets in 2 deliveries for either. That means he's on hat trick. Masood is a new batter in. He will going to face hat-trick delivery. This time lofted swings. Swings is hard. One bounce into the fence for 4. A beautiful cricketing stroke there from Masood there. And the bowler trying for the hat-trick, but Masood played at an absolutely exquisite slog sweep shot down to deep square leg boundary for 4, and one bounce into the fence for 4. Such a quality cricketing stroke. And absolutely, there is nothing wrong with the line of that delivery. The way that batsman touching his front foot and closing the face of the bat and played that slog shape shot beautifully right from the middle of the bat. And with that boundary, scoreboard jumps into 19 on the board. Again, that ball is almost in the middle and off stump, and a good comeback here by the bowler either. Picked up 2 wickets, but conceded some runs here. 10 runs, the boundary under 6 in this over. Went for the reverse sweep, good line, just outside the line of leg stump. 2 overs comes to an end after completion of over number 2. Chasing 63 to win this match. Team United Puttur are 19 on the board. 19, they're going exactly 9.5 runs per over. The target for them is a 63. That means another 44 more runs required for the victory. The remaining 4 overs. (24 deliveries and 44, correction, 5 overs remaining, 30 balls remaining. And they need to get another 44 runs to win this match. That means of difference between run and ball exactly the 14. And yes, for the latecomers, you are watching the match number 1 of this prestigious Puttur Premier League 2024, which is proudly organized by junior friends Kombettu under the great leadership of Ravi Salyan Padayuru and Banu Prakash. Siab is a new bowler in the bright sunny morning, and in this sunny morning we are just enjoying the game of cricket in this most beautiful cricket ground. All set now for the 3rd over. After that power play, the fielding restriction is over.
Siab, known to be one of the best fielder in Puttur, and with the nickname of Jaunty Roads of Puttur, Siab is in action. Starts with the delivery, which is just away from that short mid wicket fielder, the left of the fielder. They plays it down to deep long on for a single by the batter. The with that single score moves on to 20 on the board. 43 required. Again driven that one in the air. Opportunity is created for the catch and is gone. Oh my goodness, Yajnesh, the fielder, then down at deep third man region, is getting a position very quickly. Then Masood wanted to go for the switch. It got a connection properly, but unfortunately, ball which is landed safely to the hands of the fielder, and is really a hurting factor for the batsman. Even though he hit that one pretty well, but he need to see that the fielder which is situated for that switch it, and Masood is back into pavilion. The wicket number 3 is gone. Wicket number 4, in fact, is back into pavilion. Siab is a bowler who strikes with the second delivery of the over. Sahil is a new batter in. Partnership which is badly required for the team United Puttur if they wanted to get this 63 runs to win the match. League stage matches. 3 matches for every teams, and the best 2 will going to qualify for the semi-final. Bangalore Blasters already they qualify for the final in the yesterday's match. The going outside the line of leg stump further away, the white signal umpire with the addition of that single score moves on to 21. 42 required. Driven upishly, but quite safely down to deep long off for a walkable single. So with that single score moves on to 22 on the board. In the over number 3 is in progress. Turning out to be a very good over so far from Siab. Very tidy over. Wicket taking over as well. They got a wicket off for Masood. Sandeep is the batter. Will go into face next delivery. Driven, lack of placement, straight to the hands of short cow point region, not for a run. Sandeep is quite watchful, seeing that yes, he is a settled batsman in the middle. Need to take initiative of taking his team into victory. That is a 63. Again, nicely leaning into the right, beautifully plays it down to square of the wicket, down to deep cow point region for a single. He will going to get the single with that single score, but moves on to 23 on the board. The 23 for the loss of 4 wickets back at the pavilion of team United Puttur. Again, going away from the right-hander batsman. At the last moment, Sahil judging that one very well. Left the ball to the hands of wicketkeeper. White call by umpires. 24. Again, wanted to go for the slog sweep shot. Missed it completely. Wicketkeeper missed it, but shot third man fielder quickly. So over number 3, which is comes to an end. After completion of over number 3, umpire over completed. 3 overs completed. 3 overs completed after completion of over number 3. It's a 24 on the board, and that means in remaining 4 overs they need to get another 29 runs to win this match, and it's going to be very interesting. And its target is 63, and 39 more runs required. 39 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳಿದಿರುವ 4 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 24 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 39 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. So wait and see, it's going to be a very interesting equation there, that 39 required from 4 overs. And before the next over going to start, time to change in commentary box. I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language Hindi. Thank you.
धन्यवाद सतीश. Really a testing time continuing here for the batsmen of United Puttur. 24 runs they managed to score uh, for losing 4 wickets after their completion of 3 overs. And now fourth over starts in the innings. चौथी ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. गेंद को हल्के से इस वक्त कलाइयों के सारे डिफ्लेक्ट कर दिया खूबसूरती के साथ. गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का. 25 रन बन चुके 4 विकेट के नुकसान पर. और यहाँ पर अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा. गेंद पहुंची इस वक्त डीप मिड विकेट पर. 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा. दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा. और आखिरकार 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 26 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. 26 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द फोर्थ ओवर इनफैक्ट. और गेंदबाज अमन गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद बल्लेबाज के लिए इस वक्त हल्के से गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ 1 रन के लिए. निस्संदेह जहां तक सवाल है इस वक्त यूनाइटेड पुत्तूर के बल्लेबाजों का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक बेहतर साझेदारी जो उन्हें सही मंजिल की ओर अग्रसर कर सके. और इस बीच गेंदबाज अमन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट जस्ट गॉन फॉर अ माइटी ही नॉट सक्सीडेड एट द लास्ट मोमेंट. और गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए इस वक्त. और आखिरकार गेंद सीधे पहुंचे बल्लेबाज को वंचित करने के बाद विकेट कीपर के हाथ में बेहतर गेंद थी गेंदबाज अमन की. और जहां तक का सवाल है स्ट्राइक का, तो इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार साहिल. एक बार फिर से अमन की गेंदों का और अंपायर विकेटों को सही करते हुए. सुबह का वक्त लगभग 9:30 सुबह के बज चुके हैं. और जहां तक का सवाल है इस वक्त धूप का, तो धूप का प्रकोप यहाँ पर बढ़ता हुआ इस वक्त गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट पर. 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 28 रनों पर. 28 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. तो इस बीच स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 28 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. जब तक चौथा ओवर यहाँ पर प्रगति पर. अमन अगली गेंद लेकर तैयार. ड्राइव किया ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ. वाइड स्लॉट पर गेंद पहुंची. फील्डर वहां पर मौजूद. क्लीन पिकअप नॉट मोर देन अ सिंगल. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 29 रनों पर. एक बेहतर ओवर अमन का समाप्त हो चुका. 5 runs came from this over and after 4 overs still the batsmen of United Puttur searching for the right track. They are now 29 for the loss of 4 wicket after completion of 4 overs. Star strikers ತಂಡದ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಇನ್ನೂ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ದಾಖಲಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ऑफिशियल हाಳೆಯಲ್ಲಿ नोंदाइसಬೇಕಾಗಿ विनंती. और जहां तक का सवाल है बचे हुए 3 ओवर का, तो 3 ओवर में रन्स इस वक्त चाहिए 34 टू गेट इन रिमेनिंग 18 डिलीवरीज इन फैक्ट. एंड नाउ द इक्वेशन stands for United Puttur, and as far as the required run rate is concerned, exactly 11.33 runs per over they have to score for victory in the remaining 18 deliveries. And still they got 6 wickets kept intact. 6 wickets they got in their hand. और गेंदबाज हैदर इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलते हुए. लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग ऑन साइड पर ठीक सीमा रेखा के पास तैनात. लॉन्ग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कवर इस वक्त मौजूद ऑफ साइड पर सीमा रेखा के पास. पहली गेंद इस वक्त गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ. गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर नॉट मोर देन अ सिंगल. और 1 रन के साथ 30 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है. इस बार गेंद लॉन्ग ऑफ पर लपक लिया गया है. स्ट्रोक बेहतर था लेकिन प्लेसमेंट गलत था. और इस वक्त लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने कोई गलती नहीं की, तो एक और विकेट गिर चुका है. इट्स 30 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. दे आर स्ट्रगलिंग नाउ यूनाइटेड पुत्तूर. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ ಶ್ರೀಯುತ ಸ್ಕರಿಯಾ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರಿಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಪಿಪಿಎಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಸೊ 30 ದ ಸ್ಕೋರ್. 33 runs required, 16 balls left. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए स्टार स्ट्राइकर्स ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಬಕ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
और अगली गेंद, ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को छोड़ दिया था, ये पूर्वानुमान लगाते हुए कि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंची। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आते हुए, इस बार वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलते हुए और एक रन उनके खाते में जुड़ता हुआ। 31 फॉर द लॉस ऑफ 5 wickets. Still they have a long way to go. 32 more runs. Now they have to score for victory. और इस बीच ये गेंद इस बार टॉप है, चांस फॉर द लॉन्ग ऑन फील्डर बट ही वोंट गेट दैट वन। और जीतो ने कोशिश इस वक्त जरूर की थी 3 फील्डर ने, लेकिन गेंद उनके बीच टिप्पा खाते हुए और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 32 रनों पर। 32 for the loss of 5 wickets. 31 more runs. Now they have to score for victory in remaining 14 deliveries. और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद फुल टॉस खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त खेल दिया है। बड़ी लॉन्ग ऑफ पर एक टिप्पा खाने के बाद अब फंस पॉस कलेक्ट करते हुए इस वक्त लॉन्ग ऑफ के फील्डर सी अब, लेकिन इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर। 33 for the loss of 5 wickets. अगली गेंद lost it. This time I think it's got the distance. It's got many a miles. And a 6, important 6 came from the bat of the batsman Siddiq in the important stage of the match. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर। 39 for the loss of 5 wicket and over number 5 has been came to an end. So 2 overs remaining, 24 needed and still the match is now alive. और जहां तक सवाल है इस वक्त 2 ओवर में, तो देखते हैं यहाँ पर बल्लेबाज इन 2 ओवर में 24 रन बना पाते हैं नहीं। ಅಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ ಶ್ರೀಯುತ ಸ್ಕರಿಯಾ ಇವರಿಗಾಗಲೇ ನಾಣ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರಿಗಾಗಲೇ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ। So Star Strikers, the captain of Star Strikers have won the toss and what the decision he will take, just we have to wait and see. So what something seemed so 24 required in remaining 2 overs, that means in 12 deliveries। और गेंदबाज हर्षा इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए और गेंदबाजी शुरू करते हुए और इस बीच दाहिने हाथ के बल्लेबाज जो कि सामना करने के लिए तैयार संदीप, जो कि एक बेहतर पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए, एक लंबी पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर हर्षा इस वक्त तैयार रहा। बाएं हाथ ओवर द विकेट, रिवर्स शॉट, इंप्रोवाइजेशन, खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला बैकवर्ड थर्ड मैन पर, लेकिन गेंद वहां पर कुछ पत्थर पर टकराने के बाद अपने रफ्तार को खोती हुई जब तक फील्ड थ्रो किया, विकेट कीपर ने निशाना इस वक्त दागा था स्टंप्स पर, उनका निशाना टकराया जरूर रहा, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास 2 रन प्राप्त करने का मौका। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 41 रनों पर। एंड नाउ 22 रिक्वायर्ड एंड 11 बॉल्स रिमेनिंग, स्टिल द बैटल इज नाउ ऑन। और गेंदबाज इस वक्त तैयार हर्षा, गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए संदीप के लिए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर करते हुए और लॉन्ग ऑफ फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया गया है और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज संदीप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, पिचिंग ऑलमोस्ट राइट ऑन द ब्लॉक होल। रक्षात्मक तरीके से गेंद इस वक्त पुश कर दिया ऑन साइड पर संदीप ने और तेजी के साथ 1 रन दौड़कर चुरा लिया और 1 रन पूरा कर लिया और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 42 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 42 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज हर्षा की गेंद लेग स्टंप से बाहर, शॉट फाइन लेग, फील्डर के हाथों में वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 43 रनों पर। रन्स चाहिए इस वक्त यूनाइटेड पुत्तूर के बल्लेबाजों के लिए, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई इस बार सही गेंद घोषित, कुछ हद तक मिस जजमेंट बल्लेबाज द्वारा और स्कोर वहीं पर रुक चुका है 43 रनों पर। और फिर से एक बार हर्षा की गेंद ऑन साइड पर, गेंद को छानना चाहा, स्टंप्स पर गेंद टकरा चुकी है और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। सिद्दीक स्टंप्स सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा था, अंतिम क्षण में गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई और सीधे उनके बल्ले को वंचित करते हुए जा टकराए मिडल ऑफ स्टंप पर, गिल्ली अब बिल्स डिस्टर्ब होते हुए
और इसी के साथ छठा विकेट गिर चुका है. दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल नाउ. इट्स 43 for 6. 20 needed in remaining 8 balls in fact. And they got 4 wickets kept intact. This is the first, this is the second session of the first match of this prestigious cricket tournament. Puttur Premier League 2024, PPL 2024 is now progressing here, which proudly presented by junior friends Kombettu in this beautiful junior college ground, Kombettu Puttur. And this tournament is now progressing along nicely. The second day of this prestigious tournament is now progressing here. And the battle is now on in the first match between Icha Lions Bappalige versus United Puttur. तो गेंदबाज इस वक्त हर्षा गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त उछालना चाहता चूके और गेंद शॉट फाइन लेग पर पहुंची. सही गेंद को डॉट गेंद वाइड का इशारा अब करते हुए. तो क्वाइट लेटली ही डिक्लेयर्ड अ वाइड. तो एक रन का इजाफा. 44, 19 to get. Just gone for a big one. Pretty just change of pace. Bowler slower delivery in the situation. Stokes खेलने के प्रयास में चूके बल्लेबाज. एक डॉट गेंद. 19 रन चाहिए 7 गेंदे. The asking rate is now creeping up for them. 19 runs to get in remaining 7 balls. और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए हर्षा अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा. बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. इस ओवर में अंतिम बार रहा. इस बार बेहतर गेंद. फैंटास्टिक डिलीवरी टू एंड द ओवर. And 6 overs completed, 44 on the board, 6 wickets lost and 19 runs to get from last over. So what a fantastic cricket tournament is now progressing here in the name of PPL, Puttur Premier League 2024 in this beautiful junior college ground Kombettu Puttur. And first prize trophy of this tournament donated by Mr. Razak BH Bappalige, and the second prize trophy sponsored by Mahalingeshwara Tires. 19 required from last over, and individual prizes sponsored by Abhiram Friends Puttur. Balls for this tournament sponsored by Vasu and Ashoka Acharya. Meantime, trophies every team sponsored by Nuruddin Sports World. And PPL official jersey sponsored by our dearest friend Razak Sharbara, the fantastic Kannada commentator. So thankful to all the donors, and we are just moving on to the next over. That means the last over of the match is now going to start. 19 runs to get from last over. 19 रनों की दरकार और गेंदबाज फारूक मैच निर्धारित ओवर लेकर इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए सामना करने के लिए तैयार. संदीप जो कि एक लंबी पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए, एक बेहतर पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त फारूक गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए संदीप के लिए. इस बार बेहतर गेंद. फैंटास्टिक डिलीवरी. गॉन फॉर अ मार्टी हीव, नॉट सक्सीडेड. अपील इस वक्त जारी है लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं. बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज पर लैंड हो चुका था, तो इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए, और एक गेंद इस वक्त व्यर्थ हो चुका है. 19 रन 19 नीडेड फ्रॉम 5 बॉल्स. और दोनों बल्लेबाज इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए और अपने स्वस्थान पर लौटते हुए. और फारूक गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. सेकेंड टाइम इन दिस ओवर. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा और संदीप खुद स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते. नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज काफी आगे निकल आए थे और उन्हें वापस भेजा. इस वक्त संदीप ने सिंगल रन इस वक्त लेना नहीं चाहते. वो जानते हैं जितना ज्यादा स्ट्राइक उनको मिलेगा उतना उनकी टीम के लिए बेहतर होगा. 19 रन और बनाने हैं, 4 गेंदे बाकी. और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हैं. फारूक का दाहिने हाथ ओवर द विकेट. फुल टॉस, पुल्स एंड दिस टाइम स्ट्रेट टू फील्डर डीप बैक ऑन स्क्वायर लेग. नॉट मोर देन अ सिंगल. और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज यहां पर दौड़ पड़े और फारूक इस वक्त, और इस बार रन आउट हो चुका है. तो संदीप स्ट्राइक खुद अपने पास रखना चाहते हैं. अब अंतिम अवकाश है उनके सामने. 18 रन चाहिए बचे हुए 3 गेंदों में. 3 sixes required in remaining last 3 deliveries. The last chance in front of the batsman संदीप. और देखते हैं इन बचे हुए 3 गेंदों में क्या लगातार 3 छक्के, हैट्रिक छक्का इस वक्त संदीप लगा पाते हैं या नहीं. फिलहाल नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है. नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद विकेटों को इस वक्त सही किया जा रहा है. और
अंपायर द्वारा, और एक बार फिर से खेल आगे बढ़ता हुआ, 3 गेंदे बाकी, 18 रन चाहिए विजय के लिए। 18 रन टू गेट इन रिमेनिंग 3 बॉल, 3 सिक्सेस रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग लास्ट 3 डिलीवरीज। और गेंदबाज फारूक, गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए संदीप के लिए, और देखते हैं संदीप क्या करते हैं इन बचे हुए 3 गेंदों में। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, फील्डिंग में कुछ जमावट इस वक्त करते हुए, और अब तैयार फारूक टू संदीप, राइट आर्म ओवर द विकेट, lofted this time, but straight to feed at long on. He can't got any run for that stroke. He won't got any run. In fact, the scoreboard stays at 45. 18 to get from 2 deliveries. अगर कोई गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते तो यहाँ पर उनकी टीम की विजय यहाँ पर निश्चित है। इस बार चूंकि फिर से एक बार रन नहीं मिलेगा, 2 डॉट गेंद, and now impossible task in front of the batting side. 18 required from last ball. और मैच की अंतिम गेंद देकर इस वक्त फारूक तैयार संदीप के लिए। डिफेंसिवली प्लेड, दैट्स इट, 17 रन्स विक्ट्री, comprehensive victory in fact for Italians Papalige versus the defeated United Puttur by 17 runs, and with that 17 runs victory they opened their accounts in the points table. So the match number 1 of this prestigious cricket tournament, the day 2 of this prestigious cricket tournament is now came to an end. So 17 runs comprehensive victory. Last ball, no wicket fallen. That means 17 runs victory for Alliance Papalige. And now this next match is going to start between Star Strikers versus Friends Kabaka. And that match coming up live exclusively right in front of you within just short while. Till then, we're taking a short break. और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने एक बार फिर से अंग्रेजी में सतीश के साथ हाजिर होंगे जब अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। तो यहाँ पर मैन ऑफ द मैच इज Farooq adjudged the man of the match because of his fantastic knock of 19 runs, including 3 massive sixes. I request Farooq, please come on to the stage. And also, he bowled 1 over, and just a single run he conceded. And because of this all-rounding performance, he adjudged the man of the match. I request Farooq of Ichala and Sabapaliga, please come on to the stage and receive the man of the match award from the organizers. So, match number 2 is now going to start, and we'll be back right after a short break with Satish. Thank you.
Thank you very much, Gopi, and welcome back for the match number 2 of this prestigious Puttur Premier League 2024, which is proudly organized by Junior Friends Kombettu, and in this most beautiful junior ground Kombettu here in Puttur, and all set now for the second match. And news here from the Dyers that after winning the toss, captain of Star Strikers, they elected to the field first, and Chetan, the captain of Star Striker, not only is a captain but being the icon player for the side, and he won the toss and elected to field first against Friends Kabaka. So please note the fielding team have to finish their 7 hours quota within 32 minutes. Please cooperate with the organizers and umpires, the field umpires. ದಯಮಾಡಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ತಂಡ 32 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ 7 ಓವರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. Request the fielding team to please cooperate with the organizers and umpires to complete your 7 hours quota within 32 minutes. Opening batters walk towards the middle for Friends Kabaka, and in the strikers and Munir, and in the non-strikers and Shafi. So two experienced opening batters for the side. Munir is an experienced player, one of the top teams like Young Friends Surwa, and even Shafi Punacha, represented for Gori Young Boys. Two experienced players out there in the middle, and wait and see how well these two opening batters will go into lay the foundation for the team Friends Kabaka. And very good match in front of very good spectators out here in this most beautiful Kabaka Stadium. So after winning the toss, captain Chetan of Star Strikers elected to field first, and wait to see the game plan of Chetan and his teams to restrict their opposition team Kabaka. The first over will go into starts from the far end. The umpires for this match, a little bit changes in umpiring, and it looks like Purushottam joining in the first time today in the morning. Good morning to all umpires. And at square leg, umpire Salim, and Nitin will go into starts the proceedings from the far end. The first ball of the power play, deep long off, and deep mid wicket to the two fielders outside the circle. The leg spinner is in action. First ball, little bit cross-batted stroke there for Munir, but couldn't manage to defeat the fielder at a short square leg in front of square. They fields the ball and no chance at all for any run. Nitin second time in this over. Pass umpire Purushottam with a short run up. The leg spinner is in action. Right arm over the wicket, balls to Munir. Full toss, and Munir couldn't manage to take the advantage of that full toss delivery. Not really expecting that full toss. Usually the Munir not ready to take that full toss, otherwise he can reach that one anywhere in the deep square. Like there is no fielder in the deep, only two fielders outside the circle, one fielder in the on and one fielder in the offside region in the deep, and it was absolutely bad miss there from the batter. The full toss delivery from Nitin, third time in this over. Right arm over wicket across the line, swings that one down to wideish long on. Fielder is there in the mid wicket. He will go and run across to his left. The captain himself, Chetan, one of the very good fielder in the deep region. Outfielder, very good outfielder. The fields the ball, returns the ball. No question of any extra run there, just a single. So Munir got his first run from the bat, and first run for his team as well. It's one without loss of any wicket in the over number first is in progress. That brings Shafi into strike now. A very good striker of the ball will go into face fourth delivery of the over number first. Right arm over the wicket to the right hand batsman Shafi.
Again, across the line, he wanted to swing that one, but better line there from Nitin. You know exactly what batsman will going to do here. He wanted to get that one in the onside region, so he bowled a little bit away from the batter, outside the line of off stump. The wicketkeeper behind the stump did the rest, back to bowler. Nitin. Balls to Shafi. Shafi got inside edge of the bat, not quite able to get that one from the middle of the bat, but good enough for him to cross over for a single. So Shafi's got his first run, not a convincing stroke, but he got a first run from his bat, and total score now moves on to 2 on the board without loss of any wicket. Very tidy over is in progress there from Nitin. Bowling with a short run up. Final time in this over. Right, a lovely imperious cover drive there from Munir there. Beautifully played down to deep cow point fielder. 2 fielders chasing the ball, and 1 fielder managed to get the ball just inside the boundary line, and ample time for the both the batter to complete that 3 valuable runs. That was a really very good looking stroke. Square of the wicket, just going back off the back foot, punch it away down to deep backward point and cow point region. Between cow point and backward point region to get 3 valuable runs towards the deep cow point region. So first over completed after completion of over number first. Team Friends Kabaka are searching for the right track. They are 5 on the board for the without loss of any wicket. Tidy over. In fact, if any bowler, when you're bowling the first over in the power play, conceding 5 means definitely it's going to be a tidy over. And even though didn't got success, but he got a success of restricting the big strokes like boundaries and sixes in this first over of the power play. Now Chetan, the captain of the side, captain of Star Strikers, came into ball here. Meanwhile, this is the day number 2, the day number 1, which is belongs to Bangalore Blasters. Bangalore Blasters Bangalore Blasters really played a very good game of cricket to get the place in the big final. And they enter into the finals in the day number 1. The very good semi-final yesterday. Sports World Kings, they came into semi-final. Again, delivery which is going to be a punishable not from the batter but from the umpire, as umpire Salim signaled it's a wide. With that wide, Kombettu moves on to 6 on the board for the loss without loss of any wicket. In the over number 2 is in progress. Chetan. This time catch it is a call, but no one there in that deep square leg region, and the fielder from inside the ring have to run back towards the deep square leg region. And before we'll go into collect that one, return that one, ample time for Munir to complete that 2 valuable runs. So just he tried to get that one across the line. Munir, he got a bat, but not enough bat in that occasion, but good enough for him to get past that square leg fielder. Kombettu moves on to 8 on the board without loss of any wicket. Chetan. Balls this time lofted. Munir playing a magnificent wristy cricketing stroke down to deep long on for a maximum. Unbelievable. Effortlessly played, isn't it? Just and the wrist work comes into play. And lofted that one right from the middle stump. And ball is travelling and looks like once it's going to be opportunities created for that fielder at long on. The fielder from the mid wicket is running across towards the deep long on to get that one. But ball just sailing over the boundary line into the fence for a 6. First sixer in the innings of Friends Kabaka, and Munir getting that 6 for his team. Again, they wanted to go to get that one down to square leg region. Missed it completely by Munir. Good comeback here by the bowler. Scoreboard remains on 14 without loss of any wicket in the over. Number 2 is in progress. Chetan again. Short on up. Right above the wicket. Drives that one. Bowler's back drive. Chetan tries his level best to stop that one on his follow through, but missed it completely. Then got opportunity here for a single. Munir to got a single. Then with that single, Kombettu moves on to 15 without loss of any wicket in the over. Number 2 in progress. Turning out to be a good over now for Friends Kabaka. The second over of the power play, as they didn't got enough runs in the first over. They only 5. Now 10 runs already came from this over. Chetan. To Shami, bowled him, clean him up with a beauty. This is one of the weapons Chetan loves to use for the players like the very destructive players like Shafi in that occasion. Really not able to judge that line and length of the ball. Little bit shuffled across the line of the delivery.
and ball which is came in such a pace, and with the turn the batsman completely misreading it, and ball hits the stumps and uprooted the stumps, and the wicket number first which is back into pavilion of friends Kabaka. The danger man Shafi departs. Chetan strikes. Captain bounce back very well in this delivery. Media definitely having some action replay of this delivery, which is came into the batsman with a sharply, with the pace, and they cleaned them up by the beauty of the delivery. Of course, a fantastic morning. Everyone is enjoying the game of cricket. Some school children, even though there is a holiday, but I've been watching some children enjoying the game of cricket. The school children. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಜ್ಜಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಮ್ಯಾಚನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಎಸ್ ಅದು ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Chetan again balls last delivery which is gone away from the right-hander batsman. He wanted to go for the switch, it missed it completely. Fantastic over in the sense it was a good over for both the teams, and in the point of view of the team friends Kabaka, they got runs in that over, and from the point of view of star strikers, they got a huge wicket of Shafi in that over. So after completion of over number 2, and scoreboard now moves on to 15 on the board. 15 for the loss of 1 wicket. 2 overs which is comes to 9. 15 in the sense exactly 7.5 runs per over. Run rate progressing here for the team friends Kabaka. So good morning everyone, those who are watching a live telecast of this cricket tournament. Those are late tuned to that YouTube channel 10 Media, one of the most popular YouTube channel as far as sports and games is concerned. And good morning everyone, welcome for the final day of this prestigious PPL Puttur Premier League 2024. Myself Satish Salyan in English, and my friend Mr. Gopi will going to entertain you throughout the day of this final day and the decided day of this cricket tournament, Puttur Premier League 2024, which is proudly organized by Junior Friends Kombettu in this Pearl City, the Puttur, and in this most beautiful cricket ground here in Junior Ground Kombettu. And third over will going to start from the far end. Nitin will going to continue from the far end, and in front of him the batter Munir came as a opening batsman as an opener for the side, still hanging in the middle because he's got a responsibility for taking his team total into the good one, almost 55 to 60. Definitely the batting first team wanted to get in the morning session. And Nitin in his second and last over of his quota, and bowled very well in the first over. Just 5 runs he conceded in the power play, and here is the second over. This time switch it is comes into play, but lack of placement straight to the hands of short third man. Munir couldn't manage to get the placement right. The fielder is there in the short third man division, will go in to field the ball very well, and he does very well to stop that speed of that reverse stroke. One more extra fielder is added for the switch it. No, the folder from cover point coming towards a backward point, but now again going towards the extra cover, short extra cover. The deep cover point, deep long off for deeper, wideish long on, and mid wicket. This time loose delivery, lofted that one handsomely to get the distance. Yes, he got the distance. You can't do the mistake to bowling a short pitch delivery to the caliber like Munir has got. Absolutely easy pick, short on the length, and Munir has got all the time in the world to get that short pitch delivery right from the middle of the bat down to wideish long on for a 6. Scoreboard jumps into 21 now. Again he wanted to go for the switch it, and not quite getting that one from the middle of the bat, but good enough for him to come back for the second before the fielder from this short third man region to run back towards the deep fine third man. And couple of runs which is conceded. With that couple of runs, scoreboard now moves on to 23 for the loss of 1 wicket. Team of friends Kabaka, after losing a toss, lost the toss, asked by the opposition to bat first. So far it's an equal battle is on. Oh, beautifully awkward line delivery there from Nitin there. Luckily that ball just got deflected from the leg of Munir there. One more single. With that single, scoreboard moves on to 24 on the board in the over number 3 is in progress. Nitin balls, pushes that on short cover, extra cover region. Good thinking by the batter Sarish,
as you know that Munir is a settled batsman in the middle, so his job is to pick the single and try to rotate the strike, and wanted to get Munir back on strike now. 25 on the board. Full toss, lofted, straight down the ground. One bounce collected by the fielder, just a single there. Not really able to get that one, the aerial route what is looking for Munir, and he got to play that one in a platter version. Otherwise, he can get over number completed, 3 completed. Please note over number 3, which is completed. After completion of over number 3, it's a 26 on the board. 26 for the loss of 1 wicket, and they're going almost 8.33 runs per over, 8.6 runs per over. The good run rate progressing here for the team, Friends Kabaka, and the last 4 overs remaining in their innings. 4 overs in the sense 24 possible deliveries, excluding wides and no balls. And wait and see how many runs they will going to score in this remaining 24 deliveries, having all 9 wickets in hand. Chetan will going to continue, captain of the side, bowling his second over. The first over he bowled with some runs, with the runs in the sense 10 runs conceded in this first over, and now bowling with some protection. After that, fielding restriction is over. No ball called by umpire straight away. No ball called by umpire, and for the Chetan is not happy with the decision there. No ball in the sense it's going to be a free hit delivery. So no ball, and the sense is scoreboard now moves on to 27. Free hit delivery for Munir, and wait and see how well the Munir will going to take the advantage of that free hit delivery. And again, Chetan have to survive from that free delivery. Right over the wicket. This time Munir lofted that one. Will it go into a 6? No, it's a fantastic saving. What a great piece of fielding by the fielder. What could be a certain 6? It's not so easy. Just I want to see it in a replay. The way that the fielder is running from the deep extra cover to deep long off. Absolutely fantastic. It's very good athletic and gymnastic work by the fielder. Jamal, I think so, the fielder in the deep long off region, saving certain 6 for his team. And just a couple of runs, 29. Once again, it's going to be one more lofted stroke. This time fielder will go into underneath it. And he comfortably held that catch down at deep straight long off region. So that's the end of Munir's innings. Slower one attempted by Chetan. Batsman just coming to that ball. Try to hit the ball down to deep long on. Not quite getting that elevation he's looking for. Of course he's got elevation, but fails to get the distance as the fielder in that deep long off region completes the catch. The good innings which is comes to an end of Munir. So Munir out for 24, valuable 24 runs, including 2 sixes from his bat, and is back into pavilion. Jamal is a new batter in. Chetan once again got a success after that one delivery, which is a little bit loosener delivery, and the batsman couldn't manage to get the distance. And a very good save by the fielder in the deep. So a lot of changes in the field now. Mid-off fielder going back to deep long off, and deep extra cover fielder coming towards the deep cover point for a switch it. Maybe the Jamal is a batter can hit some switch it.
Oh, that was a delivery which is punishable from the umpire. Little margin for error when bowling that line which is outside the line of leg stump. The wicketkeeper behind the stump in a fraction complete the job, but not good enough to get the result for to his favor. So score remains on 20-30 on the board. In the over number 4 is in progress. Star Strikers versus team Kabaka. Friends. Friends Kabaka. So next match United Puttur will take Star Strikers because of Star Strikers already they are playing here. So one more single. With that single score but moves on to 31 now. 31 for the loss of 2 wickets. Team Strikers so far searching for the right track. Chetan bowls. Slower one. Driven beautifully. Down to deep third man boundary. Very lucky indeed for the fielding team, because ball is just having some hurdles in that deep third man region, up and downs. The opportunities run out of created there, but just a couple of runs. What could be a certain boundary actually, but unfortunately ball which is hitting that slight a bit of up and downs we can see in the third man region, and with that couple of runs Kombettu moves on to 33. Chetan bowls. Again going for the expansive drive, got inside edge of the bat, but no question of any run. Ball went straight to the hands of short third man. Sarish facing next delivery. Bowler's back drive. Dotted delivery. Good comeback. Good over. Captain doing the job here. After completion of over number 4. Searching for the right track. Star Strikers are 33 for the loss of 2 wickets, and time to change in commentary box. 33. 4 overs completed, 3 overs remaining, 18 balls remaining excluding wides and no balls, and we'll wait and see the strategy from Strikers to get some acceleration in the remaining 3 overs. I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language in the welcome back. Gopi, thank you. Dhanyawad Satish. So 4 overs completed, 33 on the board for Friends Kabaka at batted first and against Star Strikers, and now 3 overs remaining in the overall calculation in their innings. 3 ओवर का खेल बाकी और 5वां ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। एरिस इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार था। इन राउंड द विकेट रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता, चूंकि गेंद उनके पहुंच से बाहर, ऑप्शन से कुछ ज्यादा बाहर की ओर गेंद नहीं निकल रही थी और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है। कुल मिलाकर 33 रनों पर और 5वां ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है। अगली गेंद लेकर एरिस इस वक्त तैयार था। ना तो बढ़ता विकेट कदम का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले गेंद की इस वक्त ड्राइव किया, मिसफील्ड होती हुई शॉट एक्स्ट्रा कवर पर, और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 34 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर इन फैक्ट। और एरिस फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहता, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच नहीं मिलेंगे। बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज एरिस इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार सारिश। तो एरिस सारिश के लिए फुल टॉस पलट किया इस वक्त लगोन सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। सारिश के बल्ले से यह छक्का लग चुका है। फुल टॉस गेंद थी और इस फुल टॉस गेंद को ऐसा कहना पड़ेगा डिस्पैच कर दिया खूबसूरती के साथ। मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करते हुए वाइडिशियल लंगोन सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए, और इस छक्के के साथ 40 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका। 40 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। अगली गेंद के लिए तैयार। एक बार फिर से गेंद को उछाला, लेकिन सीधे इस वक्त एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथों में। ऐसा कहना पड़ेगा not quite get that one from the middle of the bat. Got his stoppage and extra cover fielder finally made no mistake. So one more wicket fall on सारिश। छक्का लगाने के बाद अगली गेंद पर अपना विकेट खोने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए बेहतर पारी उन्होंने खेली। 9 रन उन्होंने बनाए एक छक्के की मदद से और आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए, और इसी के साथ 40 रनों पर तीसरा विकेट गिर चुका है। इट्स 40 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 फॉर फ्रेंड्स का बका।
सिद्दीक इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में और एरिस की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार है। और एरिस गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सिद्दीक के लिए इस वक्त तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद लेग स्टंप पर स्विंग किया इस वक्त, लेकिन फील्डर मौजूद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 41 रनों पर 41 for the loss of 3 wicket and 5 overs had been bowled. Fifth over has been came to an end after 5 overs. Friends Kabaka looking in a good situation. 41 for the loss of 3 wicket they scored. And this is a really good progressing year for them. तो एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला पीपीएल 2024 पुत्तूर प्रीमियर लीग 2024-2024 की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए जूनियर कॉलेज मैदान पर कोम्बेट्टू के मैदान पर। और सुबह का वक्त दिन धीरे धीरे दोपहर की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ सुबह के 10:15 यहाँ पर बज चुके हैं और धूप का प्रकोप इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ता नजर आता हुआ। धूप की तीव्रता बढ़ती हुई और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी जो इस मैदान पर मौजूद है वो भी इस भीषण गर्मी का एहसास यहाँ पर करते हुए। और इस बीच पहली गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, द बॉल केम अलोंग द ग्राउंड एट द लास्ट मोमेंट और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में रन। इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 41 रनों के ऊपर 41 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 10 को बोस्ट सेट और अजीम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लंबा पर फील्डर जी नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन बेहतर फील्डिंग वहां पर की। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पिकअप पर राइट आफ्टर फर्स्ट बाउंस लगन पर फील्डर ने की। इस वक्त थोड़ा सा भी मिसजजमेंट होता तो गेंद उनके हाथों को बीट करती हुई लंगन सीमा रेखा को पार कर जाती। निस्संदेह बेहतरीन फील्डिंग का और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 42 रनों पर। आजीम फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद परिवर्तन के तौर पर ऑफ कटर गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट, खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त निकाला। बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में गेंद पहुंची और काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद डीप कवर पॉइंट से फील्डर दौड़ कर आकर जब तक डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। ऑफ कटर गेंद को खूबसूरती के साथ इस वक्त पंच कर दिया था स्क्वायर ऑफ द विकेट बल्लेबाज जमाल ने और 2 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। और फिर से एक बार आजीम गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए जमाल के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद स्वीप करना चाहा, चूके विकेट कीपर भी चूके, 1 रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, 1 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं और वाइल्ड का इशारा इस वक्त हो चुका है। ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकल रहे थे और 1+1 2 रन उनके खाते में इस वक्त जोड़े जाएंगे। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका इन 2 रनों के साथ 46 रनों पर 46 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। एक बेहतर प्रगति यहां पर करता हुआ फ्रेंड्स का बाका और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार। ये गेंद बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, केप्लर एट द लास्ट मोमेंट एंड पास्ड इट जस्ट बिलो ऑफ हिज बैट and went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman and there is no possibility of any run. आसिम फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, शॉट फाइन लेग पर, लेकिन वहां पर विकेट कीपर काफी दूर खड़े हुए थे चेतन और विकेटों पर निशाना इस वक्त दागा था लेकिन निशाना इस वक्त चूका शॉट फाइन लेग फील्डर का और रन्स मिले 1। इट्स 47 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स नाउ विद जस्ट 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। और गेंदबाज आजीम इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद बेहतरीन गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, डॉट डिलीवरी टू एंड द ओवर। 6 overs completed and after 6 overs still friends Kabaka looking in a good situation. It's 47 for 3. So Manoj starts the fresh proceedings from that side and the last over starts in the friends Kabaka's innings और बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार सिद्दीक का और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त मनोज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अंतिम ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ फ्रेंड्स कबाका की पारी में और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में फ्रेंड्स कबाका के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर
बटोर पाते हैं और अपनी टीम को रनों के किस शिखर तक ले जाकर ठहराते हैं। और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, फुल टॉस बिमर के तौर पर गेंद, इस बीच वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 48 रनों पर, 48 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स नाउ एट द स्टार्ट ऑफ द 7th एंड लास्ट ओवर। और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद lost it, this time he's got the distance, yes it does, it's a biggie and a fantastic struck came from the bat of Siddiq, ऐसा कहना पड़ेगा, just stand and delivered and he's got the distance at last। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 54 रनों पर, 50 कम्स अप फॉर फ्रेंड्स का बका। और बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त सिद्दीक के बल्ले से लगता हुआ, 54 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स नाउ, now 5 balls remaining in overall calculation in their innings। तो इस वक्त बल्लेबाज स्क्वायर लेग अंपायर से कुछ बातचीत यहां पर करते हुए इस श्रृंखला के नियम के बारे में, और एक बार फिर से अपने स्वस्थान पर नॉन स्ट्राइक रेट पर वापस लौटते हुए, और इस बीच गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार सिद्दीक के लिए ये गेंद, इस बार गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ, लेकिन फील्डर मौजूद थे वाइडिश लंगॉन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 55 रनों पर, 55 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट विद जस्ट 4 balls टू गो इन देयर इनिंग्स। और गेंदबाज मनोज अपने गेंदबाजी के मार्ग पर इस वक्त तैयार, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे जमाल के लिए। ये गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को उछाला जरूर, लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही है नहीं, सिर्फ 1 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 56 रनों पर। अब तक 56 रन बन चुके हैं कुल मिलाकर 3 विकेट के नुकसान पर, और 3 गेंदें अब बाकी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा, 1 रन का इजाफा, इट्स 57 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, और 3 गेंदें अभी भी बाकी उनकी पारी में। फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद, इस बार गेंद को उछाला वाइड लॉन्ग ऑन पर, फील्डर जी नहीं, मिसफील्ड इस वक्त, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। गेंद तक पहुंच गए थे वाइड लॉन्ग ऑन पर, फील्डर सीमा रेखा के अंदर गेंद को रोक लिया था, लेकिन अंतिम क्षण में थोड़ा सा मिस जजमेंट, और गेंद उनके हाथों को वंचित करती हुई, उनके हाथों को बीट करती हुई सीधे सीमा रेखा को पार कर गए 4 रनों के लिए। और इस मिसफील्ड के बदौलत चौका इस वक्त प्राप्त करता हुआ फ्रेंड्स का बका, और चौका प्राप्त करते हुए सिद्दीक का 2 गेंदें, तो यहां पर 61 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका, 61 द स्कोर। और गेंदबाज मनोज इस वक्त तैयार, 2 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में, इस बार लेग स्टंप से बाहर, और जहां तक सवाल है वाइड का, तो वाइड रन यहां पर मिलेगा, लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी थी। 62 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका, 62 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और मनोज काफी लंबा ओवर उनका यहां पर प्रगति पर, और अगली गेंद, ये गेंद लॉस्ट इट दिस टाइम एंड टेकन कंफर्टेबली जस्ट इनसाइड द फेंस, not so power in that stroke, and because of that long on fielder took the catch successfully just inside the fence। और इसी के साथ विकेट नंबर 4 यहां पर गिर चुका है, और आउट होने वाले बल्लेबाज सिद्दीक का, और सिद्दीक की बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुका है, और कुल मिलाकर सिद्दीक ने बनाया 14 रन, he scored 14 runs into his credit including 1 6 and a boundary, and after being playing a fine knock of 14 runs, good knock of 14 runs, he is back into pavilion by Siddiq for 14 runs, and now just a last ball remaining in their innings। अंतिम गेंद बाकी, और उस अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार नए बल्लेबाज यासीर, जो कि नंबर 6 बल्लेबाज की हैसियत से क्रीज पर मौजूद। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप, मनोज टू यासीर, राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद क्योंकि बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी एंड अ डॉट बॉल, so dot ball to and is gone, in fact stumped by wicket keeper at the striker end, and now the innings is up, the stipulated overs are completed, they managed to score 62 runs by friends Kabaka, and now the target for star strikers is 63, they have to score for victory, 63 star strikers have to score with the run rate of exactly 9 runs per over in the stipulated 7 overs, and let's see can they reach the target or not। और पिछले मैच में भी 63 रनों का लक्ष्य, पहले मैच में
63 रनों का लक्ष्य इच्छा लायंस ने रखा था इससे पिछले मैच में, और यूनाइटेड पुत्तूर उस 63 रनों के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया था। और यहाँ पर देखना ही है कि जो फ्रेंड्स कबका ने 63 रनों का लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य तक स्टार स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज पहुंच पाते हैं या नहीं। और जहां तक तो अगला मैच है, just talking about the next match, United Puttur will take over Star Strikers in the next match, and because of that I request that all the players of United Puttur please to be reported here to pick a sign in the official chart. So 63 the target for Star Strikers and their innings now going to start, और देखते हैं इस 63 रनों के लक्ष्य तक स्टार स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज पहुंच पाते हैं यानी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर स्टार स्ट्राइकर्स की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का, नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi, and very interesting to see that that second match also the same target, just like each alliance of League set a target of 63 to for United of Puttur. Now, friends, Kabaka they're setting a target of 63 to win this match. And welcome back. Thank you very much, Gopi. And opening batters are walking towards the middle for team Star Strikers, and wait and see how well these two opening batters will going to lay the foundation here for the team. Of course, when you are chasing a total score like 63 to win the match, certainly it's going to be very important for the opening batters to get some good start, especially in the power play overs. The power plays definitely will going to open the gate for the chasing team if they manage to get some enough runs in that power play, because that's the only 2 overs you can manage to get some good score, because the limited option for the fielding team to keep the fielders in the deep, only 2 fielders outside the circle, and a lot of opportunities created at that time to get some placement. I requested the fielding team please start the match. I request all the teams umpires please note that they need to complete their 7 hours quota within 32 minutes, so that we need to complete this 8 matches as for the schedule which is set for the day number 2 and final day of this cricket tournament, because we need to complete all this prize distribution ceremony after the match. We need to have a lot of time, so that your cooperation is much required to complete all 8 matches within 6 o'clock in the evening. Umpire signaling towards our scorer, everything is ready here, and our scorer ready here in the day number 2. And after that, very good contribution as a scorer in the day number 1. Now he is get ready to contribute for the day number 2 as a scorer. And Munir starts a fresh over and starts with the delivery, which is outside the line of off stump too much, so that punished by the umpire, and they called it wide. So with that extra scoreboard, now they open their accounts and they started their journey, and journey in the sense 63 for the team Kabaka to get their first victory of the league stage matches. Again, tossed up delivery outside the leg stump. It's going to be a one more delivery which has got a contact with the bat. That's why umpire not interested. Good sportsman spirit shown there by the batter Azim, saying that yes, I got a bat onto that.
so that umpire just not interested to call that white, and score remains on 1 without loss of any wicket. Square leg, short mid wicket, short mid on, deep mid wicket, the fielder down at deep long off, short extra covers, cover point, and short third man. This time they're going for the quick single chance of run out. The fielder misses the ball completely from his hand, so that they managed to complete the single very well. Azim, no. Pradeep is the batter now, going to face the left and right combination. Pradeep is a left-hand batter, and for Pradeep there is a fielder in the deep in the mid wicket, one fielder in the long off, and altogether 5 fielder in the offside region and the 4 in the on. Short third man, short extra cover, short cover point, and short mid off, and deep fielder in the deep in the long off. In the onside region, short fine leg. Now fielder from short mid on coming towards the square leg behind the square. I request the fielding team to please make it faster. It's already 32 minutes. I already mentioned you need to complete your innings. This time loose delivery, full toss, lofted at one. Sandeep down to deep square leg boundary for 4 runs. Absolutely a juicy full toss, and Pradeep have to tell thank you very much for the bowler to bowling that juicy full toss. Munir bowls that juicy full toss, and batsmen are definitely going to enjoy that delivery to hit the ball down at the deep square leg. There is no fielder in the deep. Already I mentioned that the deep long on the mid wicket, the fielder is there in the deep, so that it's an easy pick for the batter to get that boundary there. With that boundary, scored Namuzan to 6 on the board as Munir right arm over the wicket bowls to Sandeep. Sandeep this time lofted straight to the hands of cover point. Flighted delivery outside the line of off stump. Sandeep wanted to get over that top of the fielder, but couldn't manage to get that one over the top. But ball went straight to the hands of short cover point region. And the first wicket of team Friends Kabaka are back into pavilion. Star Strikers, correction, are chasing the 63 runs, and they lost their first wicket, caught at extra cover. And one more delivery, which is the punishable delivery, but batsman couldn't manage to play that one very well, and he fails to keep it down, where ball went straight to the hands of short extra cover. So with the dismissal of Pradeep, the new batter coming to the middle is the captain of the side. The Chetan is the icon player for the side. Absolutely, we are just talking about scorer. The manual scorer we have Yaya, and Siab is very young, talented. Of course, the cameraman will go into focus here in our commentary box. The Siab is operating as an online scorer, and one of his popular slogan, Link Kartala. This time it's going to be maximum. Oh my goodness, Mubir not really getting, yes, what you're talking about, not really learning from the mistake, as he balled a short pitch delivery outside the left stump. I just mentioned Chetan is an icon player. He can't ball that, you can't ball that line to the batter like Chetan, to batter like Chetan. He's just dispatching that one down to deep square leg for a huge 6. So that's really needed in the power play over. One more delivery. It's going to be very interesting. Umpire will going to call that wide. And with that wide score, Namuzan to 13 on the board. The score 13 already for the team of South Strikers. That good score on the board. Munir, right arm over the wicket, balls to Chetan. Chetan again. Oh my goodness, opportunity score, man. Goodness, it's been a fantastic attempt at the fielder. Really. Of course, he fails to gather the catch, but the way that is attempted for the catch has been absolutely, they needed some word of appreciation. The fielder at square leg, because ball is just came into him like a bullet, and he reacted quickly to that one. Ball just slipped out of his hand. Second attempt is diving to his friend, and fails to take that catch. Low hit the fielder at square leg. They needed such kind of fielder inside the ring, the one who can react for the catches quickly
because always we can see that closing fielders are always very quick fielders. But unfortunately, he couldn't manage to hold that catch. If he managed to hold the catch, it's going to be a big fish in the net. Absolutely big fish in the net. 14 runs coming from that first over. The good start for strikers, even they lost the wicket. They're talking about Siab, the very interested young boy in cricket. In a young age itself, he is involved in every cricket. Every part of cricket is in a technical point. Lofted down to deep long off for a single. With that single, Chetan will going to be out of the strike, and scoreboard now moves on to 15 on the board for the loss of 1 wicket. Again the bowler, Saris. Saris to Azim. Just a lovely shot. One bounce into the fence for 4. No, he stopped that one. Beautiful piece of fielding. Excellent piece of fielding there by Jamal. And the friends Kabaka, definitely they got some good fielding unit. Again, we can see that effort from the fielder. Lovely effort. And what could be a certain boundary, the fielder managed to pull the ball inside the ring. And a couple of runs which is completed. Again, it's going to be a big wide. And Saris wanted to ball that on outside the run back stump after seeing that batsman Azim is looking for the switch it, but ball went straight outside the line of off stump too far. This time lofted, high up in there, opportunity created, and long off fielder will go in to get that one. Jamal is in action down at deep long off. So many times, if you see in the day number 1 also, I saw so many big sixes, but in that particular region, the long off region, every batter fails to get the distance. That's the one area I want to say. It's not so easy for any batsman to get the distance, especially at a deep long off region. Yes, one more wicket is back into pavilion. Unfortunately, Azim is looking so good in the middle, and after it 1-6, looks like it's going to be the beginnings will go into try for, but unfortunately it's back into pavilion. One more very good player, John, coming to the middle. One more very good cricketer, the busy customer, and John will go into face his first delivery, and Saris will go into ball 5th time in this over. 4th time in this over. Right arm over the wicket. Oh, extra bounce. Absolutely beaten by that extra bounce. John wanted to get that one into fine leg region. You know exactly this is the last over of the power play. Wanted to get as much run as possible in this last power play. Right arm over the wicket. Bounce. 3-1. Beautiful shot. Absolutely glorious there from John. And down to deep cover point region. Even they will go to get just a couple of runs for that. But that will give a lot of confidence for the batter. Such kind of cricketing stroke. It was absolutely good to watch. And with that couple of runs, 20 on the board. 20, last delivery of the over number 2nd. This time John went for the reverse sweep, missed it completely, hitting his body. That's it. Over number 2 completed. After completion of over number 2 and chasing a total score of 63 to win this match, Star Strikers are 20 on the board. They're going exactly 10 runs per over. Nothing much wrong with that run rate. They got 10 runs per over, but remaining 5 overs, they need to get another 43 runs to win this match. Ibrahim is a new bowler in. Ibrahim Paddayuru is a new bowler, experienced campaigner for the side. Wait and see how Ibrahim will go into restrict the runs of their opposition star striker after that power play. I already mentioned the power plays are definitely the route to the success. When you're chasing a total like a 63 to win the match, the 2 of the power play will going to give you the exact idea of how to play in the remaining overs. Now getting 20 and remaining 43, it means the match is evenly poised. It's going to be anybody's game. Ibrahim to Chetan.
This time catch it is a call, but no one there to catch it. But fielder just chasing the ball. I don't think he's going to get that. But ball just winning the race against center fielder. Absolutely magnificent struck. Delightful stroke, isn't it? Chetan quite easily picked that one. You know exactly there is a fielder in the deep one fielder in the long off. So he's just going over the top of the infield. Quite deliberately chipped that one. The timing is exquisite. The placement is so good. And you got a boundary for that. 24 on the board. Chetan is a player, one who played for KFC Kodikal for long years. One of the most prestigious cricket team in South Kent district. And definitely having a lot of experience. Definitely wanted to convert that experience into performance. And it's going to be a dead ball. Umpire just saying it's a dead ball. The batsmen are not ready to... Yes. So he left the ball. Ibrahim to continue. Right arm over wicket balls. Again going outside the line of leg stump. Punishable from the umpire. One more extra. With that extra score now moves on to 25. Quarter century for the team strikers. Again improvising that one. Plays it very fine into the deep square leg region. And before the fielder from deep square leg in, behind the square to pick that one. And again ample time for Chetan to complete that 2 valuable runs. Clever cricket from Chetan. And the scoreboard now moves on to 27 after getting that boundary. Got to 2 wide deliveries. Then he places the ball nicely to the square leg region by sweeping the ball. This time again, lovely shot. Get over the top of the infield. Again the chase here for the fielder. This time the fielder will going to get there. But before the throw will go into coming towards the non-strikers, and ample time for Chetan to complete that 2 valuable runs. Intelligent cricket there from Chetan. Again the width is offered by the bowler Ibrahim. And batsman capitalizing that one, just placing the ball over the top of the infield. And with that couple of runs, scoreboard now moves on to 29. 27, 29. 29 on the board. Again, good thinking there from Chetan, not attempting the stroke. You know exactly the little margin for the bowler to ball around the legs, and ball missing the stumps means it's going to be wide. 30 comes up for the team. 33 more runs required for the victory. Nicely place it down to square leg region, running hard. But this time they're not going for the second. It's definitely going to be asking for trouble. I already mentioned the team has got a very good fielding department, friends Kabaka. So that it's definitely going to be asking for trouble when if we wanted to get a couple of runs. 31 on the board. 32 more runs required for the victory. Half of the job which is completed very quickly. Just over number 3rd is in progress. This time John swept, but straight to the hands of square leg. Dotted delivery from Ibrahim there. John will going to face a final delivery of the over number 3. This time again place it beautifully down to deep cow point region. Fielder chasing the ball. Ball will go in the race here. No, very good footwork by the fielder there. Just managed to... No, it's a boundary. And the bowler, the fielder himself saying that boundary. Jamal showing a very good sportsman spirit again. That's telling that ball reaches the boundary there. And last delivery, it's a boundary comes up here for the team strikers. So 35 now with just total score. That means 28 more runs required for the victory in remaining 4 overs. 24 balls, 28 runs required for the victory. Asking run rate now exactly 7 runs per hour. And wait and see how well team of Friends Kabaka will going to restrict this 28 runs in the 4 overs. And before the next over going to start, is a time to change in commentary box. I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone. And Siab, you want to have a mic here, so a little bit commentary here. Siab, over to Siab. Which language? Link Kartala Manchu. What is Siab's greatest slogan, which has become viral in social media? The young man, and very, very interested in cricket. And it's over to Gopi. Gopi now 28 to get from 4 overs. Looks like the team absolutely have a strong grip over this match. But you can't say anything in cricket. And everybody knows that the cricket is a game of glorious uncertainty. And if you wanted to become that much of uncertainty, I think the fielding team Kabaka have to get to 1 or 2 quick wickets and 1 or 2 economical overs. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया इस वक्त तख्ता भारी लगता हुआ
स्टार स्ट्राइकर्स का। तो 28 रन, परिस्थिति को अगर अपने नियंत्रण में करना है तो निस्संदेह 1 या 2 विकेटों को जल्द से जल्द यहाँ पर उखाड़ना होगा फ्रेंड्स कबक्का के गेंदबाजों को, जैसा कि आपने फरमाया। सतीश, ये गेंद पहली गेंद थी, इस वक्त रनआउट का मौका, लेकिन रनआउट के मौके से यहाँ पर बचते हुए बल्लेबाज और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका। और जहाँ तक साझेदारी का सवाल है, चेतन और जॉन के बीच में एक बेहतर साझेदारी यहाँ पर जमते हुए, और जबकि सिर्फ चौथा ओवर प्रारंभ हो चुका है। 36 रन इस वक्त स्कोर बोर्ड पर जुट चुके हैं और एक अपनी मंजिल की ओर इस वक्त धीरे धीरे अग्रसर होता हुआ यहाँ पर स्टार स्ट्राइकर। स्टॉप इट, गेंद इस वक्त फाइन निकल चुकी है, फाइन की दिशा में गेंद जाती हुई, फील्डर वहां पर पहुंचते हुए 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरा रन भी पूरा कर चुके हैं इस बीच, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 38 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 38 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और धीरे धीरे यह साझेदारी यहाँ पर चेतन और जॉन के रूप में जमते हुए, और धीरे धीरे यह साझेदारी इस वक्त सिरदर्द पैदा करते हुए यहाँ पर फ्रेंड्स कबक्का के कप्तान के लिए। और इस बीच गेंदबाज मुनीर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए जॉन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट, एब्सोल्युटली एक्सक्विजिट, गेंद इस वक्त फाइन निकल चुकी है, डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर 2 रन फिर से बल्लेबाज को मिलेंगे। ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट प्ले दैट वन विद अ ट्विस्टेड बैट and finds the gap as well between a cover point and a deep backward third man, and because of that he's got a couple run for that stroke, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 24 और रन चाहिए विजय के लिए, गेंदें बाकी हैं 21, और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, रिवर्स शॉट इस वक्त खेलना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े, और इसी के साथ आखिरकार दिस पार्टनरशिप हैज बीन ब्रोकन। जॉन की पारी समाप्त, यहाँ पर रिवर्स शॉट खेलना चाहा था, ठीक तरह से खेल नहीं पाए, रन के लिए दौड़ पड़े, और सीधा निशाना फील्डर का फेंका गया हुआ नॉन स्ट्राइकर रन स्टम्प्सों को बिखेर कर ले जाता हुआ, और जॉन का विकेट यहाँ पर गिर चुका है, और 10 रनों पर जॉन आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए, और तीसरे विकेट की 22 रनों की साझेदारी यहाँ पर टूट चुकी है। 22 रन, थर्ड विकेट partnership has been came to an end, and John now departs, and now Star Strikers are 40 for the loss of 3 wickets in the over number 4 in progress. तो अब जॉन का स्थान ग्रहण करते हुए एज ए नंबर 5 बैट्समैन नितिन इस वक्त बल्लेबाजी के मार्ग पर बढ़ते हुए चेतन का साथ निभाने के लिए, और इस बीच चेतन सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। मुनीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, कुल मिलाकर 20 गेंदें बाकी और 23 रन चाहिए। 23 रन नीडेड इन रिमेनिंग 20 डिलीवरीज, और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट मुनीर फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद, लॉन्ग ऑफ बिल्कुल सीधा, डीप कवर पॉइंट 2 स्क्वायर ठीक सीमा रेखा के पास तैनात दाहिने हाथ के बल्लेबाज चेतन के लिए। ये गेंद, इस बार गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहा, बैक टू द बॉलर की दिशा में 3-4 कदम आगे जरूर निकल आए थे इस वक्त नितिन, लेकिन अपने कदमों को एन मौके पर खींचते हुए देखा कि गेंद को वहां पर फील्ड की जा चुकी है, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। मुनीर फिर से एक बार तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट है, ये गेंद this time he's got a distance, it's a massive one, और इस छक्के के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा स्टार स्ट्राइकर्स आर नाउ स्ट्रांगली बैक इन द गेम। फैंटास्टिकली स्ट्रक came from the bat of Chetan, ऐसा कहना पड़ेगा, just caught that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style over deep mid wicket fend for a huge 6. 46 the score, 17 required, 18 balls remaining, and the things getting much easier now at this situation for the batsmen of Star Strikers. और जहां तक सवाल है इस वक्त फ्रेंड्स कबक्का की गेंदबाजों का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक घातक गेंदबाजी इस बचे हुए 3 ओवर में कमबैक करने के लिए, और उस घातक गेंदबाजी की तलाश में इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए नए गेंदबाज के रूप में एजाज, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे। दाहिने हाथ के नए बल्लेबाज जिनका आगमन इस वक्त हुआ है नितिन का, वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा। 17 रन 18 गेंदें, और लक्ष्य कुछ हद तक आसान यहाँ पर होता हुआ उस छक्के की बदौलत जो पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर चेतन ने लगाया है। और ओवर की पहली गेंद लेकर इजाज
फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज नितिन के लिए ये गेंद फुल टॉस ड्राइव किया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ पर फील्डर गेंद को फील्ड करने में सफल सही तरीके से, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 47 रनों पर 47 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। नाउ चेतन बैक ऑन स्ट्राइक, एजाज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए लॉस्ट इट दिस टाइम 6 नंबर 2 फ्रॉम चेतन, and with this 6 I must say the things getting much more easier now for star striker. 6 number 3 came from the bat of Chetan. He also hit one boundary also, और इस छक्के के साथ the scoreboard is now jumping up to 53 now for the loss of 3 wickets in the over number 5 in progress. और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, इस बार स्टीयर किया बैकफुट पर जाकर गेंद सीधे गली दिशा में पहुंची। नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज 3-4 कदम आगे जरूर दौड़ आए थे, सही तरीके से स्ट्राइकर के बल्लेबाज चेतन ने उन्हें वापस भेजा, और आखिरकार सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज के लिए। और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, 15 गेंदें बाकी और 10 रन चाहिए विजय के लिए। ड्राइव किया इत्मीनान के साथ वाइड लॉन्ग ऑन पर नॉट मोर देन अ सिंगल, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 54 रनों पर 54 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और चेतन ऑफ द स्ट्राइक इस वक्त हो चुके हैं, और रिजाज इस वक्त गेंदबाज से आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार गेंद को स्कूप कर दिया खूबसूरती के साथ ऑफ द टोस लॉन्ग ऑन की दिशा में। एक रन का इजाफा, और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 55 रनों पर 55। 13 गेंदें अब बाकी है, रन चाहिए सिर्फ 8 विजय के लिए चेतन के लिए। ये गेंद ऑफ द टोस, गेंद को खेलना चाहा शॉट फाइन लेग पर फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए रन से नहीं मिलेगा, और इसी के साथ ओवर नंबर 5 की समाप्ति हो चुकी है। 5 overs completed in fact, and after completion of 5 overs it's 55 for the loss of 3 wicket. They are looking in a good situation, just 8 runs more now they have to score for victory in remaining 2 overs. That means in remaining 2 deliveries, and things getting much easier now for स्टार स्ट्राइकर्स। और अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही यहाँ पर फ्रेंड्स कबाका को इस मैच में वापस ला सकती है। तो इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए अशोक, और छठा ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त स्टार स्ट्राइकर्स के बारे में। 6th स्टार्ट्स इन स्टार स्ट्राइकर्स इनिंग्स। ओवर की पहली गेंद लेकर अशोक, जबकि सामना करते हुए इस वक्त नितिन। सुबह के 10:50 यहाँ पर बच चुके। धूप का प्रकोप, धूप की तीव्रता इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ती नजर आते हुए, और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए, और इस भीषण गर्मी तले एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहाँ पर करती हुई पीपीएल 2024 के नाम पर खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइजेशन किया इस वक्त। बैकवर्ड थर्ड मैन पर गेंद एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 56 रनों पर। अब तक 56 रन बच चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 11 गेंदें बाकी है और रन से चाहिए सिर्फ 7। और इस बीच अशोक का दाहिने हाथों पर द विकेट चेतन के लिए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर फाइन निकल चुकी है। गेंद इस वक्त फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए 5 वाइड, और इन 5 वाइड्स के साथ दे आर मोर नियर टू द विक्ट्री नाउ। Just 2 to get for victory. 61 the score, 3 wickets down, and what a fantastic chasing by the batsmen of Star Strikers at this situation. 11 balls and just 2 runs required. बेहतर फैंटास्टिक डिलीवरी, स्ट्राइटर डिलीवरी। गेंद को इस वक्त ड्राइव करना चाहा चूके, और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों से छूटकर शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में पहुंची। रन बल्लेबाज को नहीं मिला। बेहतर गेंद थी गेंदबाज अशोक की। अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर वाइड का इशारा, and that single run, that wide run brings the equality. Scores are now leveled, just a single run. Star Strikers have to score for victory. और अशोक इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, तो इस वक्त विकेट को सही करते हुए अंपायर, और ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त स्टार स्ट्राइकर्स अपने विजय के द्वार पर आकर खड़ा हो चुका है। और अशोक का फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। 6th ओवर इन प्रोग्रेस, और अगली गेंद, ये गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ चेतन ने वाइड लॉन्ग ऑन पर 1 रन के लिए, और इस 1 रन के साथ स्टार स्ट्राइकर्स रजिस्टर्ड कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री बाय 7 विकेट्स अगेंस्ट
Friends Kabaka, and with that victory, they back the complete points. So match number 2 of this prestigious cricket tournament, PPL Puttur Premier League 2024, has been came to an end, and Star Strikers defeated Friends Kabaka by 7 wickets in this match and back the complete points. Man of the match, undoubtedly Chetan, adjudged man of the match. चेतन ने कुल मिलाकर बनाए 32 runs scored by Chetan, unbeaten, and in the bowling department he also he picked up to 2 wickets, conceding 17 runs, and because of this all-rounding performance, Chetan of Star Strikers adjudged man of the match. I request Chetan of Star Strikers please come onto the stage and receive the man of the match award from the organizer because of his all-rounding performance. So match number 2 has been ended just short while ago, and match number 3 is now coming up loud exclusively right in front of you between United Puttur versus Star Strikers. One more match, consecutive match for Star Strikers. They already registered their first victory in this competition. Now they consecutively played their second match against this time against United Puttur, who lost the first match against Icha Lions Buppalige, and that match number 3 of PPL 24 is now coming up right within just short while. Till then we are taking a short break, और एक छोटे से ब्रेक के बाद अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब यहाँ पर स्टार स्ट्राइकर्स और यूनाइटेड पुत्तूर के बीच की मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. I request Chetan of Star Strikers please come on to the stage and receive the man of the match award from organizer. Thank you. ಚೇತನ್ ರವರ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನ. ಹಲೋ 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 ಅಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ರವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಯುತ ಸನತ್ ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪದಕ, ಮೆಡಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ 300 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಲೀಟರ್ ಮಿರಿಂಡಾ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸನತ್ ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಚೇತನ್ ಇವರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. So congratulations for Chetan and best of luck for the rest of the matches of the tournament. We'll be back right after a short break with Satish when the next match will going to start. Thank you. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. I request all the players of Star Strikers please to be reported yet to make a sign in the official chart. ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು.
I request the two teams captain please be reported here immediately for the tossing ceremony. Captain of Star Strikers as well as captain of United Puttur. Captain of United Puttur is here. I request captain of Star Strikers please be reported here immediately for the tossing ceremony. ಮನಸ್ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ ಮಂತ ಇತ್ತೆ ಬೇಡೆ ಬರೋಡು ಸೈನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇನ್ನ ಸೈನ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಮನಸ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ನ ಪ್ರದೀಪ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Welcome back for the match number 3, and this match will be played between winners versus losers. That means United Puttur, they lost their first match against H Alliance Bappalige, but Star Strikers in the previous match they defeated Friends Kabaka, and so that is very important match for United Puttur in this particular match under the leadership of Altaf Alpadi and under the leadership of Chetan. Star Strikers will go into clash and toss which is on by the captain of United Puttur, and they're elected to ball first. For the latecomers, you're watching a match number 3 of this prestigious Puttur Premier League 2024, which is proudly organized by Junior Friends Kombettu in this most beautiful and huge cricket ground. The name of Junior Ground Kombettu Panchayat Cricket Ground, Taluk Cricket Ground here in Putturu. And all set now for the third match, and under the great leadership of Banu Prakash and Ravi Salyan Padayuru. Almost the successful cricket tournament is in progress, and this is the match number 3 of the final day of the cricket tournament. The Group B, the matches which is playing here. After that, 2 very good matches, we are into the third match,
and it's definitely going to be a very entertainment day for cricket. The winners will going to get cash prize of rupees 50,000 along with the PPL trophy, and the second prize will be of 30,000 with the attractive PPL trophy. The first trophy, which is sponsored by Razak BH Bappalige, thank you so much for your contribution. Second trophy, which is sponsored by Mahalingeshwara Tires, and thanks to the proprietor of that Mahalingeshwara Tires for your contribution for the success of this cricket tournament. Individual prizes, which is sponsored by Abhiram Friends Puttur, and ball for the ball for the tournaments, which is sponsored by Vasu and Ashok Acharya, and Nuruddin Sports World. They provided representative trophies for the every team. So those are participating in this cricket tournament, 8 teams, and thank you very much for your contribution. And officials jersey, very beautiful and very attractive official jersey, which is sponsored by our close friend Mr. Razak Salmara. Definitely we are sure that he is watching live telecast of this cricket tournament in Saudi Arabia in 10 Media YouTube channel, and I would like to wish him a very good morning. And definitely it's going to be a decided day of cricket tournament here in Puttur with the name of PPL, Puttur Premier League. We have great memories when Razak Salmara organized the tournament in 2 years back in the same stadium, and we have very sweet memories of that cricket tournament, very successfully organized by Razak Salmara and his friends. And this is one more big tournament in the name of PPL, Puttur Premier League 2024, and this is going to be decided day of cricket tournament. So opening batters already there made their way to the middle of the pitch, and Star Strikers, they're looking towards their second victory, and team United Puttur, they're searching for their first victory of this league stage matches. Azim and Pradeep opening batters, and Azim is in strikers end, Pradeep is in non-strikers end, and bowler Altaf Basavanagudi, one who bowled very well in the previous match. First over, he picked up some wickets, and here he is bowling first delivery of the power play, bowling right arm over the wicket balls. This time lofted, swings it hard, and he will going to find. Let's just wait for the umpire signal. It's signal by umpire. So loose delivery from Altaf Basavanagudi. Altaf Basavanagudi is in fact misses that first match, I think so. So that he's been included in the second match, and that's what I'm talking about. The previous match, the Altaf Walpadi bowled the first over. This time Altaf Basavanagudi bowled the first delivery, and batsman Azim picked that beautiful stroke down to deep square leg for a maximum. Altaf again bows. This time swings it, and a chance here for the fielder to take the catch. Oh, he's dropped the catch. Mid-wicket fielder charging in from the deep, and almost looks like he got that catch. Ball slight a bit of having wrong hand. It's a little bit he wanted to get his 2 hands to that line of that catch, but he missed it completely, and it's definitely going to be a huge miss by the fielder at mid-wicket. Not a easy one, a little bit difficult opportunity, but in this level you need to take the catches, because catches win the matches, one of the greatest slogan of cricket. And you can't give the life to the batter like Azim. Is a very dangerous as far as the wicketting is concerned. Slight a bit of change and field now. The long on fielder coming inside the ring. The one fielder is going back to deep long on. That is, captain himself is going towards the wideish long on region. The left hand batsman Sandeep is on strike now. Pradeep, correction, I gave one a little bit outside the line of leg stump, and Pradeep wanted to get that one in the onside region, and no damage done. Ball just deflected from the leg, and the scoreboard is 7 on the board. It's going to be punishable from the umpire. It's going to be a wide with that extra scoreboard numbers on to 8 on the board without loss of any wicket in the over number. First is in progress. Basavanagudi a little bit searching for his line, struggling a little bit. Driven back to bowler, powerfully driven back, and equally well caught by Basavanagudi on his follow through. It's not so easy catch, because always it's going to be a little bit reaction time. Just in a fraction of second, ball went into the hands of Basavanagudi, and Basavanagudi really reacted quickly for that cotton ball. Absolutely good catch and cotton ball taken by Basavanagudi. The wicket number first
which is back into pavilion. Pradeep couldn't manage to contribute from the bat, is out for duck. ದಯಮಾಡಿ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲಿ. ವಿಕೆಟ್ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸಿಗೆ ಇಳಿಬೇಕು. Jamal is a new batter in. Again, lovely delivery indeed. Ball right on the block, holding the negation on the middle and leg stump. Batsman wanted to get that one in the onside region. Because of that low full toss, ball couldn't manage to get the ball into his bat, and the fielder Basavanagudi on his follow through. This time he lofted handsomely, and he got the distance. Absolutely glorious shot. Just coming little bit using his feet in the sense stretching his front foot to the line of the ball and lofted that one, and good finish for the first over. After completion of over number first, team Star Strikers started very well with 13 runs for the loss of 1 wicket. What a shot, what a magnificent struck, and ball is landed into the dugout. The dugout of Strikers, and absolutely glorious shot. Stand and delivered. And Azim is on fire. What a great shot. And what a great shot. That ball is landed into the roof of that dugout of the players' dugout, and $19 on the board. Scoreboard is 19. Umpire asking for the new ball. Little bit. Hello, check. Mic check. Hello, check. 20 on the board. Correction in the scoreboard. 20. So 20 on the board, and Azim is on fire. Right over the wicket bounce. Again, lovely delivery, just a little bit outside the line of off-time. Batsman wanted to get that on the onside region. And leg by call by umpire with the addition of that single score. Moves on to 21. 21 for the loss of 1 wicket in the over number second is in progress. Well, and Star Strikers are getting some runs. And this time looks like the bails are off. He's bowled him, cleaned him up. And Jamal back into pavilion after hitting that U6 into mid-wicket region, and disappointment to finish for him as the bowler bowled a beautiful delivery. Zubair in the negation. Iqbal, the bowler, who got a beautiful delivery in the negation. And Jamal has got no clue whatsoever. That ball clipping the bails, and is back into pavilion. Now, wicket number 2 is gone. So new batter in is the captain of the side, Chetan, one who played a fantastic knock, captain's knock in the previous match,
against team Friends Kabaka. Now he's back into strike now. Iqbal. Right over the wicket balls. Chetan wanted to swing that on onside edge and wicketkeeper behind the stump. Oh, wide throw coming from the fielder. Wicketkeeper, in fact, he wanted to get the run out in the non-strike end, but wide throw coming from the wicketkeeper. Ample time for Chetan to complete the single by call by umpire. With that extra score, moves on to 22 on the board. 22 for the loss of 2 wicket in the over number. Second is in progress. Iqbal. This time far outside the run of off time. Batsman not offering a stroke, seeing that ball is definitely going to be a wide. So with that wide score, moves on to 23 for the loss of 2 wicket in the over number. Second is in progress. Again going to be punishable from the umpire. A little margin for error to ball around the legs. One more single in the form of extra. 24. A good score on the board for the strikers. So far strikers are getting some very important runs in this particular over. One more wide. The bowler struggling to get his line and length, and all we can see that gifted runs coming for star strikers. 25 quarter century straight away for star strikers. In the power play itself they got the huge runs. 25 on the board. This time Chetan swings that one beautifully, and will it go into a 6 or a boundary? Just wait for umpire signal. Is that a boundary or 6? It's a 6. Yes, it is a 6, and the first sixer from the bat of Chetan, and scoreboard jumps into 31. Azim did correction. Azim hits the 6. Again going towards wide outside the leg stump. One more extra, one more wide. With that wide, scoreboard moves on to this time ball defeating the infield. Ball running down to define leg region. Basavanagudi already given up. He's not trying for the chasing, and one more boundary comes up. Runs are coming like a fast flowing waters of the rivers in the second over. After completion of over number 2, total score is 36 on the board. 36 in 2 overs. They're going exactly 18 runs per over. Huge score on the board. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಮಾಲಕರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೈನ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೈನ್ ಪುತ್ತೂರು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ PPL 2024. Again, this time Chetan wanted to get the placement down to cover point region, but couldn't manage to get the placement right as Altaf Alpadi is in action. Wanted to restrict the runs here. So thanks to Harris, the proprietor of Sportsline Puttur, who provided the shoes for the man of the series, best bowler and best batter. Thank you very much for your contribution for the success of this cricket tournament. Harris, and white signal umpire. It's a huge white, and Altaf Walpadi wanted to get a quick delivery, but the ball just stuck in his fingers, so that he couldn't manage to control that line. Lovely delivery. One more very good delivery. Just is using that technique of bowling outside the line of off stump to Chetan. And here again, right arm over the wicket balls. So this time Chetan just using the deftness of the crease, going back and getting the single down to short mid wicket region. And with that single scoreboard moves on to 38 on the board. 38 in the over number 3 is in progress. Altaf Walpadi. Right arm over the wicket. Azim, this time lovely improvising cricketing stroke down to define the region. And but just this time they will go into settle for the single. With that single scoreboard moves on to 39 on the board. 39 for the loss of 2 wicket in the over number 3rd is in progress. So far it's a quiet over from Altaf Alpadi. This time Chetan, what you're talking about, the quiet over, but he's just breaking the shackle now. Play that exquisite switch it down to deep third man boundary for 4 runs. Quickly is moving
towards the off stump and changing his position, and becomes the left-hand batter and hit that one beautifully down to deep third man boundary for 4 runs. With that boundary score, but moves on to 43. One more full toss delivery, juicy one, and Chetan absolutely disappointed with that, but Valpadi is definitely going to be very lucky man that bowled a full toss delivery, but the batsman fails to make a impact. 43 after completion of over number 3, the good score on the board here for the team Star Strikers, and stars shining in the daylight, in the sunlight, and so far they have got huge runs against team United Puttur. United Puttur are in pressure now. Again, the first ball of the over number 4 as Basavanagudi replacing Valpadi. That what you're talking about, 2 Altafs in one team, Altaf Valpadi and Altaf Basavanagudi. Now Basavanagudi bowling that over number 4. This time off the toes, plays it down to mid wicket, not for run. Lack of placement here from Azim. Azim also played a very good innings for his team so far, and just playing a waiting game. This time switch it straight to the answer fielder, he drops the catch. Looks like a ball maybe that after one bounce came into the hands of the fielder. The one more single, yes, there is no question of a catch there, but there's a question of a run there. 44. Again, it's going to be a delivery. The batsman Chetan completely missed it. So far is a very good comeback over there from Basavanagudi. Ball very tidy line and length. Basavanagudi again, right arm over the wicket, balls Chetan. Chetan this time plays it down to short cow point region. Good piece of fielding by the fielder, but not good enough to stop the single from this batter. With that single score, Muzan to 45 on the board. The over number 4 is in progress. Runs are coming freely in the 3 overs, but this over, a full toss delivery. Nicely got that one into square leg region, not in the power, because he's not expecting that. He already premeditated that he wanted to go for the sweep shot. That's why he couldn't manage to take advantage of that one. After completion of over number 4, the Star Strikers are 40. "46 Nalvattaru. 46 on the board. 4 overs completed, and next over will going to start here, and time to change in commentary box as well. I request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. And very good score, Gopi. Star Strikers, because they are continuing their winning runs in what they left in the previous match, and playing their continuous match, back-to-back matches, and looks like the team of friends United Puttur have to do something special from the bowling if they wanted to restrict from the opposition, from the big team, big total. But Azim is back into pavilion. I think it's going to be a vital breakthrough, because he is the one who's got some runs from the bat, and definitely it's the right time for the team United Puttur to tighten up the screws. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, तो इस वक्त स्कोर है इस वक्त 46 रन, 46 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 3 विकेट्स इन फैक्ट फॉर द लॉस ऑफ इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस इन फैक्ट. और जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, तो बेहतर स्कोर की ओर इस वक्त अग्रसर होता हुआ यहाँ पर स्टार स्ट्राइकर्स. और जहां तक स्टार स्ट्राइकर्स का सवाल है सतीश, जो पहले मैच में उन्होंने विजय दर्ज किया था पिछले मैच में, अगर इस मैच में भी अगर वो विजय दर्ज करते हैं तो निश्चित रूप से उनके सेमीफाइनल पहुंचने की संभावनाएं काफी उज्जवल हो जाएंगी. और यूनाइटेड पातुर को अगर इस श्रृंखला पर अपना अस्तित्व बरकरार रखना है तो इस मैच में विजय दर्ज करना उन्हें भी बेहद जरूरी बन चुका है. तो इस वक्त स्ट्रोक को खेला था जरूर, लेकिन खाली क्षेत्र ढूंढने में सफल, और गेंद इस वक्त फील्ड की जा चुकी है. 46 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है, और अगली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन करते हुए खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला बैकवर्ड थर्ड मैन पर, सीमा रेखा पर, डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर. जब फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 48 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 48 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. और इस बीच अफरीद गेंदबाजी
आगे बढ़ाते हुए बेहतर गेंद थी, गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद ढीली गेंद, लेकिन इस ढीली गेंद का फायदा उठाने में असफल। That was a juicy lollipop delivery, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूके और गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे उनके ऐसा कहना पड़ेगा ऑफ स्टंप पर जा टकराई और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका। तो आउट होने वाले बल्लेबाज जॉन आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और अपना चौथा विकेट यहां पर खो चुका है। यहां पर स्टार स्ट्राइकर्स 48 रनों के ऊपर 48 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स। तो बेहतर कमबैक पिछले 2 ओवर में कर चुके हैं गेंदबाज यूनाइटेड पुत्तूर के। सिर्फ 5 रन अंतिम 2 ओवर में प्रदान करते हुए 2 विकेट यहां पर प्राप्त करने में सफल। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन स्कोर था। आफ्टर द एंड ऑफ द थर्ड ओवर द स्कोर वाज 43 एंड नाउ द स्कोर इज 48 आफ्टर द एंड ऑफ 5 ओवर। दैट मींस आफ्टर 3 overs, in between 3 to 5 overs, the bowlers of United Puttur come back very well, conceding just 5 runs in these 2 overs and captured 2 wickets. और छठा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ मसूद इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर राउंड द विकेट। ये गेंद हल्के से स्टीयर करना चाहा, बेहतर गेंद इस वक्त और जहां तक रनों का सवाल है रन्स इस बीच नहीं मिलेंगे। और एक बार फिर से मसूद गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, चूंकि वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 49 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। मसूद फिर से एक बार तैयार, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर उछालना चाहता, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, रन से नहीं मिलेंगे। और मसूद फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, अगेन अ डॉट बॉल बाउल्ड। 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में मसूद यहाँ पर फेंक चुके हैं। और यहाँ पर जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो देखते हैं अगली गेंद पर बल्लेबाज यहाँ पर क्या करते हैं। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, टर्न्स इट अवे, दिस टाइम मिड विकेट फील्डर मिस्ड द बॉल, इनफैक्ट बैकअप बाय द डीप मिड विकेट फील्डर, दिस कुड बी इन ट्रबल। लेकिन अंतिम क्षण में बल्लेबाज दूसरा रन पूर्ण करने में सफल और इन 2 रनों के साथ 50 कम्स अप for star strikers, 51 now for the loss of 4 wicket in the over number 6 in progress। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार just gone for a big one, missing the line completely। The ball got his outside edge and collected by the third man fielder, and this is turning out to be a fantastic over so far in United Puttur's point of view। Just 3 runs came from this over। और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, ये गेंद gone for a big one, misses, fantastic over came to an end। Just 3 runs came from Masood's over, and after 6 overs, now I must say the bowlers of United Puttur are now back in the match. In the last 3 overs, they conceding just 8 runs and captured 2 vital wickets of star strikers. And now the match is now equally balanced. 6 overs completed, 51 on the board, and now just the last over remaining in their rings. 4 wickets lost for them. And just talking about this tournament, a fantastic cricket tournament in the name of PPL 2024, Puttur Premier League 2024 is now progressing, which proudly presented by junior friends Kombettu in this junior college ground Kombettu Puttur, and lots of prizes declared by the organizers for this tournament. And this the second and the final day of this tournament is now progressing here. Match number 3 just started couple of minutes back of the second and the final day of this tournament। और यहाँ पर मुकाबला इस वक्त जारी है, अंतिम ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ और गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद इस वक्त थर्ड मैन की दिशा में पहुंच चुकी है, वाइड का इशारा। 1+1 2 runs now added to the total, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 53 रनों पर। 53 for the loss of 4 wickets at the start of the 7th and the last over। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी इस वक्त करने के लिए तैयार। ये गेंद पैरों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहते थे, बल्ले के बीचों बीच गेंद को लेने में सफल। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 54 रनों पर। लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा
और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, ये गेंद lofted this time into the gap as well and it might been cut off just inside the fence. तो टू स्क्वायर इस वक्त ज्यादा टू स्क्वायर नहीं, गेंद को उछाला था जरूर और बल्लेबाज के पास पर्याप्त समय था कि दूसरे रन के लिए वो अपने छोर पर वापस लौट सके और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 56 रनों पर। अब तक 56 रन बन चुके, 4 गेंदें अब कुल मिलाकर उनकी पारी में बाकी और स्टार स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज देखते हैं इन बचे हुए 4 गेंदों में और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। तो अनजान गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए और इस बीच गेंदबाज तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग स्पिन गेंद परिवर्तन के तौर पर गेंद पहुंची इस वक्त डीप मिड विकेट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल एंड विद दैट सिंगल द स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 57 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स विद जस्ट 3 बॉल्स टू गो इन देयर इनिंग्स। और गेंदबाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट, अगली गेंद ऑफ कटर गेंद इस बार परिवर्तन के तौर पर और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, बेहतर गेंद थी और पेश इस बीच रन से बल्लेबाज को नहीं मिला, डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ। और गेंदबाज की ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकलते हुए गेंद को खेला और ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली स्टॉप्ड इनसाइड द फेंस बाय द फील्डर। हालांकि खुद और इस बार रनआउट का खतरा स्ट्राइकर एंड पर, यह विकेट यहां पर गिर चुका है। जहां तक लंगॉन फील्डर का सवाल है, हालांकि ऐसा कहना पड़ेगा खुद सीमा रेखा से बाहर चले गए, लेकिन इससे पहले उन्होंने गेंद को लपक कर गेंद को सीमा रेखा के अंदर फेंक दिया और खुद सीमा रेखा से बाहर चले गए। तो यहाँ पर अंपायर ने इशारा किया है कि क्या ये छक्का है या नहीं, क्या फील्डर गेंद को लपकते समय उनका पैर सीमा रेखा के लाइन को छू चुका था या नहीं, देखना पड़ेगा। और इस बीच तृतीय अंपायर देखते हैं यहाँ पर क्या निर्धार यहाँ पर देते हैं। तो सिर्फ 1 रन यहाँ पर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके, दूसरे रन दौड़ते समय रन आउट हो चुका है। तो देखते हैं यहाँ पर अंपायर तृतीय अंपायर तीसरे अंपायर जो है क्या निर्धार यहाँ पर देते हैं। और सिर्फ 1 गेंद बाकी, इस गेंद के बाद उनकी पारी में। So he's gone, fantastically stopped just inside the fence by the fielder, and the batsman got just a single and a run out happened in this delivery. So the scoreboard is now moving up to 58 with that single and a wicket loss for them. 5 wickets down, 58 for 5, and now just a last ball remaining in their innings. So the last ball of their innings is now coming up और गेंदबाज इस वक्त तैयार अंतिम गेंद लेकर दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, गेंद को खेल दिया इस वक्त लंगआउट की दिशा में गेंद जाती हुई, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, सिर्फ एकमात्र रन से बल्लेबाज संतुष्ट होगा। इनिंग्स इज अप, देयर स्टिपुलेटेड 7 overs completed and the star strikers managed to score 59 for the loss of 5 wickets in the stipulated 7 overs, and now the target for United Puttur is exactly 60. They have to score for victory in 7 overs. At one stage they were 43. They are cruising towards to the huge total. At one stage they were 43 after 3 overs, and after that, and in the next 4 overs, fantastic comeback made by the bowlers of United Puttur. Conceded just 16 runs in the next 4 overs, and they restricted the batsmen of star strikers for just 59 runs. In 7 overs, and now the target for them is exactly 60. They have to score for victory, just over
7.5 runs per over. They have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them, and let's see can they reach the target or not. और यहाँ पर स्टार स्ट्राइकर्स की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद, और तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद अंग्रेजी में हम आपके सामने उपस्थित होंगे सतीश के साथ, जब यहाँ पर स्टार स्ट्राइकर्स माफ कीजिए यूनाइटेड पुत्तूर की पारी की शुरुआत होगी. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೈನ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದ ಆರಿಸ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರಲ್ಲೂರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಚಿಂತನ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮಗಿದು ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತಗಳು ಸರ್. ಹರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಆರಿಸ್, ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಗೇಮ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 60 ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ in 7 overs, and their innings is now going to start. Sports line Puttur, Aris, our guest arrived a short while ago. Heartily welcome to you once again, sir. So exactly 60 the target in 7 overs, and their innings starts with a short while. और छोटे से ब्रेक के बाद अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब यूनाइटेड पुत्तूर की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. धन्यवाद, थैंक यू. Thank you very much. Thank you very much, Gopi. And yes, coming back to this chasing United Puttur, they wanted to register their first victory. They have to get 60 for the loss of 5 wickets. 60 they need to get, and 59, which is the total score of team Star Strikers. Meanwhile, I request all the players of each alliance Bapalige and friends Kabaka, please sign the official chart immediately. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಬ್ಬಕ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್, Nitin starts the proceedings. Altaf for Walpadi, again he got a golden duck. This is what we are talking about. If there's a day which is not belongs to you, everything will going to be wrong. And after that, a golden duck in the previous match. Now again he will going to get another golden duck. Altogether 2 ducks here for Altaf Walpadi, and nothing much wrong with the stroke, but something wrong with the placement. He's just choosing one of the fielder. It's every cricketer, when he hits the ball pretty well, finding the fielder means, especially in the power play, definitely it's going to be a frustration for the batter. And dream start for Nitin. In the first ball itself, they got a danger batsman. Now Altaf Walpadi back into pavilion. The 2 ducks already. Just like Santosh Bantwal in the yesterday's, he got 2 ducks in the in the first 2 matches. When he got a boundary in the 3rd match, he just raises his bat that at last I got my runs. And you are in this day number 2. Altaf Walpadi, they got 2 ducks already, and Nitin bowling with the short run up. Right arm over the wicket to the new batter Masood. Full toss, swings in there, but ball will go to land safely. 1 bounce into the fence for 4 runs. Little margin for error. You can't bowl that line in the power play. And that ball is almost came in such a height. The batsman is a very tall Masood, and he got that pull shot very well, and over the head of that square leg fielder into the deep square leg boundary. 1 bounce into the fence for 4 runs. So 4 on the board for the loss of 1 wicket. Nitin right arm over the wicket to Masood. Masood bowled him, it's gone. Clean him up by the beauty. Nitin bowled 1 more excellent delivery. What a great comeback here by the bowler. Really, nothing looks like the batsman is comfortable in that particular cricketing stroke, where it is no chance at all for him to get the ball into his bat, because ball pitched in a line, the leg cutter, and bowler definitely just giving
the slogan of you miss height, and he missed the bat, and the bowler hits the stumps. Wicket number 2, which is back into pavilion. Nitin, the famously known as Nitin Urlandi, is in action, and he picked up 2 valuable wickets. The Sandeep is a new batter in. The previous match he's played a very good game of cricket for his team. Again, the condition is not good enough for his team, but wait and see. Well, again, the Sandeep can able to lift the team from the dangerous. That was a shackling start what they got. 2 wickets are back into pavilion while chasing that 60 to win this match. Nitin searching for his third. Already got 2 wickets. Right, over the wicket. Full toss. Going for the swing, and wide call by umpire. And ball misses the bat. 1 more wide with the extra scope. And Namozan to 5 on the board for the loss of 2 wicket. Nitin again with a shot on up. Right arm over the wicket balls. Beautifully bowled, but definitely going to be a little bit margin for error. Wide call by umpire, rightly so. Ball just passing outside the line of leg stump with that extra scope. Namozan to 6 on the board for the loss of 2 wicket. Sandeep need to play the very responsible knock for his team, because this is a must-win match for United Puttur after they had lost their first match against Icha Alliance Bappalige. Beautifully ball, perfect one, and they're going for the quick single, and leg by call by umpire, and over number first is in progress, and scoreboard is 7 on the board. The over number first is in progress. The 60, which is the target for the team, they got already 7 on the board. Nitin, right arm over the wicket. This time cross-batted shot, beautifully played. Down to deep mid-wicket boundary for 4 runs. Now Altaf Basavanagudi, and he missed the first match, but I've already mentioned including of 1 more Altaf in the team will going to strengthen both the batting and the bowling department. What a cross-batted stroke coming from the blade of Altaf. Absolutely glorious. Down to deep mid-wicket boundary. Nothing much wrong with the line, but he almost stretching his front foot to the line of the delivery. The swings that one beautifully down to mid-wicket boundary for 4 runs. Much required boundary came from the bat. It's 11 on the board. Nitin bowling a prolonged over. Right over the wicket, outside the line of off stump. It's going to be a wide. 1 more extra. This is really going to be a disaster for team Star Strikers. Bowling almost the huge over, and 1 more extra. 12 on the board. This time ball is in the air. Ball will going to land it safely. And before the fall, the fielder from mid-wicket region to run across to his right. Ample time for the batter to come back for the 3, and they're going to get the 3 quite easily in the end. So 15 runs coming from that first over of Nitin there. Even though he bowled a successful over, but he conceded 15 runs. That means 45 more runs required for the victory in 6 overs for the team United Puttur. The 10 delivery is over, which is comes to an end, and 4 wides conceded by Nitin. Absolutely, it's going to be a huge mistake you are going to do in this power play overs. Chetan being the captain of the side, wait and see how we're going to restrict the runs in the second and last over of the power play. And the batter in front of him is
Basavanagudi again looking for the slog sweep shot. Ball misses his bat. Leg by call by umpire with that extra score, but moves on to 16 on the board. Nothing much wrong with that run rate, isn't it? They got a very good run rate, but problem that they lost two valuable wickets back in the pavilion. But having this very experienced campaigner like Sandeep and Basavanagudi, definitely the opportunity is there. This time tossed up. And a very good face of fielding there by the fielder. Once it looks like ball will go into carry to that mid-wicket fielder. He's almost charging from the mid-wicket, tried to get the catch, but after at last moment he managed to get that one in the off volley. And one more run added to total. Slower one change of pace there from Chetan. Lovely slow delivery indeed there from him. And scoreboard is remains on 17 on the board. This time again, one more very good delivery chance of run out. Then no seconds and looking for the direct hit ball, misses the stump, and both the batter are completed a quick single. And with that single, scoreboard moves on to 18 on the board in the over number second is in progress. So far, it's a tidy over is in progress. Chetan bowled up absolutely the great over. Chetan, right arm over the wicket, balls to Sandeep. Sandeep this time glanced that one down to square leg region. Good thinking by these two batters, because they know that this is a 1 over. They need to negotiate without giving a wicket, so that it's going to be very easy for them to get that target. And scoreboard is now moves on to 19 on the board. 19 for the loss of 2 wickets. Chetan. Right arm over the wicket, slower one, pick that one, down to deep mid wicket, this square leg, one bounce into the fence for 4 runs. So again the experiment there from Chetan for this slow ball, but it's too much. And Basavanagudi is a kind of batsman, he loves to play that kind of cricketing slog sweep shot, waiting for the slow delivery, lifting that one into the deep square leg region for a 1 bounce into the fence for 4 runs. And scoreboard numbers on to 23 on the board. 23 in the sense they needed another 37 more runs to win this match. 30 ball, 37 required. Equation certainly favoring Team United Puttur. Even though they lost the wicket of Altaf Walpad in the first delivery of the over, but still they got eye into that run rate. And the 2 overs definitely, I already mentioned the power play overs always going to give the chasing team the perfect direction to win the match. If they get more than 20 in the 2 overs, then all it's going to be possible to win the match. Harris is a man who is looking knowing for the big leg spinners, and he is known as Shane Warne of underarm cricket as far as turning the delivery is concerned. Got ability of bringing the ball from long way. But same time, that kind of delivery will going to give a lot of wides, because if he hits the ball on the middle stump, ball will going to get a lot of turn and will going to miss the line. And extra, and with that extra score, but moves on to 24 on the board. This time step that one down to short fine leg division for a easy single. With that single score, but moves on to 25, the quarter century. Okay, 25 on the board. Again the bowler Harris to Basavanagudi. It's going to be a very good contest between these two now. Harris to Altaf Basavanagudi. Again looking for the big swing of the bat across the line, shuffled across the line, try to get that one into the mid-wicket region and square between the mid-wicket and square leg. There's no fielder in the deep. Of course there is a fielder in the in front of square, but no fielder in that behind the square in the deep. Again went for the reverse stroke, missed it completely. 2 back-to-back dotted deliveries, the kind of restriction which is badly required for the team. Star Strikers and Isham Harris so far is succeeded. This time catch it is a call. Ball which is hit in the gap into the deep mid-wicket boundary for 4 runs. Lovely placement there from Basavanagudi. It's not so easy against a turn for any batsman, but Basavanagudi can do that because he's got such a good eye and coordination, and took the position very quickly. Again across the line,
moving towards off stamp, outside the line of off stamp, and you know exactly where the fielder. There is a two fielder very close together, mid wicket and deep square, but still he managed to send that one between their two fielders. It will going to frustrate the bowler, and with that boundary scoreboard now moves on to 29 on the board. 31 more runs required for the victory. The over number 3 is in progress. This time drives that one down to deep left correction down to mid wicket region for a single short mid wicket. One more addition, one more over completed, 3 overs completed after completion of over number 3, chasing a total score of 60 to win this match, 30 on the board, and 31 more runs required for the victory. And before the next over going to start, it's a time to change in commentary box as well. It's over to Gopi for the further explanation of the match in our national language, Hindi. And Gopi, it looks like team United Puttur, they're searching for their first victory. And ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥ ಬುಲ್ವಾರ್ ಪುತ್ತೂರು, ದೀಪಕ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಇದರ ಪರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವವರು ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಂಬಿಲಾ, ಮಾಲಕರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಂಬಿಲಾ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೋರ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ದರೇಶ್ ಹೊಲ್ಲಾ, ತ್ರಿಶೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. So meanwhile runs are started to flow in the over number 4 as well. It looks like Friends Puttur are completely controlled over this match, and now it's a time to change in commentary box as well. It's over to Gopi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो इस वक्त बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करता हुआ यूनाइटेड पुत्तूर, और जहां तक सवाल है इस वक्त स्कोर का, तो स्कोर है इस वक्त 35 रन, 35 द स्कोर एट दिस सिचुएशन, and this is just a fourth over in progress in their innings, and this is an absolutely good going on here for them. ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना था, शॉट टर्न पर गेंद रन के लिए दौड़ पड़े, एक रन बल्लेबाज को इस बीच मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 36 रनों पर जोखिम भरा रन और यशस्वीतम यहाँ पर बल्लेबाज पूर्ण करते हुए तो 2 विकेटें सिर्फ गिर चुके हैं, 36 रन बन चुके हैं। लक्ष्य है ठीक 60 रनों का और 24 रन और चाहिए विजय के लिए। एक बार फिर से गेंदबाजी इस वक्त ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा और वाइड किस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर। इट्स 37 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 60 द टारगेट, 23 more runs now they have to score for victory, and this is an absolutely good going on here for United Puttur. तो इस वक्त जहां तक का सवाल है यूनाइटेड पुत्तूर का, तो जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, यूनाइटेड पुत्तूर को इस मैच में विजय दर्ज करना बेहद जरूरी बन चुका है, क्योंकि पहले मैच में उन्हें पराभव का सामना करना पड़ा था। गेंद को उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, लेकिन फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर, 38 नाउ। पहले मैच में इच्छा लायंस बप्पली के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, और इस बीच ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए और गेंद को इस वक्त छोड़ दिया। ओवर की समाप्ति, एंड 4 overs has been came to 38 on the board, and 3 overs remaining in overall calculation. 22 runs more now they have to score for victory. That means 18 balls and 22 runs. Exactly 7.33 runs the required run rate for them at this situation. और जहां तक सवाल है लक्ष्य तक पहुंचने का, तो इस वक्त एक बेहतर स्थिति में नजर आता हुआ यूनाइटेड पुत्तूर कम बैक करना इस वक्त स्टार स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों को, तो यहाँ पर निस्संदेह चंद बेहतरीन ओवर्स उन्हें यहाँ पर फेंकने होंगे। और गेंदबाज अजीम गेंदबाज इस वक्त प्रारंभ करते हुए, स्ट्राइक
अल्ताफ बसवनागुड़ी के पास है, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद लेकर दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद स्वीप किया। इस वक्त इम्प्रोवाइजेशन करते हुए खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद पहुंची। एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े अल्ताफ बसवनागुड़ी। दूसरा रन इस वक्त यशस्वीतम पूर्ण कर चुके हैं। थ्रो थोड़ा सा धीमा, टिप्पा खाने के बाद पिच होने के बाद अपने रफ्तार को कुछ हद तक खोते हुए, और जब तक विकेट कीपर के हाथों पर पैच अपने रफ्तार को खोने के बाद, टिप्पा खाने के बाद, पिच होने के बाद बल्लेबाज 2 रन के साथ अपने अपने छोर पर वापस लौट चुके थे। 40 रन 40, 20 रन रिक्वायर्ड, 17 बॉल्स रिमाइनिंग। और अजीम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अगेन लॉस्ट इट दिस टाइम। आई थिंक इट कुड बी, नो ही वोंट गेट दैट वन एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस। जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द अंपायर सिग्नल एंड इट्स अ बिग वन, मैक्सिमम इनटू द अकाउंट ऑफ द राइट हैंडेड बैट्समैन। और इस छक्के के साथ आई मस्ट से दे आर नाउ स्ट्रांगली बैक इन द गेम। 46 and a fantastic struck came from the bat of Altaf Basavanagudi. Just 14 more runs now they have to score for victory. 16 balls left in overall calculation in their innings. और इस बीच गेंदबाज तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, रिवर्स शॉट, टॉप एज, गली फील्डर को बीट करते हुए गेंद निकल चुके। डीप बैक थर्ड मैन की दिशा में, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 2 रन यहां पर आसानी के साथ पूर्ण कर चुके हैं। और अंतिम 3 गेंदों में 10 रन बन चुके हैं। और उन अंतिम 3 गेंदों की बदौलत यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा यूनाइटेड पुत्तूर इस वक्त इस मैच में पूरी तरह वापस आ चुका है। 48 द स्कोर, 12 रिक्वायर्ड, 15 बॉल्स रिमाइनिंग। इस बार गेंद को इस वक्त मिडल ऑफ द बैट तो कनेक्ट नहीं किया, लेकिन 1 रन जरूर मिला उन्हें। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 49 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, यह गेंद हल्के से गेंद को स्टीयर कर दिया, बैकफुट पर जाने के बाद शॉर्ट थर्ड मैन पर सिंगल रन एडेड। 50 कम्स अप फॉर यूनाइटेड पुत्तूर। 50 रन यहां पर पूर्ण हो चुके हैं। इनफैक्ट टेक अ बैक फॉर द सेकंड रन। So 51 the score, runs are coming quite easily now at this situation for the batsmen of United Puttur. 9 runs more, now they have to score for victory, remaining 13 deliveries. और इस ओवर में अंतिम बार अजीम गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए काफी महंगे इस ओवर में साबित हो चुके हैं। 13 रन अब तक इस ओवर में वो प्रदान कर चुके हैं। ये गेंद बहु बेटर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, एक्स्ट्रा क्विक कर रहा, कट करना चाहा, चूंकि गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। ओवर कंप्लीटेड, 13 रन केम फ्रॉम दिस ओवर एंड अ फैंटास्टिक ओवर इन United Puttur's point of view came to an end, which cost 13 runs from Azim, and after 5 overs they are looking in a good situation now. It's 51 for the loss of 2 wickets. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಚ್ಛಾ ಅಲಯನ್ಸ್ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಬಕ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತಿರುವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚೇತನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚೇತನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗಿದು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತಗಳು ಸರ್. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಧರೇಶ್ ಹೊಳ್ಳ, ತ್ರಿಶೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪಕ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಧರೇಶ್ ಹೊಳ್ಳ, ತ್ರಿಶೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪಕ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತಗಳು. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಟು ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ PPL Puttur Premier League 2024. Heartily welcome to you both sir. So first ball and a wicket lost. Altaf Basavanagudi, and a fantastic innings came to an end from him, and he scored in fact 29 runs into his credit, including 1 6 and 3 4s, and after being playing a 29 runs knock, fantastic 29 runs knock off 1 6 and 3 boundaries, is back to pavilion, and a vital wicket loss for United Puttur. And now 11 balls remaining and 9 runs required. Pradeep, the next batsman, is now comes out to the middle as a number 5 batsman. और संदीप और प्रदीप जो कि दोनों ट्विन ब्रदर्स यानी जुड़वा भाई है, इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार प्रदीप और चेतन
इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, निस्संदेह डॉट गेंदों की सख्त जरूरत इस वक्त गेंदबाज को इस मैच में वापस आने के लिए। बेहतर नहीं, लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। 52 द स्कोर, 52 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 8 रिक्वायर्ड, 11 बॉल्स रिमाइनिंग। इस बार गेंद को चिप किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, फील्डर दीपक से कवर पर, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करें नॉन स्ट्राइक करंट पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 54 रनों पर। 54 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 3 विकेट्स इन ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद बेहतर, फैंटास्टिक डिलीवरी, जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। और चेतन फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, बेहतरीन गेंद थी इस वक्त, स्टंप को छूकर निकलते हुए, और यहाँ पर यह विकेट चेतन प्राप्त कर चुके हैं। बेहतरीन इनकटर गेंद पर बल्लेबाज बैकफुट पर जाकर गेंद को ढकेलना चाहता, चूंकि और गेंद ज्यादा टर्न लेती हुई अंदर की ओर आई, बल्ले को वंचित करती हुई, बल्लेबाज के बल्ले को वंचित करती हुई सीधे ऑफ स्टंप पर जा टकराती हुई, मिडल ऑफ स्टंप पर जा टकराती हुई, और गिल्लिया बिल्स जो कि डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है यहाँ पर प्रदीप का। विकेट नंबर 4 डाउन एंड नाउ इट्स 54 for 4, 8 balls remaining and 6 runs required. और number 6 batsman is now coming out to the middle. अविनाश कुम्रा इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद, और चेतन इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए, और चेतन ने इस वक्त डॉट गेंद और विकेटों की तलाश में इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, यह गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई और रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना चूक चुका है, वाइड का इशारा, 1+1 2 रन एडेड टू द टोटल। तो 2 रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में इस वक्त चेतन प्रदान करते हैं। 56 द स्कोर, 4 रिक्वायर्ड इन रिमाइनिंग 8 बॉल्स। और फिर से एक बार चेतन गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद ड्राइव कर दिया गेंद को, लेकिन सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा, नॉट मोर देन अ सिंगल। 57 नाउ, जस्ट 3 टू गेट फ्रॉम 7 बॉल्स। लास्ट टाइम इन दिस ओवर चेतन कम्स, इस बार उछाला, कोई फील्डर वहां पर नहीं, और गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई, 2 रन मिलेंगे, और इन 2 रनों के साथ स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड। 6 overs completed, 59 on the board, scores are now leveled, last over remaining and just 1 run they have to score for victory in remaining last over. तो बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन देते हुए इस वक्त यूनाइटेड पुत्तूर इस वक्त विजय के द्वार पर आकर रुक चुका है। यहाँ पर सिर्फ एकमात्र रन चाहिए विजय के लिए, जबकि 6 गेंदें उनकी पारी में बाकी है, और अंतिम ओवर, लास्ट ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स। पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, हारिस बनूर इस वक्त अंतिम ओवर लेकर तैयार। पहली गेंद दाहिने हाथ अराउंड द विकेट, आउटसाइड एज, गॉन टू फॉर क्विक सिंगल एंड दिस टाइम दे मेड इट, दैट्स इट। 6 wickets in fact, comprehensive victory for United Puttur against Star Strikers, and with that 6 wickets comprehensive victory, they opened their account in the points table. They registered their first victory in this tournament, and now they got 2 points. So the next match, Icha Lions Bappalige will take over Friends Kabaka, and that match is now coming up live exclusively right in front of you within a short while. So man of the match of this match award goes to the batsman who batted brilliantly with the bat as well as with the ball. Altaf Basavanagudi, adjudged man of the match, who scored 29 runs, valuable runs in his batting knock, and in the bowling department he captured 2 wickets, conceding 17 runs in his 2 overs quota, and because of this all-round performance he is now adjudged man of the match. I request Altaf Basavanagudi of United Puttur, please come on to the stage and receive the man of the match award from one of our organizer. I request Mr. Praveen Santosh and
Pradeep, please distribute the Man of the Match award for Altaf Basavanagudi for his all-rounding knock of 29 runs and 2 wickets. I request Mr. Altaf Basavanagudi, please come onto the stage and receive the Man of the Match award from Praveen, Pradeep and Santosh. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 3 ಜನ ಹೇಳಿದೆ ಸಂತೋಷ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಮೂರು ಜನ ಮುಟ್ಟ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಮಿಚ್ ಬರ್ತಾರೆ ಗೆಸ್ಟ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರಿಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ PPL ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ, ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಫ್ ಸಂತೋಷ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ವರ್ಕ್ಸ್. ತಮಗಿದು ಆದರದ ಸ್ವಾಗತಗಳು ಸರ್. ಹರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್. So match number 3 has been ended. Match number 4 now is going to start. Icha Lions Bappaligi will take over Friends Kabaka और वो मैच यहाँ पर शुरू होगा चंद लम्हों बाद. देखिए छोटे से ब्रेक के बाद अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब यहाँ पर मैच की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. धन्यवाद. थैंक यू. A request to opening batters of correction. They already there came into the middle. The captain, the opening batters of team Friends Kabaka. The must-win match here for Friends Kabaka. They lost their first match against Star Strikers, but H Alliance Bapalige they won the match against United Puttur, and certainly they are looking towards the second victory here. And wait and see. And H Alliance Bapalige will go into strengthen their batting department and even the bowling department with the inclusive of Arshad Bajal as included in this second match of their league stage matches after he missed his first match. And definitely it's going to be a lot of hard work is required for Friends Kabaka to get the victory here. And Aman will go into start the proceedings, and Munir will be the strikers, and in the non-strikers, and little bit change in opening pair. And Saris came as opening batters, and Shafi is not coming as opening batters in this match. And wait and see. The changes in opening pair will going to help the team to get a good start here. So Aman will go into start the proceedings as the first over. The power play deep long on mid wicket. The two fielders are in the deep. Short third man, short cover point, short extra cover, and short backward point, short square leg in front of square, and one fielder at mid wicket and one at short mid wicket, and wideish long on almost between mid wicket and long on in the cow corner.
The one fielder is stationed, and Aman will going to start the proceedings. First ball. This time swapped it hard, beautifully, and ball running down to deep square leg boundary for 4 runs. So Munir once again starts well, and he's a batter who got runs in the first match as well. The man in a terrific touch, and first ball itself, the intention is very clear there for Munir that he wanted to get a explosive start, and a very good looking slog shape shot down to deep square leg boundary for 4 runs. Now Aman wanted to come over the wicket. After that, punishment is given by Munir in the first ball. Now wait and see how it will going to help Aman to restrict the runs from the bat of Munir. Wait and see. Second ball. Right arm over the wicket, switch it, plays it quite nicely down over the head of that third man, and before the fielder from deep short third man to run towards the deep third man region. Ample time for the batter Munir to complete 2 valuable runs. With that 2 valuable runs, scored moves on to 6 on the board. The positive start there for Munir so far. 2 balls, got a 6 runs for his team, and Aman will going to continue third time in this over from the far end. Right arm over the wicket, balls. Again the switch, it comes into play, ball just going away from the fielder. Again they're looking for the second, and they fumble from the fielder. Again they got a couple of valuable runs. So with that couple of valuable runs, Kombettu moves on to 8 on the board. 3 ball 8 runs from Munir. The bat of Munir. Aman. The last week in that tournament which is played at Krishnapura Paradise Cricket Ground, that is a Nazar Trophy, Champions Trophy, he bowled brilliantly for the success of his team, and represented for young friend Suruva, the becoming the runner-up. This time lofted, and it's going to be that will going to just inside the boundary line. The fielder managed to stop the 6 again. Good looking fielding performance from the fielder. What could be certain 6 there, and fielder has got a very good jump and almost saving the 6 for his team. Just a single there. A great piece of work there by the fielder. A lot of 6s which is saved so far in this tournament in the boundary line. Going for the drive, miss it completely then. So first over completed after completion of lead correction, 1 ball remaining in this over, and scoreboard is 9 on the board. Last time in this over. Aman. This time he lofted, and ball is in the air, and it got a distance. Straight over that of the bowler, magnificently struck, as straight as an arrow, and ball went into the fence for a 6, and scoreboard jumps into 15 after completion of over number first. Second over will going to start, and the icon player Arshad Bajal will going to start the second over from the far end. And Munir, the man in a terrific touch, is on strike now. They needed some good start, and wait and see how well they will going to get the start here. Already got started very good runs in the first over, but I need to continue that start with some good runs.
Arshad Bajal. Left arm from the wicket. First ball wanted to get that one in the onside region and got an inside edge of the bat. Luckily that ball just misses the stumps and short fine leg fielder Arshad, Arsha fields the ball and back to bowler. There is no chance at all for any run. This time, what a shot! Beautifully played that one, just over the infield, down to deep skull leg boundary for 4 runs. Brilliantly struck there by Munir. One of his favorite shot. He's feel that whenever he plays that stroke, absolutely plays that one right from the middle of the bat. One of his favorite shot, and he quite easily gets that cricketing stroke. It's not so easy for the turning deliveries of Arshad Bajal, and it was a magnificently struck there by Munir. This time we wanted to go the reverse, missing everyone. Chase here for Arshapada Yuru, and meantime it's going to be a boundary, I think so. And one more boundary there. With that boundary, Kombettu moves on to 23. Not a good piece of fielding there by from Asha. It can be stoppable, and they got a lucky boundary. .23 on the board. Very good score on the board for the team. Friends Kabaka. Change of face, what a shot! Again, lovely shot there from Munir. He's on fire. What a great looking stroke coming from the blade of Munir there. He's just taking the initiative, just like he knows that this is a must-win match for the team, and he's just going after the power play overs. He's not really looking about which bowler is bowling, but he's only just looking about the ball, how to kill the ball. And that's a really good display of batting performance. Again, he wanted to repeat that stroke, but this time Arshad Bajal too clever to bowl that and outside the line of off stump, and Munir missed it complete. Then wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. 27 on the board, last delivery of the over. Again the chase here for Asha there. Again he behind the ball. He is not really having a good time in that area. Again they are getting that couple of runs, leg by call by umpire. So with that leg by Kombettu moves on to 29 on the board. So over number 2, which is comes to an end. One more expensive over which is comes to an end. And team Friends Kabaka are going absolutely in a good run rate. 14.5 runs per over, 29. The first 2 over of the power play with Kabaka is definitely the Munir is the batsman, taking most of the runs. And one day Saris has got only 6 out of 2 deliveries. Both the batters has got a flying start for the team. ಇಪ್ಪತ್ತ 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾರ್ಕಳ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರಾದಂಥ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಇವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾರ್ಕಳ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಜಹಾಂಗೀರ್ ಇವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾರ್ಕಳ. The 2 deliveries completed, 30 on the board. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಲೆಮಾರ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪಿಚ್ಚನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ವಿನೋದ್ ಕುಂಜೂರ್ ಇವರು
ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪಿಚ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024. This time Sichet comes into play and ball went towards the deep third man region, and before the fielder from deep backward point region to run across his left to field the ball, and the plenty of time for Munir to complete 2 valuable runs. With that valuable runs, Kombettu moves on to 35 on the board in the over number 3 is in progress. Either the bowler try to put some break on the run rate. It's absolutely a good batting performance from the opening batter so far. This time inside out cricketing stroke, lofted at one. The fielder will not going to get there, but after one bounce definitely the fielder from deep extra cover will going to collect that one down to deep cow point region, and ample time for Munir to get a couple of runs here. With that couple of runs, Kombettu moves on to 37. The very good score on the board for the team Kabaka there, and Munir is taking that initiative of getting some acceleration. Either final time in this over. Right arm over the wicket bounce. Again looking for reverse sweep, missed it completely. One more over completed, 3 overs completed after completion of over number 3. Team Kabaka, friends Kabaka are looking in a commanding position, 37 on the board. They're going exactly 12.33 runs per over, and definitely they're looking for some huge score here in this hot sunlight. And time is exactly 12 past 20 then, and before that next over going to start. There's a time to change in commentary box as well. I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language Hindi. Thank you. Dhanyawad Satish. So friends, Kabaka is now looking in a good situation. In fact, 37 runs they managed to score. Yet to lose a wicket, and the openers Munir K and Sarish playing very well at the situation, and the 4th over starts in their innings. Arshad Bajal इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करते हुए, निश्चित रूप से पहले 3 ओवर में खासकर मुनीर के ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया है. उनका अच्छा साथ इस वक्त निभाया है सारिश ने. जहां तक मुनीर के का सवाल है, इस वक्त 23 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वो बल्लेबाजी करते हैं. इस बैटिंग ऑन 23 मुनीर के, और उनका अच्छा साथ निभाते हुए इस वक्त सारिश 7 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हैं. सारिश बैटिंग ऑन 7 इंक्लूडिंग 1 6. तो अरशद बजाल गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हैं, और पहले मैच में अरशद बजाल के अनुपस्थिति में इच्छा लायंस बप्पलिगे ने अपना पहला मैच खेला था और उसमें विजय दर्ज करने में सफल रहे थे. यहाँ पर अरशद बजाल इस वक्त इस दूसरे मैच में उनके प्लेइंग 11 में शामिल किए गए, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही बड़ा बूस्ट यहाँ पर साबित हो सकता है उनके लिए, क्योंकि अरशद बजाल अंडरआर्म क्रिकेट के बेहतरीन और परिपूर्ण ऑलराउंडरों में से एक जाने जाते हैं, और उनकी उपस्थिति निश्चित रूप से इच्छा लायंस बप्पली के लिए एक बेहतरीन बूस्ट साबित होगा. इस गेंद को उछाल दिया इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 39 रनों पर 39 नाउ. और अरशद एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद, पैरों पर गेंद टकराई, शॉट पर निशाना चूक चुका है इस वक्त, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. जोखिम भरा रन यहाँ पर, लेकिन यशस्वीतम यहाँ पर चुराते हुए दोनों बल्लेबाज, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 40 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. और अरशद बजाल फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट, टॉप एज, मौका इस वक्त गली फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 1 यहाँ पर गिर चुका है. मुनीर की बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है, और मुनीर जिन्होंने 3 चौका लगाया है, और उनकी पारी का अंत यहाँ पर हो चुका. 24 रन उन्होंने बनाए. मुनीर स्कोर्ड 24 runs into his credit, including 3 boundaries, and after playing a fantastic knock, and after playing a fine knock for their side, he is backing to pavilion after scoring 24 runs into his credit, including 3 boundaries. And at last, the bowlers of Icha Lions Bappalige got the breakthrough. It's 40 for the loss of 1 wicket. 40 runs opening partnership has been broken. And Munir, after scoring a fine 24 runs into his credit, he is back to pavilion. New batsman Shafi is now comes out to the middle as a number 3 batsman.
और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो अरशद बजाल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद बाएं हाथ around the wicket. Ye गेंद इस बार extra quicker, fantastic delivery, absolutely fantastic one. Gets some extra quicker, gets some extra bounce, and it went into the hands of wicket keeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. Score रुक चुका है 40 रनों पर। अरशद बजाल एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, फॉलो थ्रू में बेहतर स्टॉप स्वयं गेंदबाज अरशद द्वारा। रन से नहीं मिले, बेहतर ओवर की समाप्ति अरशद की, और कुल मिलाकर इस ओवर में रन बने सिर्फ एक रन, only single run conceded by Arshad Bajal in this over, and this is an absolutely fantastic comeback over for Ichala Bappalige. 4 overs gone, it's 40 for the loss of 1 wicket for Friends Kabaka. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು प्रेक्षकों। तो इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए अमन और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, और सामना इस वक्त करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सारिश। ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर उछलना चाह, नॉट क्वाइट गेट दैट वन फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, इन फैक्ट इट्स गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 41 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 41 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर इन फैक्ट। और गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अमन दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज शाफी के लिए, और शाफी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अमन की गेंदों का। और अमन दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है शाफी ने मिड विकेट पर, और गेंद सीमा रेखा के अंदर रोकने में असफल रहे हैं फील्डर। जी तोड़ कोशिश उन्होंने जरूर की थी अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए, लेकिन गेंद को सीमा रेखा के अंदर ढकेल नहीं पाए। गेंद उनके हाथों से छूटती हुई सीधे सीमा रेखा के बाहर जा चुकी है। दोनों फील्डर वहां पर टकरा गए थे आपस में, और गेंद उनमें से एक फील्डर के हाथों को वंचित करते हुए सीमा रेखा के बाहर जाकर टिप्पा खा चुकी है। छक्का इस वक्त घोषित अंपायर द्वारा, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 47 रनों पर 47, एंड गुड स्ट्रोक केम फ्रॉम द बैट ऑफ शाफी नाउ। तो अमन इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए शाफी के लिए, और शाफी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अमन की गेंदों का। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला फ्लैटर वर्जन पर सीधे मिड विकेट फील्डर के हाथों में। इस बार ऐसा कहना पड़ेगा द प्लेसमेंट वाज टू रॉन्ग, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही पेड द पेनल्टी फॉर दैट। और डीप मिड विकेट फील्डर ने इस वक्त कोई गलती नहीं की। तो इसी के साथ शाफी की पारी पर पर्दा गिर चुका है, और इस वक्त दूसरा विकेट खो चुका है 47 रनों पर। यहाँ पर फ्रेंड्स का बका। इट्स 47 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। तो शाफी का विकेट यहाँ पर जरूर गिरा है, लेकिन चिंता का कोई विषय नहीं है, क्योंकि रन की औसत इस वक्त काफी बेहतर इस वक्त फ्रेंड्स का बका के लिए। और जहां तक मैच का सवाल है, आज का चौथा मैच, इस श्रृंखला के दूसरे दिन का चौथा मैच यहां पर खेला जाता हुआ पीपीएल 2024 के अंतर्गत इस जूनियर कॉलेज मैदान पर कोम्बेट्टू पुत्तूर के। और निश्चित रूप से आज शाम को ये पता लगेगा फाइनल मैच के पश्चात कि पुत्तूर प्रीमियर लीग का चैंपियन यहाँ पर कौन बनेगा। और यहाँ पर इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए इस वक्त संघर्ष जारी है दूसरे फाइनलिस्ट के रूप में। इस मैच में फ्रेंड्स कबका और इच्छा लायंस बप्पलिकी के बीच में। और इस बीच गेंदबाज तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। बेहतर गेंद थी, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 47 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 47 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। अमन एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद लॉफ्टेड दिस टाइम स्ट्राइक टू फील्ड, दैट इज इन अ ब्रिलियंट टेकन, brilliantly taken by the deep in wicket fielder. He just took the catch with one hand at the last moment, just jumping towards to his top side. Avinash, the fielder, who took a absolutely stunner, and because of that,
Wicket number 3 down, and now Siddiq departs because of that fantastic catch taken by the deep mid wicket fielder just inside the fence. And now Friends Kabaka are now 47 for the loss of 3 wicket. Newman Jamal, the number 5 batsman, is now comes out to the middle for Friends Kabaka, और वो इस वक्त सामना करेंगे यहाँ पर अमन की गेंदों का, और अमन अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज जमाल के लिए इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और 3 से 4 कदम उनका रन अप दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद, लेकिन गली फील्डर की बाईं ओर से निकलती हुई, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता पीछे की ओर जाकर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। तो 2 रन उनके खाते में जुड़ चुके हैं, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 49 रनों पर। 49 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, एंड over number 5 has been came to an end. 5 overs completed, 49 on the board. Still they are looking in a good situation, except they lost their 3 wicket. They managed to score 49 runs in the first 5 overs. 2 ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। पीपीएल पुत्तूर प्रीमियर लीग 2024-2024 के पहले ट्रॉफी के स्पॉन्सर है जनाब रजाक BH बप्पली के, जबकि दूसरे ट्रॉफी के स्पॉन्सर है महालिंगेश्वरा टायर्स, जबकि इंडिविजुअल प्राइजेस स्पॉन्सर्ड किया है अभिराम फ्रेंड्स पुत्तूर ने, जबकि इस श्रृंखला के लिए गेंदों का स्पॉन्सर किया है बॉल स्पॉन्सर्ड बाय वासु और अशोक आचार्य, और ट्रॉफी फॉर एवरी टीम स्पॉन्सर्ड बाय नूरुद्दीन स्पोर्ट्स वर्ल्ड, और ऑफिशियल जर्सी अंपायर्स और कमेंटेटर्स के ऑफिशियल जर्सी के स्पॉन्सर रहे हमारे करीबी दोस्त एक बेहतरीन राज्य भाषा कन्नड़ कमेंटेटर रजाक सालमारा। तो यहाँ पर गेंद को खेल दिया, नहीं खेला नहीं था, वाइड गेंद थी और सीमा रेखा से बाहर 5 रन वाइड के रूप में उनके खाते में जोड़े जाएंगे। 5 वाइड्स एडेड टू द टोटल, और इन 5 रनों के साथ द 50 कम्स अप फॉर फ्रेंड्स Kabaka, 54 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 5 रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में यहाँ पर प्रदान कर चुके गेंदबाज हर्षा, और अपनी ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए इस वक्त तैयार। बाएं हाथ का गेंदबाज, बाएं हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। यह गेंद लॉफ्टेड दिस टाइम इनटू द गैप एज वेल, और गेंद इस वक्त कवर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। फैंटास्टिकली स्ट्रक स्क्वायर ऑफ द विकेट एंड फाइंड्स द गैप एज वेल बिटवीन डीप एक्स्ट्रा कवर एंड द वाइड ईस्ट लॉन्ग ऑफ, और 4 रन यहां पर बल्लेबाज सरिश प्राप्त करते हुए। निश्चित रूप से बेहतरीन स्ट्रोक, खाली क्षेत्र चुनते हुए गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया था स्क्वायर ऑफ द विकेट डीप एक्स्ट्रा कवर पर चौके के लिए। 58 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, फुल टॉस गेंद, इस बार गेंद को खेलना चाहता चूंकि विकेट कीपर भी चुके, और इस चूक का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने 1 रन यहाँ पर पूर्ण कर लिया, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 59 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। हर्षा एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, बाएं हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट, गेंद को खेला बेहतर नहीं, गेंद को नहीं रोक पाया गली फील्डर, उसका पीछा करते हुए और दोबारा पीछे की ओर दौड़ कर जाकर जब तक वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। तो रन से इस वक्त आसानी के साथ बनते हुए फ्रेंड्स Kabaka के लिए, और एक बेहतर स्कोर की ओर फ्रेंड्स Kabaka अब अग्रसर होता हुआ। इट्स 61 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट and a fantastic 4th wicket partnership is now building up for them. हर्षा फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, बाएं हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद स्वीप करना चाहा विकेट कीपर के हाथों में गेंद, लेकिन अपील इस वक्त जारी है, लेकिन यहाँ पर अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, शायद गेंद उनके पैर से लगकर उछली थी, और आखिरकार सही तरीके से अंपायर ने इस अपील को नकार दिया। तो एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट 10 मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है इस श्रृंखला का। इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा खूबसूरती के साथ, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 1 रन मिलेगा, और बेहतर रिटर्न इस वक्त आता हुआ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर का ठीक विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 62 रनों पर। लास्ट टाइम इन दिस ओवर द बॉलर कम्स top edge, but no one in that area. 1 run collected. They're just looking for the second, and they come back for the second run, and this time they get it comfortably.
फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 64 रनों पर और 6 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स Friends Kabaka looking in a commanding situation. It's 64 for the loss of 3 wickets with just a last over to go in their innings. और यहाँ पर एक लंबे स्कोर की ओर इस वक्त अग्रसर होता हुआ फ्रेंड्स कबका और रन इस वक्त खुलकर उनके लिए इस वक्त बनते हुए. तो जहाँ तक सवाल है अगले मैच का, तो अगला मैच नंबर 5 ऑफ दिस ऑफ द डे 2 ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट PPL 2024 will coming up live exclusively right after this match between United Puttur versus Friends Kabaka. They will going to play second consecutive match right after this match, and the score is now 64 for the loss of 3 wicket. 64 for the loss of 3 wickets. Last over starts and quick, absolutely brilliant. This is a magnificent stumping made by wicketkeeper behind the stumps. जैसे रिवर्स शॉट खेलने के लिए बल्लेबाज ने बैकफुट लिफ्ट किया था, विकेटकीपर के हाथों में गेंद पहुंची, गेंद सीधे विकेटकीपर ने इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बिजली की रफ्तार में इस वक्त विकेट उखाड़ दिए, उड़ा दिए और इस बेहतरीन स्टंपिंग की बदौलत ये विकेट यहां पर गिर चुका है जमाल का. 5 रन बनाकर जमाल पेवेलियन वापस लौटते हुए स्कोर इस वक्त रुक चुका है 64 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. 64 for 4 at the start of the 7th and the last over in their innings. New batsman Ashok is now comes out to the middle as a number 6 batsman for Friends Kabaka और वो इस वक्त सामना करेंगे यहाँ पर फारूक की गेंदों का. और फारूक इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज अशोक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई और इस बीच ये गेंद इस बार बैकफुट पर गए, गेंद को स्कूप कर दिया इस वक्त गेंदबाज के सिर के ऊपर से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड 1 रन के लिए. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका 65 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. 65 for the loss of 4 wicket in the over number 7th and the last in progress in their innings. फारूक दाहिने हाथों पर द विकेट. अगली गेंद, यह गेंद उछाला है लॉन्ग ऑन पर और गेंद सीमा रेखा से बाहर. इट्स गॉन फॉर द मैक्सिमम. 6 runs into the account of the batsman. ऐसा कहना पड़ेगा just stand and delivered and I got that one right from the middle of the bat. तो आरंभिक तौर पर आरंभिक बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर उतरते सारिश एक बेहतर पारी यहां पर खेलते हुए इस अंतिम ओवर में. The scoreboard is now moving up to 71 now. इस बार गेंद को उछाल दिया deep in wicket पर not quite get that one from the middle of the bat. Deep in wicket fielder after it they come back for the second run. This could be in trouble. Sarish wants the strike. इस बार 2 रन पूर्ण कर चुके हैं. Fantastic running between the wicket. स्ट्राइकर रन पर थ्रो पहुंचा था. अगर नॉन स्ट्राइकर रन पर थ्रो पहुंचता डीप इन विकेट फील्डर का तो कुछ बात जरूर बन सकते थे, लेकिन थ्रो पहुंचा स्ट्राइकर रन पर और इस वजह से बल्लेबाज 2 रनों के साथ आसानी के साथ अपने छोर पर वापस लौट चुका है. सारिश की स्ट्राइक और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार है. और दाहिने हाथ ओवर द विकेट फारूक की गेंद, इस बार गेंद को उछाला टॉप एज मौका लॉन्ग ऑफ फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ एट लास्ट फैंटास्टिक इनिंग्स केम्स टू एन एंड फ्रॉम सारिश. तो गेंद को उछालना चाहता है यहाँ पर, गेंद को उछाला जरूर लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा प्लेसमेंट गलत. लॉन्ग ऑफ के फील्डर आगे की ओर आते हुए एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका. सो सारिश आउट फॉर 22 including 2 sixes and 1 boundary, 1 4 and after being playing a fantastic knock-off for 22 runs he's backing to pavilion and a 5th wicket lost for Friends Kabaka in the final over of their innings. It's 63 for the loss of 73 for the loss of 5 wickets with just 1 ball to go in their innings. 73 for the loss of 5 wickets. And the last ball of their innings is now coming up. अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. फारूक का नए बल्लेबाज यासीर उनकी पारी के अंतिम गेंद का इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. फारूक का ये गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को इस वक्त खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में. 1 रन मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े. नॉन स्ट्राइक रन पर थ्रो पहुंचा, थ्रो काफी वाइडर और विकेट कीपर अरशद ने गेंद को फील्ड कर दिया इस वक्त अपनी दाईं ओर जाते हुए. 2 रन एंड विद दैट कपल रन they stipulated 7 overs are completed. They managed to score 75 runs on the board for Friends Kabaka and they set a huge victory target of 76 for Icha Lions Bapalige and they have to score 76 runs with the required run rate of just under 11 runs per over. That means in exactly calculation it's going to be 10.85 runs per over, the required run rate for them. With the help of 10 wickets they have to score for victory. The present equation shows for them and let's see can they reach the target or not.
तो 76 रनों का लक्ष्य, 76th टारगेट इन 7 ओवर्स। और देखते हैं यहाँ पर 76 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यहाँ पर इच्छा अलायंस बप्पली के बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं। खासकर सलामी बल्लेबाजों को बेहतर प्रदर्शन देना होगा, और खासकर अरशद की वापसी के बाद इस वक्त उनकी बल्लेबाजी में और भी इस वक्त मजबूती आ चुकी है, और अरशद शायद आरंभकार बल्लेबाज की हैसियत से मैदान पर उतर सकते हैं। और जहां तक 76 रनों के लक्ष्य तक, लंबे से लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, तो अरशद की उपस्थिति इस वक्त बेहद जरूरी है इच्छा अलायंस बप्पली के लिए। तो देखते हैं अरशद बजाल अपने टीम को सही मंजिल तक पहुंचा पाते हैं नहीं। और पारी जो कि इच्छा अलायंस बप्पली की यहाँ पर शुरू होगी चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर दी शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर इच्छा अलायंस बप्पली की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। ಯುನೈಟೆಡ್ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಟಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ ದ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you very much, Gopi. And yes, United, correction, friends, Kabaka, and the batters managed to put some very good total. And I think it's going to be one of the second highest total in this tournament. And yesterday's 80, which is the semi-final, the target for the team Sports World Kings set by Bangalore Blasters, and they failed to chase that big total, but they really fight back very well, but couldn't manage to win the match. But here is now 76 going to be a target, and two opening batters are walking towards the middle, just like my friend Gopi has mentioned about the inclusive of Arshad Bajal will going to make a big impact in this match. And wait and see how well Arshad Bajal will going to start with his partner Zabir. And Zabir is also a very good striker of the ball. And wait and see how well these two opening batters will go into lay the foundation. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಪರ್ಪುಂಜ ಇವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಪರ್ಪುಂಜರವರು ದಯಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮಗಿದು ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024. ಪ್ರಸನ್ನ ಪರ್ಪುಂಜರವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. So warm welcome for Prasanna Parpunja for this prestigious PPL 2024, and which is proudly organized by Junior Friends Kombettu under the great leadership of Banu Prakash as well as Ravi Salyan Padayuru. The match which is running very successfully, and thanks to the all supporters. Banu Prakash, Ravi Salyan, Sharat Rai, the Vinod Hegde, Rajesh, Rohit, Pushparaj, Chetan, Pushpa, Krishnanagar, Santosh, Thambi, Sandeep Acharya, Shashank. This time, what we are talking about, the needed some explosive start, and first ball itself, intention is very clear from Zabir that he wanted to get the runs in the first over itself, and first ball he plays it deep, beautifully down to deep square leg boundary for 4 runs. So 76 seems to be a little bit difficult one to get in the 7 overs, but if the batters of team Icha Lions will going to play as per their caliber, as per their potential,
even 75 definitely going to be not that much of tougher for the team, because H Alliance has got some lions in their team like Arshad Bajal, Arsha Padayuru, one more left-hand batters. Again, driven apically and straight to the hands of short mid-off. A very good catch taken there by the fielder. Excellent catch. Zabir this time wanted to get that one over the infield, but the mid-off fielder just running across to his right and taken a one-handed fantastic catch. So some kind of confusion about the dismissal. The review which is taken there by the third umpire to see that whether the fielder is moved from the extra cover. Maybe the batsman arguing that before delivering the ball the fielder is moved, but after delivery the fielder can move. It's what we can see that, and the claiming here by the so very interesting, because this is the first review for that kind of dismissal, which is the movement of the fielders. Maybe the umpire want to see the before bowler going to deliver the ball, whether the fielder is the moving towards the back to take the catch. That's what maybe the Arshad and Zabir is asking for the third umpire to see. And sometimes it's not so easy if the angle of the cameraman, if he manages to get that position, then definitely they will going to give the decision. If it is no picture in that particular deliveries in that non-striker's end, then it's very difficult for third umpire to give the decision. So let's wait and see. So very interesting. So coming back to this match, we are just watching the match number 4 of the day number final of this prestigious cricket tournament. H Alliance Bappalige takes on Friends Kabaka, and it's a must-win match for Friends Kabaka. That's why the level of competition is going to be very high, and because winning this match, definitely the hope of coming to the semi-final will going to be alive for team of Friends Kabaka, because they will going to play their last match against United Puttur. That is the last match of their league stage matches. H Alliance Bappalige, they won the match against United Puttur in the first match. They're playing the second match. The Star Strikers also, out of 2 matches, they won 2. Now umpire is saying that's out. The third umpire gives the decision. Zabir need to walk back, and after delivering the ball, batsman looking for the strike, then the fielder started to run back, and that's maybe the legal, the movement for the fielder at short extra cover, and the umpire rightly so called it the out, is the catch out, and he's back into pavilion. Third umpire is Anil Gowda, after getting some the angle from the cameramans of 10 Media to watch that movement of the fielder. It's good enough to call that out. So huge wicket for the team of Friends Kabaka. They got a huge wicket of the danger man. Zabir is back into pavilion now. Replacing him is one more danger batsman, the left-hand batsman, Arsha, and Arshad and Arsha Padayuru and Arshad Bajal are the 2 dashing left-hand batters are there in the middle. And Munir, the man who really dominated from the bat
He will try to get a wicket. He already got a success in this over. Even the first delivery, which is finished for the boundary by Zabir, but he managed to get the wicket of the same batter in this particular over. This time, what a shot! Arshad just sitting on his knees, played an exquisite slog sweep shot down to deep square leg boundary for 4 runs. This is Harsha Paddayur for you. Such a very good striker of the ball. And this time he almost got that one right from the middle of the bat. And sweet sound coming from the bat. And scoreboard jumps into 8 on the board. 2 boundaries already in this over. 8 for the loss of 1 wicket. Munir. Harsha lofted, and it's going to be a chance here for the long off fielder. It's gone. The big fish in the net. Absolutely won the batsman once. Harsha hoisting it over down to deep long off. Everyone thought that it might be the 6 there, but fielder just waiting for that one, and catch has been taken in the deep long off region. And the wicket number 2 is back into pavilion. Mubin strikes again with a huge wicket. It's 8 for the loss of 2 wicket. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲಿಮಾರ್ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲಿಮಾರ್, ಮಾಲಕರು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಡೈ ವರ್ಕ್ಸ್, ಕೋಟ್ ರೋಡ್, ಪುತ್ತೂರು. ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಪರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Two boundaries and two wickets. And it's going to be a habit of Munir conceding a boundary. Very next ball he picks a wicket. Again he concedes the boundary. Again very next ball he picked up a wickets. And we'll wait and see. Again it's going to be a boundary here. Wait and see as Aman came into bat as the number 4 batter for the side. Munir right arm over the wicket bounce. This time a top edge. It's a wicket number 3 here for Munir. What a great bowling performance here for Munir. 3 huge wickets back into pavilion of Icha Lions Bappalige are looking in a deep trouble. 8 for the loss of 3 wickets. This all happening when you were chasing a total score like 75 to win the match. 76 to win this match, and no other option that they need to convert that power play overs as the big scoring overs. By doing that, they're throwing the wickets. 3 wickets are back into pavilion. What a great start there for Munir. Batted well, now is bowling well. Fantastic performer, Munir. So new batter in is Aider. Too early entry for Aider there. In the first over itself, he coming to the middle as a number 4 batters. Number 5 batters having a number 4 jersey. So Munir again, right arm over the wicket bounce. Across the line, swings it, beautifully bowled. Absolutely perfect start there for Munir. After completion of first over, chasing 76 to win this match. Team struggling in the middle. Bappalige are 8 for the loss of 3 wickets. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಒಬ್ಬ ಆಯೋಜಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಇವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಇವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ sir, your contribution for the success of this prestigious PPL Puttur Premier League 2024, which is proudly organized by Junior Friends Kombettu, and one of the organizer Banu Prakash presenting this memento for very respected Jagadish Acharya, proprietor of Hardik Dye Works, Court Road, Putturu. So thank you very much for each and every contributor, each and every donors who really contributed heartily for the success of this cricket tournament, and we are grateful and thankful for all the donors who are donated for the success of this cricket tournament.
Meanwhile, after completion of the first over, it's a shackling start here for the team Itch Alliance Papalika, even they got 2 boundaries in that over, but they lost 3 valuable wickets. But still having this man is the killer of the ball. Arshad Bajal will go into face first delivery of this tournament. And bowler Ashok, the bowler. And just I want to see the field set here for Arshad Bajal. The fielder is in the deep long on, but one fielder at a deep square leg that was in front of square. Fine leg inside the wing. Driven very good for the fielding there by the fielder. Excellent work there by the fielder. The jersey number 5 quickly moving to his right. One of the good fielder in the side. And the previous match also he really fields very well. Powerfully driven there by Arshad, but lack of placement straight to the hands of extra cover. Ashok, second time in this over. Right arm over the wicket bounce. Nothing much with the nothing much to do with the delivery, which is going farther away outside the line of off stump. Arshad Bajal just wanted to go for the drive, and immediately seeing that line is left the ball. Rightly so. White call by umpire. 9 for the loss of 3 wicket. This time Arshad wanted to go for the reverse sweep. Missed it completely by Arshad. The line is so good enough for him to play that switch it, but a little bit extra bounce the last moment, which defeats the bat of Arshad Bajal, and wicketkeeper behind the stump. Munir did the rest back to bowler. Excellent bowling performance continues here from the bowlers. Ashok. Arshad again missed it completely. Lovely delivery. He's just testing the temperament of Arshad Bajal. Back-to-back dotted deliveries here. Little bit under pressure situation for Arshad Bajal, and wait and see how well he will going to come back here. And Ashok so far bowled a very tidy line, but it's not good enough, I want to say, in the power play over after facing 5 deliveries, getting 1 boundary and taking the total score into 13 little correction, Adimuru. So after completion of over number 3, so 13 on the board. Still a long way to go. So 2 very good overs bowled there by the 2 opening bowlers, and bowler will going to continue. Lohit will going to bowl the 3rd over after the power play, and Haider is the striker. Lofted, but fielder is there in the deep long off. Will going to complete the catch. Yes, he does. 1 more wicket is back into pavilion. Wickets are tumbling here of team Itch Alliance Bapaligate, in spite of they wanted to get the 76 runs to win this match, but everything is going against their plan. But we can see that the Friends Kabaka bowlers really dominating so far. Quite unusual scoreboard. We can see that scoreboard is 13. ಮಸೂದ್ ಮುಖ್ವೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ಮಸೂದ್ ಮುಖ್ವೆ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Lohit, the bowler, got a success in the first ball. Improvisation he wanted to make, but of course he got a success of getting a single there, and with that single score, but moves on to 14 now
Still long way to go. 14 in the sense that they need to get another 61 more runs to win this match. And remaining the 4 overs, 4.4 deliveries, 28 deliveries. Absolutely, it's a huge ask, but not impossible having this man in the middle. And yet to talk with his bat. Got a one boundary so far from his bat. This time it shows that the bowler is under pressure. Lohit, after seeing that batsman going for the expansive switch it, he just wanted to miss the bat. Ball far outside the leg stump. White signalled with that extra score, but Namuzan to 15. This time Arshad lofted but straight to the hands of fielder. What a magnificent catch. A very good running catch taken there by the fielder, and Arshad Bajalla can't believe his eyes. He thought he got the maximum, but he's just choosing the longest part of the ground. That is a deep square leg for the left-hander. And unfortunately, and he's just back into pavilion without making much difference in this match. So one more wicket is back into pavilion, and yes, ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ದಿವಸದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ಶರತ್ ಕೇಪುಲ್ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥವರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ Puttur Premier League 2024, which is proudly organized by Junior Friends Kombettu under the great leadership of Ravi Salyan Padayuru and Banu Prakash. One more single. So things are looking so difficult now for the team to win this match, and Icha Lions Bapalige looking in tremendous pressure. Absolutely fantastic piece of bowling performance continues here from the bowler. Driven catch it is a call, but this time very difficult for the deep longer fielder to take that catch, but he definitely will going to collect that one after one bounce, and ample time for both the batters to complete that 2 valuable runs. With that 2 valuable runs, scoreboard moves on to 18 on the board, 3 overs which is comes to 9. Still the 58 more runs deficit they got, and they need to get in that 4 overs. Huge ask for the team. Ashok, the new bowler, and continuing this second and last over of his quota. So far, it's a very good performance there from Ashok, and rightly so. Umpire not interested because batsman is just become a left-hand batter and changing his position so that bowler can bowl that and outside the line of leg stump. And yes, please obey with the umpire's decision, and bowler will going to continue. Ashok bowling with a short run up. Right arm over the wicket balls. Lovely delivery. Beautifully bowled by Ashok. Very impressive so far in his bowling, Ashok. And he is the man who's kept batsman quite. The batsman like Arshad Bajal in this power play overs. So, without getting a boundaries and sixes, it's very difficult for the team Aicha to win this match. It Lions. And one more single. These singles will not going to help the team to win this match. The scoreboard is just moving very slowly. 20 on the board.
Again, driven straight to the answer fielder. Chance of run out throw, which is a little bit wider, so that both the batters completed that single. And with that single, score number moves on to 21 on the board. In the over number 4 is in progress. Very slow cricket is in progress in this hot sunlight. And it's time is exactly 1 o'clock in the afternoon. But condition it seems to be a little bit hot here. 32 degrees Celsius temperatures recorded here in Puttur. And the temperature of this match is always looks like not that much of hot. So far it's going to be a difficult chance now for the each alliance Bappalige to back in the game, unless and until they need to talk with the bat. They need to get some big shots straight away. Again the wide delivery. Ashok, after getting a very good line and length, is struggling to get 2 consecutive wide deliveries. That takes the total score into 23. Right arm over the wicket. Balls beautifully bowled there by the bowler. One more dotted delivery. So Ashok has been outstanding. It's a good comeback again. That very good line, strong line and length bowled by the bowler. Again going for the big shot. Missed it completely. Great over. Struggle time continues here for the team Icha Lions Bappalige. The Lions are very quiet against the disciplined bowling performance by the bowlers of Friends Kabaka. And 4 outs completed. It's 23 on the board. And before the next ball going to start, it's time to change in commentary box. It's over to Gopi for the further explanation of the match in our national language Hindi. And it's a long way to go. And yes, it's a difficult opportunity, but not impossible. धन्यवाद सतीश. सो रियली जैसा कि आपने कहा, रियली अ टेस्टिंग टाइम कंटिन्यूइंग हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ Icha Lions. Still have a long way to go. In fact, 76 minus 24. That means 52 more runs now they have to score for victory. और ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए डिलिबरेट इस तरीके से गेंद को खेला था. रन की कोई संभावनीयता ही यहाँ पर नहीं हो सकती है. और इस बीच स्कोर रुक चुका है 24 रनों पर. 24 for the loss of 5 wicket. With every ball, with every dot ball, the pressure is now building up on the batsmen of Icha Lions Bappalige. और निस्संदेह अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के इस मैच में इच्चा लायंस बप्पालिगे को वापस ला सकते हैं. फिलहाल गेंदबाजी मुनीर, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था, 29 रन उन्होंने बनाए थे बल्लेबाजी में. अब गेंदबाजी में अपना करिश्मा दिखाते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया. खूबसूरती के साथ गेंद पहुंची लंगोन पर. फील्डर जब तक गेंद को वहां पर फीड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 25 रनों पर. 25 for the loss of 5 wicket. Still they have a long way to go. और गेंदबाज की गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा. इस वक्त डीप मिड विकेट पर एक बार फिर से 1 रन उनके खाते में जुड़ता हुआ. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 26 रनों पर. It's 26 for the loss of 5 wicket. और exactly 50 runs more required for victory now in 2 plus overs. Bowled him, gone for a big one, and the ball stuck to his leg stump. Bills are disturbed. One more wicket fall on wicket number 6 down. And now they are looking deep in trouble. It's 26 for 6. 13 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में. और ठीक 50 रनों की दरकार. 50 runs needed in remaining 13 deliveries. और जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, इस वक्त सिर्फ चौके या छक्के इस मैच में इच्चा लायंस को विजय दिला सकते हैं. तो इस ओवर में अंतिम बार नए बल्लेबाज सियाब इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. और गेंदबाज मुनीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद बेहतर गेंद थी. फैंटास्टिक डिलीवरी एंड फैंटास्टिक ओवर केम टू एंड फ्रॉम मुनीर. 5 ओवर की समाप्ति. 5 overs completed and 26 on the board. 6 wickets lost. Exactly 50 runs required in remaining 2 overs with the required run rate of exactly 25 runs per over. They have to score for victory. Absolutely difficult task in front of the batsmen of Icha Lions Bappalige. और ऐसा कहना पड़ेगा चमत्कारी बल्लेबाजी ही अब उन्हें इस मैच में विजय दिला सकती है इच्चा लायंस बप्पालिगे को. तो छठा ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ और गेंदबाज इजाज गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए. और इस बीच अपनी ओर की पहली गेंद लेकर तैयार
उछाला लॉन्ग ऑन पर लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, बेहतर फील्डिंग, कम बैक फॉर द सेकंड इन फैक्ट एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट। 2 रन मिला इस वक्त और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर, 6 विकेट के नुकसान पर, 28 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6th इन प्रोग्रेस। और इजाज एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाह चुके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है इस वक्त कुल मिलाकर 28 रनों के ऊपर, 28 द स्कोर, 6 विकेट्स डाउन। और एजाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, उछाला लॉन्ग ऑन पर एंड दिस गॉट द डिस्टेंस, ही हैज गॉट द डिस्टेंस एट लास्ट, जस्ट ब्रेकिंग द शैकल्स। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर और बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर लगता हुआ उमर के बल्ले से, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, सिर्फ चौके या छक्के इस वक्त उन्हें इस मैच में वापस ला सकते हैं। इस बार अगेन द सेम ट्रीटमेंट, दिस टाइम इवन हायर, कंसेक्यूटिव सिक्सेस फॉर उमर और स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर, 40 और 8 गेंदें अब बाकी, 26 रन चाहिए, 36 रन चाहिए, 36 टू गेट इन रिमेनिंग 8 बॉल्स। और जहां तक सवाल है इस वक्त एजाज का, तो देखते हैं इस वक्त एजाज अगली गेंद पर क्या करते, 2 लगातार छक्कों को प्रदान करने के बाद। और उमर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, क्या वो हैट्रिक छक्का लगा पाते हैं, अगली गेंद पर देखना पड़ेगा। ये गेंद इस बार उछाला, फ्लैटर वर्जन, इस बार नॉट मोर देन अ सिंगल और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 41 रनों पर, 41 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। लास्ट टाइम इन दिस ओवर एजाज कम्स, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त सियाब के लिए ये गेंद, इस बार सियाब ने गेंद को ठीक से खेल नहीं पाया और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 6 overs completed, 41 on the board, 6 wickets lost and now almost 6 sixes required in the remaining last 6 deliveries, 35 to get in fact in remaining last over। अंतिम अवकाश इस वक्त, द लास्ट चांस इस वक्त बल्लेबाजों के सामने चैलेंज पड़ेगी कि 6 छक्कों की जरूरत लगभग बचे हुए 6 गेंदों में। Ibrahim, the bowler, is now brought into the attack, and the last over in Icha Lions Bappa League is now going to start. 6 sixes required in 6 balls. First ball, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन पर, सिर्फ 1 रन, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यहाँ पर डायरेक्ट हिट एंड इज गॉन। तो ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है रन आउट के रूप में। द स्कोर इज नाउ 42 एंड द 7th विकेट डाउन फॉर देम। 5 balls now remaining and 34 runs to get. और नए बल्लेबाज फारूक का आगमन इस वक्त होता हुआ इब्राहिम की गेंदों का वो सामना करने के लिए तैयार रहा, और फारूक का के लिए इब्राहिम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद टॉप एज, मौका हो सकता है, दिस कुड बी 1 more विकेट, और इस बार यह विकेट गिर चुका है। डीप मिड विकेट फील्डर ने एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका। 8th विकेट डाउन, 42 for 8 now, 34 needed in remaining 4 balls. Absolutely impossible task in front of the batsmen if the bowler cannot bowl no ball or wides in this remaining 4 deliveries. न्यू बैट्समैन, नंबर 10 बैट्समैन समीर इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, और वो इस वक्त सामना करेंगे इब्राहिम की गेंदों का। और इब्राहिम
गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ अराउंड द विकेट लेग स्पिन गेंदबाजी ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन पर नॉट मोर देन अ सिंगल 43 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स 3 बॉल्स रिमाइनिंग 33 रन्स टू गेट और इब्राहिम अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ अराउंड द विकेट ये गेंद ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में ही कांट गॉट एनी रन फॉर दैट स्ट्रोक 2 balls 33 runs absolutely just a formalities remaining in this match इस बार सही गेंद घोषित नहीं इस बार ऐसा कहना पड़ेगा वाइड का इशारा ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई कुछ देर के बाद ऐसा वाइड घोषित किया 1 रन का इजाफा 44 ड्रिवन डाउन टू डीप मिड विकेट नॉट मोर देन अ सिंगल 45 लास्ट बॉल रिमेनिंग 31 रन्स टू गेट and the last ball of the match is now coming up. Ibrahim bowls to the right-handed batsman. That's it. Exactly 30 runs. Comprehensive victory for Friends Kabaka against Lions Papalige. And with that 30 runs comprehensive victory, they registered their first victory in this competition. And now the next match will be played between United Puttur versus Friends Kabaka. And Friends Kabaka going to play consecutive one more match. Friends Kabaka will take over United Puttur and that match starts within just a short while. So man of the match of this match award goes to Munir, who scored a valuable 29 runs and he also captured 4 wickets along with 29 runs from the bat. He also picked up 4 wickets in his bowling and because of this all-rounding performance because of this fantastic all-rounding performance, he bagged the man of the match award. I request to Mr. Munir K to please come out to the stage and receive the man of the match. So we are hurtfully giving a thanks to the team Friends Kabaka who completed their 7 overs under their stipulated times. That means they completed 7 overs in just 20 minutes and because of that we are giving a heartfully thanks from the organizers to the Friends Kabaka team to complete their 7 overs quota under 20 minutes. तो जहाँ तक सवाल है इस वक्त निगदित समय के अंदर यानी सिर्फ 20 मिनटों में फ्रेंड्स कबका के गेंदबाजों ने 7 ओवर के कोटे को उन्होंने पूर्ण किया है तो इस वजह से एक बार फिर से संगठक ऑर्गेनाइजर्स की ओर से और सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से उनका हार्दिक अभिवादन हम करते हैं फ्रेंड्स कबका टीम को। तो यहाँ पर अगला मैच यूनाइटेड पुत्तूर विल टेक्स ओवर फ्रेंड्स कबका एंड सो समीर मुनीर खंडिगे adjudged man of the match. I request one of our organizers, the main pillar of this tournament, Mr. Banu Prakash, please distribute the man of the match award along with medal and 300 rupees cash prize along with 2 liters Mirinda. And also request all the players of Friends Kabaka please to be reported here for the sign procedure in the official chart. And now Munir because of this fantastic all-rounding performance receiving the man of the match award along with momentum and a medal along with 300 rupees cash prize and 2 liters Mirinda. So lots of prizes for the man of the match and Munir Kandige is now receiving the man of the match award from one of our chief guests who distributing the man of the match award for Munir Kandige for his fantastic all-rounding performance. 29 runs and 4 wickets. Congratulations for Munir Kandige and best of luck for the rest of the matches of the tournament. We'll be back right after a short break with Satish.
ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಬಕ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಮಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪುತ್ತೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಹಾಗೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಬಕ ತಂಡದ ನಾಯಕರು. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಬಕ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಾನೇ ಸಹಿಗಾಗಿ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಬಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್.
Welcome back. Good afternoon, cricket lovers, and we are into the very important match of the day number 2 and decided day of cricket. Puttur Premier League 2024 will going to witness one more very good match between United Puttur versus Friends Kabaka, because this is a very important match, because this is just like a quarter final. This is just like a quarter final match between United Puttur versus Friends Kabaka. May I request Munir Kandige please be reported here immediately. ದಯಮಾಡಿ ಮುನೀರ್ ಖಂಡಿಗೆ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಟೀಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಬಗ ತಂಡದ ಮುನೀರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So what we are witnessing here is the match between United Puttur versus Friends Kabaka. But it's a very good news, the international cricket news here. And in that Rajkot Niranjan Shah Stadium, we are going to witness two very good innings. One is from Jaishwal, is scoring his second double 100, scored unbeaten 214. He played that absolutely stunner knock in that ground, and playing the ball all along the corner of the cricket ground, and entertained the crowd with a magnificent batting display. 214 inclusive of 12 massive sixes and 14 boundaries. And one more highlight of the innings is a consecutive second 50 for Sarfraz Khan. What a fantastic entry for the debutant. Sarfraz Khan is waited for the long time to get a test cap in Indian playing 11 as a 311th player to having a test cap, and what a good entry for him. Again, he played a quick fired half century, scored 62 runs in 8 deliveries. One more fantastic knock, and they set a target of 556 for England to win this test match. And they already there, two opening batters came into middle. That's the news for the cricket lovers, those who loves watch the test match cricket. And just coming back to here in this most beautiful Taluk cricket stadium, and we are going to witness just like a quarter final between United Puttur versus Friends Kabaka. The same scenario what we saw in the yesterday's matches. After that, two league stage matches for the four teams. That last two league matches looks like a quarter final. The same here in this day number 2. It's going to be a quarter final. After this match, each alliance Bappaligi will go into take star strikers for the place in the semi-final. I request opening batters, please don't waste the time, because we need to appreciate the team Friends Kabaka. They completed their 7 hours quota in a very short time, and the organizer definitely they appreciated the effort of that the bowlers of Friends Kabaka at bowling that they're all 7 hours within 22 minutes, and one of the quick time they completed that innings with the quick times. Needed some support from all the teams. Umpire, the field umpire, please note that the technical issue in that for the third umpire. So there will be no third umpire maybe in this particular match. There is a technical issue, and once we are getting the right, we'll going to give you as a signal, and until please note that there will be no third umpire. Altaf Basavanagudi, the first ball to Munir Kandige. This time Munir Kandige, just like what we are talking about, he is the man, he is today's unstoppable. What a fantastic start. Just like in the previous match, he got a boundary in the first delivery by playing that slog sweep shot. You can't get better than this man Munir if he is coming to that slog sweep is concerned. He is absolutely a master of playing that cricketing stroke. It's not so easy to play that one across the line, but Munir always, it's going to be very easy for him to play that kind of cricketing stroke. And he got the boundary in the first ball itself. The intention very clear from Friends Kabaka, as they wanted to get one more big score here, just like what they did against Icha Lions Bappalige, put a monumental score of 75 runs. Here also they wanted to continue. Basavanagudi.
Right arm over the wicket again. Munir wanted to play that same shot, but couldn't manage to get that much of room to play the shot, because Basavanagudi quickly realizing that the bowling to that strength of Munir is definitely going to be a punishment. So that little bit shortening the length so that he cannot meet that one rightly from the middle of the bat. It was a single there for Munir. Scoreboard now was on to 5 on the board without loss of any wicket in the over number first season progress. Different field set for the different kind of the batter, because now the batter coming to the middle, Saris, and wait and see how Saris will going to play outside the line of off stump. Going to be a wide, the first extra of this over, and with that extra scoreboard numbers on to 6 on the board without loss of any wicket in the over number first. Again, they're going for the expansive drive, not quite able to get that one from the middle of the bat, but good enough for him to complete the single before the fielder from square leg in front of the square, moving to his left to field the ball, ample time for the batter to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 7 on the board without loss of any wicket. Again, lovely delivery. Batsman has got a slight bit of bat in the last moment, got outside edge of the bat. The fielder in the third man region trying for the shy at the stump in the Tiger's end. Misses the stump completely. Both the batters have completed a single. Good comeback here by the bowler Basavanagudi after that boundary. He bowled very tidy line and length, and scoreboard moves on to 8 on the board without loss of any wicket. Again, stop that one and misfield there by the fielder. They will going to grab the opportunity not only for the single, they will come back for the second as well. This is not a good piece of fielding there by the fielder, because each and every run going to be very crucial. Test match. It's a friendly pitch for batting, even though it's going to be 556 is going to be a target for England, but certainly the spinners of Indians have to do a lot of hard work to get the victory. Again, nicely driven down to extra coverage for easy single. With that single, scoreboard moves on to 12 on the board. 12 on the board for the loss of without loss of any wicket. Both the opening batters are there in the middle to get some good score here. Ashraf is the batter. Ashraf is the bowler. We're going to bowl that Altaf flip correction. Walpadi. After that, Basavanagudi. Now Walpadi is in action. Right arm over the wicket. Oh my goodness. Short pitch delivery. Appeal for stump out. No says by umpire. Rightly so. It's going to be a big appeal. Quite understandable, because this is an appeal against Munir, isn't it? Because Munir is a kind of batter, definitely going to be a very dangerous for any opposition. Seeing that his performance so far in this tournament has been outstanding. So desperately, the United Puttur wanted this man back in the pavilion quickly if they wanted to restrict there from the big total. Again, Altaf Walpadi wanted to get Walpadi ball that one outside the line of off stump, and Munir wanted to get that one down to deep third man region. Just wanted to play that horizontal bat, missed it completely. Then there is no chance at all for any run. Right arm. This time, slog safety comes into play. Not quite controlled that one, but good enough for him to go over the head of that field, that square leg. And before the fielder from short square leg to run back to deep square leg region, ample time for the batter Munir to complete that two valuable runs. Not quite getting that from middle of the bat. Mistimed getting a stroke here from the batter, and scoreboard numbers on to 14 on the board. This time, low delivery, punish that one badly. Down to deep long on boundary for 4 runs. Huge gap between mid wicket and the long off. So this is a second short pitch delivery. The first short pitch delivery, I think Munir couldn't manage to take the advantage of that one.
but you cannot do the mistake regularly against Munir. And this time he got a placement rightly towards a deep long on boundary for 4 runs, and Scober jumps into 18 on the board without loss of any wicket. Again forcing that one, but couldn't manage to get the placement right, as the fielder is there in the deep mid wicket region, and Basavana Gudi is the fielder there in the deep mid wicket, and returns the ball to the Altaf Walpadi. One more over completed after completion of over number 2. Searching for the right track. Team Friends Kabaka are 19 on the board, 19 without loss of any wicket. They're going exactly 9.5 runs per over. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಶರತ್ ಇವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಆಯೋಜಕರಾದ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಇವರ ಪರವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಶರತ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ contribution for the success of the cricket tournament. Again, lovely delivery. The wicketkeeper missed it. Shot third man fielder also missed. But if the fielder is given up, actually can chase that one. Absolutely, it was a lazy fielding there by the fielder. The umpire now need to clarify. It's a boundary, and maybe ball is deflected from the leg, or it's a bye. It's a leg bye. Yes, thank you. If it is deflected from the leg, then it's going to be a leg bye. And with that leg by Scober moves on to 23 on the board. 23 without loss of any wicket. A very good start here for the team Friends Kabaka United Puttur. The bowlers so far couldn't manage to get the breakthrough. The opening batters so far batted very well. And it's not a good sign here for the Friends United Puttur. And they need to get one wicket, especially the wicket of Munir. Absolutely, they badly required for this in this condition. As again Altaf balls right over again, lovely slog sweep, but again he's a master. I've already mentioned he's absolutely an architect of playing that cricketing stroke. This is not a second, it's the first time I'm seeing that throughout his innings. If you see the playing is a third match, and Munir is playing such kind of cricketing stroke very regularly in his innings. So easy for him, absolutely fantastic. That's the key factor for the success, is that he's touching his front foot is very well, and it is a absolutely long stride forward, and getting into the line of the delivery, and bat speed bin is outstanding, and that's why getting lot of success. This time loose delivery, top edge, the ball will going to carry to the fielder and is gone. This is all happening in cricket, isn't it? Sometimes the batsmen like Munir can dispatch the good delivery into the boundaries, but sometimes the loose delivery can be little bit effective for the batter like Munir, as little bit early into the stroke, pays the penalty for that punishable delivery, but not really punished with the middle of the bat, and ball went to the hands of deep square leg region. One more good innings which is comes to an end for Munir, but I think he's not happy with himself. He knows that it's not a wicket taking delivery he got out, it's definitely the delivery he need to send out of the park. And anyhow, he played a good innings here. It's not an easy one in this condition, playing the continuous matches in these hot conditions, but Munir played a very good innings again for his team. Scored 3 boundaries, valuable 3 boundaries, and out of that he scored 17 valuable runs before he's back into pavilion. The new batter in is Shafi, getting some not getting promotion but demotion in that. I want to say he's coming down in the order as a number 3 batter, as he will go into play the next delivery of the bowler Altaf Pasavanagudi. Successful bowler, falls one more very good delivery indeed. Shafi is not having a good time so far in this tournament, but definitely need to get eye in. 1 or 2 proper cricketing stroke definitely takes him back into natural form. Again swinging that one, wicket, the square leg fielder couldn't manage to collect that one, but Altaf Walpadi chasing the ball very well, and managed to field the ball down at deep square leg region, and ample time for Shafi to complete that 2 valuable runs. With that 2 valuable runs, Kombettu moves on to 29 on the board in the over number 3 is in progress. Good going for the team Friends Kabaka so far. Altaf balls right over the wicket, lovely delivery, beautifully balled along the carpet. One more fantastic over, I want to say, even though
Altaf conceded 2 boundaries in 2 consecutive deliveries, but he managed to get the wicket of the same batsman Munir, and then he bowled 2 very good deliveries to finish that over at 10 runs and a wicket. 3 gone after 3. It's 29 on the board. 29 on the board. Before the next over going to start, the time to change in commentary box as well. I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो कबका इस वक्त बल्लेबाजी करता हुआ और एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करता हुआ, कुल मिलाकर स्कोर अब बन चुका है 30 रनों पर, और इस बार हल्के से गेंद को मोड़ दिया, स्कोर लेग पर 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर, जबकि एकमात्र विकेट उनका यहाँ पर गिर चुका है। और जहाँ तक ओवर का सवाल है, तो चौथा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता, ठीक तरह से खेल नहीं पाए, और आखिरकार जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 32 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है, 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर, यूनाइटेड पातूर का जहां तक का सवाल है, इस वक्त इस मैच में उन्हें विजय दर्ज करना बेहद जरूरी बन चुका है। और 2 मैचेस में, 1 मैचेस में उन्होंने विजय दर्ज किया, 1 मैच में उन्हें पराभव का सामना करना पड़ा है। जहां तक का फ्रेंड्स कबका का सवाल है, तो फ्रेंड्स कबका ने भी 2 मैच में, 1 मैच में विजय दर्ज किया, 1 मैच में पराभव का सामना करना पड़ा है। तो दोनों टीमों के लिए मैच बेहद जरूरी इस वक्त बन चुका है इस श्रृंखला के सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए। इस बार गेंद को चला लंबा पर इनटू द गैप एज वेल, एंड द बॉल वेंट लाइक अ बुलेट। Really, that is an absolute outstanding struck. And जो वाइडर लॉन्ग पर जो फील्डर थे वो थोड़े से स्क्वायर रहा, हालांकि जीतोड़ कोशिश उन्होंने जरूर की, लेकिन आखिरकार गेंद को इतनी फाइन निकाला था, खेला था कि फील्डर को कोई मौका नहीं यहाँ पर सीमा रेखा अंदर रोकने का, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 36 रनों पर। यह गेंद इस बार गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहा था, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को ठीक तरह से मोड़ नहीं पाया, और इसी के साथ ओवर नंबर 4 की समाप्ति। 4 overs completed, and after completion of 4 overs, it's 36 for the loss of 1 wicket. Still they are looking in a good situation for friends कबका। और जहां तक सवाल है बचे हुए ओवर का, तो 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी, और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में फ्रेंड्स कबका के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो जहां तक सवाल है इस वक्त इस श्रृंखला का, तो एक बेहतरीन प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट पीपीएल 2024 पुत्तूर प्रीमियर लीग 2024 की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए, और इस श्रृंखला के मेन पिलर्स कहा जा सकता है श्रीमान भानु प्रकाश और श्रीमान रवि सालियन पंडित, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से इस श्रृंखला का आयोजन किया है अपने दूसरे संगठकों के साथ मिलकर रहा। और निश्चित रूप से ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहाँ पर करती हुई जूनियर फ्रेंड्स कोम्बेट्टू द्वारा शानदार प्रस्तुति, जूनियर फ्रेंड्स कोम्बेट्टू की शानदार प्रस्तुति है पीपीएल पुत्तूर प्रीमियर लीग 2024 ये मेगा श्रृंखला इस वक्त इस दोपहर में एक बेहतरीन प्रगति करते हुए, आज इस श्रृंखला के दूसरे दिन का 5वां मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ, और मुकाबला इस वक्त जारी है यूनाइटेड पुत्तूर और फ्रेंड्स कबका के बीच में। गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए मसूद, और सामना करने के लिए इस वक्त तैयार सारिश जिन्होंने पिछले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था, 22 रन उन्होंने बनाए थे, और यहाँ पर उस सफलता के सिलसिले को बल्लेबाजी में आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश में इस वक्त तैयार। ओवर की पहली गेंद लेकर मसूद गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए, 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी उनके पारी में, और गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए
ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद धीमी गेंद थी, गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 37 रनों पर, 37 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर। लेग बाई का इशारा, और फिर से एक बार मसूद गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार शाफी सामना करने के लिए तैयार। तो इस वक्त कमबैक करना है तो यूनाइटेड पुत्तूर के गेंदबाजों को एक बेहतर गेंदबाजी यहाँ पर अपनानी होगी अगर बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखना है तो। इस बार मौका, लेकिन कैच छूट चुका है। जी तोड़ कोशिश इस वक्त पॉइंट फील्डर ने जरूर की थी, लेकिन आखिरकार इस कैच को लपकने में असफल और गेंद उनके हाथों से छूटती हुई, और इस छूट का फायदा उठाकर बल्लेबाज 2 रन यहाँ पर प्राप्त करते हुए, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि 5वां ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर, और मसूद अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए मिड ऑन पर जो फील्डर मौजूद थे, इसलिए मिड ऑन पर उन्हें इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर तैनात किया गया है। थोड़ा सा स्क्वायर रन दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार गेंदबाज मसूद दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग एट द लास्ट मोमेंट, नॉट सक्सीडेड, और गेंद एक्स्ट्रा क्विकरनेस के साथ सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, धीमी गेंद, गेंद को उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, जी हां, गेंद को रोकने में सफल, सीमा रेखा के अंदर बेहतरीन तरीके से, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सेव मेड बाय द लॉन्ग ऑफ फील्डर, ही सेव द सर्टेन 6, और यहां पर सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता। ओनली अ सिंगल रन he conceded in this delivery, and that is an absolutely brilliant save made by the long off fielder. He saved 5 runs for his team, और सिर्फ एकमात्र रन यहाँ पर उनके खाते में जुड़ता हुआ प्रदीप फील्डर थे लॉन्ग ऑफ पर, जिन्होंने बेहतरीन फील्डिंग की, और इस बीच ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 41 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। एक बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है मसूद का दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद, इस बार गेंद को उछाला डीप मिड विकेट पर, फील्डर वहां पर तैनात, नॉट मोर देन अ सिंगल। 42 for the loss of 1 wicket, and 5 overs 5th over has been comes to an end. So 5 gone, 42 on the board, exactly 8.40. The present run rate is now progressing here. They lost their just 1 wicket, 9 wickets they got kept intact. और देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो पीपीएल पुत्तूर प्रीमियर लीग 2024-2024 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत सेकंड लास्ट मैच ऑफ द लीग स्टेज इन ए पूल बी इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। जहां तक सवाल है इस वक्त, तो इस वक्त फ्रेंड्स कबक की पारी की प्रगति यहां पर होती हुई ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶರತ್ ಕೇಪುಲು, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯೇಶ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಫಾರೂಕ್ ಸಾಲ್ಬರ, ಮೆನ್ಸ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪುತ್ತೂರು, ಈ 3 ಅತಿಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶರತ್ ರೈ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಯುತ ಶರತ್ ರೈ ಇವರು ಶ್ರೀಯುತ ಶರತ್ ಕೇಪುಲು, ಶ್ರೀಯುತ ಜಯೇಶ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಫಾರೂಕ್ ಸಾಲ್ಬರ, ಮೆನ್ಸ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ. ತಮಗಿದು ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತಗಳು ಸರ್. Heartily welcome to you for all the guests who are sitting in the stage at the situation. Heartily welcome to you all sir. तो यहाँ पर पहली गेंद पर विकेट गिर चुका है, फर्स्ट विकेट फॉलन एंड the batsman, second wicket fallen and the batsman dismissed is Shafi is now back to pavilion, and now it's 42 for the loss of 2 wickets, so with just 11 balls to go in their innings. So new batsman Siddiq is now comes out to the middle, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अल्ताफ वालपाड़ी की गेंदों का, और इस बीच ओवर की अगली गेंद लेकर अल्ताफ वालपाड़ी की गेंद उछाला मिड विकेट पर into the gap and 6 runs. This is a fantastic
fantastic struck came from the bat of the right-handed batsman Siddiq. ऐसा कहना पड़ेगा, just stand and delivered and finds the gap as well. And because of that, 6, the scoreboard is now raising up to 48 for the loss of 2 wicket. और इस बीच अल्ताफ वालपाड़ी अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, लेग स्पिन गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद एक बार फिर से गेंद को उछालना चाहता, लेकिन मिड ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, नॉन स्ट्राइक रेट पर रन का खतरा, लेकिन इस वक्त तक गंवा चुके हैं। अल्ताफ वालपाड़ी गेंद को कलेक्ट करने में ठीक तरह से असफल, और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता, मिड विकेट पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन ओवर थ्रो के रूप में पूरा करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 49 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 49 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। अल्ताफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद, इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त डीप मिड विकेट पर, फील्डर मिड विकेट पर मिसफील्ड करते हुए बैकअप होता हुआ डीप मिड विकेट पर 1 रन का इजाफा, और इस 1 रन के साथ द 50 कम्स अप फॉर फ्रेंड्स Kabaka. 50 for the loss of 2 wickets now in the over number 6 in progress in their innings. और इस बीच अल्ताफ अगली गेंद, lost it, this time he's got the distance, it's a biggie, 6 runs into the account of the batsman। और ऐसा कहना पड़ेगा, मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट करते हुए खूबसूरती के साथ उछाल दिया इस वक्त लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। 6 number 2 came from the bat of Siddiq, and the scoreboard is now rising up to 56 now with that 6। और इस बीच अल्ताफ काफी महंगे इस ओवर में साबित हो चुके, एक बार फिर से लंबा पर, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। This time he won't survive. So a short but good innings came from Siddiq. Scored 13 runs, including 2 massive sixes, and after being playing a fantastic knock of 13 runs, including 2 massive sixes, he's back to pavilion. So 6 overs completed, 56 on the board, 3 wickets lost. Now just a last over to go in their innings. So what a fantastic cricket tournament is now progressing here in the name of PPL, Puttur Premier League 2024, under the great leadership of Mr. Bhanu Prakash and Mr. Ravi Salyan Puttur organized this tournament along their members of club junior friends Kombettu, and this tournament is now progressing along nicely. So fantastic live coverage we are just watching here on 10 Media, और 10 मीडिया के जरिए एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट हम देख रहे हैं, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कई हजार दर्शक इस श्रृंखला का, इस मेगा श्रृंखला का यहाँ पर मुआयना करते हुए। और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा पीपीएल 2024 एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए। और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, ओवर की पहली गेंद, इस बार गेंद को उछालना चाहा लेकिन उछाल नहीं पाए, और धनुष गेंदबाजों की गेंदबाज यहाँ पर शुरू कर चुके हैं। 7वां ओवर शुरू हो चुका, 56 रनों पर स्कोर बोर्ड इस वक्त रुक चुका है, अब तक 56 रन बन चुके हैं। यहाँ पर अगली गेंद धनुष, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर गैदर नहीं कर पा ठीक तरह से गेंद को, और इस बीच वाइड का इशारा। 1+1, 2 runs added to the total, and with that couple run the scoreboard moving up to 58 for the loss of 3 wickets now for friends Kabaka। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त धनुष का, तो धनुष अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद एक हाथ से गेंद को रिवर्स शॉट खेल दिया खूबसूरती के साथ, इम्प्रोवाइजेशन करते हुए। जब तक गेंद को गली पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 59 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स नाउ, और धनुष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। विकेट कीपर इस वक्त फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हैं, मिड विकेट फील्डर को इस वक्त 2 स्क्वायर 20 गज के दायरे के अंदर स्क्वायर लेग पर इस वक्त तैनात किया गया है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। और धनुष की ये गेंद, इस बार lost it, this time I think it's got the distance, it's a maximum, 1 more 6, and the scoreboard is now rising up to 65 with that 6, absolutely fantastic struck। और जहां तक का सवाल है, अंतिम ओवर में जिस तरीके की बल्लेबाजी अपनानी चाहिए उस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर अपनाते हुए बल्लेबाज, इस बार छक्का लग चुका है बल्लेबाज सारिश के बल्ले से। स्कोर बोर्ड इस वक्त छलांग लगाकर पहुंच चुका है 65 रनों पर, 65 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, धनुष, लॉस्ट इट अगेन, दिस टाइम 6 number 2 in this over। What a fantastic batting performance continuing here from Sarish। और यहाँ पर शायद स्ट्रोक्स लगाते समय शायद उनके पैर में मोच आ गई है, शायद वो काफी दर्द इस वक्त महसूस करते हुए मैदान पर क्रीज पर लेटे हुए, और दूसरे खिलाड़ी उनका इस वक्त उपचार करते हुए। जिस तरीके से जिस
जब उन्होंने स्ट्रोक से खेला था डीप मिड विकेट पर गेंद को उछाला था, तब शायद उनका बैक लेग ट्विस्ट हो गया था, शायद पैर में मोच आई है, तो इस वजह से वो काफी दर्द इस वक्त महसूस करते हुए, छक्का हालांकि जुड़ चुका है उनके खाते में, लेकिन इस वक्त वो इस वक्त मैदान पर लेटे हुए और यहाँ पर खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है. So Sarish got a problem on his leg. I think that his leg was twisted when he trying to play the shot on the deep mid wicket. और कुल मिलाकर अब गेंदें बाकी है सिर्फ 2 उनकी पारी में, और इस बीच खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है. और जहाँ तक इस श्रृंखला के बारे में जिक्र किया जाए, जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस टूर्नामेंट, junior friends, Kombettu proudly presented this prestigious cricket tournament in the name of PPL 2024, Puttur Premier League 2024, under the great leadership of Mr. Bhanu Prakash and Mr. Ravi Salyan Padayur, along with their committee members. They are organized this fantastic cricket tournament in this beautiful junior college ground, Kombettu Puttur, and this tournament is now progressing along nicely. तो स्टेज पर विराजमान गण्यातीत गण्य अतिथियों के सम्मुख में यह श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करते हुए, और निस्संदेह यह श्रृंखला एक यादगार श्रृंखला होने की पूरी छाप छोड़ जाने की तैयारी में इस वक्त एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करते हुए. दोपहर का वक्त, दोपहर के ठीक 2 बज चुके हैं. सूरज लगभग आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छू चुका है, अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ. बिल्कुल साफ शुभ्र नीलाकाश, बादलों का नामो निशान नहीं है, और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा खेल के लिए एक पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर छा चुका है. और हल्की सी हवा मैदान की दाईं से बाईं और इस वक्त गुजर रही है, और ये जो हल्की सी हवा इस वक्त गुजर रही है काफ़ी हद तक खिलाड़ी और दर्शकों को इस भीषण गर्मी से यहाँ पर राहत दिलाते हुए. तो इलाज अभी भी जारी है बल्लेबाज सारिश के पैरों में, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है. तो गेंदे इस वक्त बाकी 2, और इस मैच के बाद इस श्रृंखला के बी ग्रुप का अंतिम लीग मैच, द लास्ट मैच ऑफ द लीग स्टेज इन ए पूल बी विल बी प्लेड राइट आफ्टर दिस मैच बिटवीन Icha Lions Bappalige versus Star Strikers, and because of that I request all the players of these two teams please to be reported here to make a sign in the official chart. और इस वक्त शायद सारिश अपने पैरों में काफ़ी हद तक बाधा, काफ़ी हद तक दर्द, चोट महसूस इस वक्त करते हुए, चोट लगी हुई है, काफ़ी दर्द वो महसूस करते हुए पेविलियन की ओर, दूसरे खिलाड़ी के सहारे में वो पेविलियन की ओर इस वक्त कदम बढ़ाते हुए एक बेहतरीन पारी अपनी टीम को खेलने के बाद अब उनका स्थान ग्रहण करते हुए, इंजर्ड चोटिल होकर इस वक्त वापस लौटते हुए सारिश और उनका स्थान ग्रहण करते हुए नए बल्लेबाज अशोक इस वक्त उनके बचे हुए 2 गेंदों का सामना करने के लिए इस वक्त क्रीज की ओर कदम बढ़ाते हुए. तो देखते हैं इन बचे हुए 2 गेंदों में बल्लेबाज और कितने रन अपनी टीम के लिए बटोर पाते हैं. और धनुष इस वक्त अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अशोक के लिए अगली गेंद. काफी दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण में यहाँ पर दिखाई देता हुआ, और अगली गेंद लेकर धनुष इस वक्त तैयार. ये गेंद अशोक के लिए एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, और नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज वांट टू कीप द स्ट्राइक, दूसरे स्ट्राइकर ने छोड़ पर दौड़ा है, आसान सा रन आउट नॉन स्ट्राइकर पर होता हुआ. एक गेंद व्यर्थ, बेहतर गेंद थी गेंदबाज की. लास्ट बॉल नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स, और अंतिम गेंद का सामना करने के लिए इस वक्त जमाल, और इंतजार है इस वक्त नंबर 7 बल्लेबाज का. Jamal the striker and Dhanush the bowler, and the last ball of their innings is now coming up. Dhanush to Jamal, अंतिम गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को ड्राइव कर दिया, ऑफ द टॉस गेंद जाती हुई डीप इन विकेट पर एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, दूसरा रन आसानी के साथ पूर्ण कर चुके हैं. कपल ऑफ रन्स टू एंड देयर इनिंग्स. The stipulated overs are completed. They finished with the 73 in fact. For the loss of 4 wickets in the stipulated 7 overs, and now they set a huge victory target of 74 runs in front of United Puttur to win this match. And as far as the required run rate is concerned, just over 10.5 runs per, they have to score for victory with the help of 10 wickets. They have to score, the present equation shows for them 74 the target in 7 overs. United Puttur have to score, and let's see can they reach the target or not.
तो उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर यूनाइटेड पुत्तूर की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಚ್ಛಾ ಅಲಯನ್ಸ್ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಬಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ವಿಭಾಗದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವು ಇಚ್ಛಾ ಅಲಯನ್ಸ್ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಚ್ಛಾ ಅಲಯನ್ಸ್ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ in the next match. And for the next match, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign the official chart. So back to this game, 70 for the target, and let's see can they reach the target or not for United Puttur. And for the next further comments, I'd like to invite my friend Satish in English when the innings of United Puttur will going to start right after the short break. Thank you. So thank you very much, Gopi. And once again, it's going to be a high-scoring game. 73, which is the total score, and the 74 targets set by the team Friends Kabaga against United Puttur. And opening batters came into middle, and again Altaf Walpadi will go into test his luck. After that, he got out in first delivery in the two matches. But certainly this match is definitely going to be a very important match, and I hope that Altaf Walpadi will not going to continue the mistake what he did in the previous two matches. Two Altafs are in the middle, Altaf Walpadi in the strikers and Altaf Basavanagudi in the non-strikers, and quite understandable they wanted to exploit that fielding restriction. First ball across, I wanted to get that one again. Opportunities created for the run out. It's going to be one more golden duck if Altaf Walpadi just wanted to get that single there where there is no single at all, and leg by call by umpire. Directed coming from that fielder, and because of that directed, I think they got opportunity to cross off for a single in the form of overthrow. One without loss of any wicket, and Altaf Walpadi quite hardly the managed to complete that first run, not from the bat but from the extra leg by. One without loss of any wicket. A strong breeze is passing in the middle, and absolutely that shows a little bit encouragement for the batter to get the strokes in the onside region. And Munir is a man who got runs in the tournament so far, even he bowled very well. And again he is bowling second time in this over. Right arm over the wicket. This time a slog sweep comes into play. Didn't quite got that one right from the middle of the bat, but good enough for him to get that couple of runs before the fielder from square leg to run back down to deep square leg region. Ample time for the batter to complete that two valuable runs. Slog sweep shot attempted by Basavanagudi, one of his favorite, just like what Munir is playing, that kind of cricketing stroke, and same technique is implemented
but didn't got that much of a good timing in that shot, but good enough to get a couple of runs. 3 without loss of any wicket, third time in this over. Bounce right up over the wicket. Again wanted to get that one in this onside region. Opportunity of run out, which is a little bit created. That square leg region, fielder feels the ball, returns the ball quickly to the hands of the bowler, but not good enough to stop the single from this to batter. With that single, Scober moves on to 4 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. Still a long way to go. It's absolutely a 74 huge runs they wanted to get if they wanted to be in the semi-final, and United Puttur have to get some runs from the bat of this man. He is known to be absolutely one of the destructive batsmen in present cricket. That is Altaf Walpadi. Altaf Walpadi, even though didn't got enough runs in this particular tournament, but he is a kind of batsman loves to play in the very important matches like the quarter final and the semi final. This definitely going to be just like a quarter final, because winning team will going to get the place in the semi final. Munir balls. Altaf drives that on firmly down to deep long, and what we are talking about, and what a fantastic piece of fielding by the fielder. Opportunity of run not created, but that is in the non-strikers end. That is in the non-strikers, and Altaf Walpadi, he's been out of the crease for a long way. But Munir just wanted to thinking about the run out in the strikers, and just a little bit of absence of mind given opportunity for Altaf Walpadi back in that crease in the non-strikers end. Otherwise going to be one more disappointment finish for Altaf Walpadi. And in this particular match, certainly he is dealing with some luck, as 2 opportunities created for the run out, which is missed out. But what a great piece of fielding by the fielder at deep long on. Low hit once again. He's been outstanding in this tournament as a fielder inside the ring, even outside the ring in the outfield. He's been outstanding. What could be a certain boundary there? The fielder has really got a fantastic athletic run there down to deep long on to stop that boundary. So that will going to lift the spirit of the bowlers, the kind of commitment from the fielders. Munir to continue. Right arm over the wicket. Balls Basavanagudi. Basavanagudi wanted to get that one in the onside region, one of his favorite shot. But this time Munir pitching the ball a little bit outside the line of often, so that's so difficult for the batter to go for the slog sweep shot. Missed it completely. No damage done. Scoreboard remains on 5 on the board without loss of any wicket. Munir, final time in this over. Right arm over the wicket, drives that one down to mid-wicket region. Low hit, one of the safest pair of the hands. No question of getting a couple. Have a look at the throw from this man. Absolutely has got a good arm, and got ball went straight to the hands of the bowler. The tidy over which is comes in and for Munir, and being the most experienced campaigner, Munir again is showing all his experience in the power play over, and making things a little bit difficult for the both Altaf Walpadi and Altaf Basavanagudi. Only got 6 runs in that first over. That shows Munir how well he managed to tighten up the screws in this first over. So 73, which is 74, which is going to be a target. 6 which is deducted. That means 67 more runs, 68 more runs required for the victory in the remaining 6 over. 68 required from 6. That means 36 possible delivery remaining, excluding wides and no balls. And wait and see how well the team United Puttur will going to get that huge runs. The bowler will going to continue. Ashok from the far end, and Altaf Basavanagudi is on strike with the jersey number 33. This time lifted that one down to deep long on 1 bounce, 2 bounce into the fence for 4 runs. Trying and trying in the first over, but didn't got that much of success. But in this particular over, the first delivery, and Basavanagudi not really taking a time to dispatch that one down to deep square leg boundary for 4 runs. Again, that is the direction of the wind I already mentioned towards the onside region. So that is encouragement for the batter to get that one into that area. There is no body out there in the deep. Because of that power play, we can find only 2 fielders in the deep. That is a deep long on and a deep mid wicket. Little margin for error to ball that line to the caliber of the batsman like Basavanagudi. They played a very good innings in the previous match. Scoreboard jumps into 10 on the board. This is Msichet plays it to quite right in the gap with the fielder behind the ball. Will it go into a boundary here? Yes, it is. A second boundary.
Back-to-back 2 boundaries. Basavanagudi is on fire now in the second over. Two different cricketing stroke coming from the bat. One is orthodox slog sweep shot. Second one is unorthodox slog reverse sweep, which is came from right from the middle of the bat of Altaf Basavanagudi down to deep backward point boundary for 4 runs. Runs started to flow in the second over of the power play. Needed to be, because we are chasing a 74 huge run. They need to capitalize this 2 over of the power play. After that very economical first over of the power play, then yes, certainly the Basavanagudi realizing that no way to thinking here. They just wanted to talk with the bat, and 2 back-to-back boundaries. Will it going to be a third? Wait and see. Ashok a little bit under pressure. Right arm over the wicket. This time Basavanagudi going over the top of the infield. Down to deep cover point fielder. Fielder chasing the ball. Ball winning the race against the fieldsman. Going to be a third boundary. The back-to-back 3 boundaries. This is a hat-trick boundary what we are talking about as Basavanagudi started to freeze his arm in the second over of the power play. Excellent cricketing stroke. 2-3 different cricketing stroke. One down to deep square leg as a slog sweep shot. Second one is unorthodox as a reverse sweep down to deep backward point. And the third one is a much better than the 2, because that was an exquisite, lovely lofted cover drive over the head of the cover point fielder for 4 runs. Now scoreboard now moves on to 18. That means they have to get another 56 runs in remaining 33 deliveries. Match is open now for the team United Puttur as well. But these 3 boundaries is not good enough. They need to convert that 3 boundaries into good innings, big innings, if they wanted to win the match for the team United Puttur. Ashok under pressure. This time he lost it. This is going to be a monumental. Absolutely, he's hammering it down to deep long on for a huge 6. This is a biggie. 4, 4, 4 and a 6. 18 runs in just 4 deliveries. That shows how aggressive he's been. He's not punishing the bowler who is bowled the bad line, but he's punishing the same bowler who bowled fantastically in the previous matches. Ashok, who bowled 2 very good economical overs in the previous match. But he's just getting that bowler to get some acceleration for his team. He's batting on 22, and it took just 8 deliveries to get that 22 runs. That shows this explosive batting is absolutely destructive now. Ashok, 5th time in this over. Right arm over the wicket, the same treatment. This is going to be one more. The runs are coming like a fast flowing waters of the rivers. 2 sixes and 3 boundaries in a 5 deliveries. Can you believe this? Altaf Basavanagudi is on fire. We are just talking about Altaf Valpadi, but now Basavanagudi just sending a message for the commentator. Let's look at me. I am also has got ability, the potential of playing a big shot like Altaf Valpadi, and absolutely it was really entertainment. And innings coming from the blade of the batter Altaf Basavanagudi. 3 boundaries and 2 sixes, and last delivery is in progress. Ashok, 30 is a total score. This time outside the line of leg stump. Punishable not from the batter but from the umpire because of that line which is outside the line of leg stump. That shows the pressure for the bowler. Absolutely, why not? After hitting 3 boundaries and 2 sixes, any bowler definitely going to be under pressure. Last time in this over. Right arm over the wicket bounce. Basavanagudi wanted to go for the one big shot here. Not happy with himself. The first dotted delivery of this over. So absolutely a very expensive and productive over for the team United Puttur in that second over of the power play. Basavanagudi got a 24 valuable runs by hitting 3 boundaries and 2 sixes in that over. The match definitely now going to be anybody's game. 43 now required from remaining 30 deliveries. 5 overs remaining, 30 balls. That was we're talking about legal deliveries excluding wides and no balls.
and in that they need to get 43 runs. The series now entering into the ground. Will it going to be lucky for the team? Wait and see, because he is the man. He got two sixes in the last over, and back into pavilion as retired Hart, but they back into the game, maybe thinking about, yes, now time for me to have some game plan here to get these two out of this, get this two out of batter out of these two. And but Basavanagudi, certainly the man, is on fire. And now Altaf Walpadi back on strike. The fielding restriction is over after that power play. The fielder stayed away, one at deep square leg, one at mid wicket at long on. Long off is there, one fielder as deep extra cover. There is a 5 fielders in the deep inside the ring. There is a fielder at short third man, at a short cover point. In the onside there is short fine leg and short mid wicket. Altogether 5 men in the onside region, 4 men in the offside region. Very defensive field set here. Mansoor to starts his first over, third over. Starts with the warm-up delivery of the afternoon, and one more extra, then one more run with it added to total. Their score numbers on to 32 now. Munir, little bit correction, is the bowler. It's not Masood. Munir bowling his second and last over of his quota. This time nicely plays it down to deep long off region. Sensible batting there from Altaf Walpadi. Now he's seeing that even though he's a very big hitter of the ball, but quickly realizing that this is a day belongs to Basavanagudi, so that my job is to pick the single. I wanted to get Basavanagudi back on strike as much as possible. So Munir is going to be a very good contest. Who bowled a fantastic first over, bowling right arm. Over the wicket to Basavanagudi. Basavanagudi wanted to go for the expansive drive. Missed it completely. Wicketkeeper fumbled, but no question of any run. Altaf Basavanagudi, Altaf Walpadi is not interested because he knows that Basavanagudi is in a very good nick, so that wanted to him to take Munir as much as possible in this over. Slower one, change of pace, lovely delivery there from Munir. Absolutely good change of line, as well as the variation we can see in that delivery. Slower one, very slow indeed. That was one of the good weapon to use whenever the batsman going after you. Bowling that slow delivery is definitely going to be more effective, as Munir bowls a fantastic slow delivery. This time driven up easily and quite safely. Good piece of fielding there by the fielder. Excellent field. Jamal is one more very good fielder in the outfield. Of course, the team has got a fantastic fielding department. Friends Kabaka. So far, I'm watching. This team has got a really very good fielding unit, and what could be a certain boundary there, and a very good piece of fielding there by the fielder. Again, chip that one, and the air ball. They're going for the quick single, chance of runner directly. That might be just a curtain in the innings of Altaf Walpadi. Ball just misses the stump, maybe, but a little bit late to approve that bails from the stumps. They completed a quick single and risky single. With that single score, moves on to 35, which is the total score. 39, what they really wanted to get in the remaining deliveries. Munir, right arm over the wicket, bounce. This time, chip that one. This is an absolutely fantastic helicopter shot. My goodness, one of the best stroke of the day, number 2, I want to say, because he played that one effortlessly, isn't it? Just a roll of the wrist which comes into play, and have a look at the ball which is travelling there into long way down to deep long on for a huge 6. Over number 3, which is comes to an end, the treatment which is required in that last delivery, because this is absolutely tidy over until that 5 deliveries, but 1 delivery that in this particular over is good enough for Altaf Basavanagudi to get that into deep long on for a huge 6. The total score is a 41 after completion of 3 overs, and he himself is scored 37 runs. That shows that one-man army. This is absolutely one-man army. Altaf Basavanagudi. The name we're going to remember here if it completes a match for his team, because another 32. 33 runs required for the victory. Now Altaf Walpadi joining the party with a huge one.
Ball is just after hitting the branches of a tree, landing into the dugout of the opposition team. And it's not a good to see here. Absolutely instrumental cricketing stroke coming from the bat of Altaf Alpadi. And scoreboard jumps into 47. My goodness. Can you believe this? Then Franz Kavaka will, captain will go in thinking about then what kind of runs we need to set the target for the teams like United Puttur. After getting the 73 runs, still it is going to be a very short for the batters like Altaf Walpade and Altaf Basavanagudi. They came into middle as opener batters and they are dominating, absolutely dominating. Driven that one firmly down to Widish long on region. Oh, Rohit, what we are talking about, one of the safest man of the hands. Not Rohit, Ashok is not having a good time because after he has been punished badly by the Basavanagude again in the deep long on region. He make a absolutely sloppy fielding there in the deep long on. What could be a certain single score, but the ball went into the boundary. 50 comes off. 50 comes off here for United Puttur and scoreboard is now 50. 1 on the board. 23 required again. It's going to be a huge one. One more big six coming from the Altaf Walpadi. Now after Altaf Basavanagudi, now Altaf Walpadi is saying that you take a rest. I will do the job now because I'm also Altaf. You are also Altaf. That's the difference between that is the location. That's Basavanagudi and Walpadi. And absolutely fantastic. It's going to be a very entertainment for the crowds in the very hot afternoon. Again, outside the line of off stump going to be, oh my goodness. This time Altaf Walpadi is very much interested to get some big shots because of that wide which is signaled by umpire, that 1 + 1, 2 more to the total. There will be a single there, but Altaf Walpadi is not interested, but Basavanagudi asking him to come and take the single. 59, which is the total score. This time drives that one powerfully back to bowler. Off stop by the bowler on his follow through and good enough for both the batters to complete the single. With that single score, but moves on to 60. And 13 more runs required for the victory. 14 lead to correction. This time top edge. Opportunities created will go into a chance. No, it's a 6. Even though mistimed cricketing stroke will go into the fence. My goodness, scoreboard jumps into 64. 66 lead by correction. 8 runs required for the victory. One of the quickest chase, I want to say. 2 deliveries left in this over. Six boundary, wide +1, then single, then 6. 4 delivery. 6, first ball 6, second ball 4. Five deliveries, rest 2 sixes. Altogether 3 sixes in this over. Yes. 1 boundary, right. Yes, Altaf Walpadi, agree with you. He is not a very good striker of the ball, but he is a very good mathematics. Is a very good in mathematics. As accounting the ball is concerned, again they wanted to go for the reverse stroke, but they were going to get a single, and with that single score, but now moves on to 67. 7 more runs required for the victory. So I request both the captains for the next match, each alliance Bappa League as well as the Star Strikers, the captains, please be reported here for the tossing ceremony. This has been unbelievable chasing, one of the best chases of this PPL, Puttur Premier League 2024, which is proudly organized by Junior Friends Kombettu in this the beautiful Taluk Cricket Stadium. They won that one down to mid-wicket region for a easy single. With that single score, but now moves on to 68. That's 6 more runs required for the victory. Basavanagudi. Lovely delivery indeed. That ball coming into the batter. The batsman wanted to get that in the offside region. Not quite getting that one on the film of the bat. And there's no damage done. Ija.
balls. This time Altaf Basakonandi wanted to go for the switch it, and very good footwork there by Shafi in the negation, and just returns the ball not from the hand but using his two legs with that absolutely twisting legs to return the ball. Again, lovely delivery, little extra bounce here for Ija, and so that Altaf Walpadi couldn't manage to just that bounce of the delivery. So very good comeback for Altaf Walpadi. Is out of form in this match. This time driven that one upishly, and lovely piece of fielding there by the fielder Lohit is in that deep mid wicket region. So that one more run with that score 70 on the board. Just 4 runs required for the victory. This time, yes, they wanted a single, but Altaf Walpadi is not interested. Good over. So compared to the last 4 overs, this is a much better over. Just 3 runs coming from that over. The bowler will go into ball. This is going to be a wide delivery. So wide means one more added total with the addition of that single scoreboard moves on to 71. 3 required. Again, one more wide. That means the bowler really helping that opposition team to get that winning runs. Altaf Walpadi and Altaf Basavanagudi, they are finishing the match. And one more single been added to total. Then Walpadi will going to get the single. Then now Basavanagudi, because he's deserved. He deserved that he wanted to finish the match. And now he's become a left-handed batsman. And very interesting. This time, just like left-handed batters, yes, playing that slog sweep, and he finished the match in a style. Absolutely destroying the bowling attack of the opposition. That one of the best days, I want to say, in this particular PPL, and they are entering into the semi-final. Team Friends Puttur, they enter into the semi-final after defeating Friends Kabaka by huge margin, 10 wickets victory. It's a huge victory. And certainly it's a disappointment for Friends Kabaka after getting a 73 massive total, but that becomes very, very short. Just I want to see that both the batters, how many runs they scored. Ashraf, Altaf Walpadi and Altaf Basavanagudi. Altaf Basavanagudi scoring one of the highest individual score of this tournament, unbeaten 41 runs. And Altaf Walpadi scored 28 runs, and both the opening batters, Altaf Basavanagudi and Altaf Walpadi, finishes the match in a style with absolutely fantastic partnership, unbeaten 76 runs, and they deserve the victory here. So that's it for the very, very good match. And next match will be played between H Alliance Bapalige versus Star Strikers. And for that, another quarter final. Actually, it's just like a quarter final, because winning team will going to get the place in the semi final. And wait and see which team will going to win the match. And we'll take a short break here. And after short break, my friend Gopi will going to take over the microphone after a long time. So now it's a time to announce the man of the match. It's none other than only the one who played an explosive knock with some enterprising cricketing stroke. He played some absolutely entertainment for the for the cricket lovers. Not only the cricket lovers, those who are watching here in the ground, but those who are watching live telecast of this cricket tournament. Definitely, they're 100% they entertained with the batting of Altaf Basavanagudi. So that I request Altaf Basavanagudi, please come here and collect your man of the match award from our chief guest with the cash prize of rupees 300 and medals, and along with that he will going to get 2 liters of Mirinda in this hot condition, and along with that he will going to collect very attractive memento as well. So that I request Altaf Basavanagudi, please come quickly here and collect your man of the match award. Thank you.
So Altaf Basavanagudi receiving the man of the match award for his wonderful knock of 41 runs unbeaten he scored. And because of that fantastic batting knock, he receiving the man of the match award from Mr. Santosh, the proprietor of Santosh Jewelry Works, distributing the man of the match award for Altaf Basavanagudi for his wonderful knock of 41 runs unbeaten. So now ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಬಿರ್ವಾ ಇವರಿಗಾಗಲೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಬಿರ್ವಾ ಇವರಿಗೆ PPL ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಬಿರ್ವಾ. So the last league match of the league stage is now going to start between Icha Lions Bappalige versus the Star Strikers, and news is here from the center that the captain of Icha Lions Bappalige are won the toss, and I think he elected to bat first after winning the toss. Right, the last league match of the league stage is now going to start between Icha Lions Bappalige versus Star Strikers, and Icha Lions Bappalige after what the draw they elected to field first Arshad and Harsha, the openers for Icha Lions Bappalige. Aman in fact the openers and Harsha and Aman the openers. Meantime the ball is taken by Nitin. Starts the fresh proceedings from that side end, and the first ball of the last league match of the league stage is now coming up. Winners of this match will qualify for the semi-final of this competition, and United Puttur already qualified for the semi-final from B pool in the previous match against Friends Kavaka. They defeated handsomely by 10 wickets because of that two Altaf's efforts, Altaf Walpadi and Altaf Basavanagudi. And now this match starts. First ball, पहली गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को रिवर्स शॉट इस वक्त खेलना चाहता, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच
बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर। और द्वितीय सेमीफाइनलिस्ट के रूप में सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए इस वक्त संघर्ष यहाँ पर शुरू हो चुका है इच्छा लायंस और स्टार स्ट्राइकर्स के बीच में। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, फुल टॉस बीमर के तौर पर गेंद थी, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है इच्छा लायंस के लिए। 1 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। नितिन को टीम के अन्य खिलाड़ी इस वक्त कुछ समझाते हुए कि किस सही लेग और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करनी चाहिए। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, फील्डर थोड़ी से पीछे तैनात, वाइड स्लॉग ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। ऐसा कहना पड़ेगा गेंद को स्ट्रोक्स को चेक कर लिया था अंतिम क्षण में, और आखिरकार गेंद वाइड स्लॉग ऑन फील्डर के आगे टिप्पा खाते हुए 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। अमन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त प्रगति पर। और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज नितिन गेंदबाजी करते हुए इस वक्त फुल टॉस, बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्ड मैन पर, रन के लिए दौड़ पड़े, और इस बीच क्रीज पर वापिस लौट चुके हैं या नहीं, जी नहीं, लौटने में असफल, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 1 यहाँ पर गिर चुका है। अमन ने गेंद को खेलना चाहा था, बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, और इसे बिना देखे अमन ने रन लेने की हड़बड़ाहट दिखाई, और कोई मौका नहीं उन्हें क्रीज पर वापस लौटने का। सीधा थ्रो पहुंचता हुआ इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में, और विकेट कीपर ने थ्रो को रिसीव करने के बाद तेजी के साथ विकेट यहाँ पर चटका दिए, और अमन का विकेट यहाँ पर दौर्भाग्य के साथ गिर चुका है। 2 रनों के ऊपर पहला विकेट खो चुका है, इच्छा लायंस पर पड़ गया। इट्स 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तो नितिन गेंदबाजी करेंगे इस वक्त नए बल्लेबाज जाबिर, जो कि क्रीज पर इस वक्त मौजूद है। और पहला विकेट गिर जाने के बाद कुछ हद तक दबाव इस वक्त बल्लेबाजों के ऊपर दिखाई देता हुआ इच्छा लायंस बपलिगे के, और इस बीच नितिन गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और नितिन दाहिने हाथों पर द विकेट स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, रन से इस बीच नहीं मिलेगा, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 2 रनों पर। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाज नितिन इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, हालांकि एक वाइड जरूर उन्होंने इस ओवर में फेंकी है, लेकिन उसके अलावा एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला वो यहाँ पर जारी रखते हुए। और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, इस बार टॉप एज, लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद जाती हुई, 1 बाउंस इनटू द फेंस फॉर अ बाउंड्री। टॉप एज पर गेंद टकराई थी, फुल टॉस के तौर पर गेंद थी, लेकिन 20 गज के दायरे के बाहर कोई फील्डर मौजूद नहीं, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट पर, और गेंद एक टिप्पा खाने के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस आसानी के साथ सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर, और जाबिर का खाता यहां पर खुल चुका है। इट्स 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, जमीन के सहारे गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहा, ठीक तरह से मोड़ नहीं पाए, गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो एक सफल ओवर यहां पर नितिन का समाप्त हो चुका। अगर उस एक चौके को एक्सक्लूड करके निकाल कर अगर देखा जाए तो बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में नितिन ने की है। पहले ओवर के बाद मिक्स स्टार्ट, जिस अंग्रेजी में कहते हैं मिश्रण भरी शुरुआत, इच्छा लायंस बप्पलिगे इस वक्त कर चुका है। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट स्कोर्ड बाय the batsmen of Icha Lions Bappalige. After being won the toss and elected to bat first, they made a mixed start. So Chetan now brought into the attack, and the second power play over of their innings is now going to begin. He'll start the proceedings from that side end.
और बाएं हाथ के बल्लेबाज इस बीच हर्षा सामना करने के लिए तैयार। हर्षा के लिए लॉन्ग ऑन बिल्कुल सीधा इस वक्त तैनात, लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडर और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, शॉट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में गेंद और इस बीच वाइड का इशारा अंपायर द्वारा और वाइड किस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 7 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर, 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ दिस सेकंड ओवर। और इस बीच चेतन अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज हर्षा के लिए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतर गेंद थी, एक्स्ट्रा क्विकर, द बॉल मिसिंग जस्ट साथ ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 7 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, रिवर्स शॉट स्वीप करना चाहता गेंद को अंतिम अक्षर में, चूंकि एक्स्ट्रा क्विकर गेंद बिल्कुल जमीन के साथ आते हुए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए इस वक्त गेंदबाज स्ट्राइकर्स के और इस बीच गेंदबाज चेतन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली गुड वन दिस टाइम। एक बार फिर से डॉट गेंद, 3 डॉट बॉल्स इन अ रो एंड स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बॉलर बैट्समैन नाउ और 3 लगातार डॉट गेंदें एक वाइड फेंकने के बाद इस वक्त चेतन फेंक चुके हैं हर्षा को और इस बीच अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर, 1 रन का इजाफा, ठीक तरह से गेंद को बोल नहीं पाए थे और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 8 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर और इस बीच चेतन एक बार फिर से फील्डिंग का मुआयना करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। जाबिर इस वक्त सामना करते हुए चेतन की गेंदों का, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रन्स इस वक्त सिंगल्स के रूप में बनते हुए यहाँ पर इच्छा लायंस बप्पा लेके के लिए और चेतन फिर से एक बार तैयार। यह गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, लगभग गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद दोबारा उनके बल्ले के ऊपरी भाग पर टकराई और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। 1 या 2 टिप्पे के बाद रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। लास्ट बॉल रिमेनिंग, अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को मोड़ना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, फैंटास्टिक डिलीवरी एंड अ फैंटास्टिक ओवर हैज बीन came to an end. 2 overs gone and Ichalais, the batsmen of Ichalais Bappa League, after completion of 2 overs, they are still searching for the right track. Managed to score only 9 runs on the board for losing 1 wicket, and this is an absolutely fantastic start for the bowling department for star strikers. And still in overall calculation, it's going to be 5 overs remaining in their innings. तो यहाँ पर हर्षा के लिए एक इनाम इस वक्त घोषित किया गया है। हर छक्के के लिए 200 रुपए का नगद पुरस्कार हर्षा के लिए और हैट्रिक के लिए 500 रुपए का नगद पुरस्कार यहाँ पर घोषित किया गया है हर्षा के लिए। और देखना यह है कि हर छक्के के लिए जो 200 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया गया है, क्या उसका फायदा हर्षा यहाँ पर उठा पाते हैं या नहीं। फॉर एवरी 6 देयर विल बी 200 रुपीज कैश प्राइज अनाउंस्ड फॉर हर्षा फॉर एवरी 6। और जहां तक का सवाल है हर्षा का, तो देखते हैं हर्षा यहाँ पर इस मैच में छक्का लगा पाते हैं या नहीं। तो इस वक्त तीसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ, थर्ड ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स। तो ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಬಿರುವ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಬಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಬಿರುವ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ. ತಮಗಿದು ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಬಿರುವ for this tournament. First ball improvisation, not quite mid wicket, this could be in trouble at the not striker end, लेकिन एंड मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित थ्रो अगर रन स्ट्राइकर एंड पर पहुंचता तो शायद
कुछ बात यहाँ पर बन सकती थी, लेकिन थ्रो पहुंचा इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर और इस वजह से बल्लेबाज क्रीज पर वापिस लौट चुके हैं और नॉन स्ट्राइकर एंड पर कोई क्षति नहीं बल्लेबाज के लिए। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, तैनात राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम द बॉलर्स ऑफ स्टार स्ट्राइकर्स नाउ। और बल्लेबाज को कोई रूम या विड्थ इस वक्त प्रदान नहीं कर रहे कि बल्लेबाज खुलकर स्ट्रोक्स यहाँ पर खेल सके। और फिर से एक बार हाजिम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए और 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका। फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं और गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद बेहतरीन गेंद, फैंटास्टिक, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर और वाइड का इशारा इस बीच। गेंद तक पहुंचना चाहता, अंतिम क्षण में गेंद तक पहुंच नहीं पाए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और फिर से एक बार अजीम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार उछालना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, फैंटास्टिक डिलीवरी, सो फ्रस्ट्रेशंस फॉर द बैट्समैन। और हर्ष इस वक्त काफी डॉट गेंदे इस वक्त खेल चुके हैं, दबाव उनके ऊपर साफ नजर आता हुआ और एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज स्टार स्ट्राइकर्स के। और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद गेंदबाज अजीम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, इस बार गेंद को स्कूप किया है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर जी नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे, जस्ट शॉर्ट ऑफ अ फील्डर एट लॉन्ग ऑफ। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका। अब 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। स्टिल द बैट्समैन ऑफ इच्चा लायंस बप्पलिगे जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। और एक बार फिर से फील्डिंग में कुछ जमावट करने के बाद गेंदबाज अजीम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, इस बार जाबिर सामना करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार बेहतरीन गेंदबाजी, फैंटास्टिक डिलीवरी, जस्ट मिसिंग ऑफ सादी ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट। और गेंद का पीछा करना चाहता, चूके और गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे निकल गए विकेट कीपर के हाथों में। अंतिम बार इस ओवर में गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार बल्ले का भीतरी किनारा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका। इससे पहले कि शॉट स्क्वायर लेग पर फील्डर स्वयं गेंदबाज अपनी दाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के मुकम्मल यानी समाप्ति हो चुकी है। 3 गॉन 12 ऑन द बोर्ड, 1 विकेट लॉस्ट and this is a really testing time continuing here for the batsmen of Icha Lions Bappalige at this situation. Still in overall calculation it's going to be 24 balls remaining, 24 गेंदें बाकी। और जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है तो कम से कम 50 का आंकड़ा यहां पर पार करना होगा इच्चा लायंस बप्पलिगे के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें स्टार स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों पर दबाव डालना है जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे। So it's 12 for the loss of 1 wicket. 3 overs completed and the 4th over is now going to start in their innings. तो चेतन जिन्होंने अपना पहला ओवर बेहतरीन फेंका था, सिर्फ 6 रन उन्होंने प्रदान किए थे, नहीं माफ कीजिए, कितने रन प्रदान किए थे? 3 रन सिर्फ प्रदान किए थे उन्होंने अपने पहले ओवर में। और अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए। निस्संदेह ये मैच क्वार्टर फाइनल का महत्व इस वक्त रख चुका है, क्योंकि इस मैच में जीतने वाली टीम सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी इस श्रृंखला के। ये गेंद पहली गेंद थी, इस वक्त गेंद को खेला गली पर और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रारंभ हो चुका है। जाबिर और हर्षा का जहां तक सवाल है, रनों के लिए इस वक्त कड़ा संघर्ष क्रीज पर मौजूद है दोनों बल्लेबाज करते हुए और इस वक्त बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए गेंदबाज स्टार स्ट्राइकर्स के। और फिर से एक बार गेंदबाज
चेतन इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर गेंद जाते हुए इनटू द विकेट एरिया ही गेट्स एटलीस्ट कपल फॉर दैट और इससे पहले के डीप बैक और थर्ड मैन से फील्डर काफी लंबा दौड़ लगाकर डीप कवर पॉइंट पर गेंद तक पहुंचे गेंद को फील्ड करे थ्रो करे नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रन 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट पीपीएल 2024 पुत्तूर प्रीमियर लीग 2024 की शानदार प्रगति होती है जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति कर चुके हैं जूनियर रेफरेंस कोम्बेट्टू और लीग स्टेज का अंतिम मैच यहां पर खेला जाता हुआ और गेंदबाज चेतन दाहिने हाथ राउंड द विकेट ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा बेहतरीन गेंदबाज ये फैंटास्टिक डिलीवरी द बॉल केम along the carpet at the last moment and it went to the hands of wicket keeper and there is no possibility of any run स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर चेतन एक बार फिर से तैयार ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट जस्ट ओवर द कवर पॉइंट फील्डर सेट ही गेट्स अ सिंगल इन फैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को स्कोप किया था इस वक्त हर्षा ने और आखिरकार 2 रन वो बटोरने में सफल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 17 रनों पर बिना किसी नुकसान के जबकि 2 गेंदें इस ओवर में अभी भी बाकी एक धीमी प्रगति यहाँ पर करता हुआ इस वक्त इचालयंस बप्पड़ी गया और गेंदबाज चेतन अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार ये गेंद ऑफ द टॉस गेंद को खूबसूरती के साथ इस वक्त स्कूप कर दिया डीप मिड विकेट पर 1 रन के लिए दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े आसान सा रन आउट का मौका इस वक्त गंवाते हुए गेंदबाज थ्रो को रिसीव कर चुके थे और अंडरआर्म तरीके से निशाना उन्होंने दागा नॉन स्ट्राइकर एंड पर लेकिन उनका निशाना चूकता हुआ स्टंप्सों पर गेंद नहीं टकराई और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 19 रनों पर 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस और चेतन इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ राउंड द विकेट धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर खाली क्षेत्र ढूंढने में सफल ओवर की समाप्ति 4 overs completed and after completion of 4 overs still the batsmen of Alliance Bappalige searching for the right track they managed to score only 19 runs on the board for losing 1 wicket still in overall calculation it's going to be 3 overs remaining in the innings 3 ओवर का खेल यहाँ पर बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में Alliance Bappalige के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं और इस बीच 5वां ओवर शुरू होता है और इससे पहले कि 5वां ओवर शुरू हो माइक्रोफोन पर आगे को देखा हाल सुनाने के लिए अंग्रेजी में मैं सतीश को बुलाना चाहूंगा तो सतीश फर्स्ट 4 overs कंप्लीटली बिलोंग्स टू द बॉलर्स ऑफ स्टार स्ट्राइकर्स और बचे हुए 3 ओवर में जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है तो इस वक्त Alliance बप्पली के बल्लेबाजों को कम से कम 30 से 35 रन बटोरने का कम से कम 50 का आंकड़ा उनके टीम की कुल रन संख्या पार करती है निर्धारित 7 ओवर में तो यहाँ पर एक कुछ चुनौती भरा स्कोर खड़ा कर सकता है सतीश माइक्रोफोन पर आइए सतीश। So thank you very much, Gopi. Absolutely right that the struggle time continues here for the batters of Lions of Bappalige and Lions of Bappalige are really fails to roar in this first 4 overs, but they can bounce back just like you mentioned about the 3 overs going to be very important for Lions Bappalige need to play like a Lions if they wanted to back in the game. Here gets the first ball of the over number 5. It looks like he's gone, I think so. Yes, ball just hitting the off stamp. 1 more wicket is back into pavilion. We are just talking about the Lions have to roar, but here is the stars of the strikers really bowling some absolutely fantastic overs. 1 more wicket is back into pavilion and Lions Bappalige are deep in trouble. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಕದ್ರಿ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. So warm welcome sir for this prestigious Puttur Premier League 2024 which is proudly organized by Junior Friends Kombettu and a heartily welcome for Deepak Shetty Kadri as well as Prasad Kadri for this prestigious cricket tournament. So yes, coming back to this match and it's going to be a very late entry for one of the biggest lion
of Icha Lions Bapalige. That is none other than Arshad Bajal. And wait and see how Arshad Bajal will going to justify why he's been the icon player for the side. He need to play like a Lions if they wanted to get some good total here for the team Icha Lions Bapalige, because this is a just like a quarter final do or die match for both the teams. They wanted to do, because if they wanted to get in the place in the big semi-final of this prestigious Puttur Premier League 2024. The bowler will going to continue. Nitin got a breakthrough, vital breakthrough in the first ball. Second time in this over. Bowling with a short run off. Right now over the wicket ball. Arshad Ball again went for the expansive drive, but couldn't manage to get the ball into his bat, and couldn't. Definitely is not really having such a good time in the middle, and he misses the ball completely from the bat. Maybe he was thinking about he's not having the comfortable in that bat, so that is exchanging the bat, is getting the bat from his partner Arsha Padayuru. The two very explosive left-hand batters, but unfortunately Arsha couldn't manage to talk with the bat so far, and wait and see how Arshad Bajal will going to get going in this particular match. And yes, we're going to see again the bowler will go into continue. Nitin, third time in this over, will go into ball to the destructive left-hand batsman. This time, what you're talking about the destructive, but he played that one very high in the air. It's not good enough for him to get the distance. Again, one more disappointment end here for Arshad Bajal. This is absolutely a big fish in the net for the team of Star Strikers. This tossed up delivery from Nitin. Arshad just got that one in the just a wrist work comes into play. But this is a huge ground, isn't it? This is not a kind of ground we are seeing in that Mangalore, that the UCG cricket ground, not a huge ground, only the 40 to 45 meters to travel to get the distance. But if you wanted to get the distance in this particular cricket ground, you need to have some kind of power as well as some kind of timing is both which is required to get the distance. And Arshad Bajal, quite disappointment finish for him. One more big wicket is back into pavilion. The total score remains on 19. Scoreboard is not moving at all from the 19, and that might be the big problem here for the team of Star for Icha Friends Bapalige. They're not really get going, and that's only because of disciplined bowling performance, especially the Nitin. Absolutely got two huge wickets in this over. Either is a new batter in with just number 4 with a lot of responsibility. Not too many delivers remaining in their innings. Going to be a punishable, not from the batter but from the umpire. That ball is gone outside the line of leg stump by little margin for error, so that white call by umpire. With that single scoreboard is moving after a long time. It's 20. It's going to be a wide. This is a huge one going over the head of the bowler's batter, so that white call by umpire. With that wide scoreboard moves on to 21 on the board for the loss of 3 wickets. So very quiet cricket is going on. It's a lazy afternoon after that lunch break. Time is exactly 3 o'clock. Lazy afternoon in the sense some lazy runs which is coming here so far from the bat of team Icha Lions Bapalige. Driven nicely in the gap down to deep long on region, but this time only the single. Good piece of fielding by the fielder at deep long on. Just a single there. With that single score, but moves on to 22 on the board for the loss of 3 wickets in the over number 5 is in progress. Very hard to combine the runs against discipline, line and length, and against some very good piece of bowling performance so far from the bowlers of Star Strikers. Of course, Star Strikers got some star players in the side, and they bowl so far they bowled absolutely disciplined, line and length. Asha Padayuru came as an opener for the side. Still you need to talk with his bat. This time swings hard, and at last he got a huge one. This is one of the biggest six I want to say so far in this tournament, because that ball went out of the park. You were just talking about that this is a huge ground, I want to say. They almost had the 55 to 60 meters to travel to get the distance, but ball is going away from that. This is really a huge six from Arsha Padayuru, and he will going to grab 200 rupees already announced for every sixes, and every hat-trick sixes he will going to get a 500, and that will really going to be a huge one. Maybe that the 60 to 65 meter six came from the bat of Arsha Padayuru. At last he managed to get 1 6 from his bat.
This time lofted in the sense. It's a sweet sound you can hear, and ball that got the distance. The back-to-back 2 6s now from Harsha Padayuru. Now little bit we can see that the big Uzanas are coming around the ground because of that 6. .34 after completion of over number 5. It's a 34 on the board. Now some kind of comeback from Harsha Padayuru in this previous over with the 2 6s. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಕದ್ರಿ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ಸಾಹಿಲ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ Deepak Shetty Kadri as well as Prasad Kadri for this prestigious Puttur Premier League 2024 on behalf of Junior Friends Kombettu as well as on behalf of all cricket lovers. Now it's going to be a very good save. Might be ball is saved by the fielder, but umpire have to see that whether the fielder is gone over the rope or not. And Chetan straight away asking to give that third umpire because he is very good, confident enough that he saved that one. But umpire definitely will go into refer for the third umpire because maybe that a cone which is a little bit touched by the Chetan, and wait to see that whether after he's saving that ball while he's landing to that one, then you going to touch the cone or not. That's what umpire have to see. And after that saving, if he touches that cone, that might be the safe. But before having an attempt, he will going to touch that cone. That might be a 6 as per the rules and regulation of the cricket is concerned. And third umpire will going to see that whether the fielder Chetan really saved that one well or not. Wait and see. Well, coming back to this tournament, what we are talking about, the 2 days of a wonderful cricket tournament. It's not so easy to organize a cricket tournament for the 2 days. More than 200 days of efforts which is required for organizing such a huge cricket tournament. Thanks to the Junior Friends Kombettu under the great leadership of Bhanu Prakash as well as Ravi Sali and Padayuru, the 2 pillars of this cricket tournament with the support of all the members of Junior Friends Kombettu. They organized this cricket tournament, and this definitely going to be one of the most memorable cricket tournament as far as the history of in this Puttur is concerned. And we are going to witness now only 3 matches. After this match, the semi-final, then mega final will go into play, and the winner will going to get the huge cash prize of rupees 50,000 along with the very attractive Puttur Premier League trophy, and the runners will going to get 30,000 cash prize along with the very attractive PPL trophy. All the individual prizes will be given: the best bowler, best batsman, and the man of the match and the man of the series. And first trophy, which is donated by sponsored by Razak BH Bappalige,
and second trophy which is sponsored by Mahalingeshwara Tires. So thanks a lot. We are thankful and grateful for all the donors for your contribution for the success of this cricket tournament, and individual prizes which is sponsored by Abhiram Friends Puttur. Thanks to the proprietor of Abhiram Friends Puttur, Sahil, and the ball for the tournament which is sponsored by Vasu and Ashok Acharya, and trophies every team which is sponsored by Nuruddin Sports World. Now signal coming from the third umpire, it's a 6. So 6 which is signaled by umpire, so that it's going to be a total score now jumped into 40 on the board. This is outstanding comeback here by the batsman, and now the batsman after a long time either is got 6 from his bat, and because of that 3 sixes in a quick times, they managed to get that runs. This time he lost it, and he lost it in the handsomely. Down to deep long on boundary for a U6. So now either thinking about the acceleration, and all we can see the only 4 deliveries is just changing the complexion of this game, and scoreboard is jumps into 46 on the board. The over number 6 is in progress. Last 4 deliveries 24 runs, and last 4 overs they got only 22 runs. This is the beauty of cricket. One more. Looks like it's going to be a... Oh, got taken. No, he drops. And either will going to run for the single here. He thought it might be all over for him. But fortunately for him, that the fielder at deep long on is dropped the catch. It's not an easy one there for the deep long on. First he is thinking about the saving the 6. But by doing that, he is thinking about, yes, I can take the catch. But it's too late for him to grab that catch. And he's just missed it completely from his hand. And either got a single for that. With the single, scoreboard moves on to 47 on the board. Harsha Paddayuru. He's been cool and calm till the last 4 overs, but he started to roar like a lion in the previous over. Driven nicely, helicopter shot. Just a wrist work comes into play down to deep long on region to get the single. He's a very good striker of the ball. I watching him as a playing in a UCG cricket ground as well in Mangalore. He's once he get going, he's unstoppable. He's a good striker of the ball, but he takes his own time to settle down in the middle. But allowed to see that he at last he managed to get some big shots from his bat, and scoreboard numbers on to 48 on the board for the loss of 3 wicket. This time a slower one there from the bowler, but the ball is just missing the line. The punishment which is coming from the bowler and umpires, so that scoreboard numbers on to 49 on the board for the loss of 3 wicket. 1 shot of 50. This time lost it. This time lost it in a sense. Oh, one more fantastic save. Oh, opportunity catch as well. The fielder is trying his level better for the combination catch. After that, absolutely great effort. I want to see that fielder's name. I want to know the fielder's name. Jamal, I think so. He's a one more the good fielder. Not in the first time I'm seeing he's saving some runs, but in this big match, that was a must-win match, he is contributing for saving a 6 for his team. Absolutely saving of 5 valuable runs for his team. 50 comes up for the team at last, and 50 they came in this 6th over for Star Lions Bappa League against the Star Strikers. Again, that ball which is going to be a no ball called by umpire. Maybe the ball pitching outside the line of the pitch as for the rules and regulation of the present cricket is concerned. If the ball pitches outside the line of the pitch, it's going to be a no ball. So that's going to be a free hit delivery for Harsha Paddayuru. 51 is the total score. Harris need to survive. Again, driven that one rightly into the square leg region, but not more than a single. That coming back for the couple. Throw is not really having that much of enough power from the fielder, so that both the batters completed 2 valuable runs. With that 2 valuable runs, 6th over which is comes to an end. After completion of over number 6, it's 53 on the board for the loss of 3 wickets. 53 for the loss of 3 wickets. The last over will go into commence. The good comeback in the last moment for the team Icha Lions Bappa League. The back in the game with some absolutely
explosive cricketing stroke coming from the blade of Harsha Padayuru as well as Aider. Harsha is batting on 21, but he is looking so different batsman. Again going for the chance here for the fielder at deep extra cover to take the catch, but ball falling short of the fielder. One more announcement is made here for Harsha Padayuru. If you get back-to-back 2 sixes, he will going to get 500 rupees from Kiran Birwa. Announced that 500 rupees for Harsha Padayuru if he managed to get 2 back-to-back sixes. Manoj. Second time in this over. Last over is in progress. Total score 54. This time he lost it. Will it go into the 6 number 1? Yes, it does. What a magnificent struck. Absolutely incredible cricketing stroke coming from the blade of Harsha Padayuru is on fire. Now, 500 rupees what you are thinking about. If he manages to get another 6, he will going to get a 500 from Kiran Birwa. And 200 already there for the every 6. Already got 3 sixes means 600 rupees already in the pocket, but one more 6 in this next delivery. Take into that another 500 rupees into pocket plus 200, 700. That means this 6 has got a value of 700 rupees. Oh my goodness, top edge opportunity is created for the catch, but a ball which is landed safely. If you compare that the previous 6 we hit for the good delivery, but this is absolutely punishable delivery. Short pitch one, but couldn't manage to get that one from the middle of the bat. Scoreboard is 60 on the board. So 1000 rupees for hat-trick 6 from Kiran Birwa. This time he lofted. He lofted in the sense it's going to be a chance or not. Yes, it does. It's going to be a 6. Yes, it is. Another 200 rupees into pocket. It's a raining here in the form of 6s in this Taluk cricket ground. Scoreboard jumps into 66. Last 2 deliveries remaining. Will it going to be a hat-trick here? 2 6s which is required. Back-to-back 2 6s is going to be 500. One more opportunity is created. Again, didn't got that one right from the middle of the bat, but good enough for him to come back for the second. In comes a throw from the deep, but not good enough to stop the couple of runs here for Harsha Padayuru. And total score now moves on to 68. And last delivery remaining. What a good comeback. When the time of Gopi hand over the microphone to me, it's 17, I think so. And now it's a 60 plus runs on the board. That shows how quickly the game which is changed here. This time, it's absolutely, oh my goodness, it's a huge one. This is a biggie. And he finished the innings in a style with a huge 6. Harsha Padayuru played an absolute match of his lifetime. He played an innings of his lifetime, in fact, in this particular match. And I want to see how many 6 pitches came from the bat. The 5 6s from the bat of Harsha Padayuru. He started very slowly. If you see that, he got 7 to 8 runs after playing 12 deliveries. But after that, if you see this innings, quite a different one. Absolutely unbelievable comeback. The 4 overs 17, and after completion of 7 overs, it's 74. That shows that means 57 runs, which is came from 3 balls, 18 balls. They got 57 runs. This just shows how Arshad and Haider played that 3 overs. Absolutely unbelievable. But I am not saying that is good enough. Just saying that the previous match chasing, which is chased at 75 runs in 5.2 deliveries. But every game is not a same game. Different attack, different team they need to play. So that it's going to be a good comeback, I want to say, there from the Lions. Icha Lions Bappalige. At last the Lions managed to roar through Harsha Padayuru as well as the batter Haider there. They're really just changing the momentum with that
astonishing cricketing stroke. Absolutely played some mesmerizing cricketing stroke by Harsha Padayuru as well as Aider. We'll take a short break here in our commentary box. After the short break, my friend Gopi will going to take over the microphone in this most beautiful and very interesting match, because it's a match which is not yet over, because Star Strikers have to get 75 runs to win this match in the stipulated 7 overs, and it's going to be a more interesting. Meanwhile, we have another chief guest here in our main stage, Santosh Kanior and respected police here in our commentary box. Warm welcome, sir, for this prestigious Puttur Premier League 2024 on behalf of organizers. Junior Friends Kombettu will go to welcome you for this prestigious cricket tournament. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಕನಿಯೂರ್ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. So warm welcome, sir. So it's over to Gopi, and Gopi, it's an unbelievable comeback, isn't it? Never looks like even I thought that it might be a 45 to 50 runs at last if they manage to get, but it's a 74 runs. It's an unbelievable comeback, isn't it? But you can't say anything cricket. I already mentioned cricket is unpredictable game, and you can't say anything in cricket, because the perfect example, which is the previous match, 74, which is a total score, just a target is given to the team United Puttur, and 2 Altafs are finished the match in a 5.2 hours. That's why I'm saying that 75 might be a winning total, but we can't say that match is over, because star strikers, they got some star players in the side. They can bounce back with their bat if they manage to utilize their 2 power play overs. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, इस वक्त 4 ओवर के बाद माइक का जब मैं आपके हवाले सौंपा था तब स्कोर था सिर्फ 17 या 18 रन, लेकिन तब किसी ने भी पूर्वानुमान एक्सपेक्टेशन नहीं लगाया था कि बाकी के 3 ओवर में 57 रन बल्लेबाज बटोरेंगे इच्छा लायंस के, लेकिन दूसरे अंतिम 3 ओवर में मैच का तख्ता ही पलट गया और हर्षा, जिन्होंने एक बेहतरीन बल्लेबाजी के जरिए अपनी टीम को एक बेहतर स्कोर पर ले जाकर खड़ा करने में सफल रहे, और यहाँ पर 75 रन से जोड़ चुका है। 75 रनों का लक्ष्य है इस वक्त, 74 रन जोड़ चुका है, और 75 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना इस वक्त तक कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। पिछले मैच में जैसा कि आपने फरमाया, दोनों अल्ताफों ने मिलकर 74 रनों के लक्ष्य का पीछा किया था 5 या 6 ओवर में, और यहाँ पर खासकर 74 रनों के लक्ष्य तक जहां तक पहुंचने का सवाल है सतीश, तो इस वक्त 2 पावर प्ले ओवर का फायदा उठाना उनके लिए बेहद जरूरी यहाँ पर बन चुका है, और खासकर आजिम और प्रदीप जो इस वक्त सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर उतर चुके हैं, इनको एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर खासकर ऐसा कहना पड़ेगा एक्सप्लोसिव स्टार्ट, जिस अंग्रेजी में कहते हैं, विस्फोटक शुरुआत यहाँ पर देनी होगी, और देखते हैं यहाँ पर किस तरीके की बल्लेबाजी ये दोनों बल्लेबाज उठा पाते हैं, और खासकर किस तरीके का फायदा पावर प्ले में ये दोनों बल्लेबाज उठा पाते हैं। तो अमन इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए, और इस वक्त वो गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज आजिम के लिए, और अमन इस वक्त ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ, और ओवर की पहली गेंद लेकर अमन इस वक्त तैयार। पारी की पहली गेंद लेकर अमन इस वक्त तैयार आजिम के लिए, और तो इस वक्त जहां तक सवाल है, पहली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, इस बार गेंद को स्वीप करना चाहता, अंतिम क्षण में गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर। और जहां तक का सवाल है गेंद का, तो अगली गेंद लेकर इस वक्त अमन तैयार आजिम के लिए। निस्संदेह एक्सप्लोजिव स्टार्ट जिस अंग्रेजी में कहते हैं, जैसा कि मैंने और सतीश ने फरमाया, इस वक्त एक विस्फोटक शुरुआत की जरूरत है। ये गेंद लेग से बाहर डिफ्लेक्ट करते हुए खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, लंबा दौड़ फीडर लगाते हुए, लेकिन गेंद को रोकने में सफल, बेहतरीन फील्डिंग के जरिए इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर, काफी लंबा दौड़ उन्हें लगानी पड़ी, लगभग 20 से 25 कदम उन्हें दौड़ना पड़ा, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को सीमा रेखा के अंदर रोकने में सफल खूबसूरती के साथ, और सिर्फ 2 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ, और इन 2 रनों के साथ आजिम और स्टार स्ट्राइकर्स का खाता यहां पर खुल चुका है, और 2 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। फिर से एक बार अमन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रन बिना किसी नुकसान के, 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। पीपीएल 2024 पुत्तूर प्रीमियर लीग 2024 की शानदार प्रगति यहां पर होते हुए, और
गेंदबाज फिर से एक बार अमन्ना, गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाह, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली एट द लास्ट मोमेंट। और बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद गेंद शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्ड होते हुए रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर रुक चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर और अमन्ना फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए जमीन के सहारे गेंद को उछाला इस वक्त, लेकिन नॉट क्वाइट मिडल एट द लास्ट मोमेंट इज गॉन, ओनली अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों, कुल मिलाकर 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इट्स 4 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और अमन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार सामना करेंगे प्रदीप, जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं इस वक्त। अमन की गेंद का फील्ड में कुछ जमावट यहाँ पर चलते हुए, और अमन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रदीप के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग का मुआयना करने के बाद इस वक्त बल्लेबाज प्रदीप इस वक्त सामना करते हुए अमन की गेंदों का, और ये गेंद इस वक्त ये गेंद बेहतर, फैंटास्टिक डिलीवरी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन। इनफैक्ट इट्स मिसिंग 2 फॉर साथ ही ऑफ स्टंप। हालांकि क्रॉस एंगल पर कैमरा यहाँ पर कमेंटेटर बॉक्स रहने की वजह से ठीक से जज नहीं कर पाए कि गेंद कितनी ऑफ स्टंप से बाहर की ओर इस वक्त निकल चुकी है। और इस बीच 1 रन का इजाफा एक्स्ट्रास के रूप में स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर, 5 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और अमन फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, लेग स्टंप उखड़कर गिरता हुआ, और इसी के साथ यहाँ पर पहला विकेट गिर चुका है। प्रदीप की पारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। थोड़े से सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, अंतिम क्षण में गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेती हुई सीधे मिडल लेग स्टंप पर जा टकराए, और इसी के साथ प्रदीप का विकेट यहाँ पर गिर चुका है। 5 रनों पर पहला विकेट गिर चुका है, और ऐसा कहना पड़ेगा स्टार स्ट्राइकर्स आर नाउ लुकिंग इन ट्रबल। और पहला विकेट इस वक्त गिर चुका है। तो यहाँ पर अजीम के लिए एक इनाम इस वक्त रखा गया है। हर छक्के के लिए 500 रुपए का नकद पुरस्कार नाजिम आरके ने घोषित किया है, और ये इनाम सिर्फ अजीम के लिए लागू होता है। अजीम विल गेट 500 रुपीज फॉर एवरी 6 फ्रॉम नाजिम आरके, एंड देखते हैं वो इस इनाम का लाभ यहाँ पर उठा पाते हैं या नहीं। तो नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज चेतन, एक और प्रमुख खिलाड़ी इस वक्त जहां तक का स्टार स्ट्राइकर्स का सवाल है, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और गेंदबाज अमन एक बेहतर लेंथ और रन के साथ गेंदबाजी करते हुए इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज चेतन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद अमन की इस बार बेहतर, फैंटास्टिक डिलीवरी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी टू एंड द ओवर। द फर्स्ट ओवर completed, tidy bowling performance given by the bowler Aman in the first over, and after first over chasing the huge target of 75 in 7 overs which set by Icha Lions Bapalige, Stars strikers made a slower start. In fact, they managed to score only 5 runs on the board for losing 1 wicket after completion of first over. और जहां तक सवाल है इक्वेशन का, तो ठीक 70 रन और बनाने 6 ओवर में। द रिक्वायर्ड रन रेट इज नाउ गॉन अप टू एग्जैक्टली 11.66 रन पर ओवर। और निश्चित रूप से यहाँ पर लक्ष्य तक पहुंचना है तो इस वक्त चौके और छक्के, चंद चौके और छक्के यहाँ पर जरूर लगाने होंगे इस वक्त बल्लेबाजों को, स्टार स्ट्राइकर्स के। और गेंदबाज अरशद गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और फील्डिंग में इस वक्त जमावट यहाँ पर चलते हुए तो इस वक्त ओवर की पहली गेंद लेकर अरशद तैयार। और इस बीच पहली गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि और गेंद सीधे पहुंची शॉट स्कोर लेग पर। और जहां तक हर छक्के पर 500 रुपए का नकद पुरस्कार का सवाल है, तो आजिम के साथ साथ चेतन के लिए भी ये इनाम इस वक्त लागू किया गया। हर छक्के पर 500 रुपए का नकद पुरस्कार आजिम और चेतन को इस वक्त दिया जाएगा। नाजिम आरके इनकी ओर से गेंद को उछाला इस वक्त खूबसूरती के साथ, बैकवर्ड स्कोर लेग
गेंद को इस वक्त थोड़ी सी सफल होते हुए ऑन साइड पर स्कूप कर दिया खूबसूरती के साथ, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए, और ये उठानी भी चाहिए क्योंकि लक्ष्य इस वक्त काफी लंबा है उनके सामने। और 4 रन यहाँ पर बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं अरशद की गेंद पर चौका झड़ने के बाद आजिम, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। अरशद फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त, लेकिन गली की दिशा में गेंद पहुंची, 2 कदम आगे जरूर बढ़ा, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जा चुका है। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, तो स्कोर रुक चुका है 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, और अरशद फिर से एक बार अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज चेतन से कुछ बातचीत इस वक्त वो करते हुए, और धीरे धीरे अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए स्ट्राइकर एंड पर अंपायर इस वक्त विकेटों को सही करते हुए। अंतिम लीग मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट पुत्तूर प्रीमियर लीग 2024 PPL 2024, द लास्ट लीग मैच ऑफ द लीग स्टेज इज नाउ program it's last league match of this prestigious cricket tournament is now progressing here। और जहां तक का सवाल है अरशद का, तो अरशद इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हैं, बाएं हाथ राउंड द विकेट ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, इट कुड बी गॉन ओवर द नो इन फैक्ट ही कट्स ऑफ जस्ट इनसाइड द फेंस, और बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच सिर्फ 1 रन प्राप्त करने का। काफी दमदार स्ट्रोक्स था, लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं, तो इस वजह से 1 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ 2 अंकों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका, 10 रन बन चुके हैं। और दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। अरशद फिर से एक बार तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद एक्स्ट्रा क्विक एंड फैंटास्टिक डिलीवरी एंड इट बीट द शॉट थर्ड मैन फील्डर, इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। लेग बाय का इशारा, और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, और अरशद इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और दाहिने हाथ के बल्लेबाज आजिम इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए, ये गेंद बोल्ड आउट ऑफ स्टंप अप्रूटेड एंड एट लास्ट अरशद गॉट द ब्रेक थ्रू। That was an absolutely fantastic delivery, pitching right on the block hold, and his leg stump has been uprooted. So second wicket down, Azim departs, and now with this dismissal, I must say, star strikers are now looking in trouble. So over number second has been came to an end, 11 runs on the board, just 11 runs on the board, 2 wickets lost, and this is an absolutely really testing time continuing here for the batsmen of star strikers. Still they have a long way to go, 64 more runs now they have to score for victory in remaining 5 overs with a required run rate of exactly 12.80 runs per over. ಚೇತನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಚೇತನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸೊ 2 overs now completed, 5 overs remaining, 64 runs to get। और निश्चित रूप से यहाँ पर जहाँ तक कम बैक करने का सवाल है, तो इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के ही कम बैक करने में सहकारी यहाँ पर हो सकते हैं स्टार स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को। तो देखते हैं अगला ओवर कौन सा गेंदबाज यहां पर शुरू करते हैं। तीसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ शाम के 3:30 यहां पर बच चुके हैं, और दिन धीरे धीरे शाम की ओर ढलता हुआ। धूप का प्रकोप कुछ हद तक जरूर कम हो चुका है, लेकिन धूप का अस्तित्व अभी भी मैदान पर मौजूद, गर्मी की तीव्रता अभी भी काफी हद तक इस मैदान पर मौजूद है। और एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला पुत्तूर प्रीमियर लीग 2024 PPL 2024 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई ये श्रृंखला का आयोजन किया है निश्चित रूप से बेहतरीन तरीके से। श्रीमान भानु प्रकाश और श्रीमान रवि सालियान पड्डयूर ने अपने टीम के अपने कमेटी के अन्य सदस्यों के साथ इस बेहतरीन श्रृंखला का यहाँ पर आयोजन किया है। और जहाँ तक सवाल है इस श्रृंखला का, तो आज शाम को यहाँ पर पता लगेगा कि इस PPL 2024 का चैंपियन कौन होगा। तो नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। जॉन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। अमन गेंदबाजी
जॉन इस वक्त नॉन स्ट्राइक पर चेतन सामना करने के लिए तैयार। हर छक्के के लिए 500 रुपए का नकद पुरस्कार चेतन के लिए घोषित किया गया है। पहली गेंद इस वक्त गेंद को उछालना चाहता लेकिन ठीक तरह से उछाल नहीं पाए और गेंद पैरों पर टकराई, रन नहीं मिलेगा। हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ, स्कोर इस वक्त रुक चुका है 11 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अमन, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए चेतन के लिए ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव किया मिड विकेट पर लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल, गेंद पहुंची डीप मिड विकेट पर और दोनों बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 in progress. Still the batsmen of Star Strikers searching for the right track at this situation. अमन फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। रन्स आर स्टिल कमिंग इन सिंगल्स नाउ एट दिस सिचुएशन फॉर द बैट्समैन ऑफ स्टार स्ट्राइकर्स। और जहां तक का सवाल है गेंदबाज का, तो गेंदबाज अमन ने एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट चेतन के लिए, लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद को इस वक्त उछालना चाहता ऑन साइड पर लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर, लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 14 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर अमन, फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद लो सेट, दिस टाइम आई थिंक दिस कुड बी गॉट द डिस्टेंस, यस इट डज। छक्का इस वक्त लग चुका है, जरूरतमंद छक्का इस वक्त चेतन के बल्ले से लग चुका है और ऐसे ही चंद और स्ट्रोक्स की जरूरत इस वक्त, और इस छक्के के साथ 500 रुपए का नकद पुरस्कार चेतन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं जो कि नाजीम आरके जिन्होंने घोषित किया है। फैंटास्टिकली स्ट्रक and he just caught that one from the middle of the bat and lofted that one in a style over long on fence for a massive one। और चेतन एक बार फिर से तैयार सामना करते हुए और गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद एक बार फिर से, this time to score but straight to fielder at deep mid wicket, this time he won't survive and that is the end of Chetan and a big blow for Star Strikers। इस बार लगातार दूसरा छक्का लगाना चाहता लेकिन इस बार 2 स्कोरर गेंद को खेला फ्लैटर वर्जन पर और आखिरकार डीप मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे, हालांकि अपनी बाईं ओर उन्हें दौड़ जरूर लगानी पड़ी 7-8 कदम लेकिन गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए इस कैच को वो लपकने में सफल बाखूबी और इसी के साथ चेतन का विकेट यहां पर गिर चुका है। 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल और कुल मिलाकर अंतिम गेंद इस ओवर में अभी भी बाकी है और इस वक्त चेतन का स्थान ग्रहण करते हुए नए बल्लेबाज के रूप में जमाल कमिंग एज नंबर 5 बैट्समैन फॉर स्टार स्ट्राइकर्स, क्रीज पर काफी जिम्मेदारियों के साथ कदम वो बढ़ाते हुए 55 रन और चाहिए विजय के लिए और 25 रनों पर 25 गेंदें और बाकी। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अमन और दाहिने हाथ के बल्लेबाज जमाल के लिए ये गेंद इस वक्त just gone for a big one, in fact he lost his wicket, much straighter line, the ball came along the ground past the batsman's bat and passed between his bat and leg and stuck to his mid-line of stump. Bills are disturbed, 1 more wicket fallen, they are looking deep in trouble. Star Strikers are now 20 for the loss of 4 wicket, 3 overs completed and now 4 overs remaining in overall calculation in their innings। और देखते हैं इन बचे हुए 4 ओवर में जो लक्ष्य है 55 रनों का, क्या वो 55 रनों का स्कोर जो इस वक्त बनाना है, क्या वो 55 रन यहाँ पर बना पाते हैं। तो चौथा ओवर यहाँ पर शुरू होने जा रहा है तो इससे पहले कि चौथा ओवर पर वो आगे का को देखा सुनाने के लिए अंग्रेजी में सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। तो सतीश, द सेम सिचुएशन है, 3 ओवर 4 ओवर के बाद 17-18 रन था इस वक्त। 4 लायंस बप्पलिगे का स्कोर यहाँ पर 3 ओवर के बाद स्टार स्ट्राइकर्स का स्कोर है 20 रन, उनसे भी 2-3 रन ज्यादा है लेकिन अंतिम 3 ओवर में बेहतरीन कमबैक इच्छा लायंस के बल्लेबाजों ने किया था और यहाँ पर कमबैक करना जरूरी है इस वक्त। 55 टू गेट इन रिमेनिंग 24 बॉल, लेकिन कमबैक करना है तो जब कभी आप लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं तो आपको कमबैक करना कुछ हद तक मुश्किल होता है क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर जो आपके ऊपर रहता है। तो यहाँ पर दबाव जो इस वक्त
तो जो दबाव को इस वक्त बल्लेबाज अगर झेलते हैं तो निस्संदेह यहाँ पर इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। 55 रन 55 टू गेट फ्रॉम 24 बॉल्स, लेकिन यहाँ पर 55 रन बनाने के लिए बचे हुए 24 गेंदें हैं 4 ओवर में, उन्हें यहाँ पर जीत और मेहनत मुशक्कत यहाँ पर करनी पड़ेगी सतीश। Well, Gopi, absolutely you're right, because whenever they are playing the do or die matches, always they need to see that how well you manage to handle the pressure, and handling the pressure is so important, and especially you are talking about when you're chasing a total score like 75 to win the match. It's definitely going to be not easy, because each and every economical over, the asking run rate is really climbing up, and that makes a little bit problem for the chasing team, but not impossible in cricket. Right, Amavadi get balls. This time John wanted to get that one to mid wicket region, but not quite able to get get the timing behind that attempt what is made for the mid wicket region. Ball misses it completely from this sweet part of the bat. Just a single. With that single, score Namozan to 21 on the board. Still long way to go. Long way to go in the sense another 54 more runs required for the victory. Again they're going for the big shot. Ball is in there for a while. The fielder is underneath it. One more wicket is back into pavilion. Wickets are tumbling like a house of cards for the team. Star Strikers are looking in absolutely deep in trouble. This is all happening when you are chasing a total like at 75 to win the match. There is no other option at all for the batters. They have to look for the big shot, but I think the shot selection is always going to be a key. And the shot selection, you need to see the which area is going to be the safest area to go for the big shots. But here is no calculation at all, no game plan, no strategy, and very difficult to win the match here. Unless and until you are going to get some partnership, definitely it's going to be very difficult to win this match, because they already lost 6 wickets, and losing 6 wicket means they're losing your 1 over. They're losing 1 over out of 7, because 6 wickets you are going to lose 6 deliveries, very important deliveries. That's what the problem. Throwing the wicket is definitely putting yourself into a trouble. Again, the ball is going to be a wide outside the line of off stump. With that extra score, but Namozan to 22 on the board. 22 means another 53 more runs required for the victory. The bowler, either to Manoj. Manoj wanted to go for the drive, then missed it complete. Then wicketkeeper behind the stump, Arshad, just asking umpire to please stay there only, because Arshad knows that it's not an easy job for the umpires to run towards the strikers, and every time when the wickets are uprooted. This time helicopter shot comes into play, and he got the distance. Beautifully played that one. Effortless cricketing stroke there from Manoj. This is really needed in the early stage of the innings, isn't it? But still it's not yet over. They can back in the game, because just 1 or 2 good overs is good enough for the chasing team to back in the game. And Kombettu jumps into 28 on the board. So one more dotted line, very good comeback here, but either in the last delivery of the over, the bowling balled outside the line of off stump. So now coming to the equation, 4 overs completed, 3 overs remaining, 18 balls remaining. They need to get another 47 runs to win this match. 18 ball, 47 runs required for the victory, and it's going to be a little bit difficult one, but not impossible. So good news here for the cricket lovers in the international cricket news from Rajkot, and chasing a total score of 556 to win the test match. England struggling against Indian spin attack. They are 50 for the loss of 5 wicket when last report came from Rajkot. Now it's 50 for 6, and it's going to be a yes in the batting track. Of course, India's batsmen are dominated, but the batters of visiting team England are struggling against the Indian bowling attack. Arshad brought into attack, the man with the golden hand, but so far he didn't got enough success from the bat, but he can get some success from his bowling. And first over he got a wicket, I think so. No, he bowled a very good over. This time opportunities created for the fielder to take the catch. Just like I mentioned, he got the ability of picking up wickets, and he got the second wicket in his 1.1 deliveries he bowled, and he picked up a second wicket for his team. Now team Stars
strikers are looking in absolutely deep in trouble. Star Strikers. So after this match, the winner of this match will go into play against United Puttur to get the place in the mega final of this prestigious PPL Puttur Premier League 2024. And one team which is just waiting for the finalist in this Group B, that is Bangalore Blasters. After some, they blasted the huge runs in the semi-final yesterday against team Sports World. And got 80 valuable runs, but a very good chase by the team. They tried their level best to Sports World through Rajesh Ubar, white call by umpire, and Rajesh Ubar. Until Rajesh Ubar in the middle, it's very difficult to say who will going to win the match, but at last they lost the match by 12 to 14 runs, I think so, in yesterday's match. Lovely shot, beautifully driven, but lack of placement. Ball went towards the deep mid-wicket region. Just a single here for the batter Sandeep, and with that single score, moves on to 30 on the board. Still they have to get another 45 more runs to win this match. Loose delivery, punishment needed to given, because you are not really looks like Arshad bowled that juicy lollipop short pitch delivery for the batter Manoj. Already you got one magnificent six with the wrist work, but this time absolutely all the time in the world to Sandeep to read that slow delivery, but it's a very short pitch one. Good enough for Sandeep to get that one into the fence. But this 1-6 which is not going to be good enough for the team, but this 6 will going to open the gate for the team. Again went for the drive, then missed it completely, and no run scored there, and scoreboard remains on 36 now. 36 means another 39 more runs required for the victory. 39 required for the victory. This is the over number 5 is in progress. Still long way to go. Again wanted to get that one in the offside region, got a leading edge of the bat ball, run towards a short third man region. One more single, with that single score, but moves on to 37 on the board. 37 and 38 more runs required for the victory. Half of the job completed, need to complete another half of the job. This and switch it to what batter is attempted, Sandeep, but couldn't manage to get that elevation he's looking for. Ball went along the ground. One more successful over which is comes to an end here for Arshad Bajal. He picked up a wicket as well in this over. After completion of over number 5, chasing a total score of 75 to win this match. Team Star Strikers still struggling because they needed another 37 runs which is required for the victory in remaining 2 overs. So 37 in 2 overs. The asking run rate is exactly 18.5 runs per over. So 18.5 runs per overs is required for the victory. Asha Paddayuru brought into attack, starts with a beautiful delivery. Wicketkeeper misses it. They're going for the quick single in the form of bye. With that bye, score moves on to 39 on the board. That means they needed to get another 36 runs to win this match in remaining 11 balls. Manoj back on strike. The last hope of winning this match. Definitely Manoj is one who got a capability of hitting some big shot. This time missed it completely. Beaten by the turn of the ball. And there is no chance at all for any run. Arsha, one who really played an absolutely fantastic innings for his team. This time he lofted straight over the head of the bowler, as straight as an arrow, into the fence for a 6. Just like I mentioned, Manoj has got ability, the potential of changing the game, and he got at the third sixer from his bat. And scoreboard jumps into 45. Match which is not yet over. 30 more runs required for the victory. 9 more deliveries remaining. 1-6 will go in to take the match. It's very interesting. The fielder from mid-wicket going back to deep mid-wicket. One more extra fielder added in the onside region. Deep third man, backward mind fielder coming to the ring. Inside the ring. Long off, long on mid-wicket. Again, edging it out the third man region. Chase you for the fielder. But the ball will go into stopped by the one of the fielder there. The third man fielder. Ample time for Manoj to complete that 2 valuable runs. With that 2 valuable runs, scored, moves on to 47 on the board. 47, that means they need to get another 28 more runs to win this match. 28 required from 8 balls. Again, lovely delivery outside the line of off from Arshad. A little bit fumbled, chance of run out. An umpire given a bye. They're going for the second run. It's going to be a suicider.
Oh my goodness, a huge wicket. Manoj is trying for the extra run, but definitely ended with the run out. It's not a good to see that losing Manoj, but you have a look at the appreciation coming from Aman Sangadi to Manoj for his great attempt to get the match into the side, but couldn't manage to complete the match. He back into pebble in the form of run out, but he tried his level best to keep the momentum for the team, but unfortunately is back into pavilion. .48, which is the total score. Last delivery remaining. 27 required from 7 balls. The new batter in is Mano coming to the middle in place of Manoj. Not a big difference in the name, but might be the big difference in that striking the ball is concerned, and Aman charging in from the deep long on, but couldn't manage to collect the ball properly. Couple of runs which is taken with that couple of runs. 50 comes up for star strikers, but not that much of big celebration for that 50, because they knows that they need to get another 25 runs in this last over. So 25 required in the last over. It might be a difficult one, but not impossible. Having Manoj may be a little bit chance for the team to get a hope of winning this match, to get that at least 4 sixes in that last over. But after losing Manoj, now all up to these two batters in the middle, Sandeep and Mano, how well they managed to get that 25 runs in this last over. Farooq, very lucky captain. The balls are very good leg cutter. The Farooq is the man who played a very good innings in the first match for his team to get the victory when the team is struggling. He is not only lucky, but in the last previous 2 seasons, Farooq has got a fantastic performance. He's got a very good history of this PPL. Driven and chance of run out there. Ball misses the stumps there, and both the batters are completed a single, with the single score moves on to 51. Last 3 balls remaining, and I think it's all over. And it's all over in the sense even 3 sixes will not going to help the team to win this match. Coming down the track using his feet, misses the line completely. 2 deliveries remaining. Just 4 minutes left in this game. 26 required from 2 balls. 13 per ball is the required run, and it's going to be a monument. It's going to be a very high. And my goodness. And the fielder in the deep long off region, Aman, tried to catch that one in the left hand. After hitting his handball, went into the fence, and scoreboard numbers on to 55. Coming down the track, misses the line completely. That's it. Stump out. The victory for the team Icha Lions Bappalige. At last, the man is to win this very important must-win match. And congratulations for Icha Lions Bappalige to get the place in the semi-final. And Star Strikers, unfortunately, they are out of the game, out of the tournament. But they played a very good game of cricket and couldn't manage to get that total of 75 to win the match. They're shortened by 22 runs. And now is the time to announce the man of the match. And it's definitely going to be the man here is the man of the match. Just wait and see. It's one and only Arsha Padayuru for his absolutely devastating knockoff for 44 runs, and he picked up 1 valuable wickets in his 1 over. So that is deserved this man of the match, Arsha Padayuru, for his outstanding knock that takes the match away from the opposition in the last 3 overs. He has played an absolutely magnificent innings, and highest individual of this cricket tournament in one match. The Arsha Padayuru deserves this man of the match award, and he will going to get the man of the match award from our chief guest, and very attractive memento with some cash prize of rupees 300. But more than that, he will going to get some cash prize for his 6. I think so. I already, I want to say how many 6 he scored.
5 sixes, he will going to get 1,000 plus 300, 1,300 in this quarter final. And yes, absolutely, he will going to celebrate this today, the Sunday holiday, with this 1,300. So Ashraf Adeyer received the man of the match award with the cash prize of rupees 1,300 and the memento, as well as the medals, along with that the 2 liters of Mirinda in this hot condition will going to give the relaxation for the players. So we'll take a short break here, and after short break we are going to play that second semi-final of this Puttur Premier League 2024, which is proudly organized by Junior Friends Kombettu in this most beautiful Taluk cricket ground here in Kombettu. Thank you. Thanks a lot.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ಇಚ್ಛಾ ಅಲಯನ್ಸ್ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Request the captains of Icha Alliance Pappalige as well as United Puttur for the toss procedure immediately. ಯುನೈಟೆಡ್ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ. So Icha Alliance are won the toss, and but the decision they will take, just we have to wait and see.
ಅಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. They elected to field first after won the toss, and I request both teams players to please start the match immediately. So the final match is now going to start with the semi-final match is now going to start within just short while. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಇಂದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸ್ಕರಿಯಾ ಎಂ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಕಾಣಿಯೂರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಶಾಂಕ್ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀಯುತ ಸ್ಕರಿಯಾ ಎಂ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕಾಣಿಯೂರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಾಂಕ್ ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂದಂತಹ 4 ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನಾವು PPL ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Heartily welcome to you, all of you, sir, for this prestigious cricket tournament, PPL Puttur Premier League 2024. Thank you.
Right, the second semi-final match of this prestigious cricket tournament, PPL 2024, Puttur Premier League 2024 is now going to start. Icha Lions Bappalige will takes over United Puttur. So news is here from the centre that the captain of Icha Lions, Bappalige, after won the toss, he elected to field first, and because of that, the fielders are now spread out on the field, and openers for United openers for So H Lions Bappalige after one they elected to field first. Because of that, the openers United Patur or United Puttur is Altaf Walpadi and Altaf Basavanagudi at the crease as openers for United Puttur, and the first ball of the match is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार अमन गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हैं. पहली गेंद फुल टॉस, गेंद का इस वक्त मोड़ा जस्ट वाइड ऑफ द मिड विकेट फीडर. गेंद इस वक्त जाती हुई डीप मिड विकेट सीमा रेखा की और काफी लंबा दौड़ लगाते हुए, लेकिन गेंद तक पहुंचने में सफल, और गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. तो अल्ताफ बसवनगुड़ी माफ कीजिए अल्ताफ वालपाड़ी के जरिए ये स्ट्रोक इस वक्त लगा था. फुल टॉस गेंद थी और खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त उन्होंने मोड़ दिया डीप मिड विकेट पर 4 रनों के. हालांकि मिड विकेट पर फीडर मौजूद जरूर थे, लेकिन गेंद उनकी बाईं ओर से निकलते हुए और चौका इस वक्त प्राप्त करते हुए, और इस चौके के 7 रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. 4 रन बिना किसी नुकसान के. और जहाँ तक ये दोनों आरंभिक बल्लेबाजों का सवाल है, अल्ताफ वालपाड़ी और अल्ताफ बसवनगुड़ी ने पिछले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन देते हुए 74 रनों का लक्ष्य सिर्फ 5 ओवर में उन्होंने पीछा किया था, और दोनों भी नाबाद अविजित रहे थे, और उस सफलता के सिलसिले को यहाँ पर आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश में. और गेंदबाज इस वक्त तैयार अमन दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, मिड विकेट पर गेंद पहुंची, रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. स्कोर इस वक्त रुक चुका है 4 रन बिना किसी नुकसान के. पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर. दूसरा सेमीफाइनल मैच यहाँ पर शुरू हो चुका है, और फिर से एक बार गेंदबाज अमन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई. अंतिम क्षण में बेहतर गेंद थी, बिल्कुल जमीन के सहारे आते हुए ऑन साइड पर गेंद को पुल करना चाहता अल्ताफ वालपाड़ी ने, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर नहीं आए, पैरों पर टकराए. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, और स्कोर इस वक्त रुक चुका कुल मिलाकर 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के. फिर से एक बार गेंदबाज अमन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार. ये गेंद स्विंग्स दिस टाइम ही हैज गॉट द डिस्टेंस, वन बाउंस इनटू द फेंस, और खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त उछाला था अल्ताफ वालपाड़ी ने पावर प्ले का फायदा उठाते हुए, और इस बीच गेंद लगभग सीमा रेखा से लगभग 1 या 2 इंच अंदर टिप्पा खाती हुई आफ्टर फर्स्ट बाउंस से गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 8 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर. इनफैक्ट इन द फर्स्ट ओवर इस बार गेंद को उछालना चाहता, गेंद पैरों पर टकराई, शॉट स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. लेग बाय का इशारा, और लेग बाय की रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 2 चौके इस ओवर में अल्ताफ वालपाड़ी झट चुके. अब अल्ताफ बसवनगुड़ी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त अमन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अल्ताफ बसवनगुड़ी के लिए ये गेंद इस बार गेंद को मोड़ना चाहा, बेहतर गेंदबाजी, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, और 1 रन यशस्वीतम यहाँ पर पूर्ण करते हुए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन बिना किसी नुकसान के. जबकि पहला ओवर यहाँ पर पूर्ण हो चुका. फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 10 रन ऑन द बोर्ड. और सतीश निश्चित रूप से पिछले मैच के सफलता के सिलसिले को इस मैच में भी ये दोनों बल्लेबाज आगे बढ़ाते दिखाई देते हुए 10 रन पहले ओवर में जोड़ चुके हैं, और जितना ज्यादा ओवर ये दोनों बल्लेबाज टिकेंगे उतना इस वक्त उनके टीम के लिए यहाँ पर बेहतर होगा. Absolutely, Gopi. Both the opening batters in the previous match, they played excellent explosive knocks, especially Altaf Basavanagadi in the beginning. He started to talk with the bat, but afterwards Altaf Walpad in the end of the innings, he played some very good cricketing stroke. But here, I think Walpadi, they got a start. He got a start with the 2 boundaries and getting a 10 runs in the first over without losing a wicket, Gopi. Definitely it's going to be a good start from the opening bats once again for Team United Puttur. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर अल्ताफ वालपाड़ी इस वक्त बल्लेबाजी बेहतर शुरू कर चुके हैं. पहली गेंद अरशद पटेल की स्विंग्स एंड दिस टाइम इज गॉट द बाउंड्री.
पहली गेंद शॉर्ट गेंद थी और इस शॉर्ट गेंद को पुल कर दिया इस वक्त मिड विकेट पर एनफील्ड क्लियर करते हुए, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए अल्ताफ बसवनगुडी ने, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और निस्संदेह अल्ताफ वालपड़ी और अल्ताफ बसवनगुडी एक बेहतर शुरुआत देने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए अपनी टीम के लिए। और अरशद इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट, अगली गेंद लेकर तैयार, ऑन साइड पर गेंद को खेला, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा सेमीफाइनल मैच पीपीएल 2024 पुत्तूर प्रीमियर लीग 2024 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ। और इस बीच अरशद की गेंद, ये गेंद धीमी गेंद, परिवर्तन के तौर पर तेजी के साथ विकेट इस वक्त झटका है विकेट कीपर ने, और इसी के साथ अल्ताफ बसवनगुडी की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। तो इस वक्त तृतीय अंपायर के लिए मांग किया गया है, और जब देखने वाली बात यह है, जब विकेट कीपर ने विकेटें उखाड़े थे तब अल्ताफ का बैक फुट क्रीज पर लैंड हो चुका था या फिर फुट क्रीज से बाहर था। तो तृतीय अंपायर के लिए इस वक्त कहा है फील्ड अंपायर ने, और देखते हैं तीसरे अंपायर क्या निर्धार यहां पर देते हैं। ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರದು, ಅಂಪೈರ್ ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಆಟಗಾರರ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು। तो इस वक्त क्या निर्धार देता है वो देते हैं, देखने वाली बात है। तो जहां तक इस श्रृंखला का सवाल है, पुत्तूर प्रीमियर लीग 2024 अंडर द ग्रेट लीडरशिप ऑफ मिस्टर भानु प्रकाश और मिस्टर रवि सालियान पड्डायूर, इनके सारथ्य में ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहाँ पर करती हुई पीपीएल 2024 के नाम पर इस जूनियर कॉलेज मैदान कोम्बेट्टू पुत्तूर के मैदान में, और इस श्रृंखला के पहले ट्रॉफी के स्पॉन्सर है रजाक बीएच बप्पलिगे, जबकि दूसरे ट्रॉफी के स्पॉन्सर है महालिंगेश्वर टायर्स। इंडिविजुअल प्राइजेस स्पॉन्सर्ड बाय अभिराम फ्रेंड्स पुत्तूर, बॉल स्पॉन्सर्ड फॉर दिस टूर्नामेंट are Vasu and Ashok Acharya. Meantime, trophies every team sponsored by Mr. Nuruddin Sports World, and official jersey sponsored by our very good friend and a fantastic Kannada commentator Razak Salmara। और निश्चित रूप से इन सब दानियों की बदौलत ये श्रृंखला एक सफल श्रृंखला होने की ओर यशस्वी पथ पर अपना कदम यहाँ पर बढ़ाते हुए। और जहां तक सवाल है इस वक्त तीसरे अंपायर का, तो अभी भी निर्धार बाकी है यहाँ पर। आखिरकार ये विकेट गिर चुका है, ही इज गॉन, ही फेल जस्ट शॉट आउट ऑफ हिज क्रीज, और यहाँ पर ये विकेट गिर चुका है। तो इस वक्त बैकफुट शायद क्रीज से बाहर था अल्ताफ बसवनगुडी का, और इसकी वजह से उन्हें आउट घोषित करते हुए सही तरीके से स्क्वायर लेग पाया। तो इस श्रृंखला के लिए बॉल स्पॉन्सर जिन्होंने किया वासु और अशोक आचार्य, जिनमें से अशोक आचार्य इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं, और हम पीपीएल पुत्तूर प्रीमियर लीग 2024 संगठक और सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत यहाँ पर करते हैं। हार्टली वेलकम टू यू सर from the organizers and from the all spectators, Mr. Ashok Acharya. तो Altaf Basavnagadi is back to pavilion. Newcomer Masood is now comes out to the middle as a number 3 batsman, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अरशद बजाल की गेंदों का। और इस वक्त देखते हैं यहाँ पर अरशद बजाल की गेंदों का वो किस तरह सामना करते हैं। तो यहाँ पर लीग स्टेज में जब आज के पहले मैच में इच्छा लायंस बप्पलिगे और यूनाइटेड पुत्तूर का सामना हुआ था, तब इच्छा लायंस बप्पलिगे ने यूनाइटेड पुत्तूर को पराभव किया था आज के इस पहले मैच में। तो यहाँ पर इस सेमीफाइनल मैच में बदला लेने का अवकाश यूनाइटेड पुत्तूर के लिए जरूर है, लेकिन यहाँ पर इस मैच में विजय दर्ज करने के लिए ऐसा कहना पड़ेगा, पहले बल्लेबाजी करते हुए एक लंबा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना पड़ेगा यूनाइटेड पुत्तूर के बल्लेबाजों को, और देखते हैं वो अपने इस प्रयत्न में किस हद तक यश प्राप्त करते हैं। तो इस बीच गेंदबाज अरशद, ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहा, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को उन्होंने छोड़ दिया, ये देखते हुए कि गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही है। रन इस बीच बल्लेबाज और टीम को नहीं मिला, स्कोर इस वक्त रुक चुका, 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, और फिर से एक बार अरशद की गेंद, ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त छोड़ दिया था, शायद उनके पैर पर टकराने के बाद गेंद इस वक्त निकली, काफी चतुरता के साथ इस गेंद को फेंकी थी अरशद ने, और आखिरकार रन से एक बार फिर से टीम को नहीं मिला, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर
एक विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। अरशद बजाल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बेहतरीन गेंदबाजी, फैंटास्टिक डिलीवरी, फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक इस वक्त खेला। 3 लगातार डॉट गेंदे। फैंटास्टिक ओवर केम्स टू एन एंड। जस्ट 5 runs, 5 dot deliveries in fact, and just 4 runs he conceded in this over. 2 overs completed, 14 on the board, and 1 wicket lost, and still in overall calculation it's going to be 5 overs remaining in their innings. तो इस द्वितीय सेमीफाइनल की मैच की विजेता टीम इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले यानी मेगा फाइनल में सामना करेगी बेंगलुरु ब्लास्टर्स का, जो कि कल उन्होंने इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले यानी मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त किया है। तो इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए अमन अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार, और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर सामना करने के लिए तैयार इस वक्त अल्ताफ वालपाड़ी। और जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है यूनाइटेड पुत्तूर का, तो इस वक्त अल्ताफ वालपाड़ी की उपस्थिति इस वक्त उनके लिए बेहद जरूरी है। 2 ओवर के खेल के बाद फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। अमन ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग स्पिन गेंदबाजी, गेंद को स्पिन किया इस वक्त लंबोन सी मारेगा बाहर 6 रनों के लिए। Middle of the bat connected and dispatched it in a style over body slung on fence, and at last he's got the distance. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त अल्ताफ वालपाड़ी के बल्ले से लगता हुआ, और फिर से एक बार अमन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। Again the same treatment, consecutive sixes, fantastically struck, came from the bat of Altaf Walpadi. 2 consecutive sixes, and he is now looking on fire. और स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर, 26th स्कोर। और ऐसा कहना पड़ेगा स्ट्रेट अवे द बाउलर इज नाउ अंडर प्रेशर। और जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, चंद गेंद पहले जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है यूनाइटेड पुत्तूर के लिए, तो इस वक्त अल्ताफ वालपाड़ी की उपस्थिति क्रीज पर उनके लिए बेहद जरूरी है। और इस बीच अमन अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को छोड़ दिया इस वक्त ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। जस्ट 2.2 ओवर्स कॉल इन देयर इनिंग्स। और फिर से एक बार गेंदबाज की गेंद लॉफ्टेड दिस टाइम, लेकिन जमीन के सहारे गेंद को खेला इस वक्त डीप मिड विकेट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 28 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। फैंटास्टिक प्रोग्रेसिंग ईयर फॉर यूनाइटेड Puttur after being losing the toss and put it to bat by Icha Lions Bappalige in the second semi-final of this prestigious cricket tournament PPL Puttur Premier League 2024। और इस बीच फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अमन गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज मसूद के लिए, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद अमन की रिवर्स शॉट खेलना चाहा, लेकिन अंतिम क्षण में अपने स्ट्रोक्स को उन्होंने रोक लिया गेंद के धीमेपन को पहचानते हुए, और गेंद को इस वक्त स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची, जहां पर बल्लेबाज 1 रन, जहां पर बल्लेबाज को कोई रन यहां पर नहीं मिला, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 28 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। फिर से एक बार गेंदबाज अमन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को खेला, फील्डर डीप बैक थर्ड बैट पर काफी पीछे मौजूद 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पर डेंजर रन पर आते हुए इस वक्त मसूद, लेकिन दूसरा रन प्राप्त करने में सफल। इंटेलिजेंटली स्वेप्ट अवे, रिवर्स शॉट प्लेड, और पहले ही फील्डर को भाप लिया था कि फील्डर काफी पीछे मौजूद है, कवर पॉइंट पर कोई फील्डर तैनात नहीं, अब डीप बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर मौजूद है। धीरे से गेंद को रिवर्स शॉट खेलते हुए तेजी के साथ 2 रन यहां पर चुरा लिए दोनों बल्लेबाजों ने, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अगली गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, और जब तक पॉइंट पर गेंद फील्ड हो 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। स्कोर बोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 31 now for the loss of 1 wicket. Over completed, 3 overs completed, 31 on the board, and now they are looking in a fantastic situation. In fact, exactly 10.33 runs for they scored after the completion of 3 overs. और कुल मिलाकर उनकी पारी में 4 ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं इन बचे हुए 4 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। फिलहाल इस वक्त
मसूद और अल्ताफ वालपाड़ी क्रीज पर मौजूद है। और खासकर जहां तक सवाल है अल्ताफ वालपाड़ी का, तो इस वक्त 2 छक्का पिछले ओवर में वो झड़ चुके हैं, अपने इरादों को बुलंद कर चुके हैं। और यहाँ पर गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज हैदर जो कि नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए और सामना करने के लिए तैयार मसूद। शाम का वक्त 4:30 यहाँ पर बच चुके। धूप का प्रकोप काफी हद तक कम हो चुका, लेकिन धूप का अस्तित्व जरूर मौजूद है। और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी मैदान पर कम होते हुए और निश्चित रूप से एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला पीपीएल 2024 के नाम पर शानदार प्रगति इस मैदान पर करती है। बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट 10 मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। इस श्रृंखला का रिवर्स शॉट इस वक्त खेला, नॉट क्वाइट मिड विकेट, इनफैक्ट इज गॉट ओनली अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और 1 रन के साथ कुल मिलाकर स्कोर अब पहुंच चुका है 32 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। गुड सेकंड विकेट पार्टनरशिप इज नाउ बिल्डिंग अप हियर बिटवीन अल्ताफ वालपाड़ी एंड मसूद। अल्ताफ बैक ऑन स्ट्राइक और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार हैदर की गेंदों का। दर्शक काफी मात्रा में इस मैदान के चारों ओर मौजूद खामोशी के साथ मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए। और दूसरा सेमीफाइनल मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ पीपीएल 2024 के नाम पर। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए हैदर, दाहिने हाथ के बल्लेबाज अल्ताफ वालपाड़ी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में विकेट कीपर कुछ जमावट इस वक्त कर चुके हैं। और इस बीच गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को पुल किया है लंबा पर, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। अल्ताफ वालपाड़ी ने गेंद को इस वक्त उछाला जरूर है, लेकिन फ्लैटर वर्जन पर, काफी ऊंचा नहीं है, और गेंद फ्लैटर वर्जन पर पहुंची वाइड स्लॉग ऑन पर। और जैसे ही अल्ताफ आउट हुए, अरशद ने उनकी पीठ इस वक्त पीठ ठपाई और पीठ पर उन्होंने मारकर कहा कि भैया आपका विकेट गिर चुका है, आप यहाँ पर आपको प्रस्थान करना होगा पेविलियन की ओर। तो अल्ताफ 2 छक्के लगाकर काफी खतरा पैदा कर चुके थे यहाँ पर इच्छा लायंस के लिए। उनका विकेट यहाँ पर गिर चुका और उनका विकेट गिरने के बाद एक राहत भरी सांस यहाँ पर लेते हुए इस वक्त इच्छा लायंस के कप्तान तो सतीश यहाँ पर विकेट अल्ताफ वालपाड़ी का गिर चुका। पिछले मैच की तरह कुछ ज्यादा असर नहीं दिखा पाए इस मैच में, लेकिन उन्होंने अपना काम पूरा किया है। और स्कोर इस वक्त है 32 रन। तो यहाँ पर अब दूसरे बल्लेबाजों की जिम्मेदारी यहाँ पर गिरती है कि वो अपनी टीम के एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर करे। Absolutely, Gopi. You can't depend every time for the 2 players because there's 11 players there, batters are there in the team. They need to take the responsibility. And Altaf Walpadi, I think he did the job because he played a short and sweet innings, a small cameo, and is good enough to bring the team into the right track of getting 60 plus 70 plus runs on the board. But after losing the wicket of Altaf Walpadi, definitely the team Icha Lions will going to tighten up the screws here, and we will see how well they will go into back in the game. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर अल्ताफ वालपाड़ी का विकेट गिर चुका है। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। तो सही बात आपने फरमाया सतीश, सिर्फ अल्ताफ वालपाड़ी और अल्ताफ बसवनगुड़ी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बाकी के लोगों को भी यहाँ पर परफॉर्म करना जरूरी है अगर उनके टीम को एक बेहतर स्कोर यहाँ पर करना है तो। और इस बीच ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतर गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाज हैदर की। 2 लगातार डॉट गेंदे न्यू कमर नंबर 4 बल्लेबाज अविनाश को इस वक्त वो फेंक चुके हैं और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो अल्ताफ ने अपना काम तमाम इस वक्त किया है, बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने की है। 21 रन स्कोर्ड बाय अल्ताफ वालपाड़ी, टोटल स्कोर इज 32 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। और इस बीच गेंदबाज हैदर इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट है। ये गेंद इस बार बेहतर, फैंटास्टिक डिलीवरी, 3 डॉट बॉल्स इन ए रो एंड दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ फैंटास्टिक ओवर इन इचा लायंस पॉइंट ऑफ व्यू। और एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त हैदर गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए इस ओवर में अंतिम बार सिर्फ 1 रन इस ओवर में अब तक वो प्रदान कर चुके हैं। अगली गेंद लेकर तैयार, गेंद को उछाला इस वक्त मिड ऑफ विकेट, गेंद के नीचे आते हैं और इसी के साथ एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। अविनाश ने गेंद को उछाला था जरूर, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट गेट दैट वन फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, और गेंद हवा में उछली और आखिरकार सिली मिड ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे, मिड ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्हें कुछ ज्यादा दौड़ लगानी नहीं पड़ी और गेंद को इस वक्त तो गेंद पर नजरें गड़ाए रखते हुए गेंद को लपकने में सफल। तो एक बेहतरीन ओवर यहाँ पर हैदर का समाप्त हो चुका जिसमें सिर्फ 1 रन उन्होंने प्रदान किया और 4 ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त स्कोर है 32 रन, 32 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और इस ओवर में 2 विकेट गिरे और निसंदेह सतीश आइए माइक्रोफोन पर आपको बुलाते हैं इस वक्त बाकी के 3 ओवर का खुदे काल सुनाने के। तो इस ओवर में 3 विकेट गिरे, खासकर
अल्ताफ वालपाड़ी का विकेट का पता निस्संदेह यहाँ पर उनके टीम को ऐसा कहना पड़ेगा यूनाइटेड पुत्तूर को यहाँ पर ड्रॉबैक साबित हो सकता है। और 3 ओवर का खेल बाकी है, अगर 3 ओवर में एक बेहतर स्कोर खड़ा करना है तो कम से कम 25 से 30 रन उन्हें यहाँ पर बटोरने होंगे बचे हुए 3 ओवर में। कम से कम 60 के आंकड़े तक अपनी टीम के रन संख्या को पहुंचाना गया या फिर 60 के आंकड़े के पार ले जाना होगा अगर एक चुनौती भरा स्कोर वहां यहाँ पर उन्हें खड़ा करना है। तो माइक्रोफोन पर आइए सतीश। Well, thank you, Gopi. And after that, a very electrifying start in the first 2 overs, but a little bit the comeback here by the team Icha Lions, especially after the picking the wicket of Altaf Pasavanagudi, and in the previous over they got a wicket of Altaf Walpadi, and the two Dunja batters are back into pavilion, and either bowled an excellent over the previous over. Just only one run conceded, Gopi. Out 7 overs match, conceding 1 run and picking up 2 wickets means is absolutely the match-winning performance, I want to say, because he's the man is responsible for sending the danger man Altaf Alpadi back in the pavilion. Now Arshad Bajal brought into attack in the right time to put some pressure onto the batters of the United Puttur. First ball starts with the warm-up delivery of the evening, and umpire just is asking for the third umpire. Arshad Bajal is telling that he just wanted to go for the reverse sweep. Whenever the batter is trying for the reverse sweep, the bowler can bowl outside the line of leg. And what the Arshad Bajal is just wanted to see from the third umpire whether it's going to be a wide or not. Arshad Bajal straight away asking the field umpire to ask for the third umpire, and already umpire yes, respecting the question of Arshad Bajal, Anil Gowda asking for the third umpire to see whether the batsman is tried for the reverse sweep or not, and wait and see. And yes, coming back to this cricket tournament, rightly said Gopi, it was one of the best tournament, I want to say, and in the name of Puttur Premier League 2024. So far, I think it's very systematically and very eye-catching. The eye-catching moment of this cricket tournament is each and every team really played with a very disciplinary, isn't it? And that's what the match which is running successfully, and thanks to all the team players, they're respecting the decision of umpires so far, and because of that, the tournament which is running very successfully. And one more which is question asked here for by the fielder, the bowler in fact, about that decision of wide, and that was given by the organizers. One review can the fielding team can take. That's what umpire. That's what Arshad Bajal want to capitalize that decision. Wait and see whether it is going to be a wide or not. Maybe umpire want to see whether the batsman is changed his position or not, whether is the batsman trying for the reverse sweep or not. Line. Okay, you just want to see that line, whether the ball is going outside the line of the ball delivered, because we are having a square angle commentary box, so that's why very difficult for us. Even we are not having a monitor as well. If you have got a monitor, you can just watch that one in the monitor, what really happened in that previous delivery. But the question is asked here for umpire about the line, about that wide delivery, and Arshad Bajal is just very much confident that ball is within the line, but umpire has got a very confident that ball is outside the line. But both will go into question, but the third umpire will go into see whether whether the umpire is right, whether the bowler is right. Wait and see. So far, wonderful cricket tournament. We are talking about we need to give the special thanks to all the umpires. Did a great job so far. Anil Gowda, Tenkila, Purushottam, Ravi Kemai, Salim, and as umpires, and in commentary box as always my friend Mr. Gopi, and definitely going to be one of the great tournament we are enjoyed in this particular cricket tournament as a commentators and as a scorer, and so far all the scorers did a great job. Yaya Mukwe as well as Santosh Junior and Ishad Banur, all the 3 scorers are done a great job for the success of this cricket tournament. Thanks to the staff members of 10 Media, did a great job at giving a very quality live coverage of this cricket tournament.
Yes, we are have a chief guest here in our the main stages because they are the one responsible for. I think umpire third umpire told that ball which is within the line, inside the line, so that yes. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸ್ಕರಿಯಾ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. No wide called by umpire, so that Arshad Bajal is very confident, so that he is questioned over that decision of the umpire, and he got a reward for that, as third umpire did. Third umpire has got a good evidence to call that is a fair delivery, and it's going to be a dotted delivery. Outside, oh, what a fantastic work! Wicket keeper behind the stump in a fraction, and what a magnificent work done by the wicketkeeper Aman Osangadi. Absolutely, Gopi, electrifying, isn't it? It's just in a blink of eyes, he completed that work behind the stump. Absolutely. If you have got a very good wicketkeeper behind the stump, sometimes it's good enough for the team to tighten up the screws. Again, the wicket number 3, which is back into pavilion. Fourth wicket is back into pavilion, and very good comeback here by Itch Alliance Bappalige. The scoreboard is a 32. After a long time, I am not seeing that the scoreboard is not moving here. The 32, which is the total score, and that 32, which is came in 3.1 hours, and now it's a 5.2 hours. But the scoreboard is still there in still in that 32. So now the bowler Rashad will going to continue. Got a wicket in the previous delivery. The new batter in is Siddiq, and one more very good striker of the ball. And wait and see how we'll go and contribute. Arshad to continue. Left arm around the wicket. Balls. This time again the ball hitting the leg, but no question of any run there. Arshad Bajal is really creating the problem for the batters so far. After either bowled a beautiful over at the very quiet and wicket taking over, getting some inspiration from either. Arshad already bowled 3 very good deliveries where there is no score conceded. The full toss, low full toss, wicket keeper this time missed it completely. Going for the quick single, chance of run out there. Oh, absolutely fantastic work, but not good enough to get the result. The 2 point were noted here in this run-out opportunity. The wicketkeeper behind the stump misses the ball completely, but immediately is recovered quickly and charges into the ball, returns the ball quickly, and have a look at the collection there from Arshad. That was in the half volley. It's not so easy to collect the half volley throw coming from the fielder, but Arshad in a fraction uprooted the stump, but not good enough to get the result in his favor. But scoreboard is moving now. Scoreboard is moving after 9 deliveries, I think so, and now it's going to be 33. Again, the ball is deflected from the leg, so that again, now look at the Anam. Aman is absolutely athletic. And that is absolutely very athletic indeed. And if you see that in international cricket, Virat Kohli is a very good mover of in the field, and Aman in underarm cricket is a very quick mover in the field, and just like Ravindra Jadeja, the one more very good fielder in Indian fielding department. Again, a lovely delivery indeed. The batsman wanted to go for cross-batted shot, missed it completely, deflected from the leg. One more quiet over is completed here. They're searching for the right track, but the team is still struggling. Team United Puttur are 35 runs. So once again, it's going to be only 1 run in this over, excluding that 2 leg byes, 3 leg byes. That means it's a maiden over. This is a maiden over bowled by Arshad, because 3 runs
3 runs which is came in that over, that is in the form of leg by. And Gopi, 2 very good overs, and which is bowled by either is just 1 run and 2 wicket. Now Ashad bowled, of course 3 runs came from that over, but all 3 runs in the form of leg by. That shows the team Icha Lions Bappai Todi are looking in a command, Bappali a little bit correction, they are in a commanding position in this 5 overs. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में गेंदबाज अर्शद ने की और 5 ओवर के बाद परिस्थिति को कुछ हद तक अपने काबू में ला चुके, खासकर अंतिम 2 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन इच्छा लाइन्स के गेंदबाजों ने दिया और देखना है कि अंतिम 2 ओवर में उस सफलता के सिलसिले को यहाँ पर बरकरार रख पाते हैं गेंदबाज या नहीं. Well, wait and see. Adarsh brought into attack the man of the match in the previous match with the bat and the ball. Now he's came into attack, starts with the dotted delivery. Problem continues here for team United Puttur, that after getting a flying start, they couldn't manage to get that to start into the big runs again. Lovely delivery right on the block hold. Batsman quite hardly managed to get the bat onto that in the last moment by Siddiq, and with that single scope moves on to 36 on the board. 36 in the over number 6 is in progress. Again, Asha balls. This time across the line, sings that one beautifully. But to look at the run there from Aman, absolutely fantastic, isn't it? And I think he need to be there in the 100-meter race, Aman. And he's a very, very quick runner. And the way that he's moving very quickly, isn't it? He's judging the whenever the batsman is going for the slog sweep shot, he starts his run. And you know exactly the batsman will going to play that kind of shot and moves very quickly. And but a couple of runs which is taken between by these 2 batters. Again, a wicketkeeper behind the stump. Ashad fumbled, but both the batters are not really able to take the advantage of that fumble from the wicketkeeper. Just dotted delivery again. You can't play the dotted delivery. Definitely it's going to be more problem for United Puttur because they're dealing with the slog overs, and one more good over is in progress. Asha bows right arm over wicket outside the line of off stump, but he's just moving outside the line of leg stump. Try to make a little bit room to play the shot, and Asha, good thinking, bowling away from the bat of the batter, and again one more dotted delivery. 3 runs in 5 deliveries in this 6th over, and after this 1 hour remaining. Ashabaz, nice looking drive down to deep extra coverage, and they come back for a second fumble from the fielder, and they will going to come back for the second against the fielder there in the deep extra cover has got a fumble. Couple of runs which is completed in the last delivery of the over number 6. After completion of over number 6, its scoreboard is 40 on the board, 40 for the loss of 4 wicket, and last over which is remaining in the innings of team United Puttur. So it is good to see that some dignitaries out here in our main stage, especially Skaria, Farooq, Prashant Rai. They are the one. They are successfully organized Bandhavya Trophy, and that Bandhavya Trophy definitely it's one of the successful cricket tournament organized, and they are the 3 fillers. They are in our main stage, and this is the official tournament. They organized the Bandhavya Trophy, and a very successful cricket tournament. Thank you, sir, for your contribution for the cricket by organizing that Bandhavya Trophy, and they are in our main stage enjoying the game of cricket here. This time top edge. Opportunity is created for the fielder, but it's going to be a chance here for the long on fielder to complete that catch. One more wicket is back into pavilion, and United Puttur are looking in a deep, deep trouble. This is what I and Gopi is mentioning about. You cannot depend every time for 1 or 2 players, because once the 2 players will go into fail, then need to have another 2-3 players have to take the responsibility of getting some acceleration. What's the problem here for the team United Puttur in this particular match? After losing a wicket of Altaf Basavanagudi, after losing a wicket of Altaf Walpadi, we can see that a downfall starts here, and no one there to get responsibility of taking the team's total into more than 50 or 60. But there's even 45 to 50 is going to be a little bit difficult one here on us, because that's 5 deliveries remaining. The Farooq, what we are talking about, a very successful captain for the side, is in action, and his ball right arm over the wicket. Drives that one. The Farooq on his follow through fails to collect the ball, but a very good backup by the Aidar in the negation from the short mid off region. Just a single. With that single, score moves on to 41 on the board in the over number last is in progress.
Again, the bowler will go into yes, continue from the far end. Right arm over wicket going for the switch. It ball is just got a little, and we need to wait for the umpire signal whether the ball is got a contact with the bat or not. And couple of runs which is taken. Of course, the bat is involved in that occasion. Little bit inside edge of the bat, and they got a couple of runs. With that couple of runs, Kombettu moves on to 43 on the board. 43 for the loss of wicket number 5, which is back into pavilion. What a fantastic and disciplined bowling performance so far from team Icha Lions Bappalige. This time switch it, my goodness, looks like either is misjudged. Is seeing that batsman going for the switch. He's just moving towards backward point region, but ball just moving to his right, and he adjusted quickly for that, and they managed to complete the single. With that single, Kombettu moves on to 44 on the board. Last 2 deliveries left in their innings. This time again that full toss delivery batsman couldn't manage to take the advantage of that delivery. Again that ball is going to the hands of a deep fielder. Of course the Farooq will not going to bother about that single. You know exactly, it's the last over is in progress, and Farooq will going to ball the last over here. So last delivery will go into commence from the far end. Farooq will go into ball that last delivery of the innings. Scoreboard is 45. So 45, and wait and see how well the last ball will go into commence for team Puttur United. Coming down the track, using his feet, lofted that one, but straight to the hands of Harsha Padayuru down at long off region. That's it. United Puttur, they completed their 7 hours quota. They caught 45 runs and they set a target of 46 for team Icha Lions Bappalige to qualify for the mega final of this prestigious Puttur Premier League 2024. And wait and say, will it going to be good enough for United Puttur to defend this total against the Lions of Icha Bappalige, because having such a formidable batting department, I think Gopi, that needed some extraordinary bowling department here, bowling performance here from the bowlers of United Puttur if they wanted to win the match. But anyhow, Gopi, we need to see that this is going to be a low-scoring game, isn't it? After seeing the high-scoring game so far in this day number 2, this is the first time seeing that is a low-scoring game. But it's a big semi-final, isn't it? It never looks like it's going to be any excuse in the league stages match, but there is no excuse in this particular semi-final. And wait and see how well team Puttur will going to defend this total, and wait and see how well Icha Lions will going to roar here in this particular semi-final. But whoever going to win this match, Gopi, the eventually the cricket will go into the winner here, because such a fantastic cricket tournament which is organized here by junior friends Kombettu in the name of Puttur Premier League 2024. Warm welcome to Balakrishna sir, and one of the very good master of ceremony as far as concerned, as a very experienced commentator as well. So that warm welcome sir for this prestigious cricket tournament on behalf of organizers. And now Gopi, and I hand over the microphone to you. Do you think that a 45 is going to be good enough for the team to defend this total? Because just seeing the batting department of Lions, they got some destructive batter, the explosive batter like Harsha Padayuru and Arshad Bajal. But Arshad Bajal so far in this tournament didn't got that much of success, but he's a kind of batsman. He loves to play in the big matches like a semi-final and final. And if he's able to get 2-3 quick wickets in a quick session, then even that 45 can be little bit becomes a big target for the team Icha Lions. Wait and see what could be that strategy from these two teams to get the place in the semi-final, and definitely Gopi, who will go and handle the pressure of playing the semi-final. They will going to win the match here, and they will going to get the place in the mega final of this prestigious PPL. It's over to Gopi for the further explanation of the match in our national language. Indeed, thank you. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया इस वक्त 45 रन इस वक्त बनाने इच्चा लायंस को इसी श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले यानी मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए, और जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है तो बिल्कुल सही बात आपने फरमाया। इस वक्त विश्व यहां पर अरशद जैसे घटानुघटी बल्लेबाज मौजूद है, लेकिन अरशद इस वक्त देखिए यहां पर
अरशद को इस वक्त प्रमोट किया गया है आरंभिक बल्लेबाज के तौर पर और अमन उनका साथ देने के लिए इस वक्त रियान है। हर्षा कुछ देरी से यहाँ पर बल्लेबाजी पर उतरेंगे, तो इस वक्त उनकी रणनीति साफ है, टैक्टिक से साफ है। इस वक्त अरशद को इस वक्त पावर प्ले का फायदा उठाने के लिए भेजा गया है और यहाँ पर अरशद का विकेट इस वक्त फील्डिंग साइड यानी यूनाइटेड पुत्तूर के लिए बेहद जरूरी है। इस वक्त देखते हैं क्या होता है। इस वक्त इस बार गेंद निकल चुकी है फाइन लेग पर, लेकिन एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। इस बीच वाइड का इशारा, 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है कुल मिलाकर इच्छा लायंस के लिए। तो इस वक्त टारगेट है कुल मिलाकर 46 टारगेट और निस्संदेह यहाँ पर यूनाइटेड पुत्तूर के गेंदबाजों को अगर इच्छा लायंस के बल्लेबाजों को 45 रनों के लक्ष्य के अंदर रोक कर रखना है तो एक घातक गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी पहली ओवर से, राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर। और गेंदबाज ये गेंद इस वक्त गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और जहां तक इच्छा लायंस के विजय तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, इस वक्त अरशद की उपस्थिति उनके लिए बेहद जरूरी है और अरशद बजाल देखते हैं अपनी टीम का किस हद तक यहाँ पर साथ देते हैं। दाहिने हाथ राउंड द विकेट अल्ताफ बसवनगुड़ी अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस बार अरशद बजाल के लिए और इस कैच को लपक लिया गया है डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर। अरशद बजाल ने जब स्ट्रोक लगाया तो पहले अंदाजा लगाया गया था कि गेंद सीमा रेखा को पार करेगी, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद अपनी रफ्तार को खोते हुए सीधे पहुंची डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर और यहां पर अरशद बजाल एक विस्फोटक यानी एक्सप्लोजिव शुरुआत देने के चक्कर में अपना विकेट गवा कर पेविलियन वापस लौट चुके और निस्संदेह सतीश अरशद बजाल का विकेट का पतन यहां पर काफी हद तक इच्छा लायंस के लिए यहाँ पर ड्रॉबैक साबित हो सकता है। Absolutely, Gopesh. One more time. The batsman fails to get the distance. He got elevation, but fails to get the distance. I already mentioned the previous match also. This is not a UCG cricket ground where you get the boundary line very nearly the 40 to 42 meters, hardly. But it's not that much of the distance dimension of this cricket ground is concerned. It's long to go. I think it's a long distance. If you see that mid wicket and deep square leg, I think it's definitely not of power and timing which is required to get the distance. And Arshad again. Very frustrated, but he thought it might be wide. Not only he thought, but we also thought that it going to be a maximum, but ball landed safely to the hands of the fielder. But getting a wicket of Arshad Bajal Gopi, the gate certainly will going to open here for the team Putturu. बिल्कुल सतीश, कुछ हद तक द्वार इस वक्त खुल चुके हैं और इस वक्त एक और बेहतर बल्लेबाज हर्षा का आगमन हो चुका है। इस बीच ये हर्षा के लिए टॉप एज इस वक्त फील्डर मौका जी नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाए। कुछ हद तक मुश्किल सा मौका जरूर था, लेकिन अंतिम क्षण में थोड़ा सा मिस जजमेंट और यहाँ पर ये मौका गवाते हुए और हर्षा इस वक्त इस गेंद पर बल बच चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ अल्ताफ बसवनगुड़ी इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और इस वक्त अमन ना सामना करने के लिए तैयार और अल्ताफ बसवनगुड़ी पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, विकेट कीपर चूके रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को दोबारा फील्ड करने में असफल विकेट कीपर और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन 90 के रूप में और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर। एक गेंद बाकी, 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और अंतिम गेंद इस वक्त फेंकने के लिए गेंदबाज अल्ताफ बसवनगुड़ी अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए 5 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अंतिम बार हर्षा पी इस वक्त सामना करते हुए अल्ताफ बसवनगुड़ी की गेंदों का। शाम का वक्त लगभग 5 इस वक्त बजते हुए धूप का प्रकोप इस वक्त काफी हद तक कम हो चुका है इस मैदान पर। दाहिना तो और ढीली गेंद, लेकिन इस ढीली गेंद का फायदा उठाने में असफल और ऐसा कहना पड़ेगा थोड़ा सा मिस टाइमिंग्स और आखिरकार गेंद को कनेक्ट करने में असफल। मौका इस वक्त बल्लेबाज के हाथ से जा चुका है और पहले ओवर के मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद 5 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। सतीश मिक्स स्टार्ट फॉर इच्छा लायंस आफ्टर फर्स्ट ओवर और 40 रन चाहिए 36 गेंदों में और जहां तक सवाल है 40 रनों का, तो अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा 1 विकेट जरूर खो चुका है, लेकिन मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है।
Well, Gopi, and certainly I what already mentioned, you cannot underestimate cricket. Yeah, already mentioned it is a low-scoring game, and of course, team Lions has got some very good batting department, and I already told that getting a wicket of Arshad Bajal will going to open the gate for Puttur. But only 1 hour is not good enough to win this match. But they need to have some regular 1 or 2 good overs if they wanted to tighten up the screws. And wait and see how well the second over going to start here. A chance here for the fielder. Will it going to be a chance? Yes, it does. Now it's a time for Aman Osangadi to do back in the pavilion. He can't believe his eyes. He thought it might be maximum. Again, the ball which is carried to the fielder. 2 wickets back into pavilion, Gopi. And the greatest slogan in cricket in English, that is a small leakage can sink a big ship here. And a small total here, 45. If the batter will go into underestimate, then it's opportunity for the opposition team to back in the game. 2 wickets back very quickly. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर जैसा कि आपने कहा, एक कहावत है, छोटा सा छेद भी इस वक्त बड़े जहाज को डुबो सकता है। और यहाँ पर अल्ताफ वालपाड़ी के पहली गेंद पर जल्दबाजी की इस वक्त अमन ने, हालांकि वहां पर अरशद बजाल का विकेट गिर चुका था, तो कुछ ज्यादा जल्दबाजी की जरूरत यहाँ पर नहीं थी, क्रीज पर टिकना जरूरी था। लेकिन अमन ने जो प्रेशर उनके ऊपर था, उस प्रेशर को ऑफ करना चाहा एक करारे स्ट्रोक्स के जरिए, लेकिन इस बार गेंद को उछाला जरूर, लेकिन लॉन्ग ऑफ फील्डर द्वारा लपक लिया गया। अब दोनों आरंभिक बल्लेबाज पेविलियन वापस लौट चुके हैं। अरशद और अमन, नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, हैदर का। और इस वक्त देखते हैं हैदर इस वक्त हर्षा पी के साथ मिलकर किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर करते हैं। अल्ताफ वालपाड़ी अपनी ओर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दूसरा पावर प्ले ओवर इस वक्त उनकी पारी का प्रगति पर, विजय के लिए कड़ा संघर्ष जारी है। अभी भी मैच बराबरी पर रुक चुका है और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलते हुए। और जहां तक सवाल है इस वक्त अल्ताफ वालपाड़ी का, तो इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। हर्षा पी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 2 विकेटें प्राप्त करने के बाद इस वक्त यूनाइटेड पुत्तूर के गेंदबाज काफी आत्मविश्वास भरे इस वक्त नजर आते हुए। और अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के 30 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 6 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर, गेंद को मोड़ा, शॉट मिड विकेट पर, रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला हो सकता है, लेकिन थ्रो काफी वाइड अल्ताफ वालपाड़ी से। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। It's 7 for the loss of 2 wicket in the over number 2 in progress. The equal battle is now continuing here. और अल्ताफ वालपाड़ी अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए, हर गेंद के साथ फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज अल्ताफ। और लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर, लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर थे, उन्हें थोड़ा सा वाइडर इस वक्त तैनात किया गया ठीक सीमा रेखा के पास बाएं हाथ के बल्लेबाज हर्षा पी के लिए। ये गेंद इस बार टॉप एज, दिस कुड बी अ चांस, मिड विकेट फील्डर getting underneath it and he took the catch. Harsha P departs and this is a big blow for them. इस बार ऑन साइड पर गेंद को पुल करना चाहता, टॉप एज पर गेंद टकराई, और मिड विकेट पर जो छोटे कद के खिलाड़ी थे, हालांकि पहले कुछ हद तक झिझके जरूर रहा, लेकिन अंतिम क्षण में शरीर पर अपना संतुलन कायम रखा, गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखी, और इस कैच को इस वक्त वो बेहतर तरीके से लपकने में सफल। तो हर्षद, अमन, हर्षा पी, 3 एस इन द पैक इस वक्त पेविलियन वापस लौट चुके हैं। और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा, नीला आकाश तरह बादल तो जरूर नहीं दिखाई देते हुए, लेकिन यहाँ पर परेशानियों के बादल जरूर मंडराते हुए इच्छा लायंस के बल्लेबाजों के ऊपर। क्यों सतीश? Well, Gopi, big fish in the net. The hero of the previous match is back in the pavilion. Definitely going to be a vital breakthrough from the bowling of Walpadi. Walpadi, of course, batted very well. Now he's tried to try to contribute from the bowling, and what a big contribution! Absolutely, this is a big fish in that, and definitely, Gopi, this match is going to be very interesting now. It's going to be anybody's game. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर रनआउट का मौका जरूर क्रिएट हो सकता था, लेकिन अंतिम क्षण में रनआउट के मौके से बचते हुए और 1 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ अविनाश ने बल्लेबाज के रूप में पहुंच चुके हैं इस वक्त, और 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच अल्ताफ वालपाड़ी गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए सामना इस वक्त करने के लिए तैयार हैदर। और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद अल्ताफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, तैनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते, फुल टॉस, पुल किया इस वक्त, मिड विकेट पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए अंतिम क्षण में ये कैच छूट चुका है, ये कैच छूट चुका है। जीतोड़ कोशिश इस वक्त जरूर की थी, लेकिन अंतिम क्षण में थोड़ा सा मिस जजमेंट, हालांकि गेंद पर अपने हाथ जरूर लाए थे, लेकिन गेंद उनके हाथों से अंतिम क्षण में छिटकते हुए, और यहाँ पर बल्लेबाज बाल बचते हुए, तो यहाँ पर हैदर का विकेट गिरते गिरते बचा, और यहाँ पर 2 रन बल्लेबाज और टीम को प्राप्त होता हुआ 2 अंकों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है। It's 10 for the loss of 3 wicket in the over number 2 in progress. The equal battle is now continuing here. 2 ओवर
पूरे होने के लिए दो गेंदे अभी भी इस 2 ओवर पूरे होने के लिए एक गेंद इस ओवर में बाकी है. लास्ट टाइम इन दिस ओवर द बॉलर कम्स. और इस बीच अल्ताफ वालपाड़ी अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. हैदर इस वक्त सामना करते हुए फुल टॉस पुल किया इस वक्त मिड विकेट पर. कोई फील्डर वहां पर नहीं. गेंद पहुंचती हुई सीमा रेखा से अंदर गेंद को रोक लिया गया है, ढकेल दिया गया है फील्डर द्वारा. और बल्लेबाज के पास इस वक्त मौका. यहाँ पर 2 रन, नो बॉल का इशारा. और 2+1, that means 3 runs now added to the total. 3+1, that means 4 runs added to the total. 3 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके. 1 रन नो बॉल के रूप में शायद वहां पर ओवरस्टेप कर चुके थे अल्ताफ वालपाड़ी, और नो बॉल इस वक्त घोषित किया गया है. तो 3+1, 4 runs now added to the total. और इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 14 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. दोनों अंपायर इस वक्त कुछ बातचीत करने के बाद अब तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है. इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर एट दिस सिचुएशन. Fourteen for the loss of 3 wickets, and this is the second over in progress. Just we have to wait for the third umpire decision, and the decision is now pending. And now it's a no ball declared by umpire. So 4 run, 3+1, 4 runs added to the total. और तो 4 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे, और 4 रन के साथ फ्री हिट गेंद. 14 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर, और गेंदबाज इस वक्त तैयार. इस ओवर में अंतिम बार फ्री हिट गेंद लेकर अल्ताफ वालपाड़ी, जबकि इस वक्त सामना करते हुए अविनाश. और देखते हैं इस ओवर के अंतिम गेंद पर अल्ताफ वालपाड़ी किस तरीके की गेंदबाजी यहां पर अपनाते हैं. दाहिना ओवर द विकेट, फ्री हिट गेंद लेकर तैयार अविनाश के लिए. फील्डिंग में जमावट चलते हुए पावर प्ले खत्म होने से पहले के अंतिम गेंद लेकर इस वक्त अल्ताफ वालपाड़ी इस वक्त तैयार. दाहिना ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद टॉप एज पर गेंद टकराई है. कैच हो सकता है, लेकिन बल्लेबाज के लिए कोई खतरा नहीं है यहाँ पर. और 2 रन के लिए दौड़ पड़े. दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं, नहीं, यहाँ पर विकेट गिर चुका है रनआउट के रूप में. 1 शॉट, यानी कोई भी रन यहाँ पर नहीं जोड़ा जाएगा. अगर आउट बल्लेबाज होते हैं नॉन स्ट्राइकर रन पर, तो कोई भी रन यहाँ पर नहीं जोड़ा जाएगा. और यहाँ पर तृतीय अंपायर के लिए एक बार फिर से मांग की गई है, और देखते हैं तीसरे अंपायर क्या निर्धार देते हैं. तो स्ट्राइकर रन पर 1 शॉट का इशारा हो चुका है, और एक बार फिर से तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त काम आन पड़ा है.
And now he's gone. So no runs added to their total, and the score remained on 14 for the loss of 4 wickets. 2 overs completed, and now अब ये विकेट गिर चुका है। सतीश 2 ओवर के समाप्ति के बाद 14 रन 4 विकेट के नुकसान पर 32 रिक्वायर्ड, 30 बॉल्स रिमेनिंग। लेकिन इस वक्त सवाल उठता है विकेटों का। दे गॉट जस्ट 6 विकेट्स इन देयर हैंड, और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा 1 या 2 विकेट और खोता है यहाँ पर इच्छा लायंस, तो निस्संदेह मुश्किलें उनके लिए और इस वक्त बढ़ सकती हैं। Well, Gopi, just like I mentioned earlier, that you can't depend every time for 2-3 players. Just like what happened to Puttur after they lost the wicket of Altaf Alpade and Altaf Basavanagudi. They are in a trouble. Now, after losing a wicket of Arsha Paddayuru and Arshad Bajal, the same thing is happening here for Icha Lions. But nothing much is worried about the run rate, Gopi. Just you just mentioned about that. Just one no need to worry about the fall of wickets. They've lost 4 wickets. That's why I think, Gopi, the partnership definitely going to be key for the success now for the Icha Lions. Some sensible batting definitely is required, because asking that is not huge one. There's a difference, I think so, just a 2 runs difference between a ball and a run. That going to be manageable, because you are talking about that 30 balls, that was excluding wides and no balls. You can get some extra delivery, you can get extra runs as well, so that it's not a big issue. But the big issue here for the Lions is that they need to get some partnership. Exactly, Satish. एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप की जरूरत है इस वक्त, और इस वक्त विकेट खोना उनके लिए मुश्किलें और बढ़ा सकता है। न्यूमैन सनत इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, और गेंदबाज अल्ताफ बसवनगुड़ी अपना दूसरा ओवर प्रारंभ करते हैं। ओवर की पहली गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त। दिस कुड बी ट्रबल, दिस कुड बी ट्रबल, एंड वन मोर विकेट फॉलन, one more wicket fallen. The misunderstanding cost him one of them back into the pavilion. और सेकंड के बल्लेबाज ने गेंद को ढकेला था रक्षात्मक तरीके से शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, और इसे बिना देखे नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज ने रन लेने की हड़बड़ाहट दिखाई, और आखिरकार कोई मौका नहीं उन्हें वापस लौटने का। तो आउट होने वाले बल्लेबाज अविनाश आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए, और निस्संदेह सतीश ऐसा करना पड़ेगा। दिस इज एन एब्सोल्युटली सुसाइडर इस वक्त जो विकेट गिरा है। Absolutely suicidal, Gopi. That shows the pressure, Gopi. That this shows the pressure game. It's, I've already mentioned, playing a semi-final is much different than playing in the league stage matches, because semi-final means that everyone is got a little bit tense in the mind that if they're going to lose the match, they will go into home, and that's what the reason here, that handling the pressure when you're playing the big semi-final is definitely going to be key for success. And what really is happening here, the batters of Lions, they're feeling the pressure after losing a wicket of Arsha Paddayuru and Arshad Bajal. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर विकेट एक और गिर चुका है और निस्संदेह दबाव उनके ऊपर अब बढ़ चुका है। Now it's 14 for the loss of 5 wicket. In these critical circumstances, the man is now comes out to the middle as a number 7 batsman is Jabir, और वो इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद। सनत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और अल्ताफ बसवनगुड़ी दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया, खूबसूरती के साथ गेंद पहुंची इस वक्त डीप बैकवर्ड स्कोर लेकर, डीप विकेट के दरमियान क्लीन पिकअप, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 15 for the loss of 5 wickets in the over number 3 in progress. 28 balls left and 31 runs required. रिक्वायर्ड रन रेट की कुछ ज्यादा चिंता नहीं है इस वक्त। सवाल इस वक्त उठता है विकेटों का, सिर्फ 5 विकेटें उनके पास सुरक्षित, और अल्ताफ बसवनगुड़ी एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिना राउंड द विकेट, ये गेंद हल्के से गेंद को पुश किया, सेंसिबल, that's the things, that type of cricket that they have to use at this situation, they have to play at this situation। और इस बीच 1 रन का सवाल जो था वो सवाल यहाँ पर पूरा हो चुका है, 1 रन मिल चुका है, 16 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 16 for the loss of 5 wicket। अल्ताफ की गेंद है, ये गेंद धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर बल्ले का बाहरी किनारा, स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को खेला इस वक्त, 1 रन का इजाफा। Now it's going to be 17 for the loss of 5 wickets in the over number 3 in progress। Still the equal battle is now continuing here। दर्शक खामोशी के साथ मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए, और दूसरे सेमीफाइनल मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत खेला जाता हुआ PPL 2024 के अंतर्गत ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, शॉर्ट फाइन लेग पर, रन्स इस बीच नहीं मिलेगा, थोड़ी सी लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद फेंकी थी इस वक्त गेंदबाज ने, और स्वीप करने के प्रयास में चूंकि इस वक्त बल्लेबाज रन्स नहीं मिला। तो कुल मिलाकर इस ओवर में गेंदें फेंके जा चुके हैं 5, 1 गेंद लास्ट टाइम इन दिस ओवर द बॉलर अल्ताफ बसवनगुड़ी कम्स, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को बाल बचते हुए इस वक्त स्वीप करना चाहा था, गेंद लगभग ऑफ स्टंप से कुछ दूरी पर निकलते हुए बल्लेबाज बार बचते हुए, और इसी के साथ ओवर नंबर 3 की समाप्ति हो चुकी है। एक और बेहतर ओवर अल्ताफ बसवनगुड़ी का समाप्त हो चुका, और इस ओवर के साथ उनका 2 ओवर का स्पेल भी समाप्त हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति, 17 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 17 for the loss of 5 wicket after completion of 3 overs, 4 overs left and 29
more runs now they have to score for victory in remaining 4 overs. So that means exactly required run rate is gone up to exactly 7.25 runs per over. तो सतीश आइए आपको बुलाते हैं माइक्रोफोन पर, बचे हुए 4 ओवर के लिए. तो ये ओवर बेहतर रहा. तो इस वक्त रिक्वायर्ड रन रेट गॉन अ लिटिल बिट ऑफ हायर नाउ 7.25 रन्स पर ओवर, लेकिन इस वक्त मुमकिन जरूर है और निस्संदेह यहाँ पर एक बेहतर साझेदारी अगर क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज निभाते हैं तो यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा यूनाइटेड पुत्तूर की भटकी हुई गाड़ी जो कि बैक ऑन ट्रैक, सही ट्रैक पर यहाँ पर आ सकती है. लेकिन इस वक्त परिस्थिति को अपने अंडर कंट्रोल, अपने नियंत्रण में लाने के लिए इस वक्त बल्लेबाजों को जी तोड़ मेहनत मुशक्कत यहाँ पर करनी पड़ेगी. माइक्रोफोन पर आइए सतीश. So thank you, Gubi, and what a good comeback here by the bowlers of the team United Puttur. Absolutely, even though it looks like it's going to be a one-sided match at the one stage when it is a 46 going to be a target for the team Lions, but the way that they're back in the game, absolutely unbelievable. And wait and see how well each Lions will going to handle the pressure in the remaining 4 overs. Right arm over the wicket. Is there nothing much to do with the delivery? The batter left the ball right. Is a wide call by umpire. These all runs are going to be a bonus run with that bonus run score. But moves on to 18 on the board. 18 for the loss of 5 wickets back into pavilion. That's a big problem here for this time. A ball is in the air. Celebration is on, but umpire is unmoved. Umpire says not out, and it looks like again. Already they taken a review. I want to see that whether it's going to be a review from the fielding team or whether the umpire will going to have a review. That's going to be a big question because time is exactly 5:10 and need to see another mega final need to be played here. And of course, we have one more chief guest here in our main stage. Warm welcome for Prasad Rai Kiremule has got. Of course, he is in our main stage. Warm welcome, sir. This prestigious cricket tournament, PPL Puttur Premier League 2024. On behalf of organizer Junior Friends Kombettu, we would like to welcome you for this prestigious cricket tournament. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Yes, one more review is given for the third umpire, but very very wait and see how it is going to be a opportunity for the third umpire to see that it's a appeal for a caught there, caught behind that short third man region. Will it going to be out or not? Let's wait and see. The field umpire decided it's not out, but we'll wait and see how the third umpire is going to give the decision here. And with just having some limited technology, of course, we are not having 30 to 35 cameras to covering the ground. We have only 3 to 3 cameras, and with that limited option, you need to give that decision is always going to be a big challenge for the third umpire, especially for coming to the underarm cricket. Of course, so far all the YouTube channels they've done a great job for the success of underarm cricket, especially with their limited technology. They are providing some angles. That's very great to see. And 10 minutes certainly will go into some give proper evidence for the third umpire to get the best result of this appeal, which is going to be out or not, whether it's a bat is involved or not. Wait and see. So everyone's eyes on that third umpire decision because this is going to be very crucial. And once it looks like the 45 is going to be a target, 46 is going to be a target, it looks like it's manageable very easily for each alliance. But the way that the bowlers Altaf Walpadi and Altaf Basavanagodi bowled the first 2 overs, they are not out, which is called from the third umpire, so that batsman could be safe here. And relaxation here for in the dugout of the supporters of each alliance. Bappalige that batsman safe. It's the third umpire. Actually, field umpire asked for the third umpire. Again, Iqbal bowling from the far end. Right arm over the wicket. Balls this time. Again, the batsman is in a defensive frame of mind. Looks like Sanat is in striker's end. Is in a defensive frame. Just wanted to play the waiting game. And here is again Iqbal balls. Right arm over the wicket. Nicely plays it down to backward point region. One more single. They're looking for the second there, but they don't want to take any risk because they already lost 5 wickets. Losing one more wicket to put some pressure onto the incoming batters. That's why they are not interested here. And no run, only 1 run scored. With that, a single score, but moves on to 19 on the board. Still long way to go. This 45 looking so big here now for the Icha Lions. Right arm over the wicket balls are going to be a wide. This is going to be a bonus run. Indisciplined bowling performance here from Iqbal. Whenever the batsman is in pressure, under pressure, that kind of
extra deliveries, extra runs will going to release the pressure from the batters, and that will going to be all runs are going to be a bonus. And wait and see how well these two batters, Sanat and Zabir, will going to handle the pressure, and definitely they wanted to get some partnership here for the team Icha Lions Bappalige. Scoreboard is now moves on to 20. Target which is 46. That means another 26 more runs required for the victory. This is over number 4 is in progress. That's what nicely plays it down to mid-wicket region. Sensible batting here from Sanat. You know exactly that no need to panic at all. Of course, a little bit run rate is exceeds 7 runs per hour, but it can be manageable because one proper cricketing stroke takes them into right back in the game. Again, lovely shot, beautiful, imperious, covered right down to deep cow point region. Off the back foot to play that one square off the wicket down to deep cow point region for a workable single, and with that single scoreboard moves on to 22 on the board in the over number 4 is in progress. 22 means another 24 more runs required for the victory. The equal battle is on for the place in the bigger final. This time, lovely slog sweep plays it down deep square leg region. Will they come back for the second? No, they only settled for the single. This shows the pressure for the batter in the middle, because he knows that both the batters, but coming back for the second run out will take place. It will go into more problem here. And after completion of over number 4, total score is 23 on the board, and 23 to get Gopi half of the job which is completed in 4 hours, and they need to complete another half of the job in remaining 3 hours. That means 23 runs required from 18 balls. Asking run rate just under 8 runs per over, but Gopi, and the great saying in cricket, one can't see the face in a boiling water rather than the warm water, and these two batters definitely implementing that strategy, because they, after losing 5 wickets, they knows that need to get some partnership. Even the asking run rate is a little bit climbing up, but it's manageable if once they get eye in. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर साझेदारी टिकना जरूरी है और क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज सनत और जाबिर इस वक्त परिस्थिति को समझते हुए इस वक्त सेंसिबल बल्लेबाजी अपनाते हुए, और इस वक्त ऐसे ही बल्लेबाजी की जरूरत है। 18 गेंदों पर 23 रन कुछ ज्यादा लंबा लक्ष्य नहीं है, और एक बेहतर स्ट्रोक चौके और छक्के के रूप में अगर परिवर्तित होता है बीच में, तो यहाँ पर पूरी तरह इस मैच में बैटिंग टीम जो कि आ सकती है। और जहां तक इच्छा लायंस का सवाल है, इस वक्त उनके लिए क्रीज पर मौजूद सनत और जाबिर की जोड़ी एक साझेदारी निभानी इस वक्त उनके लिए बेहद जरूरी है। Absolutely, Gopi. The partnership is more important now. Along with the partnership, Gopi, they need to keep the eye on that asking run rate, isn't it? Simultaneously need to do the job, because each and every economical over then will going to create the problem for the team each alliance. But a rotation of strike in Gopi definitely will going to make things a little bit easier for the team each alliance. And wait and see. Altaf all party on one more delivery where the batsman chipped that one down to mid wicket region, but fielding absolutely we can see that United Puttur, all the fielders they are putting their 100% in the field, and once again the batsmen have to settle for the single. With that single score moves on to 25, quarter century, and another 21 more runs required for the wicket. Lovely delivery, but the ball just missing the direction. Wide call by umpire, rightly so. That ball going to be wide. That the wicket keeper is saying that to Altaf all party that certainly that the ball is a wide, and scoreboard moves on to 26 on the board. Right, over the wicket. This is a slow delivery, loose delivery, but batter already made his mind that premeditated switch which is attempted by the batter. That's why the batter Zabir couldn't manage to take the advantage of that slow delivery and loose delivery. And I think Altaf Alpadi, lucky man to see that what could be a punishable delivery, that ball has become the dotted delivery. Again, Altaf bowls, this batsman drives that one down to deep long off region for a walkable single, not more than a single. With that single scoreboard moves on to 27 on the board. That means they need to get another 19 more runs to win this match, and deliveries remaining 14. 5 difference between run and ball, and wait to see it will going to be manageable or not. They need to bring this difference between bat and run and ball immediately, and wait and see how Altaf Alpadi going to put some pressure on the batsman. Sensible batting, absolutely sensible batting so far there from Sanat and Zabir. Not taking any risk at all for going for the big shot, but just thinking about the rotation of strike, just waiting for the loose delivery, in fact, to get some acceleration. Altaf again, right arm over the wicket. That's one lovely delivery, tossed up delivery, quite deliberately I think Gopi Altaf Alpadi tossed that one because he wanted a wicket there, and this time
Zabir, I think so, wanted to go for the big shot. One more over comes in after completion of over number 5. Total score is 28 on the board, and now 2 overs remaining, Gopi. 18 more runs required for the victory. The asking run rate is now climbing up to 9 runs per over exactly, and 9 runs per over in the sense, Gopi. Now this momentum of this game will going to certainly need to be changed here by the deuce to batters, because they're settled down in the middle, and out of 2 batsmen, 1 batsman have to take an initiative of getting some acceleration. Otherwise the team United Puttur definitely were going to be a very danger in this last 2 hours. Is going to be anybody's game. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, 18 रन बनाने। अब कोई भी एक बल्लेबाज को इनिशियल रिस्क यहाँ पर लेना जरूरी है, एक आक्रामक स्ट्रोक खेलने का प्रयत्न यहाँ पर करना होगा, क्योंकि इस ओवर में कम से कम 8 से 10 रन, 10 से 12 रन बनाने होंगे इस ओवर में, तब जाकर यहाँ पर लक्ष्य उनके लिए आसान बन सकता है। एटलीस्ट दे हैव टू स्कोर 10 to 12 रन्स इन दिस ओवर फॉर द बैटिंग साइड। कोई भी एक बल्लेबाज को इस वक्त रिस्क लेना जरूरी है, और देखते हैं यहाँ पर बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाजी अपनाते हैं। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, इस ओवर में किफायती गेंदबाजी करनी है गेंदबाज को। Absolutely, Gopi. It's going to be a testing time for both the batters and the bowlers, because 18 runs required for the victory. Again, delicately plays it down to short third man region, but not more than a single. Maybe that Sanat is thinking about that more than himself, as Zab is the right batsman to get some initiative of going for the big shot, and that's why they're just thinking about the single, and he managed to get the single very easily. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದಂತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾರಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಯಾರಾದರೂ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. 11 balls, 17 required for the victory. Lofted straight down the ground, and he got the distance. What I'm talking about, Gopi, the Sanat is just thinking about, he's the right man to tackle with the big shot. It's definitely is going to be a Zabir, and he's justifying that one. He's just justifying that one, and he got that beautiful shot, isn't it? It's one of the safest area for any batsman when you're playing that one lofted drive just over that of the bowler, straight over the head of the bowler, means it was as straight as an arrow, and he got the distance in the flatter version, and he got the 6 for that. And with that 6, straight away the team Icha Lions Bapaliga back in the game. Now 11 to get. The equation, Gopi, is certainly changing here. Just 10 balls remaining and 11 runs required for the victory for each alliance Bapaliga to qualify the mega final. Again, the bowler will go into ball next time. Right up. Oh my goodness! One more slower and loose delivery there from the bowler. And the batsman a little bit excited after seeing that short pitch delivery. Zabir wanted to get one more big shot, but he missed it completely. And a good comeback here by the bowler Majid. Again, Masood, right up over the wicket, lofted that ball. It's going to be a chance here for the extra cover fielder, and he completes the catch. That's going to be really a turning point of this match. This is going to be a turning point of the match, isn't it, Gopi? I already mentioned that before the start of this over, one can't see the face in the boiling water rather than the warm after getting a sixes. Definitely the batter is in a boiling water, in the sense he's a little bit excited after getting a 6. I can get one more big 6, and that will going to release the pressure for me, but that cricketing stroke which increase the pressure for the incoming batsman. बिल्कुल, छक्का लगाने के बाद 10 गेंदों पर 11 रन बनाने थे, तब सेंसिबल क्रिकेट अपनाना चाहिए था। तो इस बार पूरी तरह प्रेशर ऑफ करना चाहा इस बार, और बल्लेबाज के दिमाग में यह बात आ गई कि एक और चौका या छक्का लगाया जाए तो इक्वेशन काफी आसान हो सकता है। तो छक्का लगाने के बाद अगली गेंद पर डॉट गेंद खेली, तो उनके बाद उनके ऊपर दबाव बढ़ गया, तो उसके बाद अगली गेंद पर दबाव उठाना चाहा, करारा प्रहार करना चाहा, और उनका विकेट गिर चुका है। 10 गेंदों पर 11 रन बनाते जब बल्लेबाज ने छक्का लगाया था, 2 डॉट गेंदें, 8 गेंदों पर 11 रन बनाने हैं। अब ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, एक बार फिर से मैच बराबरी पर रुक चुका है। Exactly, Gopi. Whenever the new batters coming to the middle, it's the right time for the opposition team to tighten up the screws, because it's not so easy for the new batters to come and handle the pressure in this situation like that. We are talking about that 11 runs required from 8 balls. Again, Masood, he got a success. Good comeback after that 6. Bowling right arm, round the wicket bounce. Yes, we lost it. What we are talking about is now. So we take a magnificent catch. What a great catch. This is really going to be another turning point of this match. Dhanush, I think the fielder in the wideish long on region is just like a bird which is flying and taken that catch. Never looks like the fielder taking the catch. That much of a jump is made to take the catch. Absolutely, Gopi. That
timing of the jump is exquisite, isn't it? And he got the wicket. And if it is a six, I think it's all over for the team Puttur, United Puttur. But because of that six which is converted into catch, this match again turning to the towards United Puttur. बिल्कुल सतीश, that was an absolutely stunner taken by the Whitish long on fielder. और जैसे ही गेंद उनकी ओर आई, ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए परिपूर्ण जजमेंट के साथ, absolutely with a perfect judgment, उन्होंने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए इस कैच को लपका और इस बेहतरीन कैच की बदौलत यहाँ पर ये विकेट गिर चुका है। ये बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश, अगर ये छक्के के रूप में परिवर्तित होता तो निस्संदेह यहाँ पर इच्छा लायंस पूरी तरह इस मैच में आ सकता था, लेकिन बेहतरीन कैच, absolutely outstanding catch taken by the Whitish long on fielder. And now equally seems to be a stiffer a little bit for Icha 11 to get from 7 balls. And now let's see what will happen in remaining 7 deliveries. Well, Gopi, the catches win the matches, which is the greatest slogan of cricket. Definitely that two catches will going to take the match little bit away from Icha Lions Bappalige. And what a good comeback here by Masood. After that six, he picked up 2 valuable wickets. That means he's on hat-trick. He's on hat-trick, 7 wickets back into pavilion. Siab is a new batter, drives that one down to mid-wicket region, but not more than a single. Have a look at the fielders of United Puttur. Absolutely, they pull their socks in that fielding department. They really fielded very well. And last over now, 6 ball, 10 runs required for the victory. And Gopi, they got only 3 wickets in hand. That might be the major problem here for the team, Icha Lions Bappalige. But in the present cricket Gopi, you cannot say that the tailenders can't bat, but in the present cricket, each and even 11 batsmen, even 11th batsman can contribute from the bat. That's why the United Puttur may be thinking about that. Got a 7 wickets. I don't think it's going to be good enough because even tailenders can contribute because 10 to get from 6 ball, 1 proper cricketing stroke is good enough for Icha Lions Bappalige to change the complexion of this game. बिल्कुल सतीश, आज के अंडरआर्म क्रिकेट के दौर में 11 बल्लेबाज 11 खिलाड़ी भी बल्लेबाजी कर सकते हैं अच्छी खासी परिस्थिति के अनुगुण, और यहाँ पर 3 विकेटें सुरक्षित जरूर हैं, लेकिन विकेटों का उतना कुछ इस वक्त सवाल नहीं उठता है। सवाल उठता है 10 रन अंतिम ओवर में बनाने का, 9 for tie 10 for win। और जहां तक सवाल है इस वक्त 10 रन बनाने का, तो देखना ही है कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज अपनाते हैं और किस तरीके की गेंदबाज जो कि मैच निर्धारित ओवर, मैच डिसाइडिंग ओवर शुरू करने जा रहे हैं, वो किस तरीके की गेंदबाजी इस वक्त इस अंतिम ओवर में करते हैं। तो ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, इस अंतिम ओवर में दबाव को जो झेलेगा वही इस मैच में विजय दर्ज करेगा और प्रेशर मेंटेन करना यहाँ पर जरूरी है। देखते हैं कौन से खिलाड़ी इस वक्त दबाव को झेलते हैं और इस मैच में विजय दर्ज करते हैं। लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर एंड the match is now inching towards to a nail batting finish. Absolutely, the match is inching towards a nail batting finish. The first ball, Sia plays it down to mid, dips like region. They're looking for the second. In comes the throw from the deep, chance of run out, and the throw which is not really having that much of power enough to stop that couple of runs here from the deuce to batter. Very, very good running between the wicket because they wanted to take each and every chances here for Icha Lions Bappalige. Now, last 8 balls remaining. 8 runs remaining they wanted to get, and they got 5 deliveries to spare. 5 balls remaining, 8 runs required for the victory. Dhanush, right arm over the wicket, balls to right hand batsman Siab. He got 2 runs in the first delivery. Now it's going to be a second delivery of the over. Right arm over the wicket, driven that one right into the deep long on region. Will they come back for the second? No, they're not taking that risk. If they're going to take the risk, they will going to lose the wicket because of the good throw coming from the fielder in the deep long on. Now 4 balls remaining, and they need to get 7 runs to win this match. The difference between bat and ball, exactly the 3. This match will going to end it in a tie. Then super over going to play in this big semi-final. Well. You can see that nail-biting finish, and absolutely it's going to be a fantastic match. The match is inching towards a thriller finish here. One more single in the sense 3 balls remaining. They need to get another 6 runs to win this match. Now, 5 for tie, 6 for victory, and every delivery required 2 runs here onwards for Icha Lions Bappalige. But 1 good cricketing stroke, which is good enough for them to finish the match. That might be the little bit point to be noted in this last over because Dhanush knows that they need to ball 3 very good deliveries because job which is not yet over. Right arm over the wicket, across the line, swings that one ball in there, and 1 ball is collected by the fielder. They're coming back for second. Chance, what a throw! What a throw there from the fielder. Basavana Goody has got a fantastic arm. Have a look at that throwing arm right into the hands of the bowler.
and batsman finding himself short of his crease. Now, 2 balls remaining, 5 runs required for the victory. What a match, absolutely thriller. The kind of semi-final the crowd wanted to see in this holiday. It's a Sunday. Definitely it's going to be a Paisa Vasool match is going on here in this most beautiful cricket stadium of this PPL 2024. It's going to be anybody's game. Match is not yet over. 2 balls remaining. 5 runs required for the victory. And Gopi once again, the new batter coming to the middle here and under pressure situation. But new batter will be in the non-strikers end. And good to see that Sihab is once again back into strike. And Sihab is a kind of batsman who can be very handy at any situation because the 2 balls remaining, 5 runs required for the victory, 4 for the tie, and 2 wickets in hand. That's going to be a little bit factor here, that only 2 wickets hand, but 2 proper deliveries required here for Dhanush to finish the match for his in their favor. But 1 cricketing stroke is good enough for them to win the match for each Lions. Here is go. Right arm over the wicket, coming down the track, using his feet, looking for the second. In comes a throw from the deeper. Opportunity to run out, missed out by the bowler. Well. Now, last ball remaining. 1, 2 for tie, 2 for tie, 3 for victory. 2 for tie, 3 for victory. If it is a batsman able to get the 2 runs, then it's going to be a super over. Now, getting a 3, I don't know it's going to be possible or not, but it's a huge ground, but very difficult to get a 3. But 2 runs can be manageable. But more than anything else, Gopi, 1 big shot is going to be good enough for them to win this match. बिल्कुल सतीश, 2 रन अगर बनाते हैं तो मैच टाई होगा. तो अंतिम गेंद पर करारा प्रहार करने का रिस्क उठाएंगे नहीं, ये बल्लेबाज के दिमाग पर निर्भर करता है. तो 2 रन अगर बनाते तो मैच टाई होगा, बैट टाई होगा तो सुपर ओवर खेला जाएगा. अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, इट कुड बी एनीबॉडीज गेम एट दिस सिचुएशन. It could be anybody's game and decided delivery coming here. 3 to get to win this match, 2 for tie. Here you go, the final delivery. Coming down the track, using his feet, plays it down to deep extra cover. Fielder is there in the deep cover point. They're looking for the third. Will they come for the third? No, it doesn't. And now going for the third. Run out. Oh my goodness, he missed it. He missed it. Each Alliance properly get the qualify for the mega final. But here, decision is pending for the run out. Decision which is pending in the run out in the non-striker and for the 3rd run. Of course, the 2 runs which is completed, I think so. 2 runs completed. They were trying for the 3rd. They made a run out. They're asking for that because the match is already tied. That's a sure. Match is tied. That's a sure. But we to see that whether the 3rd run which is completed or not. If it is a run out, the match will going to be tied. If it is not run out, the Icha Lions Bappalige will going to be in the final. What a semi-final. What a semi-final, Gopi. Absolutely. One of the best match I want to say so far in this PPL Puttur Premier League 2024. बिल्कुल सतीश, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक मैच. द मैच ऑफ द टूर्नामेंट हैज बीन केम्स टू एन एंड. और देखते हैं इस अंतिम गेंद पर क्या होता है. क्या मैच टाई होगा या फिर क्या इच्छा लायंस इस मैच में विजय दर्ज करेगा. लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, 100% पैसा वसूल ये मैच है जो कि इस वक्त समाप्त हो चुका है. और देखते हैं इस वक्त भाग्य यहाँ पर किसका साथ देता है. इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द 3rd अंपायर एंड लेट्स सी व्हाट द डिसीजन केम फ्रॉम हिम. जस्ट वी हैव टू वेट एंड सी. ಆದರಣೀಯರೇ, ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತಿರುವ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಸರ್ವರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಒಳ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 2 ವೀಲರ್ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಮತ್ತು 4 ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಇತರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಕಲ್ಲಾರೆ
ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕೆರೆಮೂಲೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾಬಾ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಾಹನದ ಚಾಲಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನ ಇತರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಗೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಡಗೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾರು ಕೂಡ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಎದುರಿದ್ದವರು ಕೂಡ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ರೂಮಿಗೆ ಯಾವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ರೂಮಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗಲಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು.
ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತಿರುವ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024ರ ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ಗೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಸದಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸದಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇದೀಗ ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನ ನೋಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಘೋಷಿತಗೊಂಡಿರುವ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಸದಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರಣೀಯರೇ, ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತಿರುವ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ರಜಾಕ್ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತೋನಿ ಸೌಹಾರ್ದ ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿ ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗೌರವಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತಿರುವ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024ರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಹಜ್ ರೈ ಬಳ್ಳಜ್ಜ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೇರಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಹಜ್ ರೈ ಬಳ್ಳಜ್ಜ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೀಗ ಇವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರಣೀಯರೇ, ಶ್ರೀಯುತ ಸಹಜ್ ರೈ ಬಳ್ಳಜ್ಜ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
I request two teams captain please be reported here. The captain of each alliance Papaliga as well as captain of team of Bangalore Blasters please be reported here immediately for the tossing ceremony. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಚ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಬಬ್ಬಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಚ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ವರ್ಸಸ್ ಟೀಮ್ Bangalore Blasters. So that I request captain of both the teams please be reported here immediately for the tossing ceremony. ಆದರಣೀಯರೇ, ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತಿರುವ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 6ರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿರುವ ಅಜಿತ್ ಸರ್ವೆ, RP ಡೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್, ಕೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆದಿಕ್ ಕದಂ AR ಗೋಲ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ತಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿರುವ ಅಜಿತ್ ಸರ್ವೆ, RP ಡೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್, ಕೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಪುತ್ತೂರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆದಿಕ್ ಕದಂ AR ಗೋಲ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. It's time for the tossing ceremony and the two teams which is qualified the mega final and the two captains out here, the captain of each alliance Harsha Padayuru and captain of Puttur Saifuddin, the captain of
Icha Alliance and captain of Bangalore Blasters. At the tossing ceremony, Sahasrai will go into toss the coin. Head is the call and it is a head. Wait a minute, Saifuddin, congratulations, you came into the mega final. Toss ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಟಾಸ್ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಹೆಸರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ರನ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಲ್ಲ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎನಿಸಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಹ. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬಂದು ನಿಮ್ದು ಟೀಮ್ ಹೆಸರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ captain Saif won the toss. Let's wait and see what will go into the decision here from Saifuddin, and it's going to be a mega final. The final will be of 4 hours, and Bangalore Blasters captain, they elected to field first, and yes, it's going to be looks like it's going to be a good toss to win in this evening, because the time is exactly 5 past 50, and it's going to be better to bat under a very good light. And 4 hours match, and 1 hour going to be a power play out of that 4, and 4 bowlers to be used in this 4 hours match. And please note little bit changes in the playing condition of this in the mega final. There will be a number of over which is reduced from 7 to 4 because of a shortage of time, and final will be of 4 hours. 1 hour going to be a power play, not more than 2 fielders outside the circle, and after that not more than 5 fielders outside the circle. That will going to be the condition, the playing condition of this mega final of the stages PPL Puttur Premier League 2024. The man of the match of the previous match semi-final, well, welcome back for the mega final of this prestigious cricket tournament, and Icha Lions Bappalige are qualified for the mega final with a thriller finish in the last delivery of the semi-final, where it is required 3 runs to win the match, and certainly little bit the bowler couldn't manage to find the stumps in the non-strikers, and so that they got opportunity to come back for the third, and they completed 3 valuable runs in the last delivery of the over, and they came into the mega final. Icha Lions Bappalige won the toss. Little correction, captain of Bangalore Blasters won the toss. They elected to bat first to exploit the Bangalore Blasters, a little correction, they won the toss, elected to field first, and I'm just wanted to see what could be that strategy behind this decision of Bangalore Blasters, that they were giving opportunity for the batters of Bangalore Blasters to bat first. And very interesting decision, Gopi, because in yesterday's match we are witnessed that one decision which came from the captain of Sports World in the last session. After winning the toss, they elected to the field first, and that becomes a little bit trouble for them when they are going to chase that use runs, 80 runs to win this match. They become a little bit problem because of a light condition in the evening. एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर कल फील्डिंग लिया था उन्होंने और आखिरकार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. हेलो, तो आज भी यहाँ पर बैंगलोर ब्लास्टर्स के कप्तान ने फील्डिंग ली है और देखना यह है कि उनको खुद पर भरोसा है कि सतीश वो रनों का पीछा कर सकते हैं, लेकिन रोशनी इस वक्त मैदान पर कम होती हुई, और देखना यह है कि इस ढलते हुए रोशनी में वो जो भी लक्ष्य सामने वाली टीम इस वक्त तय करेगा उस लक्ष्य का किस तरह से वो यहाँ पर पीछा करेंगे. देखते हैं क्या होता है. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ, ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ನವರು ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರಣೀಯರೇ, ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೀಸನ್ 6ರ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಸರ್ವೆ, ಆರ್ಪಿ ಡೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂಡ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಕೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಇವರು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೋರಿಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆದಿ ಕದಂ AR ಗೋಲ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು,
ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗೌರವಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರ್ಯ ವಿಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಭಾಜಿ ಮಾರುತಿ ಸರ್ವೆ ಇದರ ಮಾಲಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ರಿ. ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗೌರವಿಸಿದ ತಮಗೂ ಸ್ವಾಗತದೊಂದಿಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. So, scoreboard is now 6 on the board, and the over number first is in progress, and Shiva will go into continue. And Arsha Padayuru is on strike now. For him, one fielder at mid wicket, one fielder at a deep long off. This is a power play is on, and wait and see in this power play how well they will go to capitalize that one. This time lofted, and up and over, down to deep cow point region. Fielder will go into chase that one, and just inside the boundary, they managed to get the ball, and both the batters has got opportunity to cross off for 2 valuable runs. With that couple of runs, Kombettu moves on to 8 on the board, 8 without loss of any wicket in the over number first is in progress. What a fantastic mega final is in progress. 2 teams deserve the place in the mega final, and wait to see which team will going to become the champion in this prestigious PPL Puttur Premier League 2024, which is proudly organized by Junior Friends Kombettu under the great leadership of Banu Prakash and Ravi Salyan Padayuru. Here against Ravi, red correction Shiva, balls lofted, and no need to run for that. But running down to deep long on boundary for 4 runs. No, he stopped. No, it's gone over the rope for 4 runs. And absolutely great attempt there by the fielder. Running from the deep long on region towards the deep long off region to stop that boundary. But after having a little bit fingertips, ball looks like we're going to stop. But again, the ball just winning the race against the fieldsman, and boundary comes off. After completion of first over, scoreboard is 12 on the board without loss of any wicket. ಹಲೋ ಆದರಣೀಯರೇ, ಹರ್ಷ ಅವರ ಪ್ರತಿ 6ಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾಬಾ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ವತಿಯಿಂದ 500 ರು ಘೋಷಣೆ. ಹರ್ಷ ಅವರ ಪ್ರತಿ 6ಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾಬಾ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ವತಿಯಿಂದ 500 ಘೋಷಣೆ. ಕಿರಣ್ ಅವರಿಂದ 100ರ ಘೋಷಣೆ ಹರ್ಷ ಅವರ ಪ್ರತಿ 6ಗೆ. Well, a lot of encouragement prizes which is announced in the mega final, especially for Arsha Padayuru, and he will go into grab the opportunity because already he got some 1,800 rupees in the semi-final, in the quarter-final in fact, after getting some sixes. Every sixes he got 200 rupees, and definitely he will go into grab this opportunity in the mega final as well. Wait and see as Hanif brought into attack from the far end to ball the second over. After that power play, the fielding restriction is over, and we can see that 5 fielders outside the circle. There is a deep long off, deep square leg, and deep long off, and deep cow point. Again, the first ball, little bit ball is got inside edge of the bat, and batsman able to complete the single there. With that single, Kombettu moves on to 13 on the board without loss of any wicket. Fantastic cricket tournament is in progress in this most prestigious PPL Puttur Premier League 2024, and all waiting is over. The 2 teams is qualify for the mega final, and 1 team will going to become the champion here. Right, I'm over the wicket. This time Arsha lofted, side to the answer fielder. What a magnificent catch taken there by the fielder. The captain of the side, I think so. The Safuddin is charging in from the deeper square leg region and getting the catch, and is sending the danger man Arsha Padayuru back into pavilion. So
Anif got the wicket, and after getting the wicket, the announcement is coming here. And if Anif managed to get 3 wickets in 3 deliveries for the hat trick, he will going to get a 300 rupees, which is announced by Parvez Salmara. Anif, but I think every wicket is required 300 rupees because the mega final, and because the batsman getting a 200 rupees for every sixes. Why can't the bowler will going to get 200 rupees for every wicket? Again, improvisation plays it beautifully down to final leg division. They're looking for the second, and they managed to complete their 2 valuable runs. Now, the last opportunity for Arshad Bajal to show his talent, because in the last 3-4 matches he couldn't manage to talk with the bat, and in the mega final wait and see how Arshad will going to justify that he is one of the most destructive batsmen in the present cricket is concerned, and he got a couple of runs in the first delivery itself, and his scoreboard now moves on to 15 on the board. Anif will go into ball from the far end, and scoreboard is looks like it's going to be each and every run going to be very crucial in the mega final, because this is a match is played in the last session. Again, the batsman going for the sweep shot, missed it completely. Wicket keeper Shafi couldn't manage to gather the ball, but very good backup by the fielder at short fine leg division. No question of any run. Each and every dot ball will go and create the problem here for the team Itch Alliance Bappalige to get some good score against destructive and blaster. What is talking about this time? Driven that one, just defeating that infield, but the protection is there in the deep square leg region, and before the fielder from deep square leg run across to his left to field the ball down at deep fine leg region, ample time for that batter to complete that 2 valuable runs. With the 2 valuable runs, scoreboard moves on to 17 on the board. In the over number second is in progress. Talking about what a fantastic cricket tournament in this Pearl City, Puttur. And the cricket lovers will go to remember this tournament for a long time, because very systematically organized cricket tournament, and we are watching this mega final of this PPL. Again, extra bounce defeating the bat of Arshad. I have chance of run out. It's going to be a suicider, I think so. Late response coming from Zabir for that run, and he just pays the penalty for that. And Arshad Ayub just asking why you are not responded for that run. And Zabir is a very dangerous batsman as far as in this particular tournament. He got some big shots from his bat. He played some good innings for his team, but losing him in this situation, slight a bit of benefits for the team of Bangalore Blasters. And the wicket number 2, which is back into pavilion. The 2 are completed after completion of over number 2. It's a 17 on the board. Gopi 8.5 runs per hour. Do you think that in this condition it is going to be a healthy run rate or not? Definitely, Satish, it's going to be a healthy run rate. 17 after 2 overs, they scored exactly 8.5 runs per over. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त रोशनी का, तो रोशनी इस वक्त मैदान पर कुछ हद तक कम हो चुकी है, और जहाँ तक सवाल है इस वक्त कम से कम 30 का आंकड़े को अगर पार करता है तो निस्संदेह यहाँ पर चुनौती भरा लक्ष्य उनके टीम के लिए खेलाएगा। 2 ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं सतीश यहाँ पर इन बचे हुए 2 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो बेंगलोर ब्लास्टर्स के गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए, और गेंदबाज हैं इस वक्त जो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए मुजम्मिल, और इस बीच गेंदबाज बल्लेबाज है जो कि सामना करने के लिए तैयार अरशद बजाल। तो अरशद बजाल कुछ खास इस श्रृंखला में वो कर नहीं पाए, ये उनके लिए अंतिम मौका है जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया, और देखते हैं यहाँ पर वो किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते इस फाइनल मैच में। अब तक एक बेहतर शुरुआत वो कर चुके हैं, 4 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए। मुजम्मिल एक बार फिर से तैयार, ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद बजाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण मैदान पर छा चुका है। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए अरशद के लिए गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को उछाल नहीं पाया। ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट वांटेड टू प्ले दैट वन टू अर्ली, द बॉल केम क्वाइट लेटली बिकॉज ऑफ दैट, नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द बैट एंड बॉल, एंड द बॉल वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। दर्शकों से मैदान इस वक्त लगभग भर चुका है, और निश्चित रूप से भरना भी चाहिए। एक बेहतरीन प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला पीपीएल 2024 की का ग्रैंड फिनाले यहाँ पर खेला जाता है। This time, lost that one into the gap as well. It might have been gone all over the fence. In fact, it's gone over the fence for a boundary. Fantastic struck this time came from the bat of Arshad Bajal. इस बार गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ, डीप बैक स्कोर लेकर डीप मिड विकेट फील्डर के दरमियान, और खूबसूरती के साथ 4 रन इस वक्त प्राप्त करते हैं, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर, 1 विकेट 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, और मुजम्मिल इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अरशद
बजाल इस वक्त सामना करते हुए, और इस बीच बल्लेबाज गेंद की परीक्षा करने के बाद इस वक्त गेंद को इस वक्त गेंदबाज के हाथों में लौटाते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद फेंकने के लिए मुजम्मिल इस वक्त तैयार। रोशनी मैदान पर काफी हद तक कम हो चुकी है, शाम के 6:10 यहाँ पर बच चुके हैं, और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए, और मुजम्मिल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद बजाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और फील्डिंग में जमावट करने के बाद इस वक्त मुजम्मिल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा लेकिन गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई ठीक तरह से, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो निस्संदेह ग्रैंड फाइनल ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट पुत्तूर प्रीमियर लीग 2024 इज नाउ प्रोग्रेसिंग, विच प्राउडली प्रेजेंटेड बाय जूनियर फ्रेंड्स कोम्बट्टू पुत्तूर। और इस श्रृंखला का मेगा फाइनल मैच यहाँ पर प्रगति पर, और गेंदबाज मुजम्मिल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। अरशद के लिए बेहतर नहीं, गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा, और आखिरकार गेंद इस वक्त सीधे पहुंच चुकी है विकेट कीपर के हाथों में, और गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहते थे लेकिन अंतिम क्षण में गेंद अरशद बजाल के पहुंच से बाहर की ओर निकलती हुई, और एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। और मुजम्मिल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। अरशद के लिए यह गेंद इस बार, अरशद के लिए गेंद को उछाला इस वक्त लंबा सीमा रेखा के अंदर, बेहतरीन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सेव मेड बाय द लॉन्ग ऑफ फील्डर। दैट वाज एन एब्सोल्युटली सर्टेन सिक्स, लेकिन अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए अंतिम प्रयत्न में गेंद को लॉन्ग ऑफ फील्डर ने अंदर की ओर ढकेला। 19 फील्डर थे, और 19 के इस फील्डिंग की बदौलत इस वक्त अरशद बजाल को मिला सिर्फ एक रन। दैट वाज एन absolutely stunning fielding performance, outstanding fielding performance made by the long off fielder, and just a single got for Arshad Bajal. Absolutely fantastic fielding, एक रन का इजाफा, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 23 for the loss of 2 विकेट इन द ओवर, नंबर 3 इन प्रोग्रेस। धूप लगभग मैदान से गायब हो चुकी है, लगभग मैदान पर रोशनी काफी कम हो चुकी है, अंधेरा सा इस वक्त छाता हुआ, और मुजम्मिल एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अमन ना सामना करने के लिए तैयार। इस वक्त मुजम्मिल की गेंदों का ये गेंद इस बार मुजम्मिल अमन के लिए सफल होते हुए गेंद कॉन्सर्ट पर उछालना चाह, रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना इस वक्त टकरा चुका है, लेकिन बल्लेबाज ने कहा कि अंपायर ने कहा कि नहीं, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, और यहाँ पर दूसरा रन शायद यहाँ पर पूरा कर चुके हैं, दूसरा रन लेग बाय के रूप में, और 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे। रन्स बटोरने का हर तरीके का प्रयास इस वक्त क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज अरशद और अमन यहाँ पर करते हुए, लेग बाय के रूप में ये 2 रन उनके खाते में जुड़ चुका, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रन। निस्संदेह PPL 2024 is now progressing here. The climax of PPL Puttur Premier League 2024 is now progressing here. This tournament is now progressing under the great leadership of Mr. Bhanu Prakash and Mr. Ravi Salyan Padai, और जिन्होंने जिस तरीके से इस श्रृंखला का आयोजन किया है निस्संदेह काबिले तारीफ है, और अन्य उनके टीम के क्लब के अन्य लोगों के साथ, अन्य सदस्यों के साथ संगठित होकर श्रीमान भानु प्रसाद और श्रीमान रवि सालियान पड्डयूर ने इस श्रृंखला का आयोजन किया। निस्संदेह ये दोनों शख्स जो कि इस श्रृंखला के सफलता के मुख्य सूत्रधार है, श्रीमान भानु प्रकाश और श्रीमान रवि सालियान पड्डयूर के एक बार फिर से सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से हम यहाँ पर हार्दिक अभिवादन करते हैं। इस बार गेंद को उछाला, नॉट क्वाइट मिड विकेट, इनफैक्ट 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, इससे पहले किसी लिमिट ऑफ पर गेंद को फील्ड कर लिया जाता है, और 1 रन के साथ द टोटल स्कोर इज नाउ मूविंग अप टू 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, एंड द थर्ड ओवर has been came to an end. 3 gone, 26 on the board, exactly 7.66 runs per over. The present run rate is now progressing. Yeah, still in the overall calculation, it's going to be last over remaining in the innings. और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में उनके बल्लेबाज कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो अंतिम ओवर में सतीश कम से कम 10 से 12 रन भी बटोरते तो यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा इच अलायंस के लिए बोनस कहलाएगा, क्योंकि रोशनी यहाँ पर काफी हद तक कम हो रही है। तो यहाँ पर अंतिम ओवर में कम से कम 10 रन भी बटोरते तो इस वक्त उनके लिए चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर कहलाएगा। Absolutely, Gopi. The 10 runs that we are talking about, it's going to be a bonus. But I think having Arshad Bajala as well as Aman Sangadi, they got a capability of hitting more than that. And more than 10 runs is going to be extra bonus, Gopi. And because of the light condition, because the Bangalore Blasters have to play with that condition. And if it is going to be a 40 plus runs on the board, Gopi, it's going to be a danger sign for Bangalore Blaster, because they need to deal with the light condition. It's going to be very difficult. 26 for the loss of 1 wicket. बिल्कुल सही बात आपने फरमाया।
2 विकेट्स इनफैक्ट। बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश। यहाँ पर अंतिम ओवर में यहाँ पर क्रीज पर जो दोनों बल्लेबाज मौजूद है, अमन और हर्षद दर्शन से भी ज्यादा बनाने की क्षमता रखता है और इस वक्त इस अंतिम ओवर में उन पर अंकुश लगाना है। गेंदबाज जो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करने जा रहा है शरफुद्दीन, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार कदम का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, हाफ स्टॉप फॉलो थ्रू में करते हुए अपने पैर के जरिए जब तक गेंद को बैकअप किया जाता। 1 रन का इजाफा हो चुका है, 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 27 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इनफैक्ट। और इस वक्त ग्रैंड फिनाले इच्छा लायंस बप्पलिगे और बेंगलुरु ब्लास्टर्स के बीच में इस वक्त खेला जाता हुआ, और निश्चित रूप से मैच एक दिलचस्प मोड़ की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ। हर गेंद के साथ फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हैं, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जो कि स्ट्राइक पर इस वक्त मौजूद है, और इस बीच गेंदबाज शरफुद्दीन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त अरशद बजाल सामना करते हुए ये गेंद इस वक्त गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद जाती हुई इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, बेहतर थ्रो रिटर्न, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 28 रनों पर, 28 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट 10 क्रिकेट 10 मीडिया पर इस वक्त किया जा रहा है, और निश्चित रूप से न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कई हजार दर्शक इस प्रतिष्ठित श्रृंखला पुत्तूर प्रीमियर लीग 2024 का मुआयना यूट्यूब पर करते हैं, जो कि 10 मीडिया इस वक्त कर रहा है, एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट। और जहां तक सवाल है इस श्रृंखला का, तो इस श्रृंखला का क्लाइमैक्स यहां पर प्रगति पर, इस बार कदमों का इस्तेमाल करते आगे निकले, गेंद को इस वक्त ड्राइव किया, लॉफ किया था लॉन्ग ऑन पर, लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर कुल मिलाकर 2 विकेट के नुकसान पर। बेहतर स्लोली एंड स्टडीली दिस पार्टनरशिप इज नाउ बिल्डिंग अप फॉर द 3rd विकेट। अरशद, और इस बार गेंद फेंकने के लिए इस वक्त तैयार रहे थे कि अरशद ने सोचा कि क्यों ना अपना बल्ला यानी बैट बदला जाए, और अपने बल्ला यानी बैट बदलने के बाद अपने स्ट्राइकर एंड की ओर इस वक्त वो तैयार, और शरफुद्दीन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद लगभग उछाल लेती हुई एक्स्ट्रा बाउंस, रन्स गेंद को ठीक तरह से मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट नहीं कर पाए और गेंद को फील्ड कर लिया गया, शॉर्ट स्कोर लेग पर रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो कुल मिलाकर अब 2 गेंदें बाकी उनकी पारी में, जस्ट 2 बॉल्स लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स, और शरफुद्दीन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद लॉफ्टेड दैट वन एट दिस टाइम इट्स गॉन many miles from the fence, it's a biggie, this is an absolutely outstanding struck came from the bat of अरशद बजाल, और अरशद बजाल जब छक्का लगाते हैं तो ऐसा ही नजारा यहाँ पर देखने को मिलता है, हर जगह कहना पड़ेगा, और इस बार गेंद सीधे इट्स गॉन many miles from the fence onto the road, और एक लंबा छक्का यहाँ पर अरशद बजाल के बल्ले से लगता हुआ, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर। अंतिम गेंद इस वक्त बाकी, द लास्ट बॉल नाउ रिमेनिंग, और इस बीच अंतिम गेंद, और सतीश निस्संदेह बेहतरीन स्ट्रोक था। Well, Gopi, just I'm talking about first time he clearing the boundary line. His first time clearing the boundary line in this particular cricket ground. He's listened that one. I wanted to. This is not a usage cricket ground. You need to have enough power, and what a power that one, Gopi. And that was really sailing into the out of the park, and definitely it's going to be a little bit interesting to see that the fans of Arshad Bajal at last they enjoyed 1-6 came from the bat of Arshad Bajal. Exactly, सतीश, यहाँ पर लंबा डिस्टेंस और डिस्टेंस को क्लियर करते हैं, इस बार एक बार फिर से उछाला है, लेकिन मैंने समझता इस बार अगेन सीमा रेखा को पार कर गया, लॉन्ग ऑन पर फील्डर को ने इस कैच को लपक लिया है। तो अरशद बजाल की बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुका है, उनकी पारी की अंतिम गेंद पर इज आउट फॉर इन द लास्ट डिलीवरी ऑफ द इनिंग, स्कोर्ड 16 रन्स इनटू हिज क्रेडिट इंक्लूडिंग 1 6 एंड अ बाउंड्री। निस्संदेह जो छक्का अरशद बजाल ने लगाया था, निस्संदेह उनके फैंस को काफी हद तक खुशी दे चुकी है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात आपने फरमाया थी, 4 ओवर की समाप्ति, 35 रन्स स्कोर्ड बाय लायंस Bappalige. Now the target for Bangalore Blasters is 36. They have to score in the stipulated 4 overs to clinch the prestigious title of PPL 2024, Puttur Premier League 2024. They have to score 36 runs to become the champion of this prestigious Puttur Premier League PPL 2024. And let's see can they read the target or not. So 36 the target, Satish. Under this situation, it's going to be a competitive, मैं कहूँगा. लेकिन एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर बैंगलोर ब्लास्टर्स को अपनी मंजिल की ओर अग्रसर कर सकते हैं, लेकिन 36 रनों के लक्ष्य 24 गेंदें 20 इन द स्टिपुलेटेड 24 डिलीवर्स, दे हैव टू स्कोर 36 रन्स। और ऐसा कहना पड़ेगा राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर एक बेहतर शुरुआत इस वक्त देना होगा यहाँ पर बैंगलोर ब्लास्टर्स के बल्लेबाजों को। लेकिन जहां तक सवाल है, इच्छा लायंस बप्पलिगे ने जो रन संख्या की
उम्मीद अपेक्षा की थी उस रन संख्या को प्राप्त कर चुके हैं और अंडर दिस कंडीशन इन हालातों में ये एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर कहलाएगा और 36 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यहाँ पर देखते हैं किस तरीके की टैक्टिक्स यानी रणनीति बल्लेबाजी में अपनाते हैं बैंगलोर ब्लास्टर्स के बल्लेबाज। माइक्रोफोन पर आइए सतीश। Well, Gopi, and we are talking about that target might be a little bit tougher because they are playing with the absence of two icon players, Shakir as well as Riaz. They are not playing in the mega final for Bangalore Blasters. This might be the big the blasting news here for the opposition team that without the service of Riaz and without the service of Shakir, that might be a little bit will going to weaken that the batting department. Already there is a little bit weakened that in the bowling department because both are a very good all-rounder for the side, and missing them in this mega final might be putting them into a little bit back foot. But you can't say anything in cricket, Gopi. The cricket is game of glorious uncertainty. You can't say anything in cricket. It's going to be anybody's game. And just like I mentioned, Gopi, the first over, the power play, definitely going to be very crucial for the team of Bangalore Blaster. If they manage to blast at least 10 to 15 runs in the first over of the power play, then it will going to be anybody's game. And wait and see how well these two opening batters, Anif and Sawad, will going to get that start what they're really looking for. Just I want to see will going to bowl that power play over. And Aman is one more experienced campaigner for the side. So far, he bowled the power play overs for the team. And once again in the mega final, final time in this PPL, he will go into ball, and wait and see how he'll go into ball this power play over. It's going to be very interesting. And bowler Aman from the far end, right arm over the wicket to Anif, one of the very good striker of the ball, and passes umpire. Balls this time, lovely delivery. Batsman going for the big shot in that occasion. Ball just missing the bat, hitting his legs. There is no chance of leg before wicket. There's no leg before wicket in this particular tournament, so that no question of that. And the batsman will going to survive here. The first ball, dotted delivery, and the target to become the champion is 36, and the run rate required is exactly 9 runs per over. And the power play, what I'm talking about, is going to be very crucial here. Aman back to his bowling mark. Second time in this over. We give me one fielder in the deep long on, one fielder in the deep long off. Right arm over the wicket. Ball says that swings that, and that's going to be a huge one. The 6. What I am talking about. The Anif is a very good striker of the ball, and he strikes that one down to deep square leg boundary for a 6. Under this condition, hitting a 6 is not so easy. Without the help of the wind, there is no wind at all. We can see that there is no that much of wind in the cricket ground, but still Anif managed to get the distance, and he got a 6, and he will going to open the gate here for the team Bangalore Blasters. Again Aman, right arm over the wicket. Bounce Anif once again, the top edge, opportunity is created, fielder is underneath it, and he completes the catch. Anif departs. Absolutely good comeback here by Aman. After that he conceded 6, and very next delivery Aman got a wicket of Anif there, and suddenly Gopi, the 6 will going to give oxygen for the team Bangalore Blaster, and after that wicket for Aman in the next delivery will going to give the oxygen for the fielding team as well. बिल्कुल सतीश, छक्का लगाने के बाद ही जस्ट ट्राइंग टू रिपीट द सेम थिंग. अगली गेंद पर हनीफ ने एक और छक्का लगाना चाहा, लेकिन इस बार नॉट क्वाइट गेट दैट वन फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट और गेंद को लपक ले गया मिड विकेट पर. फर्स्ट विकेट लॉस्ट और देखते हैं मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है. ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಂಬೆಟ್ಟು ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೀಸನ್ 6ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024ರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ತೇಜಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Thank you very much, and welcome for all the dignitaries for this prestigious cricket tournament, because after this mega final there will be a post-match presentation ceremony in this very big stage right of our commentary box, and of course we can see that the very attractive trophies, champion trophy and runner-up trophy, definitely both the teams wanted to get this big trophy along with the big cash prize of rupees 50,000 will be awarded for the champions, and 30,000 will be awarded for the runner-up. Again the Aman will go into ball 4 time in this over. Right arm over the wicket to Shafi wanted to go for the cover drive but missed it completely. Then wicket keeper behind the stump did the rest. Each and every dot ball in the power play over is going to be very crucial here for the team Bangalore Blasters. They only got a 6 in this so far in this over, and will it going to be good enough or not? Well, let's wait and see. Again right arm over the wicket, this time up and over. Lovely shot there from Shafi. What a glorious shot, magnificently played there by Shafi. Have a look at that. He's transferring his weight onto the back foot.
to get that done over that cover point region. You know exactly where the fielder is. There is a fielder in the deep long off and deep long on. And once he realized that if you get past that infield over the cover point fielder, it's going to be bound. And ball went like a tracer bullet. And absolutely glorious shot there from Shafi Parpunja. And Skobanda moves on to 10 on the board. 10 without for the loss of 1 wicket. Once again lofted and fielder is there in the deep long. Misfielded. And ball running towards the deep long of extra boundary, deep extra cover boundary for 4 runs. Lucky boundary here for Safi, but each and every run going to be a bonus here for the team Bangalore Blasters. And first over which is comes to 9 Gopi. And once the batsman is back in the pavilion, that is Anif, after hitting a 6, everyone thought it going to be a difficult time. But Shafi again changing the complexion of the game by hitting 2 boundaries in that last 2 deliveries of the power play over. बिल्कुल सतीश, शाफी का 2 चौका निस्संदेह यहाँ पर उनको इस सही प्लेटफॉर्म पर ला चुका. 14 runs scored from the first over. That means 22 they have to score in remaining 3 overs, and required run rate is now straight away coming down to 7.33 runs per over. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त लक्ष्य तक पहुंचने का, तो इस वक्त जरूरत है सतीश एक सेंसिबल क्रिकेट की. 22 runs in 18 balls और पहले ओवर में 14 रन बनाने के बाद निश्चित रूप से यहाँ पर तख्ता भारी लगता हुआ बैंगलोर ब्लास्टर का. लेकिन मौका जरूर है इस वक्त एचआर लायंस के लिए इस मैच में कमबैक करने का. अगला 1-2 ओवर अगर बेहतर उनके गेंदबाज फेंकते हैं निश्चित रूप से उनके गेंदबाज इस मैच में वापस आ सकते हैं. लेकिन पहले ओवर में 14 रन प्रदान करने के बाद सहज रूप से गेंदबाज का मनोबल इस वक्त घट चुका है. अगर मनोबल को वापस प्राप्त करना है तो अगले 1 या 2 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी उन्हें यहाँ पर करनी होगी. Exactly, Gopi. The first over definitely going to open the gate. Not only open the gate, but almost 75% of which is chances which is given for given by that over, because the little correction, because of Shafi is just came in and getting that 2 valuable boundaries for his team, and he just opened the gate for the team as well. 22 to get from 3 overs, 18 balls, 22 runs required for the victory, and either brought into attack, and we will see how either will going to put some break in the run rate of their opposition team, Bangalore Blasters. It's going to be a mega final, and it's going to be anybody's game. Either right arm over the wicket, nicely balled, a very good sensible batting here from the batter. Sawadin delegation babies tackled that extra bounce from the bowler either and managed to pick the single down to backward point region, and with that single scored Namozan to 15 on the board. 15, the target which is 36, that means 21 more runs required for the victory in remaining 17 deliveries. Either right arm over the wicket, ball to Shafi, sensible batting, absolutely sensible. Have a look at that one. Shafi is looking for the second. In comes the throw from the deep, but not good enough to stop the couple of runs here from Shafi. Absolutely fantastic thinking there from Shafi. Cricket is not all about hitting a boundaries and sixes. Sometimes this kind of sensible batting, isn't it? Safi knows that after the power play, we can see that the fielder is spread out, so that if you get that ball in the gap, the long way to go for the fielder from the deep cover point to come to that ball. So this is a very good thinking for the batter's point of view. He got a couple of runs. With that couple of runs, Kombettu moves on to 17 on the board. Again, this time he wanted to get the placement between bowler and a short extra cover, but by doing that, he couldn't manage to get that one into the gap. But bowler either managed to collect the ball on his follow through, and no question of any run. Very important dotted delivery there from Aidar. Right arm over the wicket, bounce to Shafi. This time chip that one into the gap towards the mid wicket. Again the running hard. Will they come back for a second? No, there's no chance at all for the second run, because the fielder in the mid wicket quickly coming to the line of the ball, so that no question of second run. 3 runs coming from that the last 2 deliveries. 3 deliveries ball by Aidar, and again the scoreboard moves on to 18 on the board. 18 means half of the job which is completed. They need to complete another half of the job. That means another 18 more runs required for the victory. Driven that one nicely. Sawad is playing a very good acting role in other end, a supporting role another end by picking up the singles, rotating the strike. He's not wasting the delivery. You know exactly. Shafi is in a good nick, because Shafi's played a very good innings in the previous day as well for his team. And again, he will go into, oh, it's gone. What you are talking about? The Shafi's appearance is much required for the team. Bangalore Blaster, but he's just wanted to play the unorthodox cricketing stroke and face the penalty for that. And Gopi, do you think that is going to be necessary in this occasion? Because Shafi is played a very good cricketing stroke, the orthodox cricketing stroke so far with the straight bat, and this time he's just wanted to play a little bit risk that playing the unorthodox cricketing, that reverse shape, and he just pays the penalty for that. And the wrong time, I think Shafi is back into pavilion.
बिल्कुल सतीश, यहाँ पर 19 रन बच चुके हैं और शाफी का रॉन्ग शॉट सिलेक्शन था और यहाँ पर उनका विकेट गिर चुका है, निर्णायक मोड़ पर उनका विकेट गिर चुका है और 2 ओवर के बाद द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर. 19 runs on the board, 17 runs more. Now they have to score for victory in remaining 12 balls. Still I must say it could be anybody's game at this situation. तो देखते हैं यहाँ पर बचे हुए 2 ओवर में क्या होता है. तो नए बल्लेबाज, द न्यू बैट्समैन, नंबर 4 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल. आसिफ इस वक्त, आशिक इस वक्त क्रीज पर मौजूद और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए अरशद इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और देखते हैं 2 ओवर जो बचे हुए इनमें 17 रन यहाँ पर बल्लेबाज प्राप्त कर पाते हैं या नहीं. तो इस वक्त ओवर की पहली गेंद लेकर अरशद फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए, रोशनी जो कि मैदान पर काफी हद तक कम हो चुकी है और ओवर की पहली गेंद लेकर अरशद इस वक्त तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को खेल दिया बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में. गेंद जाती हुई रन बल्लेबाज को मिलेगा, थोड़ी सी मिस फील्ड, बल्लेबाज 2 रन दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 21 नाउ. दैट मींस 15 runs required, 11 balls remaining, and that still I must say it could be anybody's game at this situation. What a fantastic mega final match is now progressing here. The climax of PPL Puttur Premier League 2024, which proudly organized by under the great leadership of Mr. Bhanu Prakash and Mr. Ravi Salian Paddayur, and proudly presented by junior friends Kombettu. और इस बीच ये गेंद अर्शद की ऑन साइड पर, and this time brilliantly fielded. Oh, that could be a chance of a run. In fact, this could be a chance, and this time is gone. This time is gone. Misunderstanding cost him one of them back into the pavilion. स्क्वायर लेग पर गेंद को मोड़ा था और आखिरकार नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज काफी आगे निकला, पीछे दौड़े जरूर लेकिन आखिरकार वहां पर रन आउट हो चुका था. एक और विकेट गिर चुका है. एंड नाउ 10 balls remaining, 15 runs required और ये विकेट का पतन सतीश निस्संदेह कुछ हद तक ड्रॉबैक साबित हो सकता है यहाँ पर इच्छा लायंस के लिए. Absolutely, Gopi. It's a good piece of fielding there by the jersey number 66. I think Sanat is there in the square leg region because a hard chance for him to take the catch, but he not really looking for the catch, but he know exactly the need to restrict the runs. He immediately returns the ball to the hands of wicket keeper. Little bit fumble there from the bowler Ashad to get that throw from the wicket keeper, but he managed to complete that run out. But losing wicket in this sanction, definitely it's going to be a difficult time for the Bangalore Blasters. But still, Gopi, the match is evenly poised because one very good cricketing stroke will going to take the Bangalore Blaster into the game, and one good over will going to take the team Icha Lions into this Champions Trophy. बिल्कुल सतीश, इस वक्त भी मैच बराबरी पर रुक चुका है और सवाद इस वक्त सामना करते हुए अरशद बजाल की गेंदों का दाएं बाएं हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार उछाला है, सवाद ने गेंद लगा फील्डर गेंद के नीचे आते और इसी के साथ he's gone at this situation, and now a vital wicket loss for him. सवाद ने गेंद को उछालना चाहा था लेकिन इस बार स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं और शाम का वक्त, हवा का रुख काफी धीमा और गेंद सीधे पहुंची लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों में और यह विकेट का पतन निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा इच्छा लायंस के मुश्किलों को और यहाँ पर, माफ कीजिए, यहाँ पर बैंगलोर ब्लास्टर्स के मुश्किलों को और यहाँ पर बढ़ा चुका है और इच्छा लायन का इस वक्त तख्ता कुछ हद तक यहाँ पर भारी लगता हुआ. अब गेंदे बाकी हैं 9 और रन से चाहिए 15. 15 runs to get in remaining 9 balls, and the equation seems to be just little bit stiffer at this situation for Bangalore Blasters. Or under these circumstances, critical circumstances, the man number 5 batsman is now comes out to the middle. मुजम्मिल जो कि एक बेहतर खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं बैंगलोर ब्लास्टर्स की ओर से, इस वक्त गेंदबाजी बल्लेबाजी करने के लिए तैयार और अरशद इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए. लगभग मैदान पर अंधेरा सा इस वक्त छाता हुआ, इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट निवेदन करता हूं दोनों टीमों के खिलाड़ियों से कि कृपया मैच को जल्द से जल्द आगे बढ़ाए. इस बीच अरशद बजाल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस वक्त गेंद को खेल दिया, गेंदबाज के सिर के ऊपर से फील्डर थोड़े से पीछे तैनात है, एक रन मिलेगा. क्लीन मिस फील्डर, बल्लेबाज दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ द बैक इनटू द पेविलियन. जैसे ही गेंद छोटी, स्ट्राइकर के बल्लेबाज दौड़ पड़े नॉन स्ट्राइकर पर, लेकिन नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज वहां पर टिके रहे, बैकअप होता हुआ और आसान सा रन आउट इस वक्त स्ट्राइकर पर हो चुका है. तो विकेटों के ऊपर विकेटें गिरते हुए सतीश और निस्संदेह हर विकेट के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ. 3 विकेटें अंतिम 3 या 4 गेंदों में गिर चुके हैं. अब 8 गेंदें बाकी, 15 रन और ऐसा कहना पड़ेगा द थिंग्स गेटिंग tighter now for Bangalore Blasters. Absolutely, Gopi. The things becomes more tighter for the team Bangalore Blaster because they're not having a batter like Riaz and Shakir, the 2 icon players in the side. But still need to appreciate their effort. Without having their service, they're really trying their level best. Match which is not yet over, Gopi, because anything can be possible because one big shot will go into change the complexion of this game because they need to get another 15
runs in remaining 8 deliveries. That means it's going to be possible if the boundary and a 6 will going to change the complexion of this game. बिल्कुल सतीश, 8 गेंदे 15 रन, कम से कम एक चौके या छक्के की इस वक्त जरूरत इस वक्त बेंगलुरु ब्लास्टर्स को कमबैक करने के लिए। और यहाँ पर इच्छा अलायंस का तख्ता कुछ हद तक भारी लगता हुआ, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है। और देखते हैं इस वक्त नए बल्लेबाज जो क्रीज पर उतर रहे हैं वो किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं। 19 जो कि नए बल्लेबाज और इस वक्त वो सामना करने के लिए तैयार। अरशद बजाल की ओवर की बचे हुए 2 गेंदों का और अरशद बजाल ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज उन्हें सामना करने के लिए तैयार। रक्षात्मक तरीके का खेल, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, मच स्ट्रेटर लाइन और गेटिंग बैट एंड लेग क्लोज टुगेदर। गेंद को इस वक्त फॉरवर्ड डिफेंस खेल दिया इस वक्त बैक टू द बॉलर की दिशा में। डॉट गेंद, अब 7 गेंदे और 15 रन चाहिए विजय के लिए। एक बेहतर ओवर अरशद बजाल का यहाँ पर प्रगति पर। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपने रन अप में कुछ हद तक बाधा और एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए अरशद बजाल के ओवर की अंतिम गेंद का। यह गेंद इस बार ऑन साइड, ओह इट्स गॉन फाइन, इट्स गॉन फाइन दिस टाइम, चेस फॉर द फील्ड, Badmin cuts it off just inside defense and this time he cuts it off just inside defense because of brilliant fielding and the batsman before that they come back for the third run. 3 runs added to their total and the ball went so fine just wide of the short third man feet after being stucking to the batsman's leg, and now 3 runs added, 12 runs remaining in the last over, and the last over of the tournament is now coming up. 11 runs required from the last over and the last over of the tournament is now coming up. 10 for tie, 11 for win. और सतीश अभी भी मैं कहूंगा तख्ता जरूर भारी लग रहा है इच्छा अलायंस का, लेकिन यहाँ पर मौका जरूर है बेंगलुरु ब्लास्टर्स को इस ओवर में अंतिम ओवर में कमबैक करने का। Exactly, Gopi. The 3 bonus run is the last delivery of the over. Will definitely go into things like a little bit open day for the team of Bangalore Blasters. The 11 to get from last over, Gopi. Anything can be possible in this last over because both the teams definitely wanted to become the champion. They know that this is a mega final, and the chasing team knows that 11 to get from 6 balls. I think can be manageable. That is all up to that. How well the batters batters who are in the middle of the pitch, how well they managed to handle the pressure, and to see that which bowler will go into ball that last over. After long discussion, they decided to give the ball to the hands of I think the bowler Farooq. And Farooq, if you see, Gopi, is a very successful captain so far. If you see the history of PPL, he's one of the most successful captain. Farooq seems to be a very lucky player, and we will see how he's going to justify how he's going to be lucky here in the mega final. Farooq is going to bowl the last over, and wait and see how well these 2 batters in the middle, Unez as well as Nihal, 2 batters definitely wanted to get 11 runs, 10 for the tie, Gopi, 11 for the victory. The climax will going to start of this mega final in the last over. It's going to be anybody's game. बिल्कुल सतीश, it could be anybody's game. Let's see what will happen in the last over of the tournament. 11 required, 10 for tie, 11 for win, and the last over of the tournament is now coming up. The pressure is now building up on both sides. Here we go. First ball comes from Farooq to the right-handed batsman Unais, और इस वक्त पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिना तो ऊपर, the wicket full toss, pulls that one this time, and this time Fina getting underneath it and he took the catch. He took the catch brilliantly just inside defense at deep backward square leg. और ऐसा कहना पड़ेगा, he just wanted to pull that one on the onside area, not quite get that one from the middle of the bat. और deep mid wicket, deep backward square leg पर एक बेहतरीन कैच फील्ड एंड का। तो निस्संदेह सतीश यहाँ पर बल्ले के बीचों बीच गेंद नहीं टकराई थी और आखिरकार ये विकेट गिर चुका है। और अब 5 गेंदे 11 रन और इस वक्त equation seems to be a much stiffer now for them. Absolutely, Gopi. It is a juicy full toss, isn't it? The ball which just came from the hands of Farooq, definitely going to be that it was a punishable delivery, and maybe the batsman Une is not expecting that full toss from the bowler. That's why he's not ready for the play that shot. It didn't got enough bat onto that. It's not coming from the sweetest spot of the bat. Otherwise, definitely the ball going to dispatch towards a deep square leg for a 6, and that will going to be the turning point of this match. Maybe. क्लाइमैक्स में आखिरकार चैंपियन कौन सी टीम यहाँ पर होती है। और इस बीच 5 गेंदे 11 रन, नए बल्लेबाज शरफुद्दीन का आगमन हो चुका है। फारूक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद टॉप एज, एक बार फिर से मौका हो सकता है। फॉलो थ्रू में गेंदबाज गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को लपकने में सफल। 1 more wicket fallen और विकेटों के ऊपर विकेट गिरते हुए 6ठा विकेट गिर चुका है। 6th विकेट डाउन, कंसेक्यूटिव विकेट्स फॉर फारूक और अब 4 गेंदे 11 रन। अब ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, इन 4 गेंदों में कम से कम एक चौका या छक्का यहाँ पर जरूर लगाना होगा बेंगलुरु ब्लास्टर्स के
बल्लेबाजों को यहाँ पर कम बैक करने के लिए, वरना लक्ष्य उनके लिए काफी कठिन और हो सकता है। Exactly, Gopi. The Bangalore need to blast one or two big shot in this remaining 4 deliveries. Otherwise, very difficult for them to win this match. And it's going to be a do-or-die situation here. And certainly wait and see how well the new batter will going to handle the pressure of getting that 11 runs in 4 balls. But very good start there by Farooq. He picked up 2 wickets in 2 deliveries. That means he's on hat-trick. That's why I'm talking about Gopi. The luck will going to be fundamental ingredients in the success. And Farooq, I'm talking about, is a lucky man. As far as I've already mentioned, but as far as the history of the PPL is concerned, plenty of time for his team is came into the final. They become the champion. And one more time he'll going to test his luck. And 2 deliveries, he managed to pick up 2 wickets. That means he's on hat-trick. And do-or-die situation here for the batter coming to the middle, Shiva Prasad. And wait and see, he desperately wanted to do or before die in this 4 deliveries. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर हैट्रिक गेंद जरूर है, लेकिन हैट्रिक से भी ज्यादा खुशी फारूक को होगी जब वो टीम को विजय दिलाएंगे। तो यहाँ पर हैट्रिक गेंद लेकर तैयार, हैट्रिक के गेंद शिव प्रसाद के लिए दाहिना तो ऊपर विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद को उछालना चाहा, चूंकि फॉरवर्ड शॉट लेग पर एक और विकेट का पतन हो सकता है और इसी के साथ एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। 3 गेंदे और 3 विकेट, लेकिन हैट्रिक नहीं, यहाँ पर रन आउट हो चुका है। अब 3 गेंदे 11 रन, और ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त तख्ता काफी हद तक यहाँ पर इच्छा लायंस बप्पलिगे का बारी होता हुआ। तो अंधेरा इस वक्त छा चुका है, छाता हुआ, लगभग अंधेरा छा चुका है कहना पड़ेगा। और इस श्रृंखला में कुल मिलाकर 3 गेंदे बाकी रह गए, जस्ट 3 डिलीवरीज रिमेनिंग इन दिस टूर्नामेंट। और अब ऐसा कहना पड़ेगा यहाँ पर इस वक्त बेंगलुरु ब्लास्टर्स को सिर्फ चौके या छक्के ही इस मैच में वापिस ला सकते हैं। तो नंबर 9 बल्लेबाज, number 10 batsman is now comes out to the middle, 8 wickets down for them। और नंबर 10 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए 3 balls 11 runs, और एक लंबे स्ट्रोक्स की तलाश में इस वक्त बल्लेबाज। और लेफ्टी बैट्समैन इज नाउ गोइंग टू फेस द राइट हैंडेड बॉलर फारूक, और इस वक्त फारूक गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए 3 balls 11 runs, 10 for tie, 11 for win। द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स, और गेंदबाज फारूक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए विकेट कीपर हर्षद बजाल फील्डिंग में जमावट करने के बाद इस बीच तैयार फारूक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए फारूक की ओवर की ये गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल करते आगे, इस बार विकेट गिर चुका है बोल्ड आउट के रूप में। लेकिन यहाँ पर हर्षद बजाल इस वक्त बेल्स हालांकि ऑफ नहीं हुए थे, लेकिन अपना विकेट बचाने का प्रयास किया था, लेकिन अंतिम क्षण में भाग्य उनका साथ नहीं दिया और यहाँ पर विकेट नंबर 9 गिर चुका है। अब अंतिम अवकाश, almost 2 sixes required in the last 2 deliveries, that means 11 runs required from last 2 ball and they got just a single wicket in hand। और सतीश, अब आप क्या कहना चाहेंगे बचे हुए 2 गेंदों के बारे में? Well, Gopi, looks like what we're talking about, that after winning the toss, elected to field first, and that might be the big problem here for the team of Bangalore Blasters, because they got an opportunity to bat first, winning the toss, but they're given the opportunity for the opposition team to bat first. Now they're facing a lot of problem here to side the ball. The wickets are falling and difficult to get the big shots. So that's a big problem here for the Bangalore Blasters. Not really learning from the mistake. What they got opportunity in the previous day, yesterday, they got opportunity to batting first and they got 80 runs, but against him fails to get that one. Now, Gopi, last opportunity, the number 11 batsman, and wait and see how number 11 batsman will go into tackle with the 2 deliveries. 11 to get from 2 balls, 11 number batsman is now going to face again, चूंकि इस वक्त फाइनल लेग की दिशा में सिर्फ 1 रन मिलेगा, and now 10 required, 9 for tie, 10 for win। अगर अंतिम गेंद पर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते तो यहाँ पर इच्छा लायंस यहाँ पर चैंपियन बन सकता है। तो अंतिम गेंद 10 रन, और क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है जब तक अंतिम गेंद फेंकी जा सतीश। तो देखते हैं, अंतिम गेंद बाकी है और अंतिम गेंद में माइक पर आपको मैं बुलाना चाहूंगा अंतिम बार इस श्रृंखला में। Absolutely, the last ball, and here you go, the celebration begins. Team Icha Lions Bappalige are becoming the champion of Puttur Premier League 2024 by defeating team Bangalore Blasters by valuable 10 runs and deserve the champion of this PPL 2024. Congratulations for the winners, Icha Lions Bappalige. He won the congratulations for Bangalore Blasters. Really fought hard for the victory, but not good enough to become the champion. But I need to appreciate the effort of Bangalore Blasters. Without having their icon players, they tried their level best to win this match, but at last the Icha Lions Bappalige are played like a lions and they're becoming the champion. Congratulations for both. Thank you very much each and everyone for your great support for the prestigious cricket tournament Puttur Premier League 2024, and
I would like to give special thanks for the organizer for giving the opportunity, being the part of this wonderful cricket tournament. As a commentator, myself, Satish Salyan, and my friend Mr. Gopi, would like to give special thanks to Ravi Salyan Paddayuru as well as Banu Prakash sir for providing the opportunity, being the part of this successful PPL Puttur Premier League 2024 very prestigious cricket tournament. Thank you very much. Now we are just going to the post match presentation ceremony. Thank you very much. We'll be back. Thank you. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಗೋಪಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಹಜರೈ ಬಳ್ಳಜ್ಜ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕಲ್ಲಾರೆ, ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕೆರೆಮೂಲೆ, ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾಬಾ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಜಾಕ್ BH ಬಪ್ಪಳಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತೋನಿ ಸೌಹಾರ್ದ ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ, ಅನಿಲ್ ಗೌಡ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಂಡಡಕ, ಸಲೀಂ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶರತ್ ರೈ, ವಿನೋದ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪರಾಜ್, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರಣೀಯರೇ, ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿರುವ ರವಿ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ, ಅನಿಲ್ ಗೌಡ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಂಡಡಕ, ಸಲೀಂ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ, ರಜಾಕ್ BH, ಶರತ್ ರೈ, ವಿನೋದ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪರಾಜ್, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ, ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಗೋಪಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. ವಿಜೇತ ತಂಡವಾಗಿರುವ ಇಚಾಲಿಯನ್ಸ್ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರಣೀಯರೇ, ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿರುವ ರವಿ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ, ಅನಿಲ್ ಗೌಡ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಂಡಡಕ, ಸಲೀಂ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ, ರಜಾಕ್ BH, ಶರತ್ ರಾಯ್, ವಿನೋದ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೀಸನ್ 6ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಇದು ಅದ್ದೂರಿ PPL 2024. ಇದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಮುಂಭಾಗದ ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ರವಿ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ, ಅನಿಲ್ ಗೌಡ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಂಡಡಕ, ಸಲೀಂ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ, ರಜಾಕ್ BH, ಶರತ್ ರೈ, ವಿನೋದ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪರಾಜ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ತುರ್ತಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಜೇತ ತಂಡವಾಗಿರುವ ಇಚಾಲಯನ್ಸ್ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ, ಇದರ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಹಜರೈ ಬಳ್ಳಜ್ಜ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಚಾಲಯನ್ಸ್ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾರೋಪ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ರಜಾಕ್ BH ಬಪ್ಪಳಿಗೆ, ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತೋನಿ ಸೌಹಾರ್ದ ರೂಲಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ
ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಿತ್ರರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಹಜ್ ರೈ ಬಳ್ಳಜ್ಜ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲೇ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಅನ್ನುವ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಉಳ್ಳಂತಹ ಸಹಜ್ ರೈ ಬಳ್ಳಜ್ಜ ಇವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕೆರೆಮೂಲೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು. ಸರ್, ತಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿರುವ ಹರೀಶ್ ಕಲ್ಲಾರೆ, ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ತಮಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾಬಾ, ಪೆಟಲ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಸರ್, ತಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 34 ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಟ್ರೋಫಿ ಎನ್ನುವ ವಿನೂತನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಸ್ಕರಿಯಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಮಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಫಾರೂಕ್ ಶೇಖ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ತೇಜಸ್, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾಬಾ, ಪೆಟಲ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಸದಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಹತ್ರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸದಬಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಡಿ. ಸಮಾರೋಪ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿರುವ ರವಿ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ, ಅನಿಲ್ ಗೌಡ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮತ್ತು ಸಲೀಂ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಜಾಕ್ BH, ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತೋನಿ ಸೌಹಾರ್ದ ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿ ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಶರತ್ ರಾಯ್, ವಿನೋದ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಇದರ ರವಿ ಪಡ್ಡಾಯೂರು ಮತ್ತು ಹರ್ಷ ಪಡ್ಡಾಯೂರು ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಇಚ್ಛಾ ಲಯನ್ಸ್ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಮಾಲಕರು, ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ 10 ಮೀಡಿಯಾ ಇದರ ಸರ್ವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ PPL ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಇದರ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಈ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡಿರುವ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಗೋಪಿ ಸಿಂಗ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸಹಜ್ ರೈ ಬಳ್ಳಜ್ಜ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗೋಪಿ ಸಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ನೋಡಿ, ಎರಡು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಚ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಬಪ್ಪಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎರಡು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರಣೀಯರೇ, ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024ರ ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರಣೀಯರೇ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಿಹಿ ಫಲವೇ ಸಾಧನೆ, ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಸನ್ಮಾರ್ಗವೇ ಸಾಧನೆ, ಗಮ್ಯದೆಡೆಗೆ ನಿರಂತರ ಗಮನವೇ ಸಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟವೇ ಸಾಧನೆ, ಛಲದ ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರವೇ ಸಾಧನೆ ಎನ್ನುವ ಕವಿ ಪಾಣಿಯಂತೆ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ PPL 2024 ಇದು 6ನೆಯ ಸೀಸನ್. ಪ್ರಥಮ ಸೀಸನ್ ಇಂದ ಈ ಸೀಸನ್ ತನಕ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಿದಂತವರು ಶ್ರೀಯುತ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟೆವು. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ಪುತ್ತೂರಿಗನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಉದ್ಯಮವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತ ಪುತ್ತೂರಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆಯ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು. ಪುತ್ತೂರಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀಲಿ, ಒಂದು ರಜಾಕ್ BH ಹತ್ರ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಪ್ರತೀತಿ. ಇವತ್ತು ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 8 ಜನರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂತ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಇವರ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಆಶಯ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಆದರಣೀಯರೇ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಫಲ ಪುಷ್ಪವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಆದರಣೀಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಸತತ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅದು ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ. ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕುಂಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ. HMT ಅನ್ನುವ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅನ್ನುವ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನ ಸಾರುವ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟವರು ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್. ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಇವರಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶರತ್ ರಾಯ್, ವಿನೋದ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಮತ್ತು ರಜಾಕ್ BH ಇದು ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಇದರ ತಂಡ. ಈ 4-5 ಜನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ರಜಾಕ್ BH ಅವರನ್ನ ಪುತ್ತೂರಿನ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ರಾಯಭಾರಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂತದ್ದು ವಾಡಿಕೆ. ಬಹುಶಃ HMT ಅನ್ನುವ ಸಂಘಟನೆ ಇರಬಹುದು, ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಘಟನೆ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಪುತ್ತೂರಿನ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಮೂಲಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನ ಕಾಣಬಯಸುವಂತ ರಜಾಕ್ BH ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಶರತ್ ರೈ ಅವರು ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024ಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಘಟಕನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್
ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿದವರು. ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ವಿನೋದ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಳೆದ 6 ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಂಘಟನೆ, ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸದಸ್ಯ, ಪ್ರಥಮ ಸೀಸನ್ ಇಂದ ಈ ಸೀಸನ್ ತನಕ ಸಂಘಟಕ, ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೋರ್ವರು ಶ್ರೀಯುತ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಸದಸ್ಯರು. ಕಳೆದ 6 ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಹಕಾರ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಂಘಟಕ. ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರವಿ ಪಟ್ಟಾಯೂರು ಮತ್ತು ಹರ್ಷ ಪಟ್ಟಾಯೂರವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಅವರ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರಜಾಕ್ BH ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ರಾಯಭಾರಿ, ಶರತ್ ರಾಯ್, ವಿನೋದ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಈ ಪಂಚ ಸಾಧಕರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ 5 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರಲಿ. ಇಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಘಟಕರು ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮಂತ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಈ ಪಂಚ ಸಾಧಕರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಫಲ ಪುಷ್ಪವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರು ಇದೀಗ 6ನೆಯ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿ ಇದೀಗ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳಿದ್ದೇವೆ. ರಜಾಕ್ BH ಬಪ್ಪಳಿಗೆ, ಶರತ್ ರಾಯ್, ವಿನೋದ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ 4 ಚೇರ್ ಅನ್ನ ಉಳಿಸಿ 1 ಚೇರ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಳೆದ 6 ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 4 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರವಿ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ, ಅನಿಲ್ ಗೌಡ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮತ್ತು ಸಲೀಂ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಅಂಪೈರ್ಗಳಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು. 4 ಜನರನ್ನ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನಿಲ್ ಗೌಡ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದವರು. ಇವತ್ತು ಅಂಪೈರ್ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ತನ್ನ ಸುಪುತ್ರಿ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅನ್ನುವ ಹೆಮ್ಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನಿಲ್ ಗೌಡ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ಕೆಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಕೂಡ ಕಳೆದ 6 ಸೀಸನ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಂಡಡ್ಕ. ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಕನಸನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಂಡಡ್ಕ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೋರ್ವರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಲೀಂ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪದೇ ಇರುವಂತಹ ಅಂಪೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಪುತ್ತೂರಿನ ಸಲೀಂ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಕಳೆದ 6 ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಸಲೀಂ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಅವರು PPLಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ 4 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಕೂಡ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಬಯಸುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ತೀರ್ಪನ್ನ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ.
ಸೇವೆಯನ್ನ ಪಿಪಿಎಲ್ ಆಯೋಜಕರು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರಣೀಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಪಿಪಿಎಲ್ 2024 ಸೀಸನ್ 4 ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ವಿನೋದ್ ಕುಂಜಾರು ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿನೋದ್ ಕುಂಜಾರು, ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು, ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚೇತನ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಗೌತಮ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಅವರು ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸದಬಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಸದಬಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. ಚಿಂತನ್, ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಚಿಂತನ್ ಸದಬಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. ರವಿ ಪಟ್ಟಾಯೂರು ಮತ್ತು ಹರ್ಷ ಪಟ್ಟಾಯೂರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಇಬ್ಬರು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಲೋಕದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು. ಇವತ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. ರವಿ ಪಟ್ಟಾಯೂರು ಮತ್ತು ಹರ್ಷ ಪಟ್ಟಾಯೂರು ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ. ಸಂತೋಷ್ ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಮೆಸ್ಕಾಮಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಂಘಟನೆಗೂ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂತೋಷ್ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಪುತ್ತೂರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರೋಹಿತ್ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಸದಬಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಹಜರೈ ಬಳ್ಳಜ್ಜ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೆದಂತಹ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿನ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಹುಶಃ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಮೊದಲಾಗಿ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಟೀಮ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು, ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು, ಅಂಪೈರ್ಸ್ಗಳಾಗಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು, ನನಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ A to Z ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಏನು ಆ ತಂಡ ಇದೆ, ನೀವೊಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನೇಕ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ತನಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಿಂದ ಕ್ರೀಡಾ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದ್ದವರು ನಾಳೆ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇವರ ರವಿ ಸಾಲಿಯರ್ನವರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಕ್ರೀಡಾ ಆಟಗಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮತ್ತು ವಿಜೇತರಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಸಹಚರಿಯವರಿಗೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಇದೀಗ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೈವ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪರಿಚಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು 10 ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಇದರ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 3 ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಖೇನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಕೋರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸಬಲ್ಲಂತಹ, ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಲ್ಲಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೈವ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ 10 ಮೀಡಿಯಾ ಇದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವರು ಬಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಾಮಿಯಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಾಮಿಯಾನವನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, 10 ಮೀಡಿಯಾದ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಸ್ವೀಕಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಹೇಮಂತ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. ಶಾಮಿಯಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಯಾಹಿಯಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. ಯಾಹಿಯಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ಯಾಹಿಯಾ, ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಗೌಡ ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಂಡಡಕ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೋರ್ವರು ಸಲೀಂ ಬಬ್ಬಳಿಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಭಿರಾಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಇತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ತೇಜಸ್ ಅವರು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಮಿಯಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ
ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಇದರ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ. ಆದರಣೀಯರೇ, ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಇದರ ಸಂಜೆಯ ಸಮಾರೋಪ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಸಹಜರೈ ಬಳ್ಳಜ್ಜ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ವಿತರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಸಹಜರೈ ಅವರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕೆರೆಮೂಲೆ ಇವರಿಗೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಕಲ್ಲಾರೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾಬಾ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಗೆ, ಇಟಾಲಯನ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಮಾಲಕರಿಗೆ, ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತೇಜಸ್ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಪುತ್ತೂರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಸ್ಕರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಾರೂಕ್ ಶೇಖ್ ಅವರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಮಾನ ನ್ಯೂಸ್ ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಶ್ರೀಯುತ ಫಾರೂಕ್ ಶೇಖ್ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯತ್ತ ನಾವು ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೀಸನ್ 6ರ PPL ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಇದರ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಇಟಾಲಯನ್ಸ್ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೀಲ್ಡರ್ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸುಂದರವಾದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಇಟಾಲಯನ್ಸ್ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ. ಸೊ ಪಿಂಚ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಅಚ್ಚ ಬನ್ನೂರು ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಚ್ಚ ಬನ್ನೂರ್ ಅವರು ಪಿಂಚ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಅನ್ನುವ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಪಿಂಚ್ ಹಿಟ್ ಅಚ್ಚಾ ಬನ್ನೂರ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ. ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಅಚ್ಚಾ ಬನ್ನೂರು ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ ಫ್ರಮ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪುತ್ತೂರು. ರೀತಿಯ ಬೌಲರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಾಲ್ಪಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಬೆಸ್ಟ್ ಕೀಪರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ರೋಹಿಮ್ ಕೊಯ್ಲಾ ಫ್ರಮ್ ಪುತ್ತೂರು ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೀಪರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ರಹೀಂ ಕೊಯ್ಲಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Best standing player award goes to Sanat from Italiyans Bappalige. Best standing players Sanat from Italiyans Bappalige. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಸನತ್ ಇಟಾಲಯನ್ಸ್ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. So best jersey award goes to Friends Kabaka. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಬಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೆರ್ಸಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ
ಸೊ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ರಿಯಾಜ್ NM ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್. ರಿಯಾಜ್ NM ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಸುಂದರ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಇಚ್ಚಾಲಯನ್ಸ್ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಇಚ್ಚಾಲಯನ್ಸ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನಮೋಹಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖೇನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನವನ್ನ ಗೆದ್ದಿರುವಂತಹ ಶ್ರುತ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್. ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಶ್ರೀಯುತ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದವರು. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಪಟಾಯೂರು ಫ್ರಮ್ ಇಚ್ಚಾಲಯನ್ಸ್ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ. ಇಚ್ಚಾಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಹರ್ಷ ಪಟಾಯೂರು ಈ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹರ್ಷ ಪಟಾಯೂರು. ಇದೀಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಶೂ ಕೂಡ ಬಹುಮಾನ ಇದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೈನ್ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಶೂವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ ಫ್ರಮ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಶೂವನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಪುತ್ತೂರಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಳಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೈನ್ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಅಲ್ತಾಫ್ ವಲ್ಪಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಶೂವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ 6 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ತಂಡವನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ಮರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿದ್ರೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ರಜಾಕ್ ಬೇಚ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗೌರವದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಬಕ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿದ್ರೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದಿರುವ 6 ತಂಡಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. 8 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರೋಫಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದ 6 ತಂಡಗಳ ಸದಸ್ಯರಿದ್ರೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಅದ್ದೂರಿ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಇದರ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ನುಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ ಬಳಿಕ ಪಟಪಟನೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೀಸನ್ 6 PPL 2024 ಇದರ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು
ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ PPL 2024 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಲಕ್ಕಡಿ ಡ್ರಾ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿಯನ್ನ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವ ಸಮಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಘಟಕರು ಬೇಕಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಸಮಯ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನರು 10,000, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನರು 5,000. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನರು 10,000, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 5,000. ಇದೀಗ ಮೊದಲನೆಯ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ 10,000ವನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೌಶಾದ್ ಪೆರಿಯಡಕ. ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ನೌಶಾದ್ ಪೆರಿಯಡಕ ಇವರವರು 10,000 ನಗದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. 3912 ಚೀಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ 2010 2010 ನಂಬರಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿ ಇವತ್ತು 5,000 ಲಕ್ಕಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೌಶಾದ್ ಪೆರಿಯಡಕ. ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ PPL 2024 ಇದರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ 2010. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಿದೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್. ಎಸ್, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. 5,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ. 20 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 5,000 ತಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಇದರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಇಚ್ಛಾ ಲಯನ್ಸ್ ಬಬ್ಬಳಿಗೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇಚ್ಛಾ ಲಯನ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟದ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಚ್ಛಾ ಲಯನ್ಸ್ ಬಬ್ಬಳಿಗೆ. ಎಸ್, ಹಂಸಾ ಬಬ್ಬಳಿಗೆ ಇವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಇಚ್ಛಾ ಲಯನ್ಸ್ ಬಬ್ಬಳಿಗೆ ಸತತ 2ನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಚ್ಛಾ ಲಯನ್ಸ್ ಬಬ್ಬಳಿಗೆ. ಇಚ್ಛಾ ಲಯನ್ಸ್ ಬಬ್ಬಳಿಗೆ ತಂಡ ಹಂಸಾ ಬಬ್ಬಳಿಗೆ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಆಟವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಚಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಚ್ಛಾ ಲಯನ್ಸ್ ಬಬ್ಬಳಿಗೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಂಸಾ ಬಬ್ಬಳಿಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇರಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಶುದ್ಧ ಹಂಸಾ ಬಬ್ಬಳಿಗೆ ನೇತೃತ್ವದ ಇಚ್ಛಾ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳೊಂದಿಗೆ PPL 2024 ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಘಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ PPL 2024 ಸಮಾರೋಪ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.